Not okay. Yes, yes, visible. Yes. So last section हमने start कर लिया ना. Last session I think we have completed with process analysis. Right? ये अपना last session का. Harsh to everyone. During last lecture you have mentioned driving about this. Okay, no problem. You haven't received driving. ओके नो प्रॉब्लम चलो आज मैं राइटिंग भी दूंगा ठीक है कोई प्रॉब्लम ठीक है सब मिल जाएगा तो लास्ट सेशन में हम थे पूरी नजर के पास राइट दैट इज बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस सो बेसिकली बाउंडेड लैटिस एनी लैटिस कैपिटल एल इज सेड टू बी बाउंडेड लैटिस इफ देयर इज a least element which is denoted by 0 or and the rest element denoted by 1 or I present in lactis right if given process lactis then it must be bounded but reverse is not always true that means it will be bounded some not be lactis then distributed lactis का होगा जब distributed property को satisfy करेगा complementary lactis का होगा कि हर एक element of a lactis का complement must be present in the lactis right then given the process lactis is equal to given if I know the bounded lactis distributed lactis complementary lactis then वो भी करा बोलने के लिए process number of element must be in the form of 2 so the number of element present in the form of 2 but 2 n के form में elements रहेंगे मतलब process number of element होंगे 2 4 8 16 32 64 number of elements तो वो हमको चेक करेगा bounded distributed complementary but total number of element ही 2 फॉर्म में नहीं रहेंगे तो obviously आप चेक करो वो lactis बोलने रहेगा ओके फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे राइट यस फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था अब मैं ऐड सेक्शन दूंगा टॉपिक इज फंक्शन ओके अभी का टॉपिक है फंक्शन मुस्तसिर भगत सर एक्सप्लेन द कांसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस एग्जांपल अगेन ओके चलो कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस का एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस इज अ स्पेशल केस ऑफ divisibility condition complementary lattice is a special case of divisibility condition देखो जल्दी 30 the elements present in D30 are 1 2 3 5 6 10 15 30 करेक्ट है so यहां elements present है 1 2 3 1 2 3 5 6 8 10 15 30 अब हमको चेक करना है कि this lattice complementary or not so complementary lattice के लिए हमको क्या करना है तो हर एक element जो lattice में present है उसका complement उसी lattice में होना चाहिए but complement for D30 and complementary lattice का जो basic concept है for divisibility condition only so आपको हर element का complement देना है अगर हर element का complement lattice में present रहेगा तो complement lattice होगा अब जब complement होगा element का तो ध्यान देना 1 का complement रहेगा 1 का complement ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका 1 का LCM 30 आना चाहिए because lattice से divisibility है 2 का complement ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका 2 का LCM 30 आना चाहिए 3 का complement ऐसा नंबर होना चाहिए lattice में से जिसका 3 का LCM 30 आना चाहिए similarly 5 6 10 15 30 तो आप देखोगे तो 1 का complement 30 आएगा by default list element का complement list element 1 and 30 का complement LCM 30 आता है तो 2 का complement आएगा 15 देखो 2 का 15 का 30 आता है 1 का complement 30 का complement 2 का complement 15 का complement 3 का complement 10 का complement 3 का complement 10 का complement 30 आता है 5 का complement 6 का complement 5 का complement 6 का complement 30 आता है अंडरस्टूड सो ये है हमारा complement concept अब इसी को हम आगे लेके D12 के पास तो D12 में हम सबका complement फाइंड करते हैं तो हमको चाहिए complement of 1 so 1 का complement आ गया 12 because 1 12 LCM आता है 12 because condition हो गया उसे D12 then 1 का complement 12 and 12 का complement is also 1 ओके चलो तो वो हो गया अब 2 का complement अब 2 का complement आपको ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका 2 का LCM 12 आना चाहिए तो देखो 2 का LCM 12 6 के साथ नहीं आता because 2 and 6 LCM 6 आता है जो मैंने LCM निकाल दिया यहाँ मैंने LCM निकाल दिया ठीक है LCM आपको सेकंड फाइंड करना है तो 2 का LCM is not 12 2 and 6 LCM is not 12 so 2 का complement does not exist का complement देखो 4 है 4 का LCM 12 है तो 3 का complement 4 का complement अब 6 का complement does not exist because 6 का complement LCM लेंगे तो 12 आएगा तो आपको complement नंबर कैसा लेना है इसका और उस नंबर का LCM तुम्हारी divisibility condition आना चाहिए मुझे समझा यस ओके ओके D12 का मैं समझ गया ओके LCM कंफ्यूज ओके अभी समझ गया ओके चलो अब आएगा आपका फंक्शन ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन अब क्या है चार्ट में सो हम कॉम्प्लीमेंट शुड बी यूनिक अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट 12 आता है 12 का कॉम्प्लीमेंट 1 है इसका मतलब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए 1 एंड 12 इज नॉट अवेलेबल फंक्शंस फंक्शंस नाम करेंगे फर्स्ट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेकंड इज डोमेन कोडोमेन रेंज इमेज प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन देन थर्ड पढ़ेंगे इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव एंड इनवर्स फंक्शन फोर्थ कंसेप्ट पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन एंड फिफ्थ कंसेप्ट पढ़ेंगे पीएचपी दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल एंड ईपीएचपी दैट इज एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल ठीक है फंक्शंस में पढ़ेंगे फर्स्ट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देन डोमेन कोडोमेन रेंज इमेज एंड प्री इमेज ऑफ फंक्शन देन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव एंड इनवर्स फंक्शन कंपोजिट फंक्शन पिजन होल प्रिंसिपल एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल राइट है अगर आप अब तक का हिस्ट्री देखते हो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एग्जाम पैटर्न का तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव इनवर्स फंक्शन इसका एक क्वेश्चन 8 मार्क का श्योर शॉट आता है 100% एक क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का 8 मार्क का श्योर शॉट आता है पिजन होल प्रिंसिपल एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल जनरली हम पढ़ाते हैं फंक्शन टॉपिक में बट अगर एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का सिलेबस देखोगे तो काउंटिंग चैप्टर में ये टॉपिक लिखा हुआ है राइट यहां से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क का श्योर तो 8 8 16 16 और 6 24 mark के 3 questions are expected from this topic functions okay तो first topic है दो तो बेसिक सिंपल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है जैसे हमने रिलेशन पढ़ा what is relation what is domain codomain range image image तो वैसे ही फंक्शन की डेफिनेशन बेसिक कंसेप्ट है वो ऑब्वियसली समझेंगे तो ही इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव आपको समझ आएगा एंड वो समझेगा कंपोजिट फंक्शन समझेगा पिजन होल प्रिंसिपल एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल समझेगा राइट यस चलो अब पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन प्लीज ध्यान देना डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखूंगा उसके बाद 3 4 एग्जांपल दूंगा 4 एग्जांपल के बाद आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन समझ में आएगा ठीक है चलो फंक्शन definition of function देखो definition of relation क्या था relation definition था obviously relation is a subset of addition product relation is a subset of addition product मतलब like let a and b be the any two given set then capital R क्या मतलब let a and b be the any two given set then capital R is said to be a relation from a to b if and only if R is a subset of a cross b so that means if R is a subset of a cross b then only we can say that R is a relation from a to b तो relation के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए अब फंक्शंस में आप देखेंगे तो दो कंडीशन है मैं डेफिनेशन लिखता हूं फंक्शन का डेफिनेशन है let a and b be the any two given set let a and b be the any two given set then subset f of a cross b that means f should be subset of a cross b let a and b be the any two given set then subset f of a cross b is said to be a function said to be a function from a to b if and only if for all x belongs to a there exists a unique y belongs to b right this is the definition of function let a and b be the any two given set then subset f of a cross b
is said to be a function from A to B. If find the for all element x belongs to A, for all element x which is present in A, there exists a unique value y present in B. करेक्ट है? So यहाँ दो कंडीशन है फंक्शन के लिए. पहला f should be subset of A cross B, and second सारे एलिमेंट x जो A में है उनके लिए यूनिक y B में होना चाहिए. Right? So f is a function having order pair x comma y such that for all x belongs to A, comma for all y belongs to B, and for all x belongs to A, there exists a unique y belongs to B. Right? So if f is a function, if f is a function from A to B, then it is denoted as f is a function from A to B. Next is if f is not a function, if f is not a function from A to B, then it is denoted as f is not a function from A to B. Yes. So the definition of function is A and B with any two given set, then subset f of A cross B is said to be a function from A to B. If find the for all x belongs to A, there exists a unique y, there exists a unique y belongs to B. अब इसका मतलब आपको जानना है, इसका मतलब समझिए स्टेटमेंट का, कहानी खत्म, आपको फंक्शन का डेफिनेशन समझा, और इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं चार एग्जांपल देता हूं. ओके, बिकॉज़ पहला कंडीशन सबसेट का है जो सबको मालूम है, राइट? एग्जांपल, set A as 1 2 3, ओके, set B as A B C, या इवन आई कैन ऐड D. हां, क्या है चार्ट में? YC, YC अभी हो रहा है 6:49. 7 बजे तक बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना चाहिए, बराबर? सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल दिमाग मत चलाओ. 7 बजे तक मैं जितना बताऊँ उतना सुनेगा. उसके बाद मैं तुमको पूछूंगा, अभी फंक्शन का डेफिनेशन समझा? 10 मिनट है, 11 मिनट, तुम बोलेंगे हाँ सर अभी समझा. अभी अगर तुम तुम्हारे दिमाग से कुछ भी इंटरप्रेट करोगे, उसको निकालना और मेरा बनना डिफिकल्ट जाएगा, बराबर? 6:49 हुआ है, 7 बजे मैं पूछूंगा, अब समझा फंक्शन का मतलब, अब समझा वो स्टेटमेंट का मतलब, तुम हाँ बोलेगा एंड चुप रहेगा, ठीक है? अब देखो इधर, set A is 1 2 3, set B as A B C D. क्वेश्चन है, जो f अभी पूछूंगा, अपने को चेक करना है कि वो फंक्शन फ्रॉम A to B है कि नहीं. तो पहला क्वेश्चन इज f1 is equal to 1 B 2 C 3 D, right? Question is it f1 is a function from A to B or not? तो चलो, अपने पास A है, अब set A set B. So once we have set A set B, what is A cross B? Each and every element of A is performing conditional product of each and every element of B. मतलब 1A 1B 1C 1D, 2A 2B 2C 2D, 3A 3B 3C 3D. आ गया. अब क्या मैं बोलूं, f1 जो है is it a subset of A cross B? Obviously yes. अब मैं निकालूंगा arrow diagram to represent this function graphically. This is set A, this is set B, और ये आएगा mapping of f1. Element of set A is 1 2 3, element of set B is A B C D. चलो, what is f1? 1 2B 1 B is 1 2B, 2 C is 2 C, 3 C is 3 2D. Understood? अब मुझे बताओ, what is value of f of 1? 1 किसको पॉइंट कर रहा है? B को. What is value of f of 2? किसको पॉइंट कर रहा है? C को. What is value of f of 3? किसको पॉइंट कर रहा है? D को. अब मेरा क्वेश्चन है, क्या सारे एलिमेंट x, क्या सारे एलिमेंट x, क्या all element x, क्या all x belongs to A, there exists a unique y present in B. मतलब क्या सारे एलिमेंट x जो A में है वो यूनिक, मतलब एक only one, यूनिक मतलब only one, क्या सारे एलिमेंट x जो A में है क्या वो एक्जैक्टली एक ही वैल्यू को पॉइंट करते हैं? आंसर इज यस. मैं बोलूंगा f1 is a function from A to B. पहला क्वेश्चन डन. समझा? तो आंसर नहीं समझा कुछ नहीं बोलेगा, 7 बजे तक, 7 बजे के बाद बोलेगा हाँ या ना. Next second question is f2. Then what is f2? Say 1 A, next is 2 B, then 3 C and 3 D. Now question is it f2 is a function from A to B? Just check. Is it f2 is subset of A cross B? Answer is हाँ. Now draw the arrow diagram for f2. Graphical representation. Set A, set B, element of set A is 1 2 3, element of set B is A B C D. Now 1 A is 1 2 A, 2 A, 2 B is 2 B, 3 C is 3 C, 3 D is 3 D. Now what is f of 1? What is f of 2? What is f of 3? What is f of 1? 1 is pointing to A, f of 2 is pointing to B, 3 is pointing to C as well as D. अब मेरा क्वेश्चन, क्या for all element x present in A we have a unique value y present in B? इसी क्वेश्चन को बोलेंगे क्या सारे एलिमेंट x जो A में है क्या वो यूनिक वैल्यू को पॉइंट करते हैं? नहीं सर, यूनिक वैल्यू को पॉइंट नहीं करते, because C is pointing to multiple values. therefore मैं बोलूंगा f2 is not a function from A to B. Okay, अभी तुमको समझा सिर्फ 20%. Third definition, f3 is say 1 C and 2 D. Is it a function from A to B? Just check. Can I say f3 is a subset of A cross B? Answer yes. Now draw the arrow diagram for C. Set A, then set B. Element is 1 2 3, element A B C D. 1 C, 1 is pointing to C, 2 D, 2 is pointing to B. चलो, what is f of 1? 1 is pointing to C. What is f of 2? D, 2 is pointing to D. What is f of 3? Dash, because 3 is pointing to no value. Right? Understood? That means can I say that for all element x belongs to A? Condition is what? For all element x belongs to A, there exists a unique value y present in B. क्या सारे element x जो A में है यूनिक वैल्यू को पॉइंट करते हैं? Is it 1 is pointing to unique value? हाँ. Is it 2 is pointing to unique value? हाँ. Is it 3 is pointing to unique value? ना. So I can say that f3 is not a function from A to B. समझा? नहीं. 40% समझा. Fourth question is f4. What is f4? Say 1 B, 2 C, 3 C. Now इसके बाद तुम्हारा परसेंटेज 75% हो जाएगा. Understood? क्योंकि अब मैं एक कोई चार्ट पूछा मैं खोल ले रहा हूं, मुझे मालूम है उसका क्या उठेगा. चौथे एग्जांपल के बाद तुमको 75% समझ में आएगा. Understood? क्योंकि तुमने जो सेकंड और थर्ड एग्जांपल देखा उसको भी इंटरप्रेट किया, उसका भी इंटरप्रिटेशन फोर्थ में कंप्लीट हो जाएगा. देखो, this is your set A, this is your set B, and obviously f4 is subset of A cross B है, right? Element is 1 2 3, element is A B C D. बोलो, 1 is pointing to B, 2 is pointing to C, 3 is pointing to C. What is f of 1? Is B. What is f of 2? C. What is f of 3? C. अब मेरा क्वेश्चन, क्या से एलिमेंट x जो A में है वो यूनिक वैल्यू को पॉइंट करते हैं? Is it 1 is pointing to unique value? हाँ. Is it 2 is pointing to unique value? हाँ. Is it 3 is pointing to unique value? हाँ. तो मैं बोलूंगा f4 is a function from A to B. 75% समझा. उसके बाद next fifth question f5 is 1 A, 2 A, 3 A. Is it a function? Check करो. This is set A, this is set B. Element is 1 2 3, element is A B C D. 1 pointing to A, 2 pointing to A, 3 pointing to A. What is f of 1? What is f of 2? What is f of 3? A. अब मेरा क्वेश्चन, क्या सारे एलिमेंट x जो A में है is it pointing to unique value? 1 is pointing to unique value, 2 is pointing to unique value, 3 is pointing to unique value.
है वो एक्जैक्टली एक वैल्यू को पॉइंट करनी चाहिए। और जो वाई सी इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि 1 to 1, तो देखो मैंने बोला तुमको तुम इंटरप्रेट कुछ नहीं करने का, मतलब f4 and f5 इज ऑब्वियसली अ फंक्शन, वो 1 to 1 नहीं रहेगा, जो कंसेप्ट आगे आने वाला है। अब अपना चल रहा है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देन 6 f6 इज नल सेट, इज इट f6 इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, चेक करो, कैन आई से f6 इज सबसेट ऑफ a cross b, आंसर इज यस, बिकॉज़ नल सेट इज सबसेट ऑफ every set, then we have set a, set b, element is 1 to 3, element is a b c d। अब सेट नल है तो एसोसिएशन आएगा f of 1, f of 2, f of 3 डैश डैश डैश, बिकॉज़ कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, सेट नल है, तो ऑब्वियसली क्या सारे एलिमेंट x यूनिक वैल्यू को पॉइंट करते हैं? नहीं, ये कहीं भी किसी को पॉइंट नहीं करता। सो f6 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a to b। एंड लास्ट क्वेश्चन, जहां तुम्हारा डाउट 100% क्लियर, कहानी खत्म, f7 इज a cross b, कैन आई से दैट f7 is subset of a cross b? Yes, because a cross b is subset of a cross b। Okay, so this is a, this is b। Okay, element is 1 2 3, element is a b c d। a cross b मतलब क्या? 1 a 1 b 1 c 1 d 2 a 2 b 2 c 2 d 3a 3b 3c 3d। So what is f of 1 a b c d? What is f of 2 a b c d? What is f of 3 a b c d? क्या सारे एलिमेंट x यूनिक वैल्यू को पॉइंट करते हैं? a ही नहीं, 1 ही नहीं करता, आगे की जरूरत नहीं है। f7 is not a function from a to b। मेरे चाहिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्लियर। 7:01 आएगा, देखोगे। अब मुझे बताओ फंक्शन समझा क्या? अब मुझे बताओ फंक्शन समझा क्या? और वो जो मीनिंग है, वो जो मीनिंग है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y। सारे एलिमेंट x जो a में है उसके लिए यूनिक वैल्यू y b में होना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट x जो a में है वो एक्जैक्टली a की वैल्यू को पॉइंट करनी चाहिए। भले वो सामने का वैल्यू रिपीट हो, अपने उससे मतलब नहीं है। x is pointing to exactly one value। देखो क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5 is also a function because what we are checking for all x which is present in a should have unique y present in b। अगर फोर्थ क्वेश्चन को कंसीडर करते हो तो एलिमेंट 1 present in a is having unique pointer b, एलिमेंट 2 present in a is pointing to unique value c, एलिमेंट 3 present in a pointing to unique value c। अंडरस्टूड? अब क्या डिफिकल्टी है फंक्शन डेफिनेशन? बोलो। मुस्तसिल वापस मैंने बोला तुम्हारा दिमाग नहीं लगाने का, डेफिनेशन क्या बोलता है वो सुनने का। तुमने तुम्हारा दिमाग लगाने का, तू बोल रहा है सर तो बेसिकली अगर आरएचएस एमटी रहेगा तो एक से ज्यादा वैल्यू है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, ना किसी ने डेफिनेशन में बोला, ये तुमने अपने मन से इंटरप्रेट कर लिया। क्योंकि मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूं, अपना दिमाग मत चलाओ, जो डेफिनेशन बोलता है उसके हिसाब से जाओ। क्योंकि अपना दिमाग चलाएंगे 7 बजे नहीं, पौने 8 बनाएंगे, जब मैं बोलूंगा 1 to 1 फंक्शन दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन दैट इज सब्जेक्टिव फंक्शन, if function is injective subjective both it is bijective, and if function is bijective then only f is possible। तो उधर गड़बड़ हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं रहेगा। फंक्शन क्या बोलता है, मैं राइट साइड को देखूं भाई, डेफिनेशन में सीधा लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट a में प्रेजेंट है ना उसके लिए यूनिक वैल्यू होना चाहिए। राइट साइड को देखो, राइट साइड को होगा कि नहीं? अब अगर एग्जांपल चेंज होगा, या 1 2 3 abc लिखा है, अगर मैं यहाँ 1 2 3 लिखूं और सामने से abc लिखूं तो तेरा दिमाग झुलाया हुआ है, उधर हो जाएगा। तो राइट साइड देखो क्यों, मुझे इतना देखना है। हां, मैं लेफ्ट साइड भी देखूंगा, मैं राइट साइड भी देखूंगा आगे जब 1 to 1 फंक्शन बनूंगा। ओके ओके। अभी किसी फंक्शन को बताओ डेफिनेशन में, मतलब x के सिर्फ y को पॉइंट करना चाहिए, y को फिर कोई x पॉइंट ना करे या सभी पॉइंट करे। हां, y सी को उल्टा क्यों देखते हो, यदि से उल्टा क्यों देखते हो, जबकि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। रिवर्स देखो तो तुम y को फिर x क्यों देखते हो? बराबर ना, मैंने तो सीधा बोला है सारे एलिमेंट x जो a में उसके लिए यूनिक वैल्यू होना चाहिए, तुम रिवर्स करते हो। रिवर्स आएंगे ना, फॉर्मूला देना 1 to 1 फंक्शन का देंगे ना। 1 to 1 फंक्शन मतलब क्या? एक लड़का एक लड़की को घूमेगा, रिवर्स भी वही होएगा, एक लड़के से एक लड़के के साथ वही हस्बैंड वाइफ, एक हस्बैंड एक वाइफ, एक भी हस्बैंड के साथ। सो इट इज 1 to 1 रिलेशनशिप, सो उसको बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। समझा? अभी मैं क्या कर रहा हूं फंक्शन डेफिनेशन में, सपोज यानी सपोज फंक्शन डेफिनेशन से ए में बॉयज, से ए में गर्ल्स, अब कितने बॉयज हैं मैं कितने गर्ल्स हैं मैं से ए में बॉयज है, हर बॉयज को एक लड़की कंपेयर करना है। अंडरस्टूड? सारे एलिमेंट जो ए में है उसके लिए यूनिक वैल्यू होना चाहिए बी में, करेक्ट है? अंडरस्टूड? जब 1 to 1 बोलेंगे तो रिवर्स, तो ए टू बी में भी यूनिक होना चाहिए, बी टू ए में भी यूनिक होना चाहिए। हां, समझा गया, ओके। अब मैंने रिवर्स देने को बोला नहीं, अब क्या करते हैं रिवर्स देते, फिर आगे जाके मेरे को डाउट सर फिर अगर फंक्शन इंजेक्टिव है तो वो सब्जेक्टिव रहेगा, तो फंक्शन इंजेक्टिव है तो सब्जेक्टिव है नहीं, ऐसा क्या 100 क्वेश्चन आएंगे। इससे अच्छा इतना समझो, व्हाट इज द फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट x प्रेजेंट इन a वी शुड हैव अ यूनिक y प्रेजेंट इन b। ऐसा सादा स्टेटमेंट है, ओके। चलो अब नेक्स्ट आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट फर्स्ट को क्या लिखना डेफिनेशन, देख लिया, ओके। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। यज्ञेश और मुस्तसिर, ये जो टॉपिक है ना दोनों, यज्ञेश और मुस्तसिर, फर्स्ट ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं ना वो थोड़ा ढंग से शांत दिमाग से देखो, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में जो भी हाथ रहेंगे वो अब क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि डेफिनेशन ऑफ कोडोमेन एंड रेंज तो हो सकता है तुम्हारे 70% डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज एंड प्री इमेज ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज ऑफ फंक्शन। देखो लेट f be the function from a to b, that is f is a function from a to b। okay, let f be the function from a to b, मतलब f क्या है, f ये फंक्शन है, राइट, f ये फंक्शन है। so let f be the function from a to b, number 1। then a is called as domain of a function, a is called as domain of a function। second, set b is called as codomain of a function, a is called as domain of a function, b is called as codomain of a function। third, range, range of a function is always subset of codomain of a function। okay, so range of f, range of a function is always codomain of a function। so range होता है वो हमेशा subset of codomain होता है। that means consider only those y belongs to b, consider only those y belongs to b which has pre-image, which has pre-image x exists in a, right? so in a range consider only those y from b which has a pre-image x exists in a। टेंशन मत लो, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। then image is nothing but f image। now what is f image, what is the definition of f image? say f image of x is equal to y। ठीक है, that is function of image। fifth is pre-image। what is pre-image, तो आप इनवर्स इमेज भी बोल सकते हो। so inverse image or pre-image of y is x, और आप बोल सकते हो inverse image of y is x। okay, ये हो गया हमारा conditions for domain, codomain, range, image, pre-image and domain, codomain, range, image and pre-image of function। okay, अब ये जो पांचों डेफिनेशन है इसको समझने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेगा। कितना? सिर्फ 5 मिनट। set a as 1 2 3 4, set b as a b c d e, and f is a function from a to b as 1 b 2 c 3 d 4 d। okay, 1 b 2 c 3 d 4 d। so obviously अब मुझे चेक करने की जरूरत है फंक्शन है कि फंक्शन है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है।
अब मुझे फाइंड करना है डोमेन कोडोमेन सब कुछ सब कुछ। तो अब मैं यहाँ बोलूंगा सॉल्यूशन, बोलेंगे हियर योर एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके, सो दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी, सेट ए, दिस इज सेट बी, और ये आएगा आपका एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। So element of set A is 1, 2, 3, 4. Element of set B is A, B, C, D, E. So 1, B is 1 to B, 2, C is 2 to C, 3, D is 3 to D, 4, D is 4 to D. Okay. So अब मैं बोलूंगा यहाँ F is a function from A to B. Okay. सारे A के लिए यूनिक वैल्यू प्रेजेंट है। अगर F फंक्शन है तो बताओ पहला डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ F? अगर F is a function from A to B, so domain is your set A. Set A is domain and what is set A? तो देखो 1, 2, 3, 4. Okay. Then next is what is codomain of a function. So codomain of a function is your set B. And what is set B? देखो पूरा set B, A, B, C, D and E. Okay. Then अब चाहिए range, उसके लिए मैं क्या देखूंगा? मैं फाइंड करूंगा इमेज, क्या फाइंड करूंगा? F image. अपने इससे पहले ऑलरेडी F image फाइंड किया है। What is F of 1? F image f of 1, f of 1 क्या आएगा? 1 is pointing to which value? So that is your image of f. ये बराबर है image of 1. चलो देखते हैं क्या है, what is image of 1? What is f of 1? F of 1 is b. Then what is f of 2? Is c. What is f of 3? Is d. What is f of 4? Is d. तो जब आप a to b पढ़ोगे मतलब x to y पढ़ोगे, that is called as image. Understood? Next आएगा आपका pre image. Okay. What is pre image inverse पढ़ने का? What is f inverse of a या pre image of a? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मैं लिखूंगा what is pre image of a, then what is pre image of b, then what is pre image of c, then what is pre image of d, then what is pre image of e. What is pre image of a? ए का इमेज कौन है? ए का इमेज कौन है? अब देखो इधर देखो, जब मैं बोलता हूँ इमेज ऑफ 1 इज बी तो प्री इमेज ऑफ बी इज 1। जब मैं इसको पढ़ता हूँ ऐसे तब होता है इमेज ऑफ फंक्शन, जब पढ़ता हूँ ऐसे तब होता है प्री इमेज। मतलब जब व्हेन आई से 1 इज पॉइंटिंग टू बी तो इमेज ऑफ 1 इज बी एंड प्री इमेज ऑफ बी इज 1। सिमिलरली व्हाट इज प्री इमेज ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट डैश, व्हाट इज प्री इमेज ऑफ बी इज 1, व्हाट इज प्री इमेज ऑफ सी इज 2, व्हाट इज प्री इमेज ऑफ बी 3 एंड 4, व्हाट इज प्री इमेज ऑफ ई डैश। डोमेन समझा? हां। कोडोमेन समझा? हां। इमेज समझा? हां। अब प्री इमेज समझा? आंसर हां। अब लास्ट कंसेप्ट बचा है व्हिच इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन। मैंने बताया रेंज ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। मतलब आपके रेंज ऑफ अ फंक्शन में क्या लिखा है? ऊपर डेफिनेशन में लिखा है रेंज ऑफ अ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। मतलब दैट इज ऐसा लिखा है, दैट इज कंसीडर ओनली दोस वाई, consider only those मतलब consider only those element from codomain which has pre-image exist in A। क्या मेरे को बताओ, A का pre-image exist है? नहीं। क्या B का pre-image exist है? हाँ, तो B is a part of range। C का pre-image exist है? हाँ। D का pre-image exist है? हाँ। So range आएगा B, C, D। Understood? So range of a function is always subset of codomain and while calculating range consider only those element Y from set B which has pre-image exist in A। मतलब B में से आपको उन्हीं element को consider करना है जो reachable है। देखो set B में पहला element है A जो set A के किसी भी element से reachable नहीं, मतलब range नहीं है। set B में लास्ट element है E जो set A के किसी भी element से reachable नहीं, मतलब range नहीं है। Understood? अब मुझे बताओ तुमको codomain, range, image, pre-image समझा क्या? हाँ, क्या क्या है? अंडरस्टूड रोहन हर्ष। रेंज में इमेज के टर्म्स आते हैं विदाउट रिपीटिंग, राइट? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तुमने सोचा ऐसा, यदि समझा, जिनित समझा, तनय समझा, अमन समझा, ओके। हर्ष मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, जो भी चैट में लिखा है आपने रिपीट किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि रेंज में आपको डोमेन में से उन्हीं एलिमेंट को लेना है जिनका इमेज एग्जिस्ट है। यहाँ देखो ये एलिमेंट इसका इमेज एग्जिस्ट है, इसका भी एग्जिस्ट है, इसका भी एग्जिस्ट है, तो उन्हीं को उठा के मैंने रेंज में लिया, खत्म। बाकी मैंने नहीं बोला। चलो डोमेन कोडोमेन रेंज इमेज डन, करेक्ट। अब नेक्स्ट इज इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। देखो डोमेन कोडोमेन रेंज सिंपल है, बेसिक डेफिनेशन। अब इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव एंड इनवर्स फंक्शन, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स ये दोनों हैं, ओके। इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, बिकॉज़ बाइजेक्टिव ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन बाइजेक्टिव का आता है कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली कंसेप्ट है, आपको चेक करना होगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। मुझसे क्या है? हाँ, हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया है कि चेक वेदर द फंक्शन बाइजेक्टिव और नॉट, ऐसे क्वेश्चन आता है, बट सिंपल कांसेप्ट है, फंक्शन को बाइजेक्टिव कभी बोलेंगे जब वो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। सो व्हेन फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ दे ओनली बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव चेक करना मतलब इंजेक्टिव चेक करना, एंड फंक्शन इज बाइजेक्टिव दे ओनली इनवर्स एग्जिस्ट, राइट? सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ओके। चलो ठीक है, कांसेप्ट इज इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव एंड इनवर्स फंक्शन, ओके। इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव एंड इनवर्स फंक्शन। चलो फर्स्ट इज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को बोलते हैं वन टू वन फंक्शन, इंजेक्टिव और वन टू वन फंक्शन, ठीक है। चलो क्या डेफिनेशन है इंजेक्टिव फंक्शन का? पहले मैं कैसे दूंगा डेफिनेशन लिखाऊंगा और उसके दो टाइप के एग्जांपल्स है। पहला तो यूजिंग एरो डायग्राम, नंबर्स नंबर्स नंबर्स, वो एग्जांपल दूंगा। एंड सेकंड वाला जो एग्जांपल है एग्जाम में आता है दैट इज पॉलिनोमियल, बिकॉज़ सी बेसिकली हमने तो स्टार्ट किया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया फंक्शन। बट आपको पता क्या फंक्शन की जो कंसेप्ट है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो फंक्शन हम जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जब मैं बोलता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, बाबा इसी को ही तो हम बोलते हैं y इज f of x, करेक्ट है। सो व्हाट इज y इक्वल टू f of x? हमने पढ़ा z इक्वल टू f of x, y, हमने पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स में u इज f of x, y, z। ये है क्या? जब मैं बोलता हूं y इक्वल टू f of x, z इक्वल टू f of x, y, u इक्वल टू f स्टैंड्स फॉर व्हाट फंक्शन। अगर मुझे बोलना है y इक्वल टू f of x, हम उसको डिफाइन करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, राइट? वेयर वी हैव टू वेरिएबल x एंड y, आउट ऑफ व्हिच कंप्यूटर इंजीनियरिंग के टर्म में बोलेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। भाई ये हम जनरल मैथमेटिक्स स्कूल लेवल में y इक्वल टू f of x पढ़े। जब इंजीनियरिंग मैथ्स में आया तब हम बोलने लगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, तब बोलने लगे y इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। भाई बेसिक फंडा तो सेम है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इंजीनियरिंग में आए तो हम बोलने लगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट? जनरल मैथमेटिक्स। जब हम इसी को आगे लेके जाएंगे और अपने कंप्यूटर ब्रांच में, कंप्यूटर आईटी ब्रांच में, जब हम एआई पढ़ेंगे, जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, जब हम डेटा साइंस पढ़ेंगे, जब हम कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ेंगे, राइट? समझ में आ रहा है? तब हम यहाँ पे बोलेंगे y इज अ पॉलिनोमियल, इज अ y इज अ फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x वेयर वी हैव टू
variable x and y, where x is called as independent variable and y is called as dependent variable. Right? Correlation relation बोलेंगे z equal to f of x y. So z is a polynomial function which is expressed in terms of more than one variable. That is x and y, where x and y both are independent variable and z is dependent variable. जब हम डेटा सेट पे एक्सेस करेंगे, जब हम डेटा सेट की बात करेंगे, डील करेंगे, तब हम बोलेंगे रूल, इन्फरेंस रूल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के टर्म्स में बोलेंगे तो इन्फरेंस रूल ऑफ z इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ डेटा सेट ऑफ x and y. होता क्या है? होता वही है जो हम बेसिक पढ़े हुए हैं, फंक्शन. अंडरस्टूड? समझा? तो यहाँ एग्जाम में एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं या पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन आते हैं. ज्यादातर पॉलिनोमियल वाले आते हैं. मैं इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन लिखूंगा. न्यूमेरिकल में 1 to 1 क्या होता है? जैसे हम डेटाबेस में पढ़ते हैं, वन मैपिंग, राइट? 1 to 1 रिलेशनशिप मैंने तुमको बताया. प्रिंसिपल इन कॉलेज, इट इज 1 to 1 मैपिंग. व्हाई? कॉलेज हैज ओनली वन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल बिलोंग्स टू ओनली वन कॉलेज. डिपार्टमेंट एंड एचओडी, डिपार्टमेंट हैज ओनली वन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू एक्जेक्टली वन डिपार्टमेंट. जैसे कंट्री एंड कैपिटल, एक कंट्री को एक कैपिटल होता है, वन कैपिटल बिलोंग्स टू वन कंट्री. वन कंट्री एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कंट्री, कंट्री को एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू ओनली वन कंट्री. अंडरस्टूड? सो ये दोनों रिलेशन दोनों साइड से पढ़ेंगे तो 1 to 1 है. यदि थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा, आप यही सोच कांग्रेस साथ बजे जो मेरे को नहीं चाहिए, इधर चाहिए. समझा? परफेक्ट. तो मैं पहले डेफिनेशन लूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड, उसके बाद पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन लूंगा. ठीक है? तो सारे इंजेक्टिव के कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. डेफिनेशन क्या है इंजेक्टिव का? लेट f from let f from a to b be a function from a to b, then f is said to be injective or one to one function. F is said to be injective or one to one function if and only if f is said to be injective or one to one function, right? If and only if you take f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, or if you take f of x1 not equal to f of x2 implies x1 is not equal to x2. So if you take f of x1 is equal to f of x2, then x1 is equal to x2, right? Or if f of x1 is not equal to f of x2, then x1 is not equal to x2. Okay, so this is your definition of injective function. Okay, so let f from a to b be a function, right? Be a function. Let f from a to b be a function. Then f is called as injective function or one to one function. If and only if अगर आपने f of x1 equal to f of x2 लिया, implies x1 is equal to x2, and or में तो if you take f of x1 is not equal to f of x2 implies x1 is not equal to x2. Okay, चलो अब इसके एग्जांपल, ये तो डेफिनेशन था. अब वन टू वन फंक्शन इसको बोलते हैं. चलो एग्जांपल, सेट a as प्लीज देना 1 2 3, सेट b as a b c. ठीक है? सो f is 1 c, 2 b, 3 a. Is it a function? Obviously check करो. And is it a one to one function? Check करो. I can say that f, here I can say that f is subset of a cross b. Perfect. This is set a and this is set b. Most of the yes, ध्यान से देखो समझ में आएगा. 1 2 3 a b c and ये आ गया f. चलो 1 is pointing to c, 2 is pointing to b, 3 is pointing to a. Okay, तो यहाँ what is f of 1? F of 1 is c. What is f of 2 is b. What is f of 3 is a. Similarly, what is f of a is 3, f inverse of a. What is f inverse of b is 2. What is f inverse of c is 1. So इसका मतलब we have unique image and unique pre-image. Unique image and unique pre-image exist. Therefore, f is injective or one to one function. f is injective or one to one function. अब समझे इंजेक्टिव क्यों है? यूनिक इमेज तो है, यूनिक प्री इमेज भी है, इसीलिए ये वन टू वन. मतलब यहाँ 1 is pointing to unique, 2 is pointing to unique, 3 is pointing to unique. Similarly, pre image of a is also unique, pre image of b is also unique, pre image of c is also unique. मुझे पता है तुम्हारे माइंड में 20% का ट्विस्ट है. कितने परसेंट का? 20% का ट्विस्ट है. अब 7:36 हुआ है. 7:45 बाद वो ट्विस्ट भी चला जाएगा. लेकिन तुम अपने दिमाग से कुछ सोचने का नहीं. 7:45 का टाइम दो. 7:45 को दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इंजेक्टिव का तुम सॉल्व कर सकते हो. नहीं तो जो चाहिए वो आता. ठीक है? एग्जांपल में पहला क्वेश्चन समझा, यूनिक इमेज, यूनिक प्री इमेज. अब ये फंक्शन भी है बराबर, ये इंजेक्टिव भी है. सेकंड क्वेश्चन दे दो. a आएगा 1 2 3, b आएगा a b c d, राइट है? और मेरा फंक्शन f आएगा 1 a 2 b 3 d. ओके, चलो तो अब मुझे पता है कि सबसे कुछ कंडीशन को मैं लिखा भी नहीं और गिनता भी. अभी कितने बन गए? सेट a सेट b एंड ये आ गया तुम्हारा f 1 2 3 a b c d. 1 is pointing to a, 2 is pointing to b, 3 is pointing to d. चलो मुझे बताओ, is it f of 1 is a, what is f of 2 b, what is f of 3 is d. क्या सारे एलिमेंट x जो a में है यूनिक वैल्यू को पॉइंट करते हैं? हां, तो यहां मैं बोलूंगा f is a function from a to b. मैं यहां बोलूंगा f is a function from a to b. फंक्शन है, बट क्या ये इंजेक्टिव है? तो मैं बोलूंगा प्री इमेज ऑफ a, प्री इमेज ऑफ b, then pre-image of C, then pre-image of D. Pre-image of A is 1, pre-image of B is 2, pre-image of C dash, and D का 3. So therefore F is not a injective function. वो function है पर इंजेक्टिव नहीं है. तो जो मैंने तुमको बताया ना, तुम्हारे मन में 20% का क्वेश्चन रहेगा, 20% का डाउट रहेगा कि सर यूनिक इमेज वन क्या होता है. तो मैंने पहला ऐसा क्वेश्चन बताया जो फंक्शन भी है, जो इंजेक्टिव भी है. दूसरा ऐसा क्वेश्चन बताया जो 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 फंक्शन है पर इंजेक्टिव नहीं है. और एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर तुम्हारा डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं उसके बारे में. 1 2 या ऐसा भी देख सकते हो आप. 1 is mapping to a, 2 is mapping to b, 3 is mapping to d. तो यहाँ से 1 है, समझा? अगर आप a to b देखते हो तो इसका फंक्शनलिटी 1 है, बट b to a भी तो होना चाहिए. तो इट शुड बी 1 to 1. अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. सेट a as 1 2 3 एंड सेट b as a b c, राइट? एंड मेरा f रहेगा 1 b 2 b 3 c. ओके, क्या ये फंक्शन है? चेक करते हैं. दिस इज सेट a. एक सेकंड, हैंग हो रहा है, टेंपरेरी फाइल क्लियर होगा. एक सेकंड दोस्तों. तो क्या है? क्या करें? फंक्शन है इंजेक्टिव नहीं है, बराबर है, बट मेरे को क्वेश्चन क्लियर करना चाहिए. कितना बराबर दिया मुझे समझा है, बट मुझे चाहिए कि सब कुछ समझे और इन डिटेल क्लियर समझे. देखो 1 2 3 a b c, 1 is pointing to b, 2 is pointing to b, 3 is pointing to c. बोलो f of 1 is b, f of 2 is b and f of 3 is c. बराबर. देखो सारे x यूनिक को पॉइंट करते हैं, तो मैं बोलूंगा भाई f is a function from a to b. बट जब मैं प्री इमेज निकालूंगा, प्री इमेज ऑफ a, प्री इमेज ऑफ b एंड प्री इमेज ऑफ यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. प्री इमेज ऑफ a डैश b का आएगा 1 and 2 एंड c का आएगा 3. सो इट इज नॉट 1 to 1, मतलब इट इज नॉट इंजेक्टिव. ओके, समझा? तो इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट भी यूनिक, राइट टू लेफ्ट भी यूनिक. अंडरस्टूड? यस, लेफ्ट टू राइट भी यूनिक, राइट टू लेफ्ट भी यूनिक. ये हो गया. चलो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस. ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे कि सेट देंगे, सेट देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई करो ये इंजेक्टिव है कि नहीं. ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगे. तो एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जांपल. से f of x is equal to 3x minus 2 upon 4x plus 5. Is this injective? Is this injective function? Is this injective function? चलो अब देखो 7:42 हो रहा है. देखो 7:50 तक का टाइमिंग चाहिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इंजेक्टिव फंक्शन में. अब जब नोट लिख देंगे अपन सारे कंसेप्ट क्लियर. अगर मैं लूंगा f of x1 equal to f of x2, राइट? तब अपना आंसर क्या आना चाहिए? f of x1 equal to f of x2 या तो आंसर आना चाहिए x1 equal to x2. ओके, पहले ऐसा आता है तो फंक्शन इंजेक्टिव है. चलो f of x is 3x minus 2 4x upon 4x plus 5. तो f of x1 क्या आएगा? 3x1 minus 2 upon 4x1 plus 5. f of x2 क्या आएगा? f of x2 आएगा
मिलेगा, इट इज 3x2 -3x2 अपॉन 4x2 + 5. ओके, यस. चलो अब इसको क्या करना है, अब मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जनरल नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व करना है. तो बोलो नॉर्मल मैथमेटिक्स क्या है, राइट. चलो बोलो. एक बार वेरीफाई किया तो हैंग होने का चांसेस कम रहता है. ठीक है, चलो 4x2 + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 4 3 12x1x2 + 15x1 -8x2 12x1x2 + 15 -8x2 -10 इक्वल टू पर राइट साइड 12x1x2 राइट माइनस 4 2 8x1 + 15x2 -10. ये गया ये गया ये गया ये गया, सारे x1 जाएंगे. 15x1 ये उधर चला जाएगा + 8x1 ये आएगा 15x2 ये उधर चला जाएगा + 8x2. आंसर इज 23x1 = 23x2 23 कैंसिल x1 = x आपने लिया था f of x1 = f of x2. आपका आंसर आया x1 = x2. फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन. ओके, इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और उसके बाद मैं नोट लिखूंगा और कंसेप्ट क्लियर. ठीक है, चलो एक एग्जांपल और. पेज बंद करना पड़ेगा. चलो बस कंटेंट हेवी हो पेज. पेज बेटा है मेरे ऐड पेज. ओके, पेज ऐड व्यू रूल कलर ड्रॉ. ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन. f of x is equal to x square. Is it injective function? Is it injective function? चलो चेक करते हैं. If you take f of x1 is equal to f of x2, what is x1? Is x1 square. What is x2? Is x2 square. ध्यान दो प्लीज ध्यान दो. जब आपको आता है y square equal to 9, जब आपको आंसर आता है y square equal to 9, आप इस आंसर के लिए आंसर ऑफ y is plus minus 3. सेम कंसेप्ट. x1 square equal to x2 square. What is x1? It is plus minus x2. इसका मतलब x1 is equal to x2 और x1 is equal to minus x2. Right? So it has multiple value. Correct है. x1 equal to x2 चलेगा, but ये नहीं चलेगा. समझा? मतलब it is pointing multiple value. x1 is pointing two values plus x2 also minus x2 also. This is not an injective function. समझा? इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है. एग्जांपल नेक्स्ट से y is equal to f of x is equal to x square plus 3x plus 2. Is this function is injective 1 to 1? चेक करते हैं. दिस इज पॉलिनोमियल. सॉल्व करेंगे. x square plus 3x plus 2 equal to 0. अगर पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं तो एक ब्रैकेट में आएगा x plus 1, एक ब्रैकेट में आएगा x plus 2. तो x का दो वैल्यू आएगा -1 -2. सो दिस इज नॉट इंजेक्टिव. ओके, अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ. वो नोट आंख बंद करके कहीं पे भी दुनिया में अप्लाई करो, तुमको सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, नोट नोट. अब इंजेक्टिव को अगर आपको चेक करना है फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं ऐसा चेक करना है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं. यस, क्या है चेक में. सर ये पॉलिनोमियल में x1 x2 क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया? कौन से पॉलिनोमियल में? अरे दादा, अब क्या सारी मैं बता देता हूँ. मुझे ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीपल वैल्यूज आते हैं. ठीक है, बस सब्स्टिट्यूट कोई बात नहीं पड़ता. ठीक है, अब ये देख एनी पॉलिनोमियल क्या लिखा था भूल गया. रुको एक मिनट. मुझसे ये यहाँ पे x1 x2 पुट कर जो करना कर पूछ नहीं पड़ता. मुझे सिर्फ इतना बताना है कि दिस इज पॉइंटिंग टू मल्टीपल वैल्यूज. अब मैं पांच एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, पांचों में पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा. मतलब ठीक है, एनी पॉलिनोमियल with degree equal to 1 is always an injective function. Any polynomial of degree 1, दुनिया का कोई भी polynomial उठाओ जिसका डिग्री 1 होगा वो हमेशा इंजेक्टिव होगा. And any polynomial with degree greater than 1 is never an injective function. समझा? अब ऊपर का जो polynomial है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, लिखता हूं चाहिए तो इधर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल का x का हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं. बराबर है. तो यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर है तो मैं लिखता हूँ इसका डिग्री 2 है. ठीक है, ऊपर पॉलिनोमियल लिखा हूँ x स्क्वायर हाईएस्ट पावर तो बोलते हैं इसका डिग्री 2 है. प्रीवियस क्वेश्चन में जाऊंगा तो देखेंगे ये पॉलिनोमियल ये x है मतलब x 1 रहेगा तो यहाँ लिखूंगा डिग्री 1 है. तो x का हाईएस्ट पावर होता है फंक्शन का डिग्री. अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा वो हमेशा, अगर एग्जांपल मैंने लिखा x3 + 2x² - 3x + 1 और तुमको क्वेश्चन पूछा अरे बेटा चेक करके बताओ फंक्शन इंजेक्टिव है क्या, तुम डायरेक्ट बोलेगा सर दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 मतलब इट इज नेवर इंजेक्टिव. मुस्तासिर x1 x2 पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बोलने का सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर डिग्री 3 है मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइदर मैनुअली या कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो सर x के 3 रूट मिलेंगे तो एक x वैल्यू 3 रूट को 3 वैल्यूज को पॉइंट करता है मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है. समझा? मुस्तासिर आइदर लय बोलना तू एग्जाम में चलेगा ऐसा क्वेश्चन पूछता, एग्जाम में नहीं चलेगा तो मैं क्यों बताएगा. वाईसी यदनेश अगर दो इमेजिनरी आए या दो रियल आए या कोई भी आए, यदनेश के क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला. रुको, यदनेश तू ये बोलना चाहता है एग्जांपल से x² इज इक्वल टू -9 तो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -9 तो इट इज प्लस -3 आई. अपने को वो इमेजिनरी की रियल है तो वो देखने की जरूरत ही नहीं ना. एक वैल्यू एक से ज्यादा दादा हम एक से ज्यादा एग्जैक्टली ये देखते हैं. बराबर. हर्ष सर x³ इज इक्वल टू 8 आया तो इट हैज ओनली वन वैल्यू ना. अरे हर्ष मैं ना अभी तुम्हारा कंप्लेंट करूंगा रवि मिश्रा के पास. बराबर है. आर आंसर तुमको मैथमेटिक्स मैं उनको बताऊंगा. क्या बताऊंगा? जब x³ इक्वल टू 8 आता ना तब मेरे को हर्ष बोलता x का वैल्यू 2 है. हर्ष x का वैल्यू 2 है बराबर है बट ये क्यूब है मतलब मालूम है तुमको x के तीन वैल्यूज है 2 2 2. ओके, x³ को कैसे लिखते हैं मालूम है? x³ + 0x² + 0x + 0 इक्वल टू 8. ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 है जिसका आंसर 2 है मतलब 3 रूट रहेंगे. समझे? आइला तुम्हारे इतने वाले बाप रे बाप रवि मिश्रा को बोलना पड़ेगा x² - 4 इक्वल टू 0. अब यही फंडा इधर लगा रही है x² इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. बराबर. या चलो x² + 2x + 1 इक्वल टू 0. हर्ष जनरल मैथमेटिक्स से अपन इंजीनियरिंग करेगा था. इधर देख इसको कैसे 1 का स्प्लिटिंग करेगा, मल्टीप्लिकेशन बनाना चाहिए एडिशन 2 ना तो एक ब्रैकेट में x + 1 दूसरे ब्रैकेट में x + 1 यहां भी x का वैल्यू आएगा -1 यहां भी x का वैल्यू -1. इसका मतलब सब दोनों x को -1 है तो कितना आंसर होता क्या? नहीं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x का पावर 2 है ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 उठाएंगे ना. हां हर्ष रुक, रवि मिश्रा से बताता हूं मैं तुम्हारा एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है ये और इंजीनियरिंग का भी नहीं. ये 9 10 का है. एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n मस्ट हैव n रूट दैट n रूट कैन बी डिस्टिंक्ट कैन बी सेम कैन बी एनीथिंग. ओके, अब मुझे बताओ इंजेक्टिव में समझा क्या?
यस इंजेक्टिव समझा, इंजेक्टिव समझा। दो बच्चों का क्या था, चाय था, हर्ष क्या हुआ, हाँ, हमको क्वेश्चन क्वेश्चन बताऊंगा मैं, मिलते हैं फ्राइडे को, बताऊंगा आपको। और ये क्या है, वाईसी प्योर पॉलिनोमियल फंक्शन, नेगेटिव नॉट नहीं आएगा, लॉग ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। इंजेक्टिव समझा आपको, पक्का? यस। हेलो, हाँ क्या करना है, ओके। पार्टिसिपेंट बाकी, जिन्हें समझा संजना, सिद्धि, सोहम, वैदेही, हाँ हैंड वैदेही बोलो, अच्छा समझा, ओके ओके, ठीक है। तो समझा है तो यहाँ पे हम करने करने क्या चलेगा, थोड़ा पर्सनल की वजह से अब जल्दी कर लेंगे, ठीक है। सुबह जी, वो जी, हेलो हर्ष, मैं भूल गई, डॉक्यूमेंट सेंड करा था आपको। हेलो, यस चलो। हेलो, नॉर्मल, ओके। अमन, यस ओके, ऑल तो ठीक है। तो इसे 6:31 गुड इवनिंग सबको, इवनिंग राइट, तो स्टार्ट करिए। इज इट माय स्क्रीन विजिबल? Yes, it is visible. Okay. So in the last lecture we have started with the chapter function. Okay. हमने last lecture में function chapter को start किया, right है? चलो फिर start करेंगे and आगे chapter अपना complete हो जाएगा function. Function क्या करना है? Basic definition of function, then domain, co-domain, range, image, pre-image of a function, then injective, surjective, bijective, inverse function, and composite function and reasonable principle and extended reasonable principle. Right? Out of which हमने first topic basic definition of function done, definition of domain, co-domain, range, image, pre-image of a function done, and I think injective function हमारा done था, and surjective, bijective, inverse उसके numericals, composite function उसके numericals, and reasonable principle and extended reasonable principle concept उसके numerical, ये chapter close हो जाएगा. And possible है तो हम next chapter that is graph, it is very simple as well as syntax as well as coding वो हम शुरू करेंगे, right है? चलो basic definition of function. What is the definition of function? Function definition हमने निकाला, let a and b with any two given set, then subset f of a cross b is equal to a function from a to b. If and only for all x belongs to a, there exists a unique y belongs to b. So to check whether your f is a function from a to b or not, there are two conditions. Number one, f should be subset of a cross b होना चाहिए, and second is for all x, that means for every element x present in a, there exists a unique element y present in b. So definition of function is f equal to x comma y such that for all x belongs to a and for all y belongs to b and for all x belongs to a, there exists a unique y present in b. So if f is a function from a to b, it is denoted as represented as f is a function from a to b, that is from a to b. If it is not, then obviously it is not a function from a to b. फिर इसको समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया था, set a1 2 3, set b is a b is a d, f1 f2 f3 f4 फंक्शन दिए थे और चेक किया था फंक्शन देंगे अल्टीमेटली f आपका फंक्शन है कि नहीं वो चेक करने के लिए दो कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन f should be subset of a cross b and second condition is for every element x present in a, there exists a unique y present in, मतलब that means every element x जो present है वो exactly एक वैल्यू को पॉइंट करनी चाहिए। एक्जेक्टली एक वैल्यू को फंक्शन यहाँ देखो 3 is pointing to multiple values, so it is not a function. यहाँ देखो 3 is pointing to no value, it is not a function because the definition says that every element x from a we have unique value pointed y in b. तो यहाँ देखो ये भी फंक्शन है, f4 आपका फंक्शन है, करेक्ट है, unique वैल्यू पॉइंट करता है, unique वैल्यू से हमें उससे मतलब नहीं, 1 is pointing to unique value, 2 is pointing to unique value, 1 value, 3 is pointing to exactly 1 value, बस वो अपना टारगेट है, करेक्ट है। उसके बाद हमने f5 भी देखा था, f5 1 y 2 y 3 y, this is also a function y because हमारा concept है for every element x present in a we should have a unique value y present in b. f6 फंक्शन नहीं था, f7 फंक्शन नहीं था, then domain co-domain range function सिंपल डेफिनेशन है, suppose f is a function from a to b sorry, इसका मतलब है अगर f from a to b अगर फंक्शन होगा तो ही डेफिनेशन एग्जिस्ट होते हैं। if given f is not a function then you cannot find domain, you cannot find the range, image, pre-image, nothing, ठीक है। so if f is a function from a to b, if f is a function from a to b, then your a is called as domain, b set b entirely is your co-domain, and what is range? Always range is a subset of co-domain, that is consider only those element y present in b which has a pre-image x exists in a, मतलब y में जो भी element है, set b में जो भी element y है जिनका pre-image exist है वही आपके range में आएंगे। and obviously जब आप x to y ढूंढते हो तो that is called as function image, y to x जाते हो तो उसको बोलते हैं pre-image और inverse image। okay, अच्छा छोड़ सारे definition समझे? yes
अब नेक्स्ट डोमेन को डोमेन रेंज इमेज के बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है एग्जांपल के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजेक्टिव, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर शॉट एग्जाम में आएगा, 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन क्वेश्चन राइट ऑफ 8 मार्क्स, श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट इस टॉपिक में से श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एंड व्हाट इज इंजेक्टिव फंक्शन, also called as one to one function, so what is one to one function, let f from a to b be the function, right, then f is said to be an injective or one to one function, if I don't live you take f of x1 equal to f of x2 आपका आंसर आएगा, x1 equal to x2, or if you take f of x1 is not equal to f of x2 implies x1 is not equal to x2, right। अब दोनों केस मैंने बताया था with the help of numerical, with the help of polynomial, देखो say a is given as 1 2 3 b is given as abc and f दिया है आपको, right, it is a function, so f is a function, तो अब ये 1 to 1 है कि नहीं, 1 to 1 के लिए मैंने बताया था यूनिक इमेज एंड यूनिक इमेज होना चाहिए। देखो 1 is pointing to exactly 1 and 2 is pointing to, मतलब यहाँ आप बोलेंगे this is your unique image, this is your unique image, राइट है, जब आप x2 y2 देखो तब आप बोलते हो आप इमेज फाइंड कर रहे हो, so here in this question you will get unique image, और यहाँ जब आप y2 x जाते हो तब आपको मिलेगा यूनिक प्री इमेज। Okay, so here unique image exists. That is one to one function. One-to-one relation मैंने example में बताया आपको. Country and capital. Country has only one capital and capital belongs to only one country. Even here, department and HOD. Department has only one HOD. That's why it's called he or she is called head of the department. And department has only one HOD. HOD belongs to only one department. Even college has only one principal, college has only one principal, one country. And prime minister. Country has only one prime minister. Prime minister belongs to only one country. Country president बोल सकते हो आप. Second question मैंने लिया था समझने के लिए कि वो function है. Function है. देखो unique image exist है. Function है. but function नहीं है. Because image of C does not exist. समझा? तो ये तुम्हारा one-to-one function नहीं है. Understood? Yes. तो यहाँ पे था आंसर पर unique image, unique pre-image. Okay. So ये अपना one-to-one function का question था. Right है. चलो अब देखते हैं polynomial के function. Suppose f of x दिया है. This is a polynomial. See, f of x is equal to 3x minus 2 upon 4x plus 5. This is also called as function of x. Polynomial in terms of x. Right है. Yes. So is it an injective function? So if you take f of x1 equal to f of x2 solve किया, x1 equal to x2 आया. Right है. In general, for a polynomial हमने एक set rule बनाया था. What is that set rule? Any polynomial of degree 1 is always injective function. Any polynomial of degree 1. Any polynomial of degree 1. उसके बाद ये second example लिया था. f of x equal to x2 है. यहाँ this f of x is a polynomial of degree 2. अपना rule क्या है? Any polynomial of degree 1 is always an incremental function. Any polynomial having degree greater than 1 is never injective function, because when I say any polynomial having degree 1, so it belongs to x का exactly one value. And when I say एक वैल्यू रहेगा जो मैंने निकाला है x1 equal to x2, यहाँ रहेगा x1 equal to minus x2, understood? So this is not an injective function, okay? Yes, यहाँ पे भी देखो हमने बोला था any polynomial of degree 1 is always injective, any polynomial of degree greater than 1 is never injective, फिर ये सारे polynomial के डिस्क्रिप्टिवली greater than 1 है वो कभी injective नहीं रहेंगे, okay? Concept of injective is done, ठीक है? अब बचा क्या अपना surjective and bijective function, okay? Surjective, bijective and inverse function, तो उसमें से important है bijective, sorry surjective, because injective हमने पढ़ा, surjective पढ़ेंगे and bijective का सिंपल definition है any function f is called as bijective if and only if it is injective and surjective both, understood? And if the function is bijective then only its inverse exists, then only its inverse exists, तो important क्या है surjective function, ठीक है? चलो अब हम लेंगे surjective function, injective हो गया surjective function, surjective function also called as onto function, okay? So surjective function or onto function, what relation of function f from a to b be the function from a to b, function जगह बोलेंगे let f from a to b be the function from a to b, then f is said to be surjective function, said to be surjective function or onto function if and only condition देखो surjective function or onto function if and only if for all y belongs to b there exists a pre-image, for all y belongs to b there exists a pre-image x belongs to a, for all y belongs to b there exists a pre-image x belongs to a. That means when range of a function is exactly equal to codomain of a function, in that case we can say that the function is surjective function. Condition for surjective function is for all y belongs to b there exists a pre-image x belongs to a, मतलब सारे एलिमेंट y जो b में है उसके लिए pre-image exist होना चाहिए, इसका मतलब ये है सारे y जो b में है उनका अगर pre-image exist है, in that case range of a function is always equal to codomain of a function ही रहेगा। एग्जांपल, अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताता हूं जो फंक्शन है बट सर्जेक्टिव नहीं है, फिर ऐसा एग्जांपल बताता हूं जो फंक्शन भी है जो सर्जेक्टिव भी है, ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल बताता हूं जो फंक्शन है बट सर्जेक्टिव नहीं है, तो ये डेफिनेशन का मीनिंग और अच्छी तरीके से समझ लेंगे, राइट? सपोज से a as 1 2 3 and say b as a b c d, your f is given as say 1 b say 2 a say 3 d, okay? Now check whether it is function or not। तो फंक्शन है कि नहीं चेक करने के लिए हम ड्रा करेंगे जैसे set a, this is called as arrow diagram, set a set b, element of set a 1 2 3, element of set b is a b c, right? So 1 b then 2 a and 3 d, okay? Now you tell me what is f of 1 is b, what is f of 2 is a, what is f of 3 is d, so is it every x present in a we have a unique value present, तो मैं बोलूंगा f is a function from a to b a to b, but is it a surjective function? You can directly check that, जैसे अगर ये फंक्शन है तो what is codomain of function is your set b which is a b c d, and what is the range of a function? Range of a function मतलब consider only those elements from b which has a pre-image exist in a, तो a का pre-image exist है, yes, so a is a part of range, b का pre-image exist है, yes, so b is a part of range, c का pre-image exist है, no, so c is not a part of range, d का pre-image exist है, yes, right? So can I say here codomain of f is it equal to range of f? No, तो मैं बोलूंगा therefore f is not a surjective function, f is not surjective function। and जो मैं बोल रहा था ना pre-image, ये जो statement लिखा ना for all the y belongs to b there exists a pre-image, समझ रहे हो? pre-image और inverse image, what is f inverse of a बता दो, what is f inverse of b बोल दो, what is f inverse of c बता दो, what is f inverse of d, चलो what is pre-image of a is 2, pre-image of b is 1, pre-image of c does not exist, pre-image of d is 3, देखो pre-image of c does not exist, यहाँ क्या बोला है for all element y present in b there exists a pre-image, तो जितने भी element y b में present है सबका pre-image exist होना चाहिए, इधर c का pre-image does not exist, so it is not a surjective function। This question is a function but it is not surjective, ये क्वेश्चन ऐसा है जो फंक्शन है सर्जेक्टिव नहीं है। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो फंक्शन भी है जो सर्जेक्टिव भी है, राइट? सेट a is given as 1 2 3 4, एग्जांपल सेट b given as a b c and your f is 1 b 2 b 3 1 b 2 b 3 c and 4 a, ठीक है? प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए, ध्यान दो प्री इमेज बोला मैंने, राइट? अब प्लीज ध्यान दो ये क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, राइट? प्लीज ध्यान दो ये बन गया आपका a, ये बन गया इंटेंशनली लिया है ना क्वेश्चन, ये इंटेंशनली क्वेश्चन लिया हुआ है 1 2 3 4 a b c 1 b is 1 to b 2 b is 2 to b 3 c is 3 to c 4 a is 4 to a, इंटेंशनली क्वेश्चन लिया एक एक क्वेश्चन का समझिए क्वेश्चन क्या चाहिए क्वेश्चन से बताओ, what is f of 1 is b, what is f of 2 is b, what is f of 3 is c, what is f of 4, what is f of 4 is a। now my question is this f is a function from a to b, is this f is a function from a to b, या ये f function रहेगा अमन परफेक्ट? So f is a function from a to b, why? Because sir every x present in a have a unique value, exactly one value pointing to b, okay function रहेगा, राइट? अब ये सर्जेक्टिव है क्या लिखते हैं, तो बताओ what is codomain of f?
कोडोमेन ऑफ ये फंक्शन है तो कोडोमेन इज बी एंड व्हाट इज सेड बी इज ए बी सी ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ क्या ए का कोई तो इमेज एग्जिस्ट है यस सो इट इज इन रेंज बी का कोई तो इमेज एग्जिस्ट है इट इज इन रेंज आपको डाउट आएगा 652 है डाउट आएगा 3 मिनट दो 3 मिनट दो 3 मिनट दो 3 मिनट के बाद जवाब आपको बोलूंगा सॉल्व हो जाएगा 3 मिनट क्वेश्चन पूछेगा सो मैंने बोला रेंज ऑफ ए का कोई तो इमेज एग्जिस्ट है तो इज पार्ट ऑफ रेंज बी का कोई तो इमेज एग्जिस्ट है यस इज पार्ट ऑफ रेंज सी का कोई तो इमेज एग्जिस्ट है इट इज पार्ट ऑफ रेंज सो इन दैट केस range of f is equal to codomain of f so in that case f is surjective function f is surjective देखो f function भी है f surjective function भी है अब intentionally मैं चेंज कर रहा हूं अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है जब मैं p इमेज निकालूंगा तो what is p image of a what is p image of b what is p image of c p image of a is 4 p image of b is 1 as well as 2 p image of c is 3 अब मेरा क्वेश्चन क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है क्या ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है तो आंसर इज f is not an injective function और आपका डाउट यही था सर आपने जब बोला रेंज में b को कंसीडर किया तो b के तो दो इमेज है कितने भी कितने को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूनिक इमेज ये कंसेप्ट हम इंजेक्टिव लेते हैं अब अपना चल रहा है सर्जेक्टिव तो सबसे कितना करना है कि सारे पाई जो भी है उनका भी इमेज एग्जिस्ट है नहीं सो दिस इज द एग्जांपल इंटेंशनली टेकन वेयर योर f is a function your f is surjective also your f is not an injective function understood yes yes perfect समझा तो अब फंक्शन में हम चेक करते हैं कंडीशन फॉर एवरी एक्सप्रेशन इन देयर एग्जिस्ट यूनिक बाय प्रेजेंटिंग इंजेक्टिव 1 to 1 में हम चेक करते हैं यूनिक इमेज होना चाहिए यूनिक इमेज होना चाहिए एंड सर्जेक्टिव में हम चेक करते हैं सारे एलिमेंट y जो भी है उनका भी इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए ओके ये हो गया हमारा सर्जेक्टिव आप बोलेंगे सर सर्जेक्टिव में पॉलीनोमियल कैसे करेंगे तो उसका भी एग्जांपल बता देता हूं सर्जेक्टिव में पॉलीनोमियल को कैसे कंसीडर करते हैं ठीक है एग्जांपल फॉर पॉलीनोमियल फंक्शन ठीक है अब देखो पिक्टोरियली ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर्जेक्टिव फंक्शन ये से है ये से भी है और आपका ये फंक्शन राइट अब आपके पास क्या है सर्जेक्टिव फंक्शन को पॉलीनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं एग्जांपल यहां जो भी एलिमेंट रहेंगे वो x रहेंगे यहां जो भी एलिमेंट रहेंगे y रहेंगे मतलब कंडीशन क्या है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b दैट इज कोडोमेन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज x बिलोंग्स टू b मतलब डोमेन इसका मतलब ये है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज डोमेन में होना चाहिए पिक्टोरियली इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा राइट अब पॉलीनोमियल रिप्रेजेंट करने के लिए आपका दिया हुआ फंक्शन रहेगा y is equal to f of x because y equal to f of x is given function क्या है y equal to f of x is given function आपको चेक करना है सर्जेक्टिव में सारे एलिमेंट y जो भी है उनके भी होना चाहिए मतलब आपको लिटरली y का वैल्यू पुट करना है और चेक करना है जो भी इसका वैल्यू आता है वो डोमेन में होना चाहिए सो अपने पास क्या है अपने पास y equal to f of x आपको इसको कन्वर्ट करना है x is a function of y आपके पास ये है y equal to f of x आपको कन्वर्ट करना है x is a function of y and now put value of y and check corresponding x exists in domain or not राइट डोमेन फॉर्म अगर करस्पॉन्डिंग एक्स डोमेन प्रेजेंट है मतलब उस पर्टिकुलर इमेज है अगर नहीं तो नहीं इन शॉर्ट अगर जो करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू आएगा वो डोमेन प्रेजेंट रहेगा तो फंक्शन सर्जेक्टिव होगा नहीं रहेगा फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव का फंक्शन को सॉल्व करने के लिए चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चार क्वेश्चन के बाद दुनिया में कोई भी डाउट नहीं बचेगा और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है फिर तुम ही करते खुद ही क्वेश्चन बनाओगे खुद ही आंसर लिखोगे तो चार बार करने चार बार के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा ठीक है अब सर्जेक्टिव के बाद आपका तीसरा आ रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन ओके व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन let f from a to b be the function from a to b be the function from a to b then f is said to be bijective function said to be bijective function if and only it is injective function and surjective function okay obviously both तो f आपका बाइजेक्टिव भी होगा जब वो इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है तो वो बाइजेक्टिव होगा ठीक है एंड नेक्स्ट आएगा आपका इनवर्स फंक्शन ठीक है तो let f from a to b be the function from a to b then f inverse exists if and only f is a bijective function ओके सो f अगर फंक्शन है from a to b तो f इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब f आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है तो मैं बोलूंगा जब f अगर a to b फंक्शन है तो आपका f इनवर्स जो है दैट शुड बी अ फंक्शन फ्रॉम b to a अंडरस्टूड तो f इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब f बाइजेक्टिव है तो एग्जांपल आएगा चेक वेदर द फंक्शन f is bijective or not if yes then find f inverse राइट यस तो आपको पहले चेक करना है चेक करना है इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव है बाइजेक्टिव होगा बाइजेक्टिव है तो इनवर्स होगा आपको f इनवर्स फाइंड करके देना है ओके यस अब मेरे को चार टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने दो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंजेक्टिव सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव ओके तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव सिंपल क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा मेथड क्वेश्चन कैसे बनाए जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो राइट फंक्शन f from r minus 7 by 3 to r minus 4 by 3 is defined as f of x is equal to 4x minus 5 upon 3x minus 7 okay question is prove that f is bijective function hence find f inverse this question carries 8 marks okay फंक्शन दिया है राइट और आपको पूछा है कि prove that this function bijective hence find f inverse अब हो रहा है 7 बजे 3 मिनट राइट 7 बजे 15 मिनट जब भी हो जाएगा आपके सारे आउट हो जाएंगे प्लीज कंसंट्रेट फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ भी आउट रहेगा तो भी 100 के पहले मार लो ठीक है चलो मैं बोलूंगा let f from real number minus 7 by 3 to real number minus 4 by 3 right is a function with f of x 4x minus 5 upon 3x minus 7 ठीक है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ये जो है ये है आपका डोमेन राइट क्वेश्चन में फंक्शन है ये जो है ये है आपका कोडोमेन ओके एंड फंक्शन इज डिफाइंड with polynomial f of x as 4x minus 5 upon 3x minus 7 so here what is domain sir domain is real number minus 7 by 3 मतलब function का domain है all real number excluding 7 by 3 that means 7 by 3 is not a part of domain what is domain here in this question what is domain sir domain is all real number excluding 7 by 3 what is real number any number p by q is called as a real number excluding या provided q is not 0 understood या चलो यहाँ पे कैपिटल okay so what is capital R is real number क्या any number p by q provided q is not 0 तो नंबर रियल होता है example is it real number yes मुझे आपने वैल्यू क्या पता करना is it 9 is real number yes sir हम लोग वैल्यू है 9 by 1 okay is it 2 by real number हाँ sir is it 9 by 16 real number हाँ sir is it 2 4 3 1 by 20 real number हाँ sir any number p by q provide हाँ is it infinity या आप जिसको undefined बोलते हैं is it real number क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर में 0 डाल दोगे तो नंबर is not defined उसका infinity बोलते हैं तो it is not real understood so what is real any number p by q provided q is not 0 is what real number आपका डोमेन क्या है यहाँ पे आपका डोमेन है आपका डोमेन यहाँ पे है आपका डोमेन है real number excluding 7 by 3 मतलब डोमेन में सारे real number है 7 by 3 को छोड़ के वो डोमेन में सारे real number by 3 को छोड़ के हमने को करना है तो पहला पॉइंट इज ऐसा ही एग्जाम देना है इंजेक्टिव फंक्शन को बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन ओके इंजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन का लेट f हम बोलते हैं डेफिनेशन में f from a to b अब यहाँ
फंक्शन दिया हुआ है. So let f from r minus 7 by 3 to r minus 4 by 3 be the function. Right? F is said to be an injective. F is said to be an injective function. Said to be an injective function. If and only if you take f of x1 equal to f of x2 implies if you take f of x1 is equal to f of x2 implies x1 equal to x2. Okay, अगर आपने f of x1 equal to f of x2 लिया तो आपका आंसर x1 equal to x1 है. पॉलिनोमियल देखो for this polynomial degree 1 it is injective. ठीक है, तो देखते हैं we will take say f of x1 is equal to f of x2. Okay, so if you take f of x1 equal to f of x2, what is f of x1? It is 4x1 minus 5 upon 3x1 minus 7. What is f of x2? 4x2 minus 5 upon 3x2 minus 7. So cross multiply करेंगे तो it is 12x1 x2 minus 7 4 28x1 minus 5 3 15x2 plus 35 is equal to ये cross multiply 3 4 12x1 x2 minus 15x1 minus 28x2 plus 35. ये देखो बोथ साइड सेम कैंसिल. अब सारे x1 के लेफ्ट में आएंगे. सो दिस इज minus 28x1 और यहाँ से 15 सो प्लस 15x1. यहाँ पे आएगा minus 20x2 और ये 15 वहाँ चला जाएगा तो प्लस 15x2. So the answer is minus 13x1 equal to minus 13x2. So obviously minus 13 is cancelled. x1 is equal to x2. आपने लिया था f of x1 equal to f of x2. आंसर आया x1 equal to x2. मैं बोलूँगा therefore f from r minus 7 by 3 to r minus 4 by 3 is injective function. Okay, injective function. Understood? First part done. आगे से कितना मिलेगा? आगे से कितना मिलेगा? 2 मार्क मिलेगा. अगर मेरे बच्चे को कितना दूंगा? 1 मार्क दूंगा. ठीक है, मैं 2 मार्क नहीं दूंगा. मैं 1 मार्क दूंगा. क्यों? मैं बोलूँगा इसमें नहीं है. पॉलिनोमियल देखिए इंजेक्टिव. ठीक है, चलो पॉलिनोमियल देखिए 2 मार्क. 2 मार्क. ठीक है, ये होगा फर्स्ट इंजेक्टिव वाला पार्ट. अब नेक्स्ट आएगा हमारा सेकंड हाफ. सेकंड हाफ आएगा सर्जेक्टिव. ओके, सेकंड हाफ इज सर्जेक्टिव फंक्शन. सर्जेक्टिव फंक्शन. सर्जेक्टिव फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं. ओके, चलो व्हाट इज सर्जेक्टिव फंक्शन? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है let f from r minus 7 by 3 to r minus 4 by 3 right be the function right. Then f is said to be surjective function. Is said to be surjective function if and only बराबर is said to be surjective function if and only for all y belongs to b मतलब belongs to r minus 4 by 3 for all y belongs to b there exists a pre-image x belongs to a मतलब r minus 7 by 3. ओके, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपका फंक्शन सर्जेक्टिव रहेगा. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखा देता हूं. यहाँ आपके x है, यहाँ आपके y है, आप ये ढूंढ रहे हो और ये जो आपका सेट a था वो है r minus 7 by 3 और b सेट है r minus 4 by 3. ओके ओके, बिल्कुल टेंशन लो, मैं बता दूं बिल्कुल टेंशन. सर्जेक्टिव फंक्शन 7 होगा. एक क्वेश्चन में तुम्हारे सारे आंसर क्लियर होंगे. ओके, अब सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब मैंने क्या बोला था डेफिनेशन बोलता है सारे y के लिए x होना चाहिए. आपके पास है क्या? आपके पास है f of x दैट इज y इक्वल टू f of x इक्वल टू आपका क्वेश्चन. क्या है आपका क्वेश्चन? क्या है आपका पॉलिनोमियल? आपका पॉलिनोमियल है 4x. पॉलिनोमियल है 4x minus 5 3x minus 7. 4x minus 5 3x minus 7. ओके, यस, ये अपने पास है. तो अपने पास है y इक्वल टू f of x. सो व्हाट वी हैव y इक्वल टू 4x minus 5 upon 3x minus 7. सो अब मैं लिखता हूं ये जो लिखा हूं ये सामने नहीं लिखा. what we have y in terms of x, then what we want x in terms of y. ठीक है, अब मेरे पास है y in terms of x, मुझे चाहिए x in terms of y. ठीक है, ये जो है ये नॉट फॉर एग्जाम. एग्जाम में नहीं लिखेगा. ठीक है, ये नहीं है. मेरे पास है y in terms of x. y in terms of x मुझे चाहिए x in terms of y. इसका मतलब क्या? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ आएगा 3xy minus 7y equal to 4x minus 5. ओके, अब मुझे चाहिए x in terms of y. सारे x y का अंदर आएगा 3xy ये आ जाएगा इधर तो minus 4x ये y वाला जाएगा इधर 7y minus 5. if I take x common तो आएगा 3y minus 4 equal to 7y minus 5. so what is value of x is 7y minus 5 upon 3y minus 4. मेरे पास क्या था मेरे पास था y in terms of x. मेरे पास क्या आया x in terms of y. ओके, अंडरस्टूड. y in terms of x था, मैंने x in terms of y. अब डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन में लिखिएगा सारे y ये जो सारे y है रियल नंबर माइनस 4 उसमें से कोई एक उठाओ जो भी एक साथ है वो देखो. देखो तो अब मैं बोलूंगा if I select y is equal to 1 तो बताओ x क्या आता है? ये आएगा 7 into 1 minus 5 upon 3 into 1 minus 4. आंसर आएगा ऊपर 2 नीचे आएगा -1. आंसर इज -2. क्या आपने y equal to 1 किया तो उसका करस्पॉन्डिंग x इज -2. क्या ये -2 इसका हिस्सा है डोमेन का? हां सर डोमेन का हिस्सा -2 आएगा. -2 इज रियल नंबर एक्सप्लेन बाय if you put randomly if you put y equal to 2 तो what is value of x? 7 into 2 minus 5 upon 3 into 2 minus 4. अब 7 into 14 minus 5 is 9 और ये आएगा 6 minus 7 9 by 2. x का y का वैल्यू 2 किया x का वैल्यू 9 by 2 is 9 by 2 is a part of domain. हां मतलब डायग्राम है. डायग्राम के लिए दिखाना होगा ना. डायग्राम ये जो दिखा रहा हूं इसका डायग्राम के लिए दिखाना होगा. ये x है ये y है. यहां होगा -2 सॉरी यहां होगा -2 यहां होगा 9 by 2 यहां होगा 1 2. so -2 is pointing to 1 9 by 2 is pointing to ऐसा होगा. मतलब 1 is image of 1 is -2. जब मैंने y 1 किया x का -1. अंडरस्टूड ऐसा समझ सको पक्का. मैंने y in terms of x निकाला. y in terms of x था x in terms of y निकाला. अब यहां कोई भी y पुट करो ना जो कोड में आप बोलोगे सर क्या हम यहां y का वैल्यू 7 by 3 कर सकते हैं? क्या वो 7 by 3 4 by 3 कर सकते हैं क्या? आंसर नहीं. y because 4 by 3 is not part of domain. आप डोमेन में जो y लेंगे वो कोई भी पुट करो करस्पॉन्डिंग कैसे कोड डोमेन में रहेगा रहेगा. अंडरस्टूड. मैं बोलूंगा therefore ये जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट is not for exam. ओके, मैं बोलूंगा therefore f from r minus 7 by 3 to r minus 4 by 3 is surjective function. ये surjective function है. अरे भाई इंजेक्टिव है surjective है. therefore f from r minus 7 by 3 to r minus 4 by 3 is bijective function. अरे भाई bijective है. therefore f inverse exists होता है क्योंकि bijective है. अब मुझे f inverse निकालना है. प्लीज ध्यान दो 5 मिनट का नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बन से. ठीक है, अब f inverse निकालना है. करेक्ट है. तो f inverse कैसे निकालेंगे? f inverse कैसे निकालेंगे? प्लीज ध्यान दो. मेरे पास क्या है y is equal to f of x. ओके, मेरे पास y equal to f of x. क्या मैं सोच सकता हूं x is nothing but f inverse of y बराबर. करेक्ट है. मैंने y equal to f of x तो x is inverse of y अलग हमने इन शॉर्ट वो किया. देखो इधर डोमेन कोड जब हमने पढ़ा तब हमने क्या लिखा? देखो डेफिनेशन क्या लिखा? जब हम इसको इमेज बोलते हैं तो इसको इमेज बोलते हैं ना. करेक्ट है. तो वही हम यहां यूज कर रहे हैं. जब मेरे पास है y equal to f of x तो मैं बोलूंगा what is x is inverse of y and we have x as 7y minus 5 upon 3y minus 4. मतलब ही x का वैल्यू f inverse of y का सेम है. what is f inverse of y? 7y minus 5 upon 3y minus 4. यहां मेरा f inverse of y. but your question is f of x. आपको फाइंड करना है f of x दिया है और आपको f inverse फाइंड करना है. मतलब आपको f of x दिया है तो आपको f inverse फाइंड करना है. and since f is bijective function so we can since f is bijective function we can change the variable from x to y to x. तो ये जो f inverse of y है ये f inverse of x बन जाएगा set x minus 5 upon 3x minus 4. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ इनवर्स फंक्शन. ओके, अगेन ये वाला जो पार्ट है ना दिस इज नॉट फॉर एग्जाम. ये तो समझ लीजिए एग्जाम में डायरेक्टली यहां से पे आ जाएगा. ओके, यस
ये बन गया हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें से इंजेक्टिव वन टू में कोई इशू नहीं, इंजेक्टिव वन टू फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सब्जेक्टिव में क्या है आपका y का दिया है, मैंने x का दिया। जब x का आया तो y को वैल्यू पुट करो, कोई भी जो आपकी इच्छा। चलो आपका लिखना है 1 2 नहीं 0 लिख माइनस 4 लिख माइनस 9 लिख, तेरे को जो आता है वो लिख। अगर मैं 4y बिकॉज़ 4y इज नॉट पार्ट ऑफ 4 राइट, लिख जो x आएगा वो डोमेन में रहेगा 100%। और क्यों रहेगा और कैसा रहेगा उसके लिए मैं तुमको थोड़ी सी टाइम के बाद बता दूंगा। क्वेश्चन बनाने वाले कैसे क्वेश्चन बनाते हैं राइट। y का दिया x का आया, अब y को तो करस्पॉन्डिंग डोमेन में है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो y इक्वल टू वी हैव y इक्वल टू x बराबर है। तो x tan इनवर्स ऑफ y एंड x का वैल्यू हमारे पास है, तो x इनवर्स ऑफ y हमारे पास है, बस चेंज हो गया वेरिएबल। सो इधर हम आइसोलेशन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा आया कि आइसोलेशन पॉसिबल नहीं हुआ, तो व्हाट डू मीन आइसोलेशन आई एंड सब्जेक्टिव के लिए कितने पुट करने और अगर किसी x y वैल्यू के लिए कितने हो रहा हो तो यज्ञेश 7:27 हुआ, यज्ञेश 7:27 हुआ। अब ये दो आइटम लिखा है, बहुत मैंने किया है। सेकंड पैराग्राफ का आंसर मैं अभी ये समझा है, तो 7:25 तुरंत दूंगा। उसके बाद तुम क्वेश्चन देके डायरेक्ट आंसर कुछ भी नहीं सॉल्व किया कोई चलेगा, बस क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। अब ये कौन है, इधर अपन आइसोलेशन कर सकते हैं, व्हाट डू मीन आइसोलेशन दिस ठीक है, बट कुछ टाइम करना 7:25 तक लेना, उसके बाद आइसोलेशन एंड सब कुछ हो जाएगा। आइसोलेशन लाइन इसकी डेफिनेशन बन गई है, कुछ नहीं 7:25 तक साइड आउट किया, क्रिस्टल क्लियर साइड आउट क्लियर। चलो ये समझा है। अब मैं तुमको बताऊंगा क्वेश्चन बनाते कैसे है, ठीक है, क्वेश्चन बनाते कैसे, उसके बाद तुम्हारी दुनिया के सारे डाउट क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दुनिया में समझा, कोई भी कोई वीडियो कोई ऑडियो दुनिया कोई ना लेके आओ अपने सामने लेके आओ। दुनिया में राइट सब्जेक्टिव, दुनिया में सब्जेक्टिव फंक्शन या इनवर्स फंक्शन के प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं या बनाते हैं, क्या बोला मैंने, दुनिया ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव फंक्शन के या इनवर्स फंक्शन के प्रॉब्लम कैसे बनते हैं ये तुम सीख जाओ, तो तुम 1000 लाख प्रॉब्लम बनाओ, दुनिया में 1000 लाख प्रॉब्लम बनते हैं। अब मैं बताऊंगा वो बनते कैसे। चलो चलो शुरुआत करते हैं, हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वहां से। f is a function from r-7/3 to r-4/3। यज्ञेश मैं जब बोलूंगा आप समझा क्या तुरंत चाहना चाहिए, सब एक नंबर हमारा समझा तुरंत चाहना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम बनाया हमने, ये प्रॉब्लम बनाया f of x, ये क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम था। चलो f of x हमारा लिखा है, देखो r-7/3 to r-4/3 फिर क्या आएगा 4x - 5 3x - 7 4x - 5 3x - 7 4x - 5 3x - 7 ओके। चलो अब मैं इधर देखने को ने अमन तुरंत बोलने समझा हां, उसके बाद कीर्ति माही रोहन सानिया संजना तुरंत कहना चाहिए, सिद्धि सोहम वैदेही यज्ञेश तनय देखो अभी तुरंत कैसे समझो ये प्रॉब्लम कैसे। फंक्शन f from r-7/3 to r-4/3, अगर आप देखोगे इस फंक्शन को, अगर आप देखोगे इस फंक्शन को तो आपको समझेगा ये 7/3 नंबर कहां से आया है, ये 7/3 नंबर कहां से आया। तो आंसर है ये 7/3 नंबर अगर मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया, लिखता हूं अगर 7/3 यहां सब्स्टिट्यूट किया तो डिनोमिनेटर 0 होगा एंड फंक्शन इनफाइनाइट होगा। ए देखो 7/3 पुट करो 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 आया 7/3 आया 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 ठीक है। अगर फंक्शन में ये यहां पे 7/3 पुट किया तो डिनोमिनेटर शून्य होगा, शून्य डिनोमिनेटर शून्य वाला फंक्शन नहीं। आपने सॉल्व किया हमको ये समझा तो ये कहां से आया, 4 देख हमने ये बोला था y = f of x, y = f of x ऐसे बोला था, ऐसे बोला था जब y = f of x ऐसा बोला, हां ऐसा बोला तो आपका क्वेश्चन का 4x - 5 upon 3x - 7 मैंने बोला आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को ऐसे करना है, x y मैंने को तो यहां पे निकाला 3xy - 7y = 4x - 5। अब ये 3xy - 4x = 7y - 5 ये तो आपको पता वही मैंने निकाला। तो अब यहां देखो 3xy इज -7y क्या इधर 4x - 5, अब यहां से x1 निकाल डायरेक्ट 4x - 5 यहां था 3x - 7 बराबर चेक करो 3xy - 7y = 4x - 5 ओके। सो 3xy - 4x 4x - 5 तो व्हाट इज x इज 3y x एक सेकंड टाइम लग रहा है, हां 1 मिनट फिर ये सब आ जाए। हाँ यहाँ तक करेक्ट ओके, यहाँ तक करेक्ट। अब मेरे को y का एक्स इंटू y ना, एक्स इंटू y यहाँ देखो 3xy - 4x = 7y - 5 तो यहाँ x मैं लिखूंगा तो जाएगा 7y - 5 और इधर कौन आएगा 3y - 4 ओके। हो गया अगर यहाँ 4/3 सब्स्टिट्यूट करें तो यस मेरा आवाज हेलो 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 मेरा आवाज आ रही है दिनेश वैदेही सोहम सर संजना आवाज आ आ रहा है सर। हेलो मैं आवाज आ रही है हां ना पढ़ा भी हेलो हेलो आ रहा है आवाज। रिप्लाई अच्छा ओके तो बच्चे का किसी पे करनी है ओके। ये देखो आवाज आ रही है बच्चे की रिप्लाई करनी चाहिए ना, सुन रहे हो सुन रहे हैं हां अब देखो समझा इधर 7/3 कहां से आया 4/3 कहां से आया समझा यस। चलो अब हम अब मैं ये देखो क्या नहीं समझा इधर देख हां ये मेरा f of x था मतलब y टर्म्स ऑफ f of x हां y टर्म्स ऑफ f of x मैंने निकाला x टर्म्स ऑफ f of y। अब ये x टर्म्स ऑफ f of y है देखो डिनोमिनेटर विजिबल यस विजिबल ओके। चलो अब देखो यहां पे अब देखो क्वेश्चन कैसे देखो इधर देखो इधर अब मेरे पास फेसबुक है ना पूछ नहीं मैं तुमसे बोलूंगा तुमसे देखो क्वेश्चन बना रहा हूं f फ्रॉम r माइनस समथिंग टू r माइनस समथिंग अभी प्लीज आर मेरे को आंसर चाहिए मेरे को आंसर चाहिए f of x। अब देखो तुमसे क्वेश्चन बना रहा हूं गणेश अगर अनम्यूट कर सकते कोई तो गणेश संजना रोहन बताओ न्यूमरेटर क्या बोला न्यूमरेटर बता f of x न्यूमरेटर क्या चाहिए बोला क्या न्यूमरेटर बना खुद पास बोला क्या न्यूमरेटर अरे दादा जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें से कोई भी बच्चा लिखे सबको न्यूमरेटर नहीं चाहिए कहीं बात मत करो 9 माइनस 7 चल लिखा होगा 9 माइनस 7 डिनोमिनेटर क्या चाहिए बोल कोई बोल
क्या डिनोमिनेटर बोलो? हाँ चलो ने बोला dx प्लस a। अब देखो a कभी इसमें नहीं, हाँ yc तू ले जा रहे हैं कोसेक कॉट टैन इधर क्या लीजिए कर क्या पॉलिनोमियल नंबर चाहिए अब साइन कोसाइन से कोसेक को भी सर्किट में देखा क्या ले जा रहे हो? हाँ देखो ये क्वेश्चन तुमने बोला मैंने कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ r माइनस समथिंग में कौन सा नंबर होगा? ऐसा नंबर होगा जो यहाँ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ये जो है डिनोमिनेटर को जीरो करेगा, डिनोमिनेटर को जीरो करेगा। बोलो ऐसा कौन सा नंबर जीरो करेगा? आंसर इज माइनस 11। ओके हो गया। अब ये क्या है मेरे पास है y इन टर्म्स ऑफ f of x जो कि है 9x - 11 अपॉन 3x + 8। अब ये y इन टर्म्स ऑफ x है तो मैं उसको x इन टर्म्स ऑफ y कर दूंगा। कैसे दूंगा? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 3xy + 8y = 9x - 11 राइट। अब यहाँ आएगा 3xy एज इट इज, ये -9x इधर आएगा, ये जाएगा 8y - 11। अब यहाँ x कॉमन दूंगा तो आएगा 3y - 9 इधर आएगा 8y - 11। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 8y - 11 अपॉन 3y - 9। अब यहाँ कौन सा y का वैल्यू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा और f इंफिनिटी बनेगा। बोलो क्या आंसर? आंसर इज 9/3 9/3 मतलब 3 खत्म। ये बन गया क्वेश्चन विद फंक्शन। तुरंत बोलो समझा क्या? तुरंत बोलो समझा क्या? सब रोहन का आया, सबका चाहिए। रोहन समझा, संजना समझा, तनय समझा, बाकी फटाफट। मानसी समझा, यज्ञेश समझा, संजय समझा, अमन समझा। अब तुम 1000 क्वेश्चन बनाओ, तुम भी सॉल्व करो, तुम बना सकते क्या? यस ये था मेरे एंड से। अब तुम दुनिया के क्वेश्चन बनाओ राइट। अब ये एक क्वेश्चन है मैंने तुमको बताया और कैसे बनाने को सब तुम करोगे, तुमको कुछ करना है राइट। अब मैंने कहा तुमको 4 टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ये बड़ा हो गया। चलो अब सेकंड वाला ठीक है। ओके ये वाला क्वेश्चन बराबर कौन होगा? अब सेकंड क्वेश्चन है हां अ फंक्शन f from r - 2 to r defined as f of x equal to 1 upon x - 2 is it injective, surjective, bijective or not? is it injective, surjective or not? ओके चलो सॉल्यूशन। अब इंजेक्टिव वाली क्या मेरे को जरूरत नहीं, ठीक है समझ लो। मैं लिखा लेट f क्या है? रियल नंबर - 2 टू रियल नंबर इज अ फंक्शन डिफाइंड एज f of x equal to 1 upon x - 2 ठीक है। अब चलो इंजेक्टिव तो ठीक है, तो मैं पता है डिनोमिनेटर में से निकाला बराबर, पर यहाँ प्रॉब्लम है क्या है? ये इंजेक्टिव है क्या? तो मैं सॉल्व करता हूं, तुम पूछेंगे तुम लेट लगी आंसर दोगे और इस तरह से सॉल्व करेगा 1 upon x - 2 is equal to 1 upon x - 2 तो दैट इज x - 2 equal to x - 2 -2 कैंसिल x - 1 equal to इसका मतलब इंजेक्टिव ठीक है। तुम्हारे प्लान में सॉल्व होगा ठीक है। इंजेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव ठीक है। सब्जेक्टिव क्या है? प्लीज ध्यान दो मेरे पास क्या है? y equal to f of x है, प्लीज ध्यान दो दिस इज 1 upon x - 2 इसका मतलब y equal to 1 upon x - 2 है। तो y टर्म्स ऑफ x इंजेक्टिव टर्म्स ऑफ x हो जाएगा xy - 2y equal to 1 तो xy एज इट इज ये हो जाएगा 1 + 2y तो व्हाट इज x बेसिकली ये y हो जाएगा 1 by y + 2 1 by y + 2 1 by y + 2। अब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू क्या? अगर मैं बोलूंगा y equal to 0 किया y equal to 0 करते क्या? हां सर क्यों? क्योंकि कोड में कौन सा रियल नंबर समझा? एंड 0 रियल नंबर यस। अगर y equal to 0 किया तो इसका आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी राइट। दैट मींस ये जो इंफिनिटी है इट इज नॉट बिलोंग टू r - 2 बराबर। देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, नॉट सर्जेक्टिव देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन ठीक है यस समझा समझा। अब क्या बोलोगे सर y का वैल्यू पुट करना, सर y का वैल्यू पुट करना तो 1 by 2 मतलब क्या है ना, तो y का वैल्यू पुट करना तो 1 by 2 जो आंसर आएगा वो डोमेन में सर y का वैल्यू पुट करना 1 by 3 + 2 जो आंसर आएगा बाबा मैंने क्या बोला फॉर ऑल कंडीशन है फॉर ऑल y कंडीशन है फॉर ऑल y कंडीशन है फॉर ऑल y देखो कंडीशन क्या कंडीशन है सारे y के लिए होना चाहिए। एक जाता तो कहानी तो टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट नहीं है और इसी का भाई बोला है प्रूव दैट f from r - 3 to r - 0 defined as f of x equal to 1 upon x - 3 is surjective function ठीक है surjective function hence I f inverse। तो ये क्वेश्चन करेक्ट है कैसे करेक्ट है? देखो सॉल्यूशन लिखा हूं सॉल्यूशन। अब ये इंजेक्टिव है ठीक है। मेरे को समझ मेरे को इंटरेस्ट में सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव क्या होता है? ये सब्जेक्टिव है कैसे देखो सब्जेक्टिव क्या है? y equal to f of x equal to 1 upon x - 3 तो ये हो जाएगा xy - 3y equal to 1 तो xy equal to 1 + 3y बराबर। तो अब यहाँ आएगा x is equal to 1 by y + 3 राइट। ऊपर वाले चाहिए अब यहाँ y equal to 0 को नहीं कर सकते क्यों है क्योंकि वो कोड में नहीं आपको यहाँ सारे x है यहाँ सारे y है। x क्या है? रियल नंबर -3 y क्या है? रियल नंबर -0 तो आपको ऐसा ही y पुट करना है जो रियल नंबर -0 होगा मतलब रियल नंबर 0 आप 0 भी नहीं करते अंडरस्टूड। तो अगर आप यहाँ पे y equal to 1 पुट करोगे तो x वैल्यू आएगा 4 जो रियल नंबर -0 है। अगर आप y equal to 2 पुट करोगे तो x आंसर आएगा 1 by 2 + 3 जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर -0 में है। अगर यहाँ y equal to 9 पुट करोगे तो x आंसर आएगा 1 by 9 + 3 जो भी आंसर आएगा वो रियल -0 में है। तो दिस इज सर्जेक्टिव फंक्शन दिस इज सर्जेक्टिव फंक्शन therefore f is bijective function ओके। अब मेरे को चार्ट देखना है और चार्ट में ये जो तीनों पैराग्राफ है ये तीनों पैराग्राफ क्लियर तो तीनों पैराग्राफ किया है आइसोलेशन एंड ऑल क्लियर। आइसोलेशन एग्जाम में पॉसिबल हुआ कि नहीं जिसका मतलब बोलते हैं समझा क्लियर है वो सब्जेक्टिव के लिए कितने पुट करना है वो भी समझा एंड बाय आइसोलेशन में एक्सप्लिसिट डेफिनेशन समझा क्लियर परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर ओके। तो ये आपका इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव इतना जोर इसीलिए लिया क्योंकि एक क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्टेड है और मिनिमम मतलब क्या है? अब तक पेपर में ना ऐसा जिसमें सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव क्वेश्चन आया इतना इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आएगा कंपोजिट फंक्शन क्या है नेक्स्ट आंसर एकदम सिंपल है कंपोजिट फंक्शन ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन 6 मार्क या 8 मार्क श्योर क्वेश्चन ठीक है 100% श्योर क्वेश्चन प्रीवियस। हां अब मैं यहाँ श्योर क्वेश्चन बोल रहा हूँ मतलब क्वेश्चन श्योर ही है राइट। और ये श्योर कैसे बोल रहा हूँ? प्रीवियस एग्जाम पेपर्स की आप 10 कॉपीज निकाल प्रीवियस 5 साल के 10 कॉपीज तो 10 कॉपीज में से आपको मेरे ख्याल से 10 के 10 में या वर्स्ट केस सिनारियो में 9 पेपर मिलेगा। इंजेक्टिव सब्जेक्टिव वाइज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्यों पिछले 5 साल के 10 पेपर निकालो 10 के 10 पेपर में या वर्स्ट केस 9 पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ट्रांजिटिव क्लोजर बोलते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट का मतलब है प्रीवियस 5 साल के 10 पेपर निकालो 10 में से 10 में या वर्स्ट केस 9 में। तो जब मैं ये कंप्लीट हो जाएगा ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो मैं आपको ऐसे 10 से 12 टॉपिक बताऊंगा जिसके 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में लगेगी। जैसे ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म कंफर्म है गारंटी 100% यू विल हैव इट इन ग्राफ आई कंफर्म है 100%। तो ऐसे तुमको 12 टॉपिक बताऊंगा जिसके क्वेश्चन 100% आएंगे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ग्रुप का क्वेश्चन कम्युनिटी लाइब्रेरी श्योर शॉर्ट आना है एयर डिटेक्शन श्योर शॉर्ट आना है पैनिक चेक मैट्रिक्स मैक्सिमम लाइक्लिहुड श्योर शॉर्ट आना है समझा। वैसे 12 से 13 टॉपिक रहेंगे जो गारंटी समझ रहा अगर एक चेक कर गया तो 12 * 6 72 मार्क्स होगा ना आपको ऑप्शन के साथ 24 मार्क्स आते हैं इसमें से 85 जल्दी पता है समझा। इसमें भी श्योर शॉर्ट बट मेरे को ऐसा लगता है अगर ऑटोनॉमस कॉलेज में रहेंगे
पता नहीं कौन से है। तो अगर मेरे को भी एग्जाम पेपर निकालने को बोला तो मैं रीजनल प्रिंसिपल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि इसके जितना सिंपल टॉपिक पूरे इंजीनियरिंग में नहीं, रीजनल प्रिंसिपल के जितना सिंपल टॉपिक पूरे के पूरे इंजीनियरिंग में ये जब तक तुम पढ़ाई करोगे तब तक नहीं है। सो हम भोसले ये सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर है जियो, जियो तेरे के लिए बनाए नहीं, एक मिनट में क्या होगा। देखो कंपोजिट फंक्शन एक क्वेश्चन शॉर्ट और इसके जितना सिंपल टॉपिक मिलेगा आपको, लेकिन बेसिक जो स्कूल लेवल के फंडे, स्कूल लेवल क्या स्कूल मतलब थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, ये जो फंडामेंटल कांसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन के वो कितने स्ट्रांग है अपने आपको पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कितने स्ट्रांग। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, लेट a b and c be the any three given sets, f is a function from a to b and g be the function from b to c. Let a f be the function from a to b and g be the function from b to c. Then the composite, then the composite function from a to c is defined as FOG is a composite function from a to c. So let's say what is FOG? FOG is a comma c such that for all a comma b belongs to f and for all b comma c belongs to g. Okay, so this is simply a composite function. Okay, a b c d set है, f आपका function है from a to b, g आपका function है a to c, then the composite function from a to c. Right? अब आप बोलेंगे सर composite function composite relation में I is relation from a to b, S is relation from a to c, then composite relation from a to c SOR same composite function. बट वहाँ पे हम उल्टा लिखते हैं SOR, यहाँ हम सीधा लिखेंगे FOG 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 O जो छोटा है that stands for composite function. ठीक है, yes. अब ये जो composite function है इसका एग्जांपल लेना होगा तो हम ले सकते हैं से a, ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ एग्जाम नहीं आएगा, इससे पता लगा रहा हूँ let a is 1 2 3, set b as a b c, set c as x y z, then f is a function from a to b 1 comma b 2 comma c 3 comma a. Okay, and f क्या आएगा, g is a function from b to c as a comma x b comma z c comma y. Okay, then what is the composite function principle, फिर पता लगा, we can show the function composite function as c, this is your set a, this is your set b, this is your set c, right? Set a, set b, set c. Now f is a function from a to b, g is a function from b to c, element of set a are 1 2 3, element of set b are a b c, element of set c are x y z. Now what is that function, 1 comma b is 1 to b, 2 comma c 2 to c, 3 comma a 3 to a. Then next g is a function from b to c as a comma x okay to x, b comma z is b to z, c comma y is c to y. Now what is composite function, what is composite function, composite function is a function from a to c. So here we have set a, we have set c, and the composite function FOG is from a to c, element of set a are 1 to 3, element of set c are x y z. Now check 1 to b, b to z, that means 1 to z, the 2 to c, c to y, the 2 to y, 3 to a, a to x, not 3 to x. So what is FOG, what is FOG, what is FOG here, it is 1 comma z, why, because 1 b, b z, 1 z, next 2 c, c y is 2 y, next 3 a, ax, answer is 3x. Okay, then composite function, yes. Now composite function, now composite function for polynomial, ये exam में आएगा, composite function for polynomial is FOG of x is f of g of x, right? So this is your composite function for polynomial. It was on the simple theory, that is substitution theory. So composite function for polynomial is defined as FOG of x is f of g of x. अब एक क्वेश्चन लेता हूँ जो बोर्ड का क्वेश्चन है 8 मार्क का, डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन, let f be the function from real to real. F is a function, f from real to real is a function defined as f of x is equal to x cube. g g be the function from real to real is a function defined as g of x is equal to 4x plus 3. H be the function from real to real is a function defined as h of x is equal to x square plus 1. Question, find FOG, FOH, GOH, FOGOH, GOHOF, FOGOF. ठीक है, आगे लिखा है HOFOG, HOGOF, और यहाँ पर तुमको जो लेना है, ओके? यस, अब एग्जाम में ये जो मैंने लिखा 25 से 2 3 आते हैं बोल क्वेश्चन, ठीक है? एफडीआई फंक्शन, जीडीआई फंक्शन फ्रॉम रियल टू एक्सडीआई। अब मैं पहले प्रोसेस वाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। फिर वापस रिपीट करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं जो अपने स्टैंडर्ड नंबर 3rd 4th 5th 6th में पढ़े होंगे, या जो डीएसवाई बच्चे हैं, डीएसवाई मतलब ना डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा डिग्री, उन्होंने एमएसबीटी का आई थिंक जी स्किल दिया होगा, तो उनका सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स 1 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एमएसबीटी पेपर एंड क्वेश्चन नंबर 1 में अटेम्प्ट करके आते हैं ना एबीसी वाला, उसका बी वाला क्वेश्चन इतना जगह बताओ, प्रिसाइज लोकेशन आईसीएसई वाला आईबी बोर्ड में बच्चे पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड 5th 4th 6th जो भी है उसमें रहेगा। अब बता देता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा f of x है 3x plus 2, question आता है find f of 2, find f of 3. So how do you find f of 2, f of 3? If my f of x is 3x plus 2, how do you find f of 2? Simple sir, if I want to find f of 2 ना substitute x is equal to 2, आगे आंसर सर f of 3 फाइंड करना है, substitute x is equal to 3, आगे आंसर मसले में सेम कांसेप्ट इधर भी आएगा कंपोजिट फंक्शन में, राइट? देखो याद है एमएसबी डिप्लोमा क्वेश्चन नंबर 1 एबीसी का उसमें भी आता था। चलो देखो मैं सॉल्व करता हूं, पहला सॉल्व करता है FOG of x, what is FOG of x is f of g of x, okay? तो f as it is, what is g of x? g of x is 4x plus 3, okay? Now what is f of 4x plus 3? अपने पास f of x है, x की जगह पे अब 4x plus 3 लिखो आएगा 4x plus 3 क्यूब, खत्म, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन what is FOH of x? FOH of x is f of h of x, तो चलो f as it is, what is h of x? h of x is x square plus 1, okay? What is f of x square plus 1? मेरे पास f of x है, x की जगह पे x square plus 1 डालो, x square plus 1 इक्वल टू आगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लेंगे GOH of x, क्या आएगा g of h of x, तो g as it is, what is h of x? x square plus 1, okay? What is g of x square? मेरे पास तो g of x है, तो ठीक है, x की जगह x square plus 1 डालो, तो 4 into x square plus 1 plus 3 हो गया आंसर। आई समझा, रिप्लाई फास्ट, सब्स्टिट्यूशन के लिए आनंद बोल रहा फटाफट, बाकी संजना यस, सानिया यस, बाकी फटाफट अजय यस, परफेक्ट, बाकी मानसी परफेक्ट, हर्ष परफेक्ट, दिनेश ओके, यस परफेक्ट, हर्ष परफेक्ट, ओके ओके। अब देखो डायरेक्ट आपको फाइंड करना है जीओ एच ना, है ना? तो स्कैन करो राइट टू लेफ्ट, भाई एक्स है, एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, उसका नेक्स्ट जी ना, जी क्या होता है, जी होता है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 हो गया आंसर, हो गया आंसर। अब बताओ ये करना क्या होता है, FOH ना, चलो राइट से लेफ्ट सब्स्टिट्यूट करो, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, लिख के डाल दो, उसका क्या है क्यूब, हो गया आंसर, समझ आया? हां क्या है
मैं अंत बोल रहा हूं। अब नेक्स्ट है तीन वाला करना है तो परसेंटेज काउंट करेगा उससे 90 है और 70 होगा 70 लगाना है 80 लगाना ठीक है। अब कैसे तो मैं मेरे को चाहिए FOGOH पहले मैं इसको ये कर दूंगा कंट्रोल सी प्रोसेस बता देगा प्रोसेस बताएगा अब एग्जाम प्रोसेस बताएगा ओके चलो अब FOGOH कैसे देखेंगे एग्जाम में FOGOH h of x okay अब FOGOH what is h of x is x square plus 1 okay done now f what is g of x square plus 1 g of x square plus 1 4 into x square plus 1 plus 3 okay अब what is f of this f of x क्या x cube what is f of this means 4 into x square plus 1 plus 3 equal to ये आ गया आंसर ओके 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 डायरेक्ट हम देखिए डायरेक्ट स्कैन फॉर्मेट पे लेके क्या है क्या है इधर लिखो तो x है x square plus 1 जैसे क्यों डायरेक्ट डालेगा उसका क्या g है 4x plus जैसे कंप्यूटर डायरेक्ट डालो उसका क्या है f क्या क्यूब हो गया सर समझा सही रहेगा देखो अब तो खत्म अब तुम जो मर्जी करो g o h o f बोलो पहले बोलो पहले बोला क्या है f x ब्रैकेट डाल दो फिर मैंने x ऐसा था x square plus 1 हो गया ब्रैकेट डाल दो उसका तो g क्या होता है 4x plus 3 खत्म डन ओके अब नेक्स्ट चाहिए आपको चाहिए h o g o f चलो स्कैन करो पहले मैं क्या होता है x ब्रैकेट डालो फिर क्या होता है g क्या होता है 4x plus 3 चलो ब्रैकेट डालो नेक्स्ट में x क्या होता है ये पूरा स्क्वायर प्लस 1 डन समझा समझा आपको समझा ये ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोसेस से लिखना पड़ता है प्रोसेस से सॉल्व करने का साइड में शॉर्टकट आंसर नहीं आएगा तो फाइनल आंसर आने का वेरीफाई हो जाएगा आंसर ठीक ओके तो अब आएगा पिजन होल प्रिंसिपल तो क्या आएगा पिजन होल प्रिंसिपल ओके तो पिजन होल प्रिंसिपल एंड पिजन होल प्रिंसिपल देखो पिजन होल प्रिंसिपल एंड पिजन होल प्रिंसिपल मैं तुरंत बता दूं व्हाट इज बेसिकली पिजन होल प्रिंसिपल सिंपल स्टेटमेंट तो पिजन होल प्रिंसिपल होता है से small m say small m be the number of pigeonholes क्या मैंने small m be the number of pigeons and small n be the number of pigeons क्या मैंने small m जो है this is pigeon holes and n is number of pigeons okay and m is less than n but the number of pigeon hole must be less than the number of pigeons then only pigeon hole principle is applicable and according to pigeon hole principle simple statement one pigeon hole must contains at least two pigeons one pigeon hole must contains at least two pigeons खत्म हो गया आंसर अब यहाँ ये टॉपिक इतना सिंपल है क्वेश्चन कैसा करोगे रुको मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं इस टॉपिक के क्वेश्चन मैं हैंड रिटन सॉल्व करूंगा मैं ऑलरेडी है रुको स्टॉप शेयर कर दूंगा पूरा स्क्रीन शेयर कर दूंगा मैं बहुत कंटेंट करेंगे तो मुझे क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे को क्वेश्चन निकालेगा तो पिजन क्वेश्चन पूछूंगा एक्सटेंड पूछ सकता हूं पिजन क्वेश्चन एग्जाम में पूछूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए इधर आइए इसको इसमें डाउट देंगे वन डे क्या होगा सर एटलीस्ट वन नहीं आना चाहिए वन पिजन मस्ट एटलीस्ट टू पिजन हां बराबर है जैसे मैंने कंडीशन इज नंबर ऑफ पिजन मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ पिजन ये नंबर ऑफ पिजन टाइप बता देता हूं क्वेश्चन आता इफ 30 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम क्लास इफ 30 मतलब क्या इफ क्या बोला एटलीस्ट वन पिजन होल वन पिजन होल मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू बराबर है दादा एक पिजन होल में मतलब एक घर में दो कबूतर रखो बराबर अब क्वेश्चन देख उसका समझने लगता है क्वेश्चन ये है if 30 students are selected from class then prove that at least two of them then prove that at least two of them must have their birthday in the same month of year क्वेश्चन रिपीट करता हूं if 30 students are selected from class then prove that at least two of them must have their birthday in the same month of year right आपने क्वेश्चन करना चाहिए आपने कबूतर कितने बोलने हैं कबूतर के होल कितने बोलने हैं बताना है कि कबूतर के होल इज लेस देन कबूतर फिर बोलेगा एक कबूतर के होल में at least दो कबूतर होने चाहिए दैट्स क्वेश्चन इज आंसर क्वेश्चन रिपीट करता हूं if 30 students are selected from class then prove that at least two of them must have their birthday in the same month of year तो बोलेगा there are 30 students selected from class therefore number of pigeons are 13 13 कबूतर है बाद में बोलेगा there are 12 months in a year एक साल में 12 महीने होते हैं मतलब कबूतर के होल 12 है कबूतर क्या है कबूतर के रहने के घर 12 है तो यहाँ कब नंबर ऑफ कबूतर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कबूतर के होल therefore कबूतर होल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल and according to pigeon hole principle one pigeon hole must contain at least two pigeons therefore at least two of the students have their birthday in the same month of year अब ये देखो डाउट देखो DIS में ये तो एक्चुअली काउंटिंग में आता है बच्चे को फंक्शन टॉपिक रहेगा फंक्शन में आपकी जरूरत है मैंने तो ये लास्ट ईयर का है डेफिनेशन फंक्शन डन सब डन व्हाट इज फंक्शन डन रिलेटेड टू डन सब डन ये भी डन फंक्शन का क्वेश्चन कैसे बनाते हो डन फंक्शन वाले डन कंपोजिट वाले डन कंपोजिट कैसे आए देखिए पहला क्वेश्चन ठीक है देखो 30 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम क्लास दे प्रूव दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम मस्ट हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ ऑफ ईयर हमको करना है नंबर ऑफ पिजन कितने हैं क्या नंबर ऑफ कितने हैं 12 ये एम लेस देन देखो पिजन प्रिंसिपल बराबर यस अकॉर्डिंग टू पिजन प्रिंसिपल मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू पिजन ओके दैट्स क्वेश्चन आंसर ठीक है ये देखो स्टेटमेंट देखो सब स्टेटमेंट क्या है देखो स्टेटमेंट let m be the number of pigeon holes and n be the number of pigeons if number of pigeon holes are less than the number of pigeons then pigeon hole principle is applicable according to pigeon hole principle one pigeon hole must contain at least two pigeons ये बुक का स्टेटमेंट है pigeon hole principle का उसके बाद नेक्स्ट आएगा उसके बेस क्वेश्चन उसके जो क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व किए थे ठीक है ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट का क्वेश्चन राइट अब वहां मैंने तुमको दिखाया वो क्वेश्चन ऐसे है यहाँ क्वेश्चन क्या है t equivalent triangle t equivalent triangle of side 1 minute each what is t equivalent triangle of side 1 minute each if prove that 5 points are chosen मतलब 5 कबूतर है inside of one triangle then two of them are not more than half meter apart तो एक क्यों है तुम्हारे पास equivalent triangle है of side 1 minute each आपके पास 5 कबूतर है तो 4 होल बनाने हैं तो मैंने equivalent triangle को हाफ हाफ डिवाइड किया तो देखो और उसको करने के बाद मतलब ऐसा था मेरे पास जो triangle था 1 1 1 minute each तो ऐसा 1 1 minute ये बनता 5 पॉइंट सिलेक्ट करने तो मैं हाफ किया हाफ किया जब मैंने किया तो पता चला मेरे पास 4 कबूतर के ऊपर बन गए 1 2 3 4 कोई नंबर अब मेरे को बताओ मेरे को इसमें 5 पॉइंट दिखाने हैं जहां एक पॉइंट से हाफ से ज्यादा पार्ट नहीं होना जो पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली पहला पॉइंट कर दिया दूसरा इधर चौथा इधर पांचवा आ जाएगा किसी बोल के हो जाएगा वही हमारा क्वेश्चन है ओके अब यहां देखो 5 नंबर चूजन अभी एक से 8 में आपको 5 नंबर को चूज करना है सच दैट ये दो नंबर एडिशन नहीं मिले तो 5 नंबर को सिलेक्ट करना है आपके पास 5 नंबर है अब घर कितने देखो घर कैसे बनाना है 2 ऑफ देम लैप नहीं तो एक आएगा 1 8 देखो 1 8 2 7 3 6 4 4 5 आगे तो यहाँ 4 घर है 5 कबूतर है खत्म 4 5 कबूतर खत्म ओके अब एक्सटेंडेड पिजन प्रिंसिपल क्या होता है एक्सटेंडेड पिजन प्रिंसिपल में m with the number of pigeon hole n with the number of pigeon and m is less than n मतलब the difference between pigeon and pigeon hole principle ज्यादा रहेगा या in short number of pigeons are actually multiple of pigeon holes मतलब actually relation बताने जाऊंगा तो number of pigeons are k times multiplication of hole understood ठीक है नहीं तो pigeon hole extended pigeon hole principle होता है and according to extended pigeon hole principle one pigeon hole must contain this function is called as float function अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर c c++ spa तो ceiling and float मालूम आपको या अदरवाइज सिंपल इंटीजर डिवीजन लाइक दिस float function n - 1 1 plus 1 division तो float n - 1 मतलब इंटीजर डिवीजन मतलब जैसे कि एग्जांपल देखो एग्जांपल दिया 11/4 आंसर है 2 इंटीजर रिलेटेड टू 19/6 आंसर है 6 इंटीजर रिलेटेड 6 अब देखो यहां क्वेश्चन कैसे एक्सटेंडेड का क्वेश्चन 6 मार्क्स एक्सपेक्टेड है क्या बोला है सो दैट 30 डिक्शनरी लाइब्रेरी में 30 डिक्शनरी मतलब होल्स 30 है टोटल कितने पेजेस है 61 327 मतलब पिजन पिजन कितने हैं 61,327
राइट। अब जैसे एग्जांपल एक नोटबुक है, एक नोटबुक जिसको 100 पेजेस है, तो एक नोटबुक का जिस 100 पेजेस है तो 100 पेजेस तो वैसे ही 30 डिक्शनरीज मतलब 30 होल्स एंड टोटल मिला के 30 डिक्शनरी पेजेस 61,027 मतलब they prove that one of them dictionary must have 2045 pages खत्म सब कुछ दिया रहता है मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा करना है राइट। तो क्या है देयर आर 30 डिक्शनरीज मतलब नंबर ऑफ पिजन 30 कितने पेजेस मतलब पिजन होते हैं तो याद देखो या नंबर ऑफ पिजन होल्स आर लेस देन नंबर ऑफ पिजन सो एक्सटेंडेड पिजन प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू एक्सटेंडेड पिजन प्रिंसिपल बोलो क्वेश्चन इज आंसर n - 1 n + 1 पिजन डालो आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया है 2045 पेजेस। अब यहाँ सारा एग्जांपल 7 कलर है 250 बाइसिकल्स 7 कलर है 50 बाइसिकल पेंट है 7 कलर मतलब कितना 7 होल्स 50 बाइसिकल मतलब 50 क्या है पिजन। अब ऑब्वियसली 7 कलर 50 बाइसिकल एटलीस्ट आपको सेम रहेगा क्यों क्योंकि 7 कलर डिस्टिंग्विश मार्क चलोगे तो 49 बाइसिकल होंगे 7 7 49 जो बचेगा 50 होना है तो वही आंसर है आपको वही पुट करना है। अब यहाँ पे ये उल्टा है ये क्वेश्चन इंडिकेशन ये भी उल्टा है यहाँ पर नंबर ऑफ पिजन ढूंढने क्वेश्चन देखो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ढूंढने मतलब यहाँ आपको पिजन फाइंड करने हैं बराबर कितने पिजन होंगे वो आपको फाइंड करना है बराबर। देखो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन क्लास टू बी श्योर दैट एटलीस्ट 6 will receive same grade at least 6 इसका मतलब the cardinal law या क्लोनिंग लॉ n - 1 upon m + 1 = 6 ये दिया हुआ है at least 6 will receive same grade। इधर 5 possible grade तो 5 possible grade मतलब 5 है कौन से होंगे a b c d e ये 5 है। अब कितने स्टूडेंट होने चाहिए एटलीस्ट 6 को सेम ग्रेड मिले तो एक हर घर में 5 5 स्टूडेंट हो गया 25 + 1 एडिशनल 26 रहेंगे तो किसी बचे जाएंगे अगर नहीं समझता डायरेक्टली बायोलॉजी कोई टेंशन नहीं नंबर ऑफ पिजन कहानी वही है नंबर ऑफ वोल्ट है 5 अप्लाई करो फॉर्मूला n - 1 upon m + 1 = 6 वैल्यू करो खत्म आंसर मिल गया ओके। इसी क्वेश्चन को अगर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट मारना है तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। देखो वैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट मार दो व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास या व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स should be there in the class to ensure that at least 4 of them must have their birthday in the same month of year। बोला आंसर क्या आएगा at least 4 of them must have their birthday in the same month of year तो 12 महीने मतलब 12 होल बराबर हां करेक्ट 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 37 क्यों क्योंकि at least 4 होगा तो 30 तो 12 होल के 3 बटा 100 हो जाएगा एक एडिशनल 37 जो भी हो जाएगा समझा। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पिजन वाले स्टैंडर्ड पिजन प्रिंसिपल के ओके मैं समझा। अगर आप देखते हो तो पता चलेगा आपका फंक्शन इज डन फंक्शन इज डन सॉरी फंक्शन डन बेसिक्स ऑफ फंक्शन डन 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 ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो दो पॉसिबिलिटी है हां लाइन में आ जाएगा कोई टेंशन नहीं अभी नेक्स्ट में है दो पॉसिबिलिटी वो आप क्यों करना बोलता हूं अभी करने वाला हूं यदि करने वाला हूं या डायरेक्ट पेज में ऑप्शन होगा यदि बार मुझे करना होगा यहां लेके आऊंगा और वहां से करना होगा हो जाएगा कोई टेंशन नहीं वैसे बोलूंगा। अब देखो यार अपने पास दो ऑप्शन है कि अब ये फंक्शन के बाद हम डायरेक्ट जो एक मेन मॉड्यूल एग्जांपल ऑफ जिसका वेटेज मैक्सिमम होता है जैसे हमने रिलेशन फंक्शन को ये मतलब अगर आप देखोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को तो दो ही मॉड्यूल ऐसे हैं या दो ही पार्ट ऐसे हैं जो पूरे सिलेबस कवर करते हैं मतलब अगर आप देखोगे विद ऑप्शन 120 मार्क्स का है जिसका आपको 80 मार्क्स करना है तो 120 में से अराउंड 85 90 मार्क्स या 95 भी क्या मिलेगा आपको रिलेशन फंक्शन कोसेलेटिक्स एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये चार हो गए तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप 95 मार्क्स कर सकते हो विद ऑल ऑप्शन 120 में से करेक्ट है क्योंकि बस हमसे दो ग्राफ एंड काउंटिंग और ये जो पिजन वाले स्टूडेंट देखोगे सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ फंक्शन इट इज पार्ट ऑफ काउंटिंग ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा ऑप्शन ऐसा है कि हम ग्राफ वाला हिस्सा जो कि एकदम सिंपल है एकदम इंटरेस्टिंग है एंड मतलब ऐसा यहाँ पर आकर कभी जिंदगी में आगे घर में जरूरत है डायरेक्ट एग्जाम देने को अपना हो जाएगा तो हम नेक्स्ट टाइम से हम वहां से शुरू करें कि फिर सबसे बड़ा भाई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को करें फिर उसको भी किया तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर करने के बाद गारंटी देता हूं 4 साल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मिनिमम 3 सेशन लगेंगे मतलब मैक्सिमम मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 सेशन लगेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होने के बाद 4 घंटे में डिस्कस करूंगा ठीक है चलेगा। तो पूरा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कंप्लीट करके ग्राफ थियरी पे जाते हैं तो रोनी बोल रहा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर चलेगा बस सिर्फ बोल रहा था ठीक है। अभी एक रिक्वेस्ट मेरे साइड से रहेगा कि तुम सैटरडे को प्लीज आप डाटा बंद करो 5 मिनट 3 मिनट छोड़ दो सैटरडे सैटरडे सेशन होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अलजेब्रिक बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ लोग ये कहना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर करो ताकि मेजॉरिटी वाले क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। अब मेरा क्वेश्चन है सैटरडे को अपना लेक्चर रहता है सैटरडे को वैसे फॉलो लेता है सेकंड ईयर सैटरडे को रहता है। चलो मेरा क्वेश्चन ये है क्वेश्चन आता हूं इज इट फिजिबल इज इट पॉसिबल टू टेक लेक्चर इंस्टेड ऑफ 6:30 की जगह पे हम थोड़ा आधा घंटा रिकॉर्ड करेंगे 5:30 बजे 5:30 से लेके 8:30 ऐसा चलेगा 3 घंटे इफेक्टिवली तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ के 3 घंटे इफेक्टिवली लेंगे ना तो तीसरे सेशन के हाफ में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अशोक बोल चलेगा अमन चलेगा हर्ष हर्ष का प्रॉब्लम थोड़ा सा सैटरडे ऑफलाइन तो हर्ष भी कहता है 5:30 बजे सॉरी 24 तुरंत घर पे पहुंचेगा रोहन का बर्थडे बोल रहा है मीटिंग इन द मॉर्निंग संजना इज ओके सानिया इज ओके यज्ञेश इज ओके मानसी 5:30 है हर्ष और मानसी हर्ष और मानसी को लेकर ओके अच्छा सोम भी सेम है तो फिर अभी तो 6 ओके ठीक है सैटरडे को 30 है एंड 7:40 तो 6 ओके 6 ओके 6 हर्ष सुबह पता नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है सुबह तो मतलब एक्स्ट्रा शेड्यूल नहीं है बैच का कोई नहीं है मतलब जैसे हम इवनिंग का काम किया इसलिए नहीं तो ये जैसे अगर मैं पूरा शिफ्ट कर दूं बैच टाइम ये थोड़ा मुश्किल है ना अगर 30 मिनट 6 को अगर है किसी को फिर 6 को बैठ सकते प्रॉब्लम नहीं बट पूरा टाइम शिफ्ट करना थोड़ा गलत है ठीक है। तो एक काम करो संजना एंड बाकी सब बच्चे नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट 6 शार्प इंस्टेड ऑफ स्टडी वी स्टार्ट 6 वेरी नो इशू सिद्धि रोहन अच्छा अच्छा इशू वेरी इशू एवरीथिंग हां ये करने वाला वही करने वाला डायरेक्टली अगर ऐसा बोलूं तो समझ हो जाएगा वही करने वाला टारगेट करना नो ओके एक मिनट है शेयर ड्राइविंग डीएसजी क्या ड्राइविंग डीएसजी ड्राइविंग से करेगा एक सेकंड एक मिनट दो तुरंत मैं कर देता हूं वहां से डायरेक्ट डीएसजी 2020 का ड्राइविंग कर देता हूं सिर्फ एक मिनट दो सीजी का लिया हमने शायद डीएसजी कॉपी एक सेकंड हेलो व्यूअर ओके ओके अच्छा तो सुनिए चैट में देंगे एवरीवन इन द मीटिंग ओके तो नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन 30 6 o'clock ओके नेक्स्ट 6 o'clock नहीं आएगा चलो बाय 6 o'clock स्टार्ट करना नेक्स्ट लेक्चर हो गया ना ये स्ट्रक्चर प्लीज प्लीज सिस्टम स्टार्ट करेंगे और इसके इनिशियल इंपॉर्टेंट है ग्रुपॉइड सेमी ग्रुप मोनोइड ग्रुप अरेबियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप ये पांचों चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है तो शार्प 6 o'clock ओके चलो बाय तो जी ओके यस बाय यस ओके थैंक यू ठीक है।
Acknowledge either we can start with the field or we can in the last lecture. Acknowledge. Yes, sir, you're on. Okay, thank you. Last lecture we have completed with function, right? Function last lecture. Composite functions and injective, adjective, adjective functions, inverse functions, composite functions, then reasonable principle, and extended reasonable principle. Complete and take question कि अब हमारे next topic क्या होगा? Either we can start with the field or we will start with algebraic structures, right? अब हम algebraic structure and structure बना लेंगे, तो we will start with topic called algebraic structure. Algebraic structures. So we will start with our module 15, that is algebraic structure, right? Algebraic structure में दो part है. First is algebraic structure with single line operation, the algebraic structure with two line operations, that is ring. Algebraic structure with single line operations group, algebraic structure with two line operations ring, and as well as you have concept of full ring, that is concept of group course, right? So algebraic structure बड़ा chapter है and weightage वाला concept है तो weightage of algebraic structure also maximum compared to बाकी rest of the chapter से तो start करेंगे algebraic structure में क्या करना है. The first concept है basic definitions of groups, basic definition of groups. Then second is basic definitions of groups. What is void, what is monoid, what is semigroup, what is group, what is abelian group, what is cyclic group, and so on. So basic definitions of group. Then numericals on groups. Third concept is addition and multiplication modulo n for algebraic structure. ठीक है. Fourth concept पढ़ेंगे हम. Fourth concept is theorems on group. ये दो theorems आएंगे. Fifth concept पढ़ेंगे basic definition of ring and field. ठीक है. Then numericals on ring. Right. This is what is algebraic structure with one binary operation. This is what algebraic structure with two binary operations. Right. Next one is seventh concept is concepts / definitions of group codes. Then next eighth concept minimum distance, error detection, and correction. Then ninth concept group codes. Tenth concept parity check, matrix, score, encoding function. And 11th last concept maximum likelihood decoding technique. ठीक है. So इतने कंटेंट आप पढ़ने हैं इसमें algebraic structure. वो कंटेंट लिख सकते हो कि बड़ा चैप्टर होगा और सब मैक्सिमम है. अब एग्जाम एक्सपेक्टेड है. Numericals on groups and addition multiplication module 1. One question 8 mark sure question. ठीक है. एक क्वेश्चन sure आता है 8 mark का based on the numericals on group या addition or multiplication module 1. एक क्वेश्चन यहाँ से sure आता है for 6 marks. Theorems on groups. Right. Range and fixed numerical यहाँ से क्वेश्चन sure आता है for 8 marks. Right. Then minimum distance, error detection, correction, group code यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 8 marks. Very sure question. ठीक है. And then parity check matrix and maximum likelihood decoding technique. एक क्वेश्चन sure आता है 8 marks. ठीक है. तो मिनिमम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है एंड जहाँ पे मैंने लिखा श्योर इसका मतलब 100% श्योर. आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन निकालो तो क्या पता चलेगा कि यहाँ से श्योर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में. ठीक है. तो विल स्टार्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ algebraic system. टोटल हम 6 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं. 6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आते हैं तो फिर algebraic structure आपको समझ में आएगा. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स. टॉपिक नंबर 1 इज बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप्स. ठीक है. ग्रुप्स के बेसिक डेफिनेशन. चलो फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रुपॉइड. फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रुपॉइड. ओके. व्हाट इज ग्रुपॉइड? चलो लेट capital G be the any given, let capital G be the any given non-empty set, let capital G be the any given non-empty set and star capital G be the any given non-empty set and star be the any given binary operation, be the any given binary operation. Then the algebraic system G comma star, then the algebraic system G comma star is said to be a groupoid, if it satisfies closure axiom property, if it satisfies closure axiom property. Okay. Now what is closure axiom property? So first property is closure axiom property. Right. What is closure axiom property? Says that for all a comma b belongs to G, for all a comma b belongs to J, if a binary operation B is also belongs to G, then G comma star is closed. G comma star is closed. This is a closure axiom property. For all a comma b belongs to G, if a binary operation B is also belongs to G, then G comma star is closed. First property. अब मेरा क्वेश्चन ये जो अब मैंने लिखा बेसिक डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन ग्रुप है ये आपको समझा क्या है? राइट. तो आपका आंसर है सर जो भी आपने लिखा हमको कुछ भी नहीं समझा. राइट है. यस क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं. ठीक है. अभी चलो समझते हैं हमने जो लिखा वो क्या समझना है. ओके. चलो अब देखो हमने क्या लिखा डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन लिखा ग्रुप है. पहले लाइन पहले चलो पहले ग्रुप है. Let G be the any given non-empty set. Let G be the any given non-empty set. इससे हमने समझेंगे क्योंकि what is G कुछ भी कोई भी non-empty set को G बोलेंगे. So let G be the any given non-empty set and star can be actually बोलो star depend. Star can be any given binary operation. इसका मतलब star कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सबट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है. Star can be any binary operation. Right. So G be the any given non-empty set and star be the any given binary operation. अगर मैं लिखूंगा 2 + 3 + 5 क्या यहाँ पे स्टार यहाँ पे प्लस यहाँ पे एडिशन ये binary operation है क्या? आंसर नो. binary operation का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन जो एट अ टाइम सिर्फ दो ऑपरेंड पे परफॉर्म होगा. So when I write a + b in that case a plus is a binary operation. If I write a - b it is a binary operation. If I write a multiplication b it is a binary operation. If I write a division b it is a binary operation. When I write 2 + 3 + 5 is it a binary operation? No, but इसको binary कर सकते हैं. कैसे? अगर मैं ब्रैकेट डालूंगा now it is a binary operation. Why? Because first perform on these two operands that is 5 + 5. Now here also the addition operation perform on two operands that is 6. Understood? So what is star? Star can be any binary operation that can be addition, subtraction, multiplication, division, modulo, remainder कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है. Right. अब let G be the any given non-empty set and star be the any given binary operation. Then collectively set an operation on that set collectively called as algebraic system. Algebraic system मतलब अपने ऊपर लिखा algebraic system with single binary operation. That is group. What is group basically? It is algebraic system with single binary operation. Ring and field is algebraic system with two binary operation. तो group में अपने पास एक single binary operation रहेगा. And what is algebraic system? Algebraic system is the collectively a set and a binary operation which you want to perform on that set. So algebraic system G comma star इसको हम group by बोलेंगे. कब when it satisfies closure axiom property. जब वो closure axiom property को satisfy करेगा तब हम उसको group by बोलेंगे. चलो what is closure axiom property है क्या? What is closure axiom property? Yes, next. Is this the first page? Yes, this is the first page. Right? Yes. What's closure axiom property? Closure axiom property says that and for all a comma b. Closure axiom property says that for all a comma b. That means for all the elements a comma b belongs to G. सारे एलिमेंट a comma b जो G में है उसके लिए if you perform a binary operation b and उसका रिजल्ट भी अगर G में आता है तो तुम्हारा सिस्टम G comma star is closed. Right? So when you say your algebraic system is closed, you can select any two numbers from the given set, perform whatever be the given binary operation. If the result is also present in that set, then you can say that the system is closed. System satisfies closure axiom property. Okay? So एग्जांपल बताते हैं कि कौन सा सिस्टम क्लोज रहेगा, कौन सा सिस्टम क्लोज नहीं रहेगा. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. For all a comma b belongs to G. मतलब सारे एलिमेंट a comma b जो G में है या सारे एलिमेंट a comma b जो D से present है, if you perform whatever be the given binary operation, the result is also present in G. In that case, we can say that the system is closed. Example. पहला example. Natural number comma addition. Is it natural? देखो
अलजेब्रिक सिस्टम में क्या होना चाहिए आपको? अलजेब्रिक सिस्टम में आपको मिलना चाहिए सेट जो है नेचुरल नंबर एंड ऑपरेशन एडिशन. ओके ओके. अब नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 till infinity. ऑपरेशन एडिशन. इज दिस सिस्टम क्लोज्ड? यस. व्हाई? सिलेक्ट एनी टू नेचुरल नंबर. कोई भी नेचुरल नंबर आपके नंबर को उनके ऊपर एडिशन परफॉर्म करो. जो भी रिजल्ट आएगा चेक करो नेचुरल नंबर है क्या? हां सर सिस्टम इज क्लोज्ड. नेक्स्ट इज i कॉमा प्लस. व्हाट इज i? इज इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम -infinity to infinity. मन में कोई भी इंटीजर नंबर रखो. कोई भी इंटीजर नंबर रखो. उनका प्लस करो. रिजल्ट इंटीजर नंबर आता है. हां तो सिस्टम इज क्लोज्ड. देन नेक्स्ट n कॉमा मल्टीप्लिकेशन. नेचुरल नंबर कॉमा मल्टीप्लिकेशन. कोई भी नेचुरल नंबर रखो. उनका मल्टीप्लिकेशन करो. देखो रिजल्ट नेचुरल नंबर आता है. राइट? सिस्टम इज क्लोज्ड. देन नेक्स्ट इज i कॉमा मल्टीप्लिकेशन. सिलेक्ट एनी टू इंटीजर नंबर परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर नंबर इज ऑलवेज इंटीजर. ओके? यस. तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सारे क्लोज्ड सिस्टम है. चलो अब क्लोज नहीं हो गया. n कॉमा माइनस नेचुरल नंबर विद ऑपरेशन सबट्रैक्शन. सिलेक्ट एनी टू नेचुरल नंबर. a is equal to 5, b is equal to 9. Okay? Select a as 5, b as 9. Perform operation a minus b. What is a minus b? 5 minus 9. What is the answer? -4. Is it -4 natural number? No. That means this system is not closed. Understood? अब बोलोगे सर उल्टा दो. a का वैल्यू लेगा 9, b का वैल्यू लेगा 5 एंड परफॉर्म 9 5 4. तो इंटीजर नेचुरल नंबर आता है. सिस्टम क्लोज हो गया. यस बेटा. मैंने क्या बोला है? इसको बहुत ज्यादा वैल्यू है फॉर ऑल. सबके लिए प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होना चाहिए. अगर एक के लिए भी जाता है काम इट इज नॉट अ ग्रुप. नेक्स्ट इज i कॉमा सबट्रैक्शन चेक. इंटीजर नंबर. सिलेक्ट एनी टू इंटीजर नंबर. परफॉर्म सबट्रैक्शन. आंसर इंटीजर नंबर आएगा. सिस्टम इज क्लोज्ड. Similarly if you can check i, if you can check i comma division. If you can check i comma division. What is i? Integer number operation is division. Select any integer number. a as 9 and b as 4. Perform operation a by b is 9 by 4. Is it 9 by 4 integer? No, this system is not closed. Similarly natural number on division. Is it closed? Not closed. बराबर है? Yes, natural number division is not closed. Not a natural number. Okay? Some closed example. Closed example let's go. What is closed example property? अब ग्रुप वाइड हो गया. अब नेक्स्ट इज सेकंड कंसेप्ट इज सेमी ग्रुप. ओके सिद्धि बनाए. ओके अमन. ओके. अब सेकंड क्लोज एग्जांपल के बाद ग्रुप वाइड वाला हमारा सेकंड डेफिनेशन. ग्रुप वाइड वाला सेकंड इज सेमी ग्रुप. सेमी ग्रुप. ओके सेमी ग्रुप. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेमी ग्रुप? Algebraic system G comma star. अब वैल्यू ऊपर भी हमारे मान के से स्टार राइट. Algebraic system G comma star is said to be क्या कहते हैं सर सिंबल यूसेज में स्टार है. स्टार हियर इज व्हाई वी काइंड ऑफ मैं क्या कहूं. Algebraic system G comma star is said to be a semi group. Algebraic system G comma star is said to be a semi group if and only it satisfies पहला closure axiom property. एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा. Closure axiom property. सेकंड इज associativity property. Associativity property. रोसेन में curly less than is what we are using as नहीं ये तुम मालूम है Algebraic system G comma star is said to be a semi group if and only it satisfies two properties. Closure axiom property and associativity property. अब जैसे जैसे डेफिनेशन आगे जाएगा एक प्रॉपर्टी ऐड होते चला जाएगा. ओके. अब associative property what is associative property? Closure axiom property associative property. Associative property, right? What is associative property? Associative property for all a comma b comma c belongs to G. If a binary operation b binary operation c equal to a binary operation b binary operation c. Okay, then I can say that G comma star is associative. G comma star is associative. क्या property है? देखो simple associative law a binary operation b binary operation c is equal to a binary operation b binary operation c. Okay, note यहाँ लिख देता हूँ. Note. What is note? Note is addition and multiplication are always an associative operation. Right? Addition multiplication हमेशा associative operation होते हैं. And number 1 ये. Number 2 subtraction and division are never associative. वो कभी भी associative नहीं होते. Understood? अब सेमी ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कौन सा अलजेब्रिक सिस्टम है स्ट्रक्चर है जो सेमी ग्रुप होगा कौन सा नहीं होगा. ओके एग्जांपल क्लोज एग्जांपल ग्रुप वाला कंडीशन है. नेक्स्ट n प्लस इज इट सेमी ग्रुप. इज n प्लस सेमी ग्रुप पहला चेक करो. क्या नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर एडिशन नेचुरल नंबर आएगा. यस. तो इट इज क्लोज एग्जांपल ऊपर देखिए हमने. इज एसोसिएटिव आप मतलब ऑपरेशन कौन सा है एडिशन. यस एसोसिएटिव है. खत्म. सो दिस क्लोज. नेक्स्ट इज n मल्टीप्लिकेशन. इज इट सेमी ग्रुप. सो n मल्टीप्लिकेशन क्लोज किया. ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होगा. परफेक्ट. नेक्स्ट i प्लस इज इट सेमी ग्रुप. सर इंटीजर नंबर प्लस ऑपरेशन क्लोज था. इंटीजर नंबर प्लस ऑपरेशन एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव सेमी ग्रुप. नेक्स्ट i मल्टीप्लिकेशन इंटीजर नंबर विद मल्टीप्लिकेशन. इज इट इंटीजर नंबर विद मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप. यस इंटीजर नंबर विद मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज एंड सिंस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव. खत्म. ओके सो मैं बोलूंगा r ये जो लिखा है मैंने n प्लस मल्टीप्लाई i प्लस i r सेमी ग्रुप r सेमी ग्रुप. ओके अब कौन सी ग्रुप नहीं है. चलो i कॉमा सबट्रैक्शन अब ऊपर देखेंगे तो पता चलेगा i कॉमा सबट्रैक्शन क्लोज था. देखो ऊपर लिखा है i कॉमा सबट्रैक्शन क्लोज राइट. बिकॉज़ इंटीजर नंबर कोई भी इंटीजर नंबर सबट्रैक्शन इंटीजर नंबर आता है i कॉमा सबट्रैक्शन इज क्लोज बट इज एसोसिएटिव. चेक करो. सिलेक्ट एनी 3 इनपुट फ्रॉम इंटीजर नंबर से 2 3 4. परफॉर्म ऑपरेशन a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c is a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c. so 2 माइनस इधर आएगा -1 इधर आएगा 2 माइनस 3 -1 -4 इधर आएगा 3 इधर आएगा -5. आर द सेम. नो सो दिस इज नॉट associative. इतनी जरूरत सिंपल होने का ऑपरेशन कौन सा है. ऑपरेशन इज सबट्रैक्शन. इट इज नेवर associative. ओके समझ लो. समझ लो प्रॉपर्टी associative प्रॉपर्टी. यस अब आएगा थर्ड कंसेप्ट. कंसेप्ट नंबर 3 राइट. associativity के बाद थर्ड कंसेप्ट. पहले दो प्रॉपर्टी समझो. छह प्रॉपर्टी है. ठीक है. थर्ड कंसेप्ट आएगा मोनोइड. मोनोइड. ओके व्हाट इज मोनोइड? Algebraic system G comma star is said to be monoid. Is said to be monoid if and only it satisfies property number पहला closure axiom property. Property number दूसरा associative property. And number तीसरा existence of identity element property. क्या है? existence of identity element property. Okay मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ उसका नोट डायरेक्ट आप बंद करके आप बोल सकते हैं आंसर. ओके चलो existence of identity element property. तो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज identity element property. क्या है? What is identity element property? राइट. What is identity? फर्स्ट लेक्चर algebraic system राइट. तो आपको प्रॉपर्टी बाय हार्ट होना ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं. मेरे को एक्सपेक्टेड क्या है कि आपको मीनिंग पता चलना चाहिए. What is closure axiom property? Sir you can select any two number from the given set perform whatever the given operation if the result is also present in that set then system is closed. Associative मतलब क्या? सर अगर मतलब ना ये ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन associative रहेगा. अगर ऑपरेशन सबट्रैक्शन डिविजन दोनों associative रहेगा तो ऐसा मतलब समझना. अभी existence of identity element property. Identity element property. What is property? For all a belongs to G there exists an element E. For all a belongs to G there exists an element E belongs to G such that ये सबसे important है important right right. So for all a belongs to G there exists an element E belongs to G such that a binary operation E is equal to E binary operation A right. For all a belongs to G there is an element E belongs to G such that a binary operation E is equal to E binary operation A. What is basically E is identity element. अब मैं इस प्रॉपर्टी को पढ़ूंगा कैसे. What is identity element? Identity element मतलब ऐसा एलिमेंट जो A के ऊपर पोस्ट ऑपरेट हुआ या A के ऊपर B ऑपरेट हुआ तो भी A को करने का आंसर A ही रहेगा. Understood? So in that case your E is called as identity element right. So identity element एक ऐसा एलिमेंट होगा जो A के ऊपर B या पोस्ट ऑपरेट हुआ तो A को करने का आंसर A ही रहेगा. Note number 1 for addition always identity element is 0. Second for multiplication always identity element is 1. Okay because अगर ऑपरेशन एडिशन है तो x plus 0 is x only. ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है x into 1 is x only. Understood? So ऑपरेशन एडिशन है आंख बंद करने का लिखने का identity element 0. अगर मल्टीप्लिकेशन है आंख बंद करने का identity element is 1. Okay but यहाँ पे जो identity element है ना वो सेट में एग्जिस्ट होना भी जरूरी है. इसलिए बोला है existence of identity element. अब देखते हैं एग्जांपल फॉर मोनोइड का एग्जांपल देखेंगे. ओके चलो मोनोइड का एग्जांपल. ओके चलो एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी क्लोज एग्जांपल associativity existence of identity element. ओके चलो एग्जांपल ऑफ मोनोइड. पहला एग्जांपल n comma multiplication. चलो बोलो n comma multiplication natural number multiplication close. Yes sir. Select any natural number from multiplication close. Operation multiplication so is it associative? Yes sir. Operation multiplication always associative.
एन कॉमा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज आइडेंटिटी 1 देखना है आपको चलो देखते हैं बोलो मुझे कोई नेचुरल नंबर 1 चलो 5 देता हूं परफॉर्म द प्रॉपर्टी परफॉर्म यूज प्रॉपर्टी व्हाट इज 5 ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज व्हाट इज 5 हम जरा 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 ओके सो दिस इज योर identity element existence. So this is your mono. Okay. So n comma multiplication is mono. Right. Next. I comma multiplication. Is it I comma multiplication is closed? Yes. Associated. Yes. Multiplication is what identity element one. यहाँ पे जो बनाया वो number है. यहाँ पे जो बनाया जो number है. It is a monoid. Next. I comma plus. Is it I comma plus is closed? Yes. Is it I comma plus associated? Yes. Identity element plus क्या आएगा? Zero. Is it zero integer number? Yes. तो ये तो system monoid है. ये तीनों system monoid है. अब ऐसा system मोनोइड नहीं है. Say n comma plus. चलो बताओ n comma plus is closed? Yes sir. It is closed. Is it n comma plus is associative? Yes sir. n comma plus is associative because operations plus. Is it n comma plus identity element exists? The identity element exists. तो check करो. What is identity element? Is zero. Why? Because operations plus. मैं तो check करो. कोई भी नंबर ले लो. चलो a का आंसर 5. Perform operation. Perform property. What is a 9 plus e is equal to 9. तो 9 क्या आएगा? 9 आएगा. Answer is zero. So identity element is zero. What is identity element zero? Exists in natural number. ये देखो इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट बोला ये आना चाहिए आंसर पर ये dsgt में exist होना चाहिए so zero does not belong to natural number so e identity element is present but does not exist in natural number बोलूंगा therefore n comma plus is not a monoid ये monoid नहीं है ओके ये होगा तुम्हारा monoid का definition सारे प्रॉपर्टीज monoid है यस monoid प्रॉपर्टीज समझे सबको समझा यस अनिया यज्ञेश आदित्य सिद्धि मानसी तनय अमन ओके ओके चलो डन अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा फोर्थ कांसेप्ट इज ग्रुप कांसेप्ट नंबर 4 इज ग्रुप so what is that group algebraic system g comma star algebraic system g comma star is said to be a group defined only if it satisfies four property पहला क्लोजर axiom property दूसरा associative property तीसरा existence of identity element property चौथा existence of inverse element property हर एक एलिमेंट का इनवर्स प्रेजेंट होना चाहिए एग्जिस्ट होना चाहिए दैट इज योर इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ओके यस चलो व्हाट इज इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ठीक है इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी inverse element property. So inverse element property says that for all a belongs to G, there exists an element alpha belongs to G such that a binary operation alpha is equal to E is equal to alpha binary operation A. Right? So for all a belongs to G, there exists an element alpha such that for all a belongs to G, there exists an element alpha belongs to G such that a binary operation alpha is equal to E is equal to alpha binary operation A. Obviously, where E is called as identity element and alpha is called as inverse of A. Right? So what is alpha basically inverse. Okay? तो अब inverse element property क्या होता है कि alpha ये ऐसा inverse होगा A का जो A के ऊपर P या post operate हुआ तो आपको identity element मिलना चाहिए और बताओ alpha is such an element which is inverse of A जो A के ऊपर P या post operate होता है तो आपको identity element मिलना चाहिए. ओके चलो देखते हैं ऊपर जितने सिस्टम थे उसमें से ग्रुप कौन बचता है उसमें से ग्रुप कौन बचता है ओके चलो एग्जांपल ग्रुप चलो एग्जांपल say first is I comma plus is it group check is it closed yes check किया associative yes the operation is addition what about identity element so identity element is yes okay no problem zero is perfect now inverse element so check कोई भी element देंगे suppose 7 apply property 7 operation is plus right alpha is alpha जो होना है equal to 0 right identity is 0 so 7 में क्या दोगे तो 0 आंसर आएगा so ये alpha is -7 is it -7 जो alpha आया वो इंटीजर है yes okay इसका मतलब होता है कि -7 का inverse या 7 का inverse is -7 so what is inverse of 7 is -7 so this system is your group why because इंटीजर नंबर में होता है -infinity to infinity so in that case सारे नेगेटिव नंबर का inverse पॉजिटिव रहेगा सारे पॉजिटिव नंबर का inverse नेगेटिव रहेगा 0 मतलब सब inverse exist system is group okay yes so ये system हो गया group अब देखते हैं n comma multiplication ये दो साथ में देखा associative था ओके अब मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा जो नंबर आइडेंटिटी एक्सिस्ट इनवर्स चलो सिलेक्ट एनी एलिमेंट एज 5 अप्लाई प्रॉपर्टी 5 ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अल्फा is 1 okay so what is value of 1 by 5 okay so is it 1 by 5 natural number no इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट does not exist understood identity element is present 1 by 5 is a number but it does not exist वो natural number नहीं है right so this is your not a group this is your not a group ये group नहीं है सिमिलरली आप देखोगे I comma multiplication सेम होगा I comma multiplication क्लोज है associative है आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा because multiplication जो इंटीजर सिलेक्ट एनी नंबर से 3 अप्लाई प्रॉपर्टी 3 मल्टीप्लिकेशन अल्फा is equal to 1 what is value of alpha value 1 by 3 is it 1 by 3 integer no so this is not a group तो जितने भी सिस्टम हमने देखे उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप आया कौन सा इंटीजर कॉमा प्लस ओके understood चार प्रॉपर्टी समझा क्लोज है associativity existence of identity existence of inverse ओके अब दो डेफिनेशन और फिर हम न्यूमेरिकल करने को तैयार कुछ लिख देगा सब पहला एग्जांपल बताओ यस क्या है मुझसे फर्स्ट एग्जांपल री एक्सप्लेन प्लीज एंड डिस्टर्ब माय साइड ओके मुझसे कोई एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं होगा बस क्योंकि एक एग्जांपल एक्सप्लेनेशन लायक नहीं क्योंकि हमने जो भी लिखा हुआ है उससे एक भी वर्ड एग्जाम में नहीं आएगा बट ये जो प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उससे भी प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन नहीं कर सकते राइट अब अगर कोई यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज को देखा है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एक्सिस्ट एंड एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू जी सच दैट ए वाली ऑपरेशन अल्फा इज इक्वल टू ऑपरेशन जिसमें से ए क्या होगा ए होगा कोई भी एलिमेंट जो जी प्रेजेंट होगा अल्फा क्या होगा उसका इनवर्स ए का इनवर्स व्हाट इज द आइडेंटिटी जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में दिया तो यहां लगभग पड़ेगा तो क्या समझ रहा है अल्फा जो एलिमेंट है वो एक ऐसा इनवर्स होगा जो ए के ऊपर पोस्ट ऑपरेट हुआ या पी ऑपरेट हुआ साइड में आना चाहिए तो आई मतलब एग्जांपल होता है प्लस का अब आई प्लस को क्लोज एग्जांपल था आई प्लस एसोसिएटिव था प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट जो मैंने लिया अब इसमें कोई भी एलिमेंट साथ तुम साथ रोजन बनाओ अप्लाई प्रॉपर्टी का मतलब साथ ऑपरेशन प्लस है अल्फा मतलब निकालना है आइडेंटिटी 0 अब साथ में क्या करोगे जो आंसर आएगा -7 मतलब साथ में माइनस अब माइनस 7 जो आएगा रहेगा हां तो मास्टर ग्रुप है यहां दोनों में इनवर्स आ रहा है वो क्लोज नहीं कर इसलिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए इसमें तभी ग्रुप होगा ओके चलो अब दो प्रॉपर्टीज बाकी है ठीक है ग्रुप समझ में आ गया अब क्या में 7 रेशो -1 वाला पार्ट में सेलेक्शन इनवर्स ओके चल अब ग्रुप का डेफिनेशन हो गया अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ वाला डेफिनेशन चल डेफिनेशन नंबर 5 ग्रुप करना अब आएगा अबेलियन ग्रुप व्हाट इज अबेलियन ग्रुप डेफिनेशन बोलेगा अ ग्रुप G comma star खत्म हो गया जो ग्रुप G comma star इसका मतलब प्रॉपर्टी में बोलूंगा अंडरस्टूड ग्रुप G comma star is said to be an abelian group G comma star is said to be an abelian group if it satisfies commutative property खत्म आई समझा if it satisfies commutative property मैंने पहले क्या बोला है अ ग्रुप G comma star इसका मतलब ये है कि अलजेब्रिक सिस्टम में क्लोजर एक्सियम आ गया ग्रुप में एसोसिएटिव आ गया ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ग्रुप में इनवर्स एलिमेंट आ गया एंड प्लस एडिशनल पार्ट आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओके यस क्योंकि ग्रुप G comma star बोला है मतलब पहले चार प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट हो गए प्लस एडिशन कम्यूटेटिव अब मैं यहां नोट लिखूंगा क्या नोट लिखूंगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर
ऑलवेज कम्यूटेटिव ऑपरेशंस, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव भी होते हैं, हमेशा कम्यूटेटिव भी होते हैं। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? फॉर ऑल a comma b belongs to G if a binary operation b is equal to b binary operation a, then G comma star is commutative. Okay, सिंपल प्रॉपर्टी है a plus b equal to b plus a, राइट? a बराबर b equal to b बराबर कम्यूटेटिव, सिंपल लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हम इसका एग्जांपल करेंगे, ऐसा कौन सा सिस्टम कम्यूटेटिव होगा, ऐसा कौन सा कम्यूटेटिव होगा। देखो एग्जांपल, जो आंसर आया था i comma plus, इज इट अबेलियन ग्रुप? यस, क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये एसोसिएटिव भी है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट भी करता है, यहाँ इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट भी होता है, एंड ये ऑपरेशन देखो तो पता चलेगा ऑपरेशन इज प्लस, तो ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव भी होगा। ओके, तो दिस इज अबेलियन ग्रुप। ओके, ये अबेलियन भी है। ओके, यस, अंडरस्टूड। तो दिस इज i comma plus इज अबेलियन ग्रुप, राइट। अब लास्ट प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप के बारे में, साइक्लिक ग्रुप, राइट? लास्ट डेफिनेशन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 6 इज cyclic group, right? Then says cyclic group definition है, group G comma star, group G comma star, cyclic group definition है, cyclic group definition, group G comma star is said to be a cyclic group, a group G comma star is said to be a cyclic group if and only, right? Cyclic group a group G comma star is said to be a cyclic group if and only if any single generator, if and only if any single generator element is present in G comma star। अगर G comma star में कोई भी एक, right, any single at least one प्रोफेट पड़ेगा। अगर G comma star is said to be a cyclic group if and only if at least single, any at least if and only if at least single generator element present in it, right? अगर सिंगल जनरेटर एलिमेंट है तो हमारा आंसर होगा साइक्लिक ग्रुप। अब तो पहले देखते हैं सर, ये जनरेटर एलिमेंट क्या है? हमको जनरेटर एलिमेंट पता चलेगा तो हमको पता चलेगा सिंगल क्या है। तो यहाँ आएगा जनरेटर एलिमेंट प्रॉपर्टी, जनरेटर एलिमेंट। व्हाट इज जनरेटर एलिमेंट? डेफिनेशन है जनरेटर एलिमेंट का, any single element of G comma star, right? Any single element of G comma star can able to generate, if any single element of G comma star can able to generate all the elements of, क्या है, if any single element of G comma star can able to generate all the elements of, last definition है, if any single element of G comma star can able to generate all the elements of G with respect to all the elements of G with respect to given binary operation star, then that single element is called as, generator element of G comma star, and G comma star is called as cyclic group. Okay, so what is the definition of element? If any single element of G, G comma star G, any single element of G can able to generate all the elements of G with respect to given binary operation star, then that single element is called as generator element, and such at least one element which generator is present in G comma star, in that case G comma star is called as cyclic group। Understood? So G comma star को cyclic कब बोलेंगे? जब at least एक एलिमेंट जनरेटर एलिमेंट होना चाहिए। अब जनरेटर एलिमेंट बोलेंगे ऐसा कोई भी एलिमेंट उसने G के सारे एलिमेंट को जनरेट करना चाहिए with respect to given binary operation। Understood? Yes, समझा? पक्का? पांच प्रॉपर्टी क्लोज आइडिया समझा, एसोसिएटिविटी समझा, एडिशन समझा, समझा, कम्युनिटी समझा, जनरेटर एलिमेंट समझा। हो सकता है जनरेटर एलिमेंट आधा समझा होगा, कुछ भी समझा होगा, कोई भी समझो। ग्रुप को साइक्लिक कब बोलेंगे? जब जनरेटर एलिमेंट होगा। जनरेटर एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट G में ऐसा कोई सिंगल एलिमेंट जो सारी G को जनरेट करे with respect to given binary operation। समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरेटर आगे समझो। ओके, चलो अब पेज चेंज एंड एक्चुअल यूनिवर्सिटी पेपर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पिछले 5 साल में 3 बार मिनिमम आ गया है, उसी को ठीक है। चलो क्वेश्चन है, लेट G equal to 1 minus 1 I minus I be the given set, let G equal to 1 minus 1 I minus I be the given set। पहला क्वेश्चन, is G comma multiplication is an abelian group, और कभी ऐसा क्या है, prove that G is an abelian group with respect to multiplication। कभी ऐसा क्या है। सेकंड क्वेश्चन, is G comma multiplication is cyclic? क्वेश्चन इसका वेरिएशन में 6 मार्क आया है, कभी 8 मार्क। ओके, यस, ये आपका क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना। प्लीज ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है कैसे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन देखना, देखो ताकि आपको सारे क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन समझ में आए। चलो सॉल्यूशन, पहला सबसे पहला अलजेब्रिक सिस्टम, यहाँ अलजेब्रिक सिस्टम क्या है? G comma multiplication। व्हाट इज G? 1 minus 1 I minus I। ओके, व्हाट इज स्टार? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ओके, इतना समझा। अलजेब्रिक सिस्टम क्या होता है? अलजेब्रिक सिस्टम होता है सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अलजेब्रिक सिस्टम G comma star, G is -1 I minus I, star is your multiplication ऑपरेशन। ओके, अब देखो 5 प्रॉपर्टीज देखिए, क्योंकि अलजेब्रिक सिस्टम का रहेगा वो क्लोज रहेगा, एसोसिएटिविटी रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट? यस, क्लोज एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 5 प्रॉपर्टी रहेगा तो मिलेगा। ओके, यस, चलो एक प्रॉपर्टी। हर्ष अमृत कैन बी यूज्ड क्रॉस इंस्टेड ऑफ स्टार, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है। कैसा है? वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा टीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्वेश्चन पेपर टाइप करता है, बराबर, उसने इंसर्ट सिंबल वापरा तो वो मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, राइट? कीबोर्ड का सिंबल वापरा तो वो ऐसा होता है, समझा? तो ये कंफ्यूजन वहां से क्रिएट है, फिर जब चैप्टर आगे बढ़ जाएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? चलो देखो इधर फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 इज क्लोजर एक्सियम प्रॉपर्टी। प्लीज ध्यान दो, क्लोजर एक्सियम प्रॉपर्टी, तो क्लोजर एक्सियम प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी? फॉर ऑल a b belongs to G, if a multiplication b is belongs to G, then G multiplication is closed। ओके, तो G मल्टीप्लिकेशन क्लोज है, ये प्रॉपर्टी लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम था हमने इससे पहले जो भी एग्जांपल देखे, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, जो भी देखे, वहां पे जो सेट था वो सेट इनफाइनाइट था, बिकॉज़ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीजर नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, सारे इनफाइनाइट नंबर से। तो यहां जो सेट दिया है वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट का मुझे क्लोज चेक करना है, तो पहला एलिमेंट 1 का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा, -1 का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा। इन शॉर्ट हर एलिमेंट का साथ मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम बनाते हैं प्रिपेयर, क्या बोलते हैं? प्रिपेयर कंपोजिशन टेबल, प्रिपेयर कंपोजिशन टेबल फॉर G कॉमा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रिपेयर कंपोजिशन टेबल फॉर G कॉमा मल्टीप्लिकेशन। अब यहां आपका कंपोजिशन टेबल इज डायमेंशन टेबल, ऑपरेशन एलिमेंट इज 1 -1 I minus I, जाएगा 1 -1 I minus I। ओके, नाउ परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, नाउ परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। चलो भाई का मल्टीप्लिकेशन होगा,
So 1 into 1 is 1 minus 1 I minus I. Similarly, minus 1 1 minus I. Then I into 1 is I into minus 1 is minus I into I is I square is minus 1, I into I square minus 1 minus 1 plus minus I into 1 is minus I minus I into I plus 1 minus I into minus I square is minus 1. Okay, okay. अभी मतलब minus 1 okay. चलो अब मैं बोलूंगा since all the entries of composition table are closed, देखो ना एक भी एंट्री बाकी नहीं composition table में, all the entries of composition table are closed, therefore g comma multiplication is closed. पहला प्रॉपर्टी हो गया, क्लोज एग्जिस्ट हो गया, समझा क्लोज एग्जिस्ट समझा क्लोज एग्जिस्ट समझा ओके क्लोज एग्जिस्ट समझा। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी इज associative property. What is associative property? Associative property होता है for all a comma b comma c belongs to g if a binary operation b binary operation c equal to a binary operation b binary operation c, अगर ऐसा रहेगा तब बोलेंगे g comma multiplication is associative. ओके चलो बोलेंगे से a equal to कोई एलिमेंट b equal to कोई एलिमेंट c equal to कोई एलिमेंट, अब ये किसी एलिमेंट लेंगे ऑब्वियसली तीनों एलिमेंट होने चाहिए g में से, तो चलो लेते हैं 1 i minus i, अप्लाई प्रॉपर्टी में 1 मल्टीप्लाई बाय i मल्टीप्लाई बाय माइनस i is equal to 1 मल्टीप्लाई बाय i मल्टीप्लाई बाय माइनस i। देखो मल्टीप्लिकेशन associative ऑर्डर करके यहाँ पे तो 1 as मल्टीप्लिकेशन as ये i into minus i बन जाएगा 1, ये बन जाएगा i into minus i, ये बन जाएगा 1 equal to 1। मैं बोलूंगा g comma multiplication is associative, बन गया associative। अब तीसरा प्रॉपर्टी existence of identity element, existence of identity element। ओके नाउ identity element existence of identity element, existence of identity element, what is existence of identity element? प्रॉपर्टी क्या होता है for all a belongs to g there exists an element e belongs to g such that a by the operation multiplication e is equal to e multiplication e, तो बोलेंगे से यहाँ कोई भी एलिमेंट लेंगे i, तो अपने प्रॉपर्टी को बोलो i मल्टीप्लाई बाय e is equal to i, तो बोलो आंसर क्या आएगा 1, is it 1 present in g, हां तो बोलूंगा therefore identity element e equal to 1 exists in g constant, identity element exists, अब inverse element, अब आएगा inverse element प्रॉपर्टी नंबर डी is fourth inverse element property। ओके inverse element property ये होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा ये सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, अपना यूनिवर्सिटी अपने कॉलम में था डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए, बट मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट कैसे आंसर लिखते सारे डायरेक्ट निकालते हैं, ये कंपोजिशन टेबल समझ सारे आंसर डायरेक्ट निकाले जाएंगे, निकल सकते हैं। तो inverse element property inverse element property for all a belongs to g there exists an element alpha belongs to g such that a by the operation multiplication is alpha equal to e is equal to alpha multiplication a, चलो कोई एलिमेंट अल्फा आपने a ले लो तो चलो से a is equal to i, तो चलो अपना प्रॉपर्टी i multiplication with alpha is equal to identity element is 1। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे what is value of alpha, ये क्वेश्चन ये है कि आप i के साथ i को क्या मल्टीप्लाई करोगे बनाएगा, i को क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ऑब्वियसली i को मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो 1 आएगा, आंसर इज माइनस i। ओके तो i का इन्वर्स हो गया माइनस i। अब देखो अभी हर एक का इन्वर्स निकालना भाई, सारे एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है, तो अभी हर एक एलिमेंट प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो मैं बोलूंगा देखो 1 का इन्वर्स क्या है -1 का इन्वर्स क्या है, i का इन्वर्स क्या है -i का इन्वर्स क्या है, डायरेक्ट देखो देखो एक का निकालना है बाकी डायरेक्ट टेबल से एक टेबल पर कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारा नेटवर्क पकड़ के रखो, अब मैं एक चीज दो बार बताऊंगा, एक चीज दो बार तीसरी बार रिपीट नहीं करेंगे बराबर, दो बार बताऊंगा एक चीज दो बार बताऊंगा, ठीक है देखो कंपोजिशन टेबल प्रॉपर्टी आपने ओके कंपोजिशन टेबल प्रॉपर्टी का सारी कंपोजिशन टेबल सारी इंटीग्रल है since all the composition table are closed, operation is multiplication इसका मतलब वो हमारा associative हो गया, so system closed है system associative है system closed है system associative दो प्रॉपर्टी satisfy। अब तीसरा प्रॉपर्टी का existence of identity element, चौथा प्रॉपर्टी का existence of inverse, प्लीज ध्यान दो देखो closed existence associative समझा, existence of identity element कौन सा होगा बताओ डायरेक्ट बताओ, शॉर्टकट देखो शॉर्टकट ये है कि आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम है बराबर, ये आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम है 1 -1 i minus, ये जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है ना, तो ये जो राइट वाली एंट्री है सारी closed existence आपने चेक किए बराबर, इनमें से ऐसा कौन सा कॉलम जो एग्जैक्ट लेफ्ट साइड का है, इनमें से ऐसा कौन सा कॉलम है जो एग्जैक्ट लेफ्ट साइड का कॉलम है, इनमें से ऐसा कौन सा कॉलम है जो एग्जैक्ट लेफ्ट साइड का आंसर पता चलेगा। सो ये देखो ये पहले कॉलम है जो एग्जैक्ट लेफ्ट साइड का, तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है ना, दैट इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट, समझा। इसके आगे दुनिया में कोई आइडेंटिटी ढूंढने को नहीं है, ओके ना, प्लीज प्लीज ध्यान दो आइडेंटिटी होगा इन्वर्स, एक आइडेंटिटी का 1 तो आपको इन्वर्स एक चीज चार चार बोलूंगा अच्छी बात नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट पता चलेगा आपको फाइंड करना है इन्वर्स 1 का इन्वर्स फाइंड करना है 1 का इन्वर्स फाइंड करना है, तो 1 के रो में आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम में इन्वर्स करो, वापस वापस -1 का इन्वर्स फाइंड करना है -1 के रो में आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम में इन्वर्स करो, i का इन्वर्स फाइंड करना है तो i के रो में आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम में इन्वर्स करो, -i का इन्वर्स फाइंड करना है तो -i के रो में आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम में इन्वर्स करो, हो गया। तो जो भी एलिमेंट इन्वर्स फाइंड करना है उस एलिमेंट के रो में आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढेगा उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम में इन्वर्स करो, तो देखो यहां पे हमने से इक्वल टू i का इन्वर्स क्या था ना -i को i का इन्वर्स है, तो 1 का इन्वर्स is 1 -1 का इन्वर्स -1 i का इन्वर्स is -i -i का इन्वर्स is i, ओके क्या सारे एलिमेंट के इन्वर्स डाले हैं, यस यस, तो therefore g comma star is group, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया ग्रुप बन गया, ओके चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया ग्रुप बन गया। अब पांचवा प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल a comma b belongs to g if a multiplication b is equal to b multiplication a, then हम बोलेंगे g comma multiplication is commutative, g comma multiplication is commutative, ओके तो चलो यहां से बोलेंगे a as i b as minus i, चलो लेते हैं a multiplication b plus a multiplication b चलो i multiplication with minus i equal to minus i multiplication i, so 1 equal to 1 बोलेंगे therefore g comma multiplication is commutative, g multiplication commutative है तो मैं बोलूंगा therefore g comma multiplication is abelian group, ओके abelian group हो गया। अब नेक्स्ट आएगा सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि जनरेटर एलिमेंट होना चाहिए बराबर, राइट चलो देखते हैं पहला एलिमेंट कौन सा है आपके g का 1, चल प्लीज ध्यान दो यहां हम हर साल बच्चे को समझाते हैं, बच्चा हर साल मिस्टेक करता है, हर साल बताते हैं हर साल मिस्टेक करता है, ठीक है तो यहां देखो मिस्टेक करने का नहीं, राइट चलो साइक्लिक ग्रुप देखो पहला एलिमेंट 1 व्हाट इज 1 1 का मतलब होता है 1 का सिंगल टर्म्स, व्हाट इज 1 2 का मतलब होता है 1 के दो टर्म्स, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, आंसर इज 1। अब अच्छा 1 को जनरेट करना है -1 का मतलब होता है माइनस का सिंगल टर्म्स -1 -1 का मतलब होता है -1 के दो टर्म्स, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज 1 -1 का 2 मतलब होता है -1 के तीन टर्म्स, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, आंसर इज -1 पता चला -1 से दो यूनिट जनरेट करते हैं इसको एक 1 को दूसरा को, अब चलो i is 1 मतलब i is 2 का मतलब i के दो टर्म्स, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन इज i स्क्वायर -1 i क्यूब i is 3 मतलब i के तीन टर्म्स, ओके ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, अगर ऑपरेशन आगे करेंगे एडिशन तो देखो समझेगा यहां 1 is 2 जॉब करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन, अगर ऑपरेशन मतलब हुआ राइट, इसी में बोल रहा i क्यूब मतलब i के तीन टर्म्स, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, सो i स्क्वायर -1 into i is -i, ओके देन i is 4 मतलब i के चार टर्म्स, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, आंसर इज 1। चेक करो i ने क्या i ने सबको जनरेट किया, क्या i ने g के सारे एलिमेंट को जनरेट किया विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, बोलेंगे since i from g since element i from g is generating all the elements of g with respect to multiplication बराबर, therefore I is generator element, therefore g comma multiplication is cyclic group। अब आप बोलोगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइनस बच्चे के पास तो माइनस साइकिल लिखा है तो माइनस साइकिल सबको जनरेट करता है, फिर क्वेश्चन पूछा सर माइनस साइकिल है ना मैं नहीं बोल रहा, हमने डेफिनेशन में लिखा एटलीस्ट 1 जनरेट होना चाहिए, अगर सारी जनरेट करता हो गया एटलीस्ट 1 होना चाहिए, राइट तो यहां पे बता दिया हो गया जनरेटर हो गया साइकिल ग्रुप आगे खत्म, समझा एक ही जगह में पूरे क्वेश्चन को देखा होगा, हां एक ही आना डिफरेंट है
ठीक है हाँ अब क्वेश्चन के बाद ओके देखो समझो डिफरेंट तरीके से बोलना है मैं अगर वो तो ये होना आइडिया आगे नहीं ठीक है 90% 90% ओके 190 ओके ठीक है ये समझ सकते हो तो अब लेंगे सेम क्वेश्चन या सेम टाइप का क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ सॉल्व अगर आप देखो तो लिखा है g is equal to 1 omega this is omega and omega square बोला है तो that g multiplication is abelian okay and same is g multiplication is cyclic ठीक है सेम क्वेश्चन है सेम पैटर्न एवरीथिंग सेम जैसे i स्क्वायर को माइनस 1 तो ऐसे बेसिकली व्हाट इज यहां पे 1 का वैल्यू बेसिकली i को माइनस 1 तो व्हाट इज ओमेगा इज बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 1 तो इन शॉर्ट ओमेगा क्यूब इज राइट सो ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ सो ओमेगा आई जस्ट लिख लिया हमने अपना चलो बताते हुए चलो देखो ये ऑपरेशन आएगा मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आएगा हमारा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डन अब ये क्लोज है ओके एसोसिएटिव रहेगा ओके आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है तो बनाएगा इनवर्स बोलो 1 का इनवर्स ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स बोलो 1 का इनवर्स 1 का इनवर्स 1 बोलो ओमेगा का इनवर्स इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनवर्स ओमेगा हो गया प्रूफ समझा प्रूफ हो गया अब ये आगे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड जनरेटिंग बोलो कुछ जनरेट करो यस यस ओमेगा भी और मुझसे 1 का जनरेट करेंगे 1 1 1 2 1 2 1 2 1 जनरेट करना मुझसे इसका मतलब जनरेट हो जाएगा तो खत्म अगर खत्म नहीं लेकिन मान ले देखो इधर जनरेट एलिमेंट हां वो आइडेंटिटी है मैंने जनरेट ओमेगा जनरेट ओमेगा स्क्वायर जनरेट ओके चलो एवरेज अब आएगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n चलो देखो व्हाट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n so important है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ठीक है क्वेश्चन करूंगा उसके बाद डायरेक्टली नोट करके लिखूंगा तो समझ क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर का मिलेगा सब कुछ ओके एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n पहला पहला इज एडिशन मॉड्यूलो n राइट व्हाट एडिशन मॉड्यूलो n क्या होता है देखो a एडिशन मॉड्यूलो m b का रिजल्ट है परफॉर्म a plus b डिवाइड बाय m मॉड्यूलो x मतलब रिमाइंडर आंसर a एडिशन मॉड्यूलो m b is परफॉर्म a plus b डिवाइड बाय m रिमाइंडर आंसर एग्जांपल एग्जांपल say 5 एडिशन मॉड्यूलो 4 is 9 आंसर आएगा 5 plus 4 sorry 9 5 plus 9 5 plus 9 is 14 14 divided by 4 रिमाइंडर is 2 okay 7 एडिशन मॉड्यूलो 5 is 11 7 plus 11 is 16 16 divided by 5 रिमाइंडर is 1 okay अब इस तरह तुमको देखो क्या होता है सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n राइट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m मतलब a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m b तो परफॉर्म a मल्टीप्लिकेशन b डिवाइड बाय m the remainder is your answer okay so मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो तो एग्जांपल देना होगा 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 with 8 8 2 are 16 16 divided by 3 remainder 1 next 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 with 6 5 6 are 30 30 divided by 4 remainder 2 okay ये समझ में आ रहा है एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m इसको नहीं समझा ये बताओ बस समझ में यस ओके चलो ओके अब आइटम 2 अब एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आते हैं ठीक है नो नोटेशन डायग्राम नोट नंबर 1 let zm be the let zm be the set of integer let zm be the set of integer between 0 to m minus 1 let zm be the set of integer between 0 to m minus 1 what is z5 z5 is the set of integer from 0 to m minus 1 that is 0 to 4 okay ये नोटेशन आपको यूज करना है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है राइट चलो what is z7 z7 is the set of integer between 0 m minus 1 z7 minus 6 0 1 2 3 4 5 6 okay next is z6 minus 0 is what is z6 is 0 to 5 उसमें से 0 निकालो मतलब ये हो गया 1 to 5 okay so z6 is the element from 0 to 5 उसमें से एलिमेंट 0 निकालो तो बचा 1 to 5 okay okay यहां पे दोनों का जैसा आएगा सबको मिलाइए नोट चलो अब समझा तो हम लेंगे क्वेश्चन एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m के ऊपर क्वेश्चन चलो अगेन बोर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन prove that z7 comma addition modulo 7 is and abelian group क्या prove that मतलब एक क्वेश्चन सारी पॉसिबिलिटी है तो सारी पॉसिबिलिटी हमारे prove that z7 comma addition modulo 7 is abelian group so question is z7 comma addition modulo 7 is z7 addition modulo 7 cyclic question mark find the order and subgroup generated by element 2 3 and 4 find the order and subgroup generated by element 2 3 and 4 ये आपका क्वेश्चन है एग्जांपल ओके तो बेटे एक मार्क का है सॉल्यूशन so the solution is पहले तो अलजेब्रिक सिस्टम ओके अलजेब्रिक सिस्टम ओके चलो बोलो
एंड व्हाट इज एडिशन मॉड्यूलस सर्विस, ठीक है। चलो अब अपने को करना है पांच प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी इज क्लोजर एक्सियम, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर एक्सियम। अब ये वापस सब लिखो की शॉर्ट में बताऊंगा। चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन पहला लिख देता हूं, क्लोजर एक्सियम फॉर ऑल a comma b belongs to Z7 if a binary operation is also belongs to Z7 then Z7 addition modulus 7 is closed, ओके। चलो कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, तो बोलेंगे प्रिपेयर कंपोजिशन टेबल फॉर Z7 addition modulus 7, यस कंपोजिशन टेबल बनाएंगे Z7 addition modulus 7, ओके। चलो तो प्रिपेयर कंपोजिशन टेबल, तो ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस 7 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6। चलो अभी एडिशन मॉड्यूल राइट कितना याद रखो हमेशा कि जो एडिशन मॉड्यूलस 7 है ना आपका रिजल्ट 7 से ऊपर नहीं आएगा, ऑब्वियसली 6 ऊपर नहीं जाएगा 7 क्योंकि फिर डिवाइडिंग बाय n ना your remainder possible is 0 कितना समझो, तो 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 plus 1 2 1 plus 3 1 plus 4 1 plus 5 1 plus 6 is 7 divided by 7 remainder 0 राइट। फिर यहाँ से चलो 3 4 5 6 0 2 plus 2 is 4 2 plus 3 is 5। अब जैसे यहाँ डिवाइड कर रहा हूं 2 plus 3 is 5 5 divided by 7 remainder जब तक रिजल्ट 7 है उसके ऊपर नहीं जाता remainder, तो 2 plus 6 2 plus 5 is 7 divided by 7 remainder 0 2 plus 6 is 8 divided by 7 remainder 1 5 6 0 1 3 plus 3 is 6 3 plus 4 is 7 divided by 7 remainder 0। अब चेक कर दो जाएगा, ओके 6 plus 6 divided by 7 remainder, ओके। तो मैं बोलूंगा since all the entries of composition table are closed, बराबर बोलेंगे therefore Z7 addition modulus 7 is closed, हो गया एडिशन मॉड्यूलस क्लोज। चलो ये बन गया हमारा क्लोज। पहला प्रॉपर्टी अब एसोसिएटिव रहेगा 100% एसोसिएटिव रहेगा। चलो सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल a comma b comma c belongs to Z7 if a binary operation b binary operation c is equal to a binary operation b binary operation c then Z7 addition modulus 7 is associative। चलो कोई भी नंबर बोलोगे, बोलो b बोलो c, से 4 5 3, चलो 4 addition modulus 7 with 5 addition modulus 7 with a is 4 addition modulus 7 with 5 addition modulus 7 with 3 4 addition modulus 7 with 5 plus 3 is 8 the answer is 1 4 plus 5 9 answer is 2 and 4 plus 1 5 2 plus 3 5, ओके। मैं बोलूंगा Z7 addition modulus 7 is associative, ओके। चलो हो गया addition modulus 7 is associative हो गया, यस। चलो अब नेक्स्ट क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी। चलो व्हाट आइडेंटिटी एलिमेंट जो बताया उसके हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा कौन सा कॉलम है जिसके साथ मैच करता है एग्जैक्टली देखो लो आइडेंटिटी एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट या इसमें जो जाना है, तो फॉर ऑल a belongs to Z7 if for all a belongs to Z7 there exists an element e belongs to Z7 such that a binary operation e is equal to e binary operation a, राइट। तो कोई भी a ले लो, बोलो 4 addition modulus 7 with e equal to 4, तो दैट मींस e का आंसर 0, e का आंसर 0 जो है Z7 में है, देयरफॉर बोलूंगा आइडेंटिटी एलिमेंट exists in Z7 addition modulus 7, ओके ना। अब नेक्स्ट आएगा फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी। चलो इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी में बताओ हर एलिमेंट का इनवर्स निकालना है, तो 0 का इनवर्स 1 का इनवर्स 2 का इनवर्स 3 का इनवर्स 4 का इनवर्स 5 का इनवर्स 6 का इनवर्स, जिसका इनवर्स आइडेंटिटी निकालना है आइडेंटिटी निकालना है 0, तो जिसका भी इनवर्स निकालना है उसके आइडेंटिटी ढूंढो, आइडेंटिटी ढूंढो करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स, जिसका इनवर्स निकालना आइडेंटिटी ढूंढो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स। 3 का इनवर्स निकालना है 3 का आइडेंटिटी ढूंढो करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स, 4 का इनवर्स निकालना आइडेंटिटी ढूंढो करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स, 5 का इनवर्स निकालना आइडेंटिटी ढूंढो करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स, 6 का इनवर्स निकालना आइडेंटिटी ढूंढो करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स। बोलो 0 का इनवर्स आएगा 0 0 का इनवर्स 0 1 का इनवर्स 6 5 4 3 2 1, ओके। तो इसका इनवर्स है यस, तो इनवर्स प्रॉपर्टी लगेगा फॉर ऑल a belongs to Z7 there exists an element alpha belongs to Z7 such that a binary operation alpha equal to alpha binary operation a, तो सबका यूनिट है बोलूंगा therefore Z7 addition modulus 7 is 0, ओके। चलो वो बन गया। अब पांचवा प्रॉपर्टी आ गई, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 5 is commutative property, राइट। commutative property, what is commutative property? commutative property for all a comma b belongs to Z7 if a binary operation b equal to b binary operation a, अगर ऐसा होगा तो भी Z7 addition modulus 7 is commutative होगा। चलो कोई नंबर 3 addition modulus 7 with 5 is equal to 5 addition modulus 7 with 3 3 plus 5 8 1 equal to 1, that implies Z7 addition modulus 7 is commutative है, तो मैं बोलूंगा Z7 addition modulus 7 is abelian group। चलो पहला क्वेश्चन हो गया शॉर्ट abelian हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है साइक्लिक ग्रुप, ओके। तो साइक्लिक ग्रुप है लेकिन जनरेट एलिमेंट मुझको सीधा देना आता है, तो अगर नहीं तो मुझको सीधा देना आता है, तो देखो साइक्लिक ग्रुप में हम बोलेंगे 0 is to 1 is 0 0 is to 2 is 0 के दो आंसर्स ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस 7, तो 0 किसी को जनरेट नहीं कर रहा है, कोई कर 1 is to 1 is 1 1 is to 2 is 1 के दो आंसर्स ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस 7 1 is to 3 मतलब 1 के तीन आंसर्स ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस 7 1 is to 4 is 1 के चार आंसर्स ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस 7 1 is to 5 मतलब 1 के पांच आंसर्स ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस 7 1 is to 6 मतलब 1 के 6 आंसर्स ऑप्शन इज एडिशन मॉड्यूलस 7 1 is to 7 is 1 के 7 आंसर्स 1 2 3 4 5 6 7 ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस 7, राइट। तो देखो 1 7 नहीं आएगा, तो आएगा मतलब 7 डिवाइड 7 देखो क्या 1 ने सबको जनरेट किया, यस। तो मैं बोलूंगा दैट implies 1 belongs to Z7 is generator, therefore Z7 addition modulus 7 is cyclic group, राइट। यहाँ तक ओके था। अब सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट 2 3 and 4 ये नया कंसेप्ट है, ठीक है। आएगा सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट 2 3 and 4। चलो अब इतना समझो ये जो ग्रुप है वो तो साइक्लिक ग्रुप है, राइट। एंड जो Z7 है 0 1 2 3 4 5 6 वो तो आपका है ग्रुप, अब उसका सबसे की होगा सब ग्रुप, ओके। मुझको सीधा बोलते 1 1 ब्रैकेट में प्लस 7 1 होगा ना, मुझको सीधा क्या बोलना है 1 is to 7 जो 1 होगा ऐसा बोलना है। अच्छा मुझको सीधा करना है 2% 7 equal to 1 ऐसा मुझको सीधा करना है, बराबर। मतलब 2% 7 equal to 1 ये क्या होगा मुझे नहीं समझा, हां बस अब समझ देखो क्या बोलना है 7 mod 2 1 तो कैसा बोलना है 7 mod 2 equal to 1, हां तो देखो बोलना है जो सब ग्रुप बोल रहा है उसके बारे में बोल रहा है। अब ये सब ग्रुप कॉपी में चलो उसके बारे में बोलना है, देखो वो समझ गया, ठीक है ठीक है। लेकिन मुझे चेक नहीं करता समझ नहीं करता उसके हिसाब से समझ नहीं मुझको देखो समझ गया बोल रहा है चेक में तो अभी जो मार्क्स में चेक नहीं कर रहा उसका भी समझ गया, हां अभी बोल रहा है जो दिक्कत नहीं बट ये चैप्टर को जो समझ नहीं ठीक है अभी हां सब जनरेटेड एलिमेंट देखो अब अपना जो सेट है वो ग्रुप है ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस है, अब मुझे करना है सब ग्रुप जनरेटेड एलिमेंट तो जो एलिमेंट 2 है वो कितने लोगों को जनरेट करता है 2 is to 2 मतलब 2 के दो आंसर्स ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस आंसर 4 2 is to 3 मतलब 2 के तीन आंसर्स ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलस आंसर 6 2 is to 4 मतलब 2 के चार आंसर्स आई थिंक सो मेरे को लगता है ये भी जनरेट करेंगे 8 मतलब आएगा 1 2 is to 5 ऐसा कर सकते हैं 2 is to 5 2 is to 4 which is 2 is to 4 1 है which is 1 कर सकते हैं 2 is to 6 मतलब 2 is to 5 which is 2 2 is to 5 2 है which is 2 आएगा 5 2 is to 7 मतलब 2 is to 6 which is 2 जो कि 5 है 5 is 2 पॉसिबल है 5 is 7 0 तो पता चलेगा 2 भी जनरेट करते हैं, ओके। या पता चलेगा 2 भी जनरेट ठीक है, चेक करते हैं 3 is to 1 is 3 3 is to 2 is 3 plus 3 is 6 3 is to 3 9 3 is to 3 is 3 3 3 is 9 9 मतलब 2 आगे 3 जनरेट आएगा। चलो 4 का चेक करते हैं 4 का चेक करते हैं 4 का चेक करेंगे तो 4 is to 1 आएगा 4 is to 2 8 मतलब 1 4 is to 3 मतलब 12 मतलब 5 4 is to 4 is 16 मतलब 16 मतलब 2 ये भी जनरेट आएगा, राइट। तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा ये क्वेश्चन इसलिए रिलेटेड है जो बच्चे एलिमेंट है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का चेक करते हैं जैसे कि अभी सब ग्रुप जनरेटेड एलिमेंट है, जैसे कि सपोज मेरा क्वेश्चन है
Z6 comma addition module 6 is I think is abelian, right? So check तुरंत अभी सामने addition module 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ये बदल करें हम बदल ये ना बदल इसको राइट करना है इसको हम लेते हैं तो Z5 addition module 5 ओके तो Z5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 बोलो 0 1 2 3 4 चलो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3 ओके अब ये ग्रुप है यस क्यों है क्योंकि क्लोज है एसोसिएटिव है यहाँ मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 0 जो Z5 में है आई इनवर्स आ गया 0 0 10 4 4 10 3 4 10 1 अब सब ग्रुप चाहिए जनरेट एलिमेंट बनाएगा सब ग्रुप बाय 2 देखो प्लीज ध्यान दो व्हाट इज 1 2 व्हाट इज 2 दो के दो अकरेंसेस एडिशन मॉड्यूल 5 2 प्लस 4 ओके 2 प्लस 2 के तीन अकरेंसेस ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूल 5 2 प्लस 2 प्लस 3 6 6 मतलब 1 ओके 2 प्लस 2 4 8 हो गया ये जनरेट करके डॉट नंबर देना टाइम नंबर देना ठीक है तो 3 1 3 प्लस 1 3 9 4 12 12 12 12 1 मिनट ये सिर्फ लाइन नंबर है इसलिए लाइन नंबर की वजह से अब नंबर एक कॉन्सेप्ट समझना प्लीज Z6 एडिशन मॉड्यूल 6 addition modulus is 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 3 4 5 0 1 4 5 0 1 2 5 0 1 2 3 0 1 2 3 4 ये क्लोज भी एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सब देखो ये सब कुछ देखो चलो 2 2 2 2 के दो ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूल 6 2 2 3 2 2 के तीन ऑपरेशन ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूल 6 कॉन्सेप्ट 2 6 6 डिवाइडेड बाय 0 2 2 2 के चार ऑपरेशन 2 के चार ऑपरेशन ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूल 6 तो 2 2 2 1 डिवाइडेड बाय 6 अब देखो इसके आगे आप जहां भी जाओगे ये सीक्वेंस 3 रिपीट होगा 2 0 0 0 अब देखो 2 5 आएगा 2 5 2 4 5 2 2 2 2 समझा तो ये सीक्वेंस जो है 0 0 0 0 तो अब व्हाट इज द सब ग्रुप प्लीज ध्यान दो व्हाट इज सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट 2 मतलब एलिमेंट 2 ने कितने लोगों को जनरेट किया कितने एलिमेंट को जनरेट किया तो 0 2 4 और ये एलिमेंट को जनरेट करने के लिए 2 को कितने मैक्सिमम ऑर्डर पर जाना पड़ा ओके यस ये सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट 2 अब इस सिंपल से क्वेश्चन के लिए जनरेटेड बाय 3 2 3 के दो ऑपरेशन ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूल 6 मतलब 3 मतलब 3 3 ऑपरेशन ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूल 6 3 9 9 डिवाइडेड बाय 6 अब देखो 3 0 0 0 इसका मतलब व्हाट इज सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट 3 इज 0 and 3 and what is order of the issue ओके समझा समझ इसको ओके मुझसे समझा रमेश समझा रमेश समझा समझा ओके मानसी ओके अंडरस्टूड तो चलो हमने मेडिटेशन मॉड्यूल किया है एडिशन किया है मेडिटेशन मॉड्यूल का टाइम लगेगा एक हो गया है अब मार्क्स दे सकते हैं अनिश्चित नेक्स्ट जहाँ पे मार्क्स एक इतना बताते हैं आगे तो पता चलेगा अपना आगे है तो ये अपना पहला स्लाइड पहला सेशन ठीक है बेसिक डेफिनेशन डन न्यूमेरिकल डन अब एडिशन मेडिटेशन मॉड्यूल वहां पे होने के बाद क्या पढ़ेंगे पता नहीं करते फिर यहाँ जाएंगे कंसेप्ट को तो मतलब मेरे ख्याल से एक 5 घंटे हम लोग पूरी गाइड करेंगे आगे आगे 5 घंटे ठीक है आगे दो सेशन और बीच में खाली समझा देखो ठीक है हां इसका तुम बोलिए ये सही रहेगा उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट क्या हां एक मिनट लेते हैं ये कौन सा है ऑर्डर से टोटल ऑर्डर से बता उसे कैसे है ये जल्दी कौन सा करने से हो मुझसे जब लास्ट के प्रमोशन करूंगा तब इसने मुझे पूछा कि नेक्स्ट टाइम पे जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स है ना जैसे कि लॉजिक है ग्राफ है रिकंसिलिएशन है वो सब करेंगे एक ही बार काट देंगे तुमने बोला ना सब काट देंगे इसके 5 क्वेश्चन देंगे ये सब राइट ग्राफ का ना 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा लॉजिक में इंटरसेक्शन ग्राफ 2 मिनट करूंगा रिकंसिलिएशन करूंगा इसको नहीं देखो आज ना एक चैप्टर उसके बाद 5 मिनट लगते हैं मतलब आगे 2 सेशन ये कर लेगा तो ये चैप्टर 3 सेशन चलेगा ये चैप्टर चलेगा 2 सेशन चलेगा मुझसे क्या चैप्टर पढ़ा नहीं कॉलेज में सब सेक्स के अंदर ही आता है आपके ऑर्डर से कोई बोलते टोटल ऑर्डर से तो किसी से टोटल ऑर्डर से कभी बोलते तो ऑर्डर से चेंज करता हूं ठीक है अभी टाइम लगा मैं वो फाइल सबको देता हूं फाइल आएगा कितने समय क्या बोलते हैं क्योंकि ये जो टोटल ऑर्डर है ऑर्डर से ये मुझे सेवा नहीं है सेकंड टोटल ऑर्डर का उसका चेन है हां तो मैंने समझ टोटल ऑर्डर चेन ओके तो मैंने डाल दिया है इनको राइट चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट ओके तो ना हो गया ओके चलो मीटिंग एक और करो मैं डाउनलोड कर लिया हमने चलो मैं करता हूं
बोल रहा है नो प्रॉब्लम, ओके चलो axiom property. So what is basically a closure axiom property is if you select any two numbers, A and B from one set, perform whatever be the given operation. If the result is also present in the given set, then your system is closed. ठीक है. Then groupoid के बाद था आपका semi group. For semi group, you need to check two properties. First, closure axiom. Second is associative property. So by default, if the operation is addition and multiplication, it is associative operators, right? Then third is your monoid. What is monoid? Basically, for monoid, you need to check three properties: closure axiom, associativity, existence of identity element. So what is identity element property? For all A belongs to G, there exists an element E belongs to G such that A binary operation E is equal to A is equal to E binary operation A. तो E ऐसा एलिमेंट होगा जो किसी भी ए के ऊपर ऑपरेट होगा तो ए को फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ए रहेगा. So by default, in short, if the operation is addition, identity element is always 0. If operation is multiplication, identity element is 1. Okay. Then for group, you need to check four properties: closure axiom, associativity, existence of identity, existence of inverse. Then abelian group is nothing but simply a commutative group, a group that four property with commutative property is abelian group. Then you have a concept of cyclic group. What is cyclic group? Any group G comma star is said to be a cyclic group if and only if at least a single generator element is present in G comma star. So when I say at least a single generator element, that means if any single element of G can generate all the element of G with respect to given binary operation, then that single element is called as generator element. And since such at least one generator element is present in G comma star, then G comma star is called as cyclic group. ओके यहां से हमने शुरुआत की थी. उसके बाद हम गए थे, एक कंसेप्ट लिया था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. लेट G इक्वल टू 1 minus 1 I minus y, 1 minus 1 I minus 1 is a given set, then prove that G is an abelian group with respect to multiplication. So abelian group मतलब हमने 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है: क्लोजर एक्सियम, associativity, existence of identity, existence of inverse and कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो एबिलियन बन जाएगा. फिर चेक करना है कि जनरेटर है, अगर जनरेटर एलिमेंट है तो वो साइक्लिक ग्रुप भी बन जाएगा. तो क्लोजर एक्सियम के लिए हमने प्रिपेयर कंपोजिशन टेबल किया था. बिकॉज व्हाई? इन सेट जी इज अ फाइनाइट सेट. So if the given set is finite, we need to check the operations of each and every element of set G with respect to each and every element of set G, right? So that's why it is a two-dimensional table of each and every element of G with respect to the each and every element of G with the given binary operation multiplication. Check here. Since all the entries of composition table are closed, your system is closed. फिर associativity check किया था, existence of identity check किया था, इनवर्स एलिमेंट मैंने बता दिया था शॉर्ट में कैसे करने का है. देन वो ग्रुप बन गया. कम्यूटेटिव एंड साइक्लिक ग्रुप के लिए हमने जनरेटर एलिमेंट चेक किया. फिर ये आपको सॉल्व करने को दिया था. सिंपल क्वेश्चन है, राइट. देन नेक्स्ट हमने किया था एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम. व्हेन आई से एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम, सिंपली आपका रिजल्ट कभी भी एम को क्रॉस नहीं करेगा. सो ए एडिशन मॉड्यूलो एम विद बी इज योर आंसर इज परफॉर्म a plus b divide by m, remainder is your answer. Similarly, multiplication, when you see a multiplication modulo m with b is a multiplication with b divided by m, remainder is the answer. कुछ notations लिए थे. Zm with the set of integer between 0 to m minus 1. And when I say Zm minus 0, Zm minus 0 is a set of integer between 0 to m minus 1 minus 0. Okay. फिर हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए थे एडिशन मॉड्यूलो m के. करेक्ट है. ये देखो हमने एडिशन मॉड्यूल एम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था. ठीक है. Z7 कॉमा एडिशन मॉड्यूलो 7 इज इट साइक्लिक एंड ऑल, वो हमने चेक किया था. करेक्ट है. एडिशन मॉड्यूलो एम सॉल्व किया था. अब आज करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम का क्वेश्चन. ओके. सो एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम का क्वेश्चन करने के बाद मैं नोट लिखूंगा. नोट तो वो नोट देख के आप सिंपल अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो तुरंत आपको समझेगा ये एबेलियन वगैरह है कि नहीं. ओके. तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m question. Okay. So the question is
prove that z5 minus 0 comma multiplication modulo 5 is an abelian group. Okay. Sub question: is it cyclic? Question mark. Question number 2 is find the order and subgroup generated by 2 and 3. ओके, चलो सॉल्यूशन। पहले तो अपना अल्जेब्रिक सिस्टम क्या है? आपका अल्जेब्रिक सिस्टम दिया है z5 minus 0 comma multiplication modulo 5. Now here what is z5 minus 0? Z5 is nothing but 0 to 4. Z5 is 0 to 4 and minus 0 का मतलब है 1 to 4. Okay, चलो first property is closure axiom property. Okay, what is closure axiom property? For all a comma b belongs to given set, that is z4 minus 0, if a binary operation जो यहाँ multiplication modulo 5 है with b is also presenting z5 minus 0, then we can say that z5 minus 0 comma multiplication modulo 5 is closed. Okay, so to check that, we prepare composition table for z5 minus 0 multiplication modulo 5. Okay, so we will prepare a composition table. So composition table is a two-dimensional table.
So perform multiplication. 1 into 1 is 1. Then 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 2 twos are 4, okay. 2 threes are 6, divided by 5, minus 1. 2 fours are 8, divided by 5, reminder 3. Then यहाँ पे आएगा 1. 3 threes are 9, divided by 5, minus 4. 3 fours are 12, divided by 5, minus 2. 4 fours are 16, divided by 5, minus 1. तो मैं बोलूंगा, since all the entries of composition table are closed, all the entries are closed, therefore, Z5 minus 0, multiplication modulo 5 is closed. ये closed है, okay. So first property हमने check कर लिया. अब second property is associative property, right? What is associative property? Basically पता चल रहा है operation multiplication associative होना है, guarantee. But what is the property is that for all a, b, c belongs to Z5 minus 0, if binary operation b binary operation c is equal to a binary operation b binary operation c. तो ऐसा होगा तो बोलेंगे then Z5 minus 0, multiplication modulo 5 is associative. चलो तो बोलेंगे say a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to 4. क्योंकि आपको ये c सेकंड में से लेना है. तो चलो 2 multiplication modulo 5 is 3 multiplication modulo 5 is 4, 2 multiplication modulo 5 is 3, multiplication modulo 5 is 4. 2 multiplication modulo 5 is 3 4 are 12, 12 divided by 5 minus 2, 2 3 are 6 divided by 5 minus 1, and 2 2 are 4 divided by 5 minus 4, 1 4 are 4 divided by 5 minus 4. Okay, yes, मैं बोलूंगा therefore Z5 minus 0, multiplication modulo 5 is associative. Okay, next third property है. The third property is कौन सा closure associativity? Identity element property. Identity element property. What is identity element property? For all a belongs to given set, that is Z5 minus 0, there exists an element e belongs to Z5 minus 0 such that for all a belongs to given set, there exists an element e also belongs to given set such that a binary operation e equal to e binary operation a. अब इसमें से a जैसा 3 लेंगे. 3 multiplication modulo 5 with e is equal to 3. अब बताओ 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? आंसर इज 1. इज इट 1 exists in Z5 minus 0? Yes. तो हम बोलेंगे therefore identity element exists. Okay, so third property हो गया सॉल्व. अब आएगा fourth property is inverse element property. What is inverse element property? मैंने लास्ट में शॉर्ट में बताया था कि identity element कैसे फाइंड करते हैं. तो ये जो लेफ्टमोस्ट कॉलम है ना, जो कंपोजिशन टेबल का लेफ्टमोस्ट कॉलम है, देखो राइट में ऐसा कौन सा कॉलम है जो उसका एग्जैक्ट मैच करता है. तो ऑब्वियसली पहला ही कॉलम देखो एग्जैक्ट मैच करता है, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट या ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1. ये तो सिंपल है. ओके, चलो अब आएगा इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी. इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी फॉर ऑल a belongs to Z5 minus 0, there exists an element alpha belongs to Z5 minus 0. मतलब for all element a belongs to given set, there exists an element alpha also belongs to given set such that a binary operation alpha equal to e is equal to alpha binary operation a. Okay, तो alpha a का इनवर्स होगा. a का इनवर्स ऐसा एलिमेंट होता है जो a के ऊपर 3 आपको सेपरेट आपको मिलना चाहिए. मुझे पता व्हाट इज 1 का इनवर्स, व्हाट इज 2 का इनवर्स, व्हाट इज 3 का इनवर्स, व्हाट इज 4 का इनवर्स. ऑब्वियसली इनवर्स हमने क्या बोला था, डायरेक्ट बोला था कंपोजिशन टेबल से आपको इनवर्स मिलेगा. जो भी एलिमेंट इनवर्स फाइंड करना है उसके रो में आइडेंटिटी एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स. जिसका इनवर्स फाइंड करना है उसके रो में आइडेंटिटी एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स. जिसका इनवर्स फाइंड करना है उसके रो में आइडेंटिटी एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स. जिसका इनवर्स फाइंड करना है आइडेंटिटी एलिमेंट को उसके रो में करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स. तो 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स. ओके, तो मैं बोलूंगा 1 का इनवर्स is 1, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स 4. Therefore मैं बोलूंगा Z5 minus 0, multiplication modulo 5 is 4 प्रॉपर्टी हो गया आप देखो. तो इट इज ग्रुप. ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी की ग्रुप है. अब आएगा फिफ्थ प्रॉपर्टी. अभी प्रॉपर्टी कौन सा है? अभी प्रॉपर्टी कौन सा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. सो प्रॉपर्टी नंबर 5 is commutative property, right? Obviously operation multiplication property होगा. What is commutative property? For all a comma b belongs to Z5 minus 0, for all a comma b belongs to given set, if a binary operation b is equal to b binary operation a है, then आपका Z5 minus 0, multiplication modulo 5 is commutative. Okay, चलो अब लोग a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, तो बोलेंगे 2 multiplication modulo 5 3 is equal to 3 multiplication modulo 5 2, 3 2 6 divided by 5 minus 1. बोलेंगे therefore Z5 minus 0, multiplication modulo 5 is commutative. Since it is commutative, हम बोलेंगे therefore Z5 minus 0, multiplication modulo 5 is an abelian group. ये हो गया हमारा abelian group का क्वेश्चन सॉल्व. अब आएगा आपका F जनरेटर एलिमेंट. आएगा साइक्लिक ग्रुप के लिए जनरेटर एलिमेंट. ओके, तो चलो चेक करते हैं कि जनरेटर एलिमेंट पहला तो 1. What is 1 is to 1 is 1. What is 1 is to 2 is 2 consists of 1. Operation multiplication modulo 5. So answer is 1. So 1 is only producing it's ठीक है. So next is you can check with 2. 2 is to 1 is 2. 2 is to 2 is 2 consists of 2. Operation multiplication modulo 5 4. 2 is to 3 is 3 consists of 2. Operation multiplication modulo 5 is 2 2 are 4, 4 2 are 8. 8 divided by 5 minus 3. Then 2 4 are, that is 4 consists of 2. Yeah, simple बोल सकते हो 2 is to 3 multiplication modulo 5 2. What is 2 is to 3 is 3 multiplication modulo 5 2. 3 2 are 6 divided by 5 remainder. Check करो. जनरेटर एलिमेंट 2 है. 2 ने सबको जनरेट किया. Therefore 2 is generator element. Therefore Z5, multiplication modulo 5 is cyclic group. Okay, अब obviously order and subgroup बोला है. तो 2 का देखो आंसर निकल गया. What is the subgroup generator element 2? is 1 to 3. कितने ऑर्डर का 4. Okay, अगर 3 का देखो तो क्या पता चल जाएगा. also generator. ठीक है, आगे जाके 4 का लिखना है तो देख सकते हो सैंपल के लिए, राइट. 4 is to 1 is 4, 4 is to 2 is 4, multiplication modulo 5 4 4 6 16 मतलब 1. 4 3 4 मतलब 4 square multiplication modulo 5 4 4 square तो बनाता है multiplication modulo 5 4. ओके, सो देखो यहां आपको 4 का दिखाई देगा. 4 से किसको जनरेट करेगा? 4 एंड 4 से 4 जब आंसर बनेगा 4 से 5 4 4 4 तो यहां आएगा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 4. तो 4 किसको जनरेट करता है? दैट इज योर सबग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट 4. तो अगर मेरा Z5 minus 0 ये ग्रुप है तो उसका सबसेट होगा सबग्रुप. तो 4 कितने ग्रुप जनरेट करता है? सिर्फ 1 एंड 4. तो सबग्रुप ऑफ 4 is 1 and 4 and उसको जनरेट करने के लिए कितने ऑर्डर करना है? तो ऑर्डर 2. ओके, यस क्या करना है? तो नहीं. ओके, मुझसे क्या एक बार क्वेश्चन शो कीजिए ना. क्वेश्चन कैसे करना है इसमें? फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन लिख रहे हैं. क्वेश्चन ये देखो ऐसा था. Z5 minus 0, multiplication modulo 5 is abelian group. ये प्रूव करना ऐसा क्वेश्चन था. इज इट साइक्लिक ऐसा क्वेश्चन था. फाइंड ऑर्डर एंड सब ग्रुप ऐसा क्वेश्चन था. फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करें. सब क्वेश्चन लिख दिया. अरे दादा मुझको चाहिए ऑर्डर एंड सब ग्रुप में 4 का कहा था. लेकिन डेंजर को भी बाबा सब ग्रुप ऑर्डर में. अरे दादा तुम समझ रहे हो, मैं तुमको ऐसा बनाना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रीट आएगा ना तुमको सॉल्व करना चाहिए. क्वेश्चन में था 2 and 3 का, राइट. अभी अगर हमसे ये जो लेक्चर है ना अभी देखो इसका रिकॉर्डेड सेशन आप देखोगे ना तो मैं 2 का कर रहा था ना तो मैंने ये बताया कि सब ग्रुप ऑफ 20 है तो देखो 2 जनरेट आ रहा है. तो मैंने ये लिखा नहीं वर्बली बोला 3 3 3 9 9 27 तो वैसे ही 3 का भी करके देखना है अपने को. 3 क्या कर सकता है तो हमें 3 में इंटरेस्ट नहीं था 4 में इंटरेस्ट था 4 का दिया. समझा? अभी अल्टीमेटली एग्जाम में 2 दिखाएगा क्या, एग्जाम में 4 आएगा क्या, एग्जाम में आएगा क्या. समझा? ये क्वेश्चन ले समझिए. बट मेरे को ये नहीं अचीवमेंट चाहिए कि कुछ भी आए तो तुम आंसर. समझा? अभी आपको यहां सीखना क्या है, यहां नंबर देने का, यहां नंबर देने का. तो ये देखना चाहिए सर व्हाट डू यू मीन बाय सब ग्रुप. तो जनरेटेड बाय स्पेसिफिक एलिमेंट तो इतना समझना है. सब ग्रुप जनरेटेड बाय पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट क्वेश्चन में होगा वो कितने अलग अलग एलिमेंट जनरेट करेगा देखो. समझा? जितने अलग एलिमेंट जनरेट करेगा वो बनेगा सब ग्रुप. एंड वो जनरेट करने के लिए उसको कितने ऑर्डर देना पड़ा.
वो हो गया ऑर्डर। अब एग्जाम नंबर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 करोड़ है, 10 लाख है, कुछ नहीं पता। समझा? ये है मैथमेटिक्स, बराबर? करेक्ट? तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर नहीं देना, कांसेप्ट देना है। हर्ष हर्ष एक्सप्लेन करूंगा मैं यूनिवर्स कैसे निकालते हैं, बट शायद इसका मतलब ये पहला लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में बाय पे। मुस्तसिर, अब तेरे को कैसे हैंडल करोगे, इसके लिए ऑफलाइन लेक्चर जरूरी होता है। समझा? अच्छा, कोई नोट लिया क्या मुस्तसिर? अच्छा, नोट लिया क्या तू? बराबर, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो क्वेश्चन ऐसा है, सर तो एग्जाम में नहीं पूछा तो सारे एलिमेंट का लिखने का क्या लिखना है क्या? अब मुझे बता मुस्तसिर, ये क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूं? तूने पूछा क्वेश्चन, सर तो एग्जाम में नहीं पूछा तो भी सारे एलिमेंट का लिखना होता है क्या? अगर एग्जाम में नहीं पूछा तो क्यों लिखेंगे बेटा? जो पूछा वही लिखेंगे ना। मैं लेक्चर में ये सिखाऊंगा कि वो लिखते कैसे है। जरूर मालूम है क्या, ये जो अभी चल रहा है अक्टूबर 7 अक्टूबर, अपन एस्टिमेटेड स्पीड में तू कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी है। लास्ट लेक्चर हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स का थोड़ा मालूम तुमको 8 बज के 25 मिनट शायद मैंने लेक्चर छोड़ दिया था मंडे का लेक्चर। अगर वो प्रॉपर फॉर्मूला नंबर कर लेंगे ना तो एक लेक्चर में आने वाले कंप्यूटर ग्राफिक्स खत्म हो जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी सेम शुरू हुआ था, ये भी सेम शुरू हुआ था, राइट? पर इसका स्पीड देखो उसका स्पीड देखो, दोनों एनालिटिकल सब्जेक्ट है, राइट? यस, तो अभी इसका स्पीड मतलब क्या है कि यहाँ डाउट कैसे आते हैं, क्या बोलूं मैं मुझसे? ऑर्डर एंड सब ग्रुप पूछा, सिर्फ एलिमेंट नहीं स्पेसिफाई किया तो बिना एलिमेंट के। अब मुझे बता, इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना तुझे समझ ही नहीं रहा है। तू ये सब्जेक्ट को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी से ले रहा। अब मुझे बता, मैंने तो क्या बोला, मैंने सबको क्या बोला, किसी भी एलिमेंट का सब ग्रुप का मतलब सब ग्रुप जनरेटेड बाय स्पेसिफिक एलिमेंट होता है, राइट? कोई भी एलिमेंट कितने एलिमेंट को जनरेट करते हैं, बराबर? कोई भी एलिमेंट कितने एलिमेंट को जनरेट कर सकता है वो उसका सब ग्रुप होगा, बराबर? एंड वो जनरेट करने के लिए कौन से ऑर्डर जाना पड़ेगा, बराबर है? वो उसका ऑर्डर। अब मुझे बता, जब मैं एलिमेंट ही नहीं स्पेसिफाई करूंगा कि कौन से एलिमेंट का जनरेट करना है, तो सब ग्रुप ऑर्डर ढूंढ ही सकता है कोई? अब तेरा क्वेश्चन है ऑर्डर एंड सब ग्रुप पूछा, सिर्फ एलिमेंट नहीं स्पेसिफाई किया, इसका मतलब ऑर्डर सब ग्रुप के बारे में कुछ नहीं समझा, क्योंकि जब एलिमेंट एलिमेंट ही नहीं स्पेसिफाई किया रहेगा तो आप सब ग्रुप ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो बाबा? ऑर्डर एंड सब ग्रुप निकालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, सब कौन से एलिमेंट निकालना है? जब एलिमेंट नहीं निकालेगा तो कैसे निकालेगा? मुझसे ये वापस से कुछ समझ नहीं रहा। बस ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट में आंसर देता हूँ। अगर एलिमेंट मेंशन नहीं किया रहेगा तो सब ग्रुप एंड ऑर्डर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अगर वो बोल रहे हैं एग्जाम में कि ऑर्डर एंड सब ग्रुप निकालो और एलिमेंट नहीं दिए है तो बेटा तू आंसर मत लिख। आंसर में सिर्फ इतना लिखना, द एलिमेंट फॉर व्हिच ऑर्डर एंड सब ग्रुप आई नीड टू राइट इज एब्सेंट इन द क्वेश्चन, ओके? समझा? यस, डायरेक्ट लिखने का कि ऑर्डर एंड सब ग्रुप पूछ रहे हो बट क्वेश्चन में एलिमेंट नहीं दिए है तो मैं बिना एलिमेंट का ऑर्डर एंड सब ग्रुप निकाल नहीं सकता। एंड देख तेरे टीचर जो क्वेश्चन हुए पूरे मार्क्स देने चाहिए, मैं तो मेरे पास लेके आओ, बराबर? तो मुझे बता, तू बता एलिमेंट नहीं दिया है सबका ऑर्डर एंड सब ग्रुप दादा, फिर तो जनरेटर नहीं समझा। जनरेटर में हम करते क्या है, जनरेटर में हम ये तो करते हैं सारे एलिमेंट जनरेट करते हैं, अगर जनरेटर में हमारी करेगा ना नहीं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो इनवर्स का डेफिनेशन है, ये जो एलिमेंट अल्फा ये इनवर्स ऑफ ए होगा। तो इनवर्स ऑफ ए ऐसा एलिमेंट होगा जो ए के ऊपर पोस्ट ऑपरेट या ए के ऊपर प्री ऑपरेट हुआ ना तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ओके? जब ए के ऊपर प्री ऑपरेट या ए के ऊपर पोस्ट ऑपरेट हुआ तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ओके? तो कंपोजिशन टेबल में हमने शॉर्टकट करके बताया था, जो भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है उसके रो में आप आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढो, ओके? अब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ये तो क्लियर हो गया है, ये देखो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ये क्लियर हो गया था। तो जब मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 क्लियर हुआ और मुझे जो भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है मैं उसके रो में क्या दूंगा, जैसे 1 का निकालना है, ओके? तो 1 के रो में कहां है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये देखो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम इनवर्स ऑफ मुझे 2 का इनवर्स निकालना है, तो 2 के रो में कहां है आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका कॉलम का इनवर्स होगा। 3 का इनवर्स निकालना है तो 3 के रो में कहां है आइडेंटिटी, उसका कॉलम का इनवर्स। 4 के रो में कहां है आइडेंटिटी, उसका कॉलम का इनवर्स। समझा? क्या करना है, ओके ठीक है। चलो ये हो गया एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल का क्वेश्चन। अब मैं कुछ नोट लिखा था, नोट ये आ गया, नोट नोट नंबर 1, Zm, addition modulo n, Zm, addition modulo n is always an abelian group, okay? Zm, addition modulo n ये हमेशा abelian group रहेगा। अब बोलो Z addition modulo abelian हाँ, Z addition modulo abelian हाँ, Z addition modulo abelian हाँ, सारे Zm addition modulo n is always abelian। क्यों क्यों क्लोज रहेंगे? यस। addition modulo n मतलब associative रहेगा, यस। addition modulo n मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आएगा तो Zm है, हां सर। आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सिस्ट होगा तो इसका इनवर्स लेगा, हां सर, मतलब वो हो जाएगा। एंड ऑपरेशन addition modulo n है मतलब वो कम्यूटेटिव रहेगा, मतलब आइडेंटिटी बन जाएगा। बोला नोट नंबर 1, Zm, addition modulo n is always an abelian group। नोट नंबर 2, Zm minus 0, addition modulo n is never a group, ओके? तो Zm minus 0, एडिशन मॉड्यूल n ये कभी भी ग्रुप ही नहीं हो सकता। समझा? अरे ग्रुप छोड़ो, मोनोइड ही नहीं हो सकता, राइट? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज़ Zm minus 0 का मतलब होता है सेट 0 एलिमेंट नहीं है एंड ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूल n है। ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूल n है, आइडेंटिटी तो एलिमेंट 0 यहाँ है एंड 0 सेट नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी मोनोइड ही नहीं हो सकता, ग्रुप सवाल नहीं, एलिमेंट का सवाल नहीं। क्यों है? रीजन लिखता हूं, since 0 is not a part of Zm minus 0, right? And in case of addition modulo n, identity element is always 0 but it is not a part of Zm minus 0, therefore it is मतलब मोनोइड। ये मोनोइड नहीं रहेगा क्योंकि मोनोइड मतलब तीन प्रॉपर्टी, क्लोज एग्जाम रहेगा, एसोसिएटिविटी रहेगा, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में जाएगा। अब तुम दुनिया का पेपर का टेक्स्ट बुक का कोई भी क्वेश्चन लो, आज अप्लाई करो, समझेगा? Zm addition modulo n है, हमेशा एलिमेंट Zm minus 0 addition modulo n is never a group, never a monoid, okay? अब रूल नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा, Zm, right? Zm, multiplication modulo n is never a group, ठीक है? Zm, multiplication modulo n ये कभी भी ग्रुप नहीं रहेगा, कभी भी ग्रुप नहीं रहेगा क्योंकि क्लोज रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा, क्लोज रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट भी 1 जो एक्सिस्ट इसमें, रिवर्स नहीं आएगा। क्यों रिवर्स नहीं आएगा? बिकॉज़ Zm में 0 एलिमेंट रहेगा, बराबर? 0 इज अ पार्ट ऑफ Zm, 0 इज अ पार्ट ऑफ Zm एंड 0 का रो एंड 0 का कॉलम देखोगे तो आपको सारे 0 एलिमेंट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ओके? यस, तो 0 का इनवर्स एक्सिस्ट ही नहीं होगा, राइट? सो Zm, multiplication modulo n is never a group। क्यों है? क्यों ऐसा? हाँ, मालूम है मेरे को, मालूम है समझना। क्यों ऐसा? क्योंकि सिंस 0 इज अ पार्ट ऑफ Zm बट आपको 0 का इनवर्स नहीं मिलेगा, 0 का इनवर्स नहीं मिलेगा। जैसे कि Z5, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ये नहीं मिलेगा, चेक करते क्यों नहीं मिलेगा? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 0 1 2 3 4 बिकॉज़ मल्टीप्लिकेशन Zm मतलब होता है कि टीचर फ्रॉम 0 टू माइनस होना चाहिए। 0 1 2 0 1 2 3 4, ओके? करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, 4 3 9 3 4 12 4 4 16, ओके? अब मैं बोलूंगा ये क्लोज है, ओके? ये एसोसिएटिव भी है। क्यों है? क्लोज क्यों है? दिख रहा है। एसोसिएटिव क्यों है? मल्टीप्लिकेशन मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट भी देखो, मैंने बताया इसके साथ ये मैच होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो मैं बोलूंगा एग्जिस्ट है।
मैं बोलूंगा अब सबका इनवर्स निकालो, सबका इनवर्स निकालो। चलो अभी संजना सी आंसर देगी, बाकी कोई आंसर नहीं देगा। संजना बताओ, 0 का इनवर्स, 1 का इनवर्स, 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स, 4 का इनवर्स। संजना 0 का इनवर्स बताओ। 0 का इनवर्स फाइंड करना है तो 0 के आइडेंटिटी ढूंढना है। संजना 0 का इनवर्स बताओ। तो नहीं, 1 ही नहीं है उसमें। ओके, समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। कि वो जेड में है, राइट? बट एक्सपेक्टेशन इतना था कि जब कितने प्रॉब्लम में हो गए हैं तो बाय क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वर्च्यू क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनेशन पावर के हिसाब से जब मैं बोलता कि 0 एलिमेंट में है तो 0 का रो 0 का कॉलम 0 आएगा, आपको विजुअलाइज होना चाहिए था पोजीशन टेबल। हां सर 0 के साइज 0 0 नहीं आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, वो विजुअलाइज नहीं हुआ, तो मैंने करके दिखाया। ओके, जब 0 का इनवर्स नहीं लगा, आगे क्यों निकालूं? ओके, आगे क्या बोले, बट क्यों निकालूं? पहले नहीं लगा, आगे कैसे निकालेंगे? ओके, तो ये हो गया तीसरा नंबर का नोट। ओके, एंड चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है, पहले दूसरे तीसरे समझे। पहला लो समझा, z माइनस मॉड्यूल ऑलवेज वैल्यू, z माइनस 0 एडिशन मॉड्यूल कभी भी 2 रहेगा, क्योंकि 0 निकाल दिया, 0 निकाल दिया मतलब 0 आके सेट में नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। एडिशन में तो 0 निकाल दिया, सेट निकाल चलेगा। ओके, यहां 0 डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन में 0 डाल दिया तो कभी 2 रहेगा, क्योंकि नहीं मिलेगा। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला, जहां लोग गलत कर देते हैं। फोर्थ रूल है zm minus 0, comma multiplication modulo m is always an abelian group, always an abelian group, provided m is prime integer, provided m is prime integer। तो z minus 0 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल m is always abelian, but कब? आपका m जो है ना वो प्राइम इंटीजर होना चाहिए, तो नहीं तो नहीं। चलो अब मुझे बताओ z5 minus 0, ओके, z5 minus 0 comma multiplication modulo m is abelian group। ये है क्या ट्रू? यस सर। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू क्या है 5। इज इट 5 इज अ प्राइम इंटीजर? यस। अभी व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? बता देता हूं। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको सिर्फ आप 1 और उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो उसको प्राइम इंटीजर बोलते हैं। ओके, यस। बट अगर m प्राइम इंटीजर नहीं है तो ये कभी भी एडिशन नहीं रहेगा। देखो z4 minus 0 comma multiplication modulo 4, ये कभी भी ग्रुप नहीं होगा, ये कभी भी ग्रुप नहीं रहेगा। क्यों? क्यों? m का वैल्यू 4 है जो प्राइम इंटीजर नहीं है, जो प्राइम इंटीजर नहीं। आपको मैं जो टेक्स्ट बुक प्रेफर करोगे ना, इवन आप कोई नंबर प्रेफर करो या इवन आप कंपोज प्रेफर करो, उसमें लिखा नहीं रहेगा। बट जब आगे इंजीनियरिंग के आगे आपको गेट एग्जाम देना रहेगा ना, तो गेट एग्जाम में जो मैथमेटिक्स डिस्क्रीट करता है उसकी तैयारी मैं ये कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखो ये क्यों नहीं रहेगा ये, चलो बताओ। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, z4 minus 0 में कौन आएगा? ये 1 2 3। ओके, इधर जाएगा 1 2 3, इधर जाएगा 1 2 3 2 3, 2 2 4 4, 2 2 4 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 2, 3 3 9 रिमाइंडर 1। इज इट क्लोज? अरे अरे भाई, ये तो क्लोज ही नहीं है, ये तो क्लोज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 ये z4 minus 0 में नहीं आता। ओके, बट 0 0 जो है वो सेट में नहीं है, बट 0 आपको कंपोजिशन टेबल में आया, बराबर, जो नहीं चलेगा। ओके, समझा? वैसे आप फोर की जगह पे कोई भी दूसरा नंबर ट्राई करके देखो जो प्राइम नहीं रहेगा, तो आपको पता चलेगा इससे प्राइम नंबर ही आता है। जो प्राइम नंबर रहेगा तो ही वहां भी रहेगा, अदरवाइज वो ग्रुप वाइज नहीं है, पहले प्रॉपर्टी में रहेगा। समझा? वैसे ही तनाय सोहम, ऋत्विक, अमन, रूबी, मनसी, मुस्तसिर। ओके, चलो तो ये तुमको भी समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, चलो आएगा थ्योरम। थ्योरम थ्योरम ग्रुप्स। चलो आएगा थ्योरम ग्रुप्स। थ्योरम ग्रुप्स तीन थ्योरम है, और तीन इंपॉर्टेंट, तीन में से तीन विचार है, उसमें से एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट जो थ्योरम है उसमें दो है, अपने के साथ करेंगे। थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ को स्टेट एंड प्रूफ करना है। तो उसमें से मैं एक लॉ प्रूव करूंगा और उसके बाद आप ही बोल सकते हो आप समझा एक लॉ लेफ्ट वाला राइट वाला कर लेंगे। ठीक है, चलो अच्छा एक और सवाल है, ऐसे थ्योरम में क्वेश्चन कर लेंगे, बीच में क्वेश्चन को देता हूं, सोचना है। ये जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे अटेंडेंस देखो 14 बजे, मतलब मेरे को तो छोड़ दी 23 स्टूडेंट्स का अटेंडेंस है, तो ये सब ऐसा रहेगा। हो जाएगा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आएगा 14 के बाद, 7 के बाद 14 आएगा 14 अक्टूबर, एंड 14 अक्टूबर ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, मॉडल इंडिया मैथ्स आएंगे। ठीक है, तो ये अटेंडेंस मेरे को कर लेंगे लेक्चर लेंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। बट ये जो अटेंडेंस का 14 क्या ये भी देखेंगे कि बात सब बन जाएगा, हम लोग कभी मैच देख लेंगे सब, बराबर। तो अपन वो लेक्चर का शेड्यूल कब कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग में ले सकते हैं तो हम लोग उस हिसाब से, हम मुझे पता है कि मॉर्निंग में कोई लोग बोलेंगे हमारा सेशन कर सकता है लेक्चर, ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, मतलब अभी तो बता देंगे, सोचो कैसे करते हैं, नहीं तो फिर अपन सैटरडे लगा संडे बोल सकते हैं, मॉर्निंग संडे बोलेंगे, तो सैटरडे मॉर्निंग में 10 को 9 to 1 ज्यादा टाइम मिलेगा, बिकॉज़ सीजन में तो अपने को एक दो लेक्चर मिलेंगे तो मैं जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए या सैटरडे को पॉसिबल है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं अभी इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, सोचो या संडे का संडे नॉट पॉसिबल, संडे नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर नहीं तो मेरे पास एक ऑप्शन है, शेड्यूल 14 तारीख को अटेंडेंस कम छोड़ दूंगा, मैं 14 गया 21 21 बार 22 बार 21 बार 22 दो सेशन बचेंगे अक्टूबर महीने में। हाँ, सैटरडे मॉर्निंग दो पॉसिबिलिटी अपने को, एक तो सैटरडे मॉर्निंग से सैटरडे आफ्टरनून मैच होने से पहले अटेंडेंस डिलीट नहीं होना चाहिए। मेरे को क्लियर क्लियर कट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं लेक्चर 6:30 को भी रहता है तो, बट अटेंडेंस कम रहा तो मैं छोड़ दूंगा। राइट, मेरे को सैटरडे को दोपहर को 1 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, संडे को कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, तो मैं ये सोच रहा हूं कि नेक्स्ट अपना आज का नेक्स्ट लेक्चर आने वाले 3 जो लेक्चर है वो थोड़ा अच्छे टाइम में मिले तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे प्लान करो, तुम भी सोचो कि क्या करना चाहिए, उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलो स्टेट एंड प्रूफ लेफ्ट कैंसलेशन लॉ राइट कैंसलेशन लॉ, जिसमें से लेफ्ट कैंसलेशन लॉ में करता हूं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, वो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ स्टेटमेंट बोलता है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ का, इन अ ग्रुप जी कॉमा स्टार, स्टार मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पे, स्टार कैन बी एनी लोकेशन, इन अ ग्रुप जी कॉमा स्टार, इन अ ग्रुप जी कॉमा स्टार इफ in a group G comma star for all a comma b comma c belongs to G if a binary operation b is equal to a binary operation c implies b equal to c। ठीक है, ये है स्टेटमेंट ऑफ लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। क्या स्टेटमेंट है कैंसलेशन लॉ का? लेफ्ट कैंसलेशन लॉ का स्टेटमेंट है इन अ ग्रुप जी कॉमा स्टार, इन अ ग्रुप जी कॉमा स्टार मतलब जी कॉमा स्टार ये ग्रुप क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग नहीं है। अगर जी कॉमा स्टार ग्रुप है देन फॉर ऑल a comma b comma c belongs to G a binary operation b equal to a binary operation c होगा, तो a लेफ्ट लेफ्ट वेरिएबल a लेफ्ट नंबर a gets cancelled and b is equal to c। ओके, यस, तो ये है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। राइट कैंसलेशन लॉ का क्या होगा? इन अ ग्रुप जी कॉमा स्टार फॉर ऑल a comma b comma c belongs to G if b binary operation a equal to c binary operation a implies b equal to c, क्योंकि राइट सिमिलर एलिमेंट gets cancelled। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होता है लेफ्ट सिमिलर एलिमेंट्स गेट्स कैंसल्ड। हां, बट मुझे ये जो स्टार ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन होता है, कैंसिल करता है, कोई इशू नहीं, बट वो ऑपरेशन स्टार है, मतलब कौन सा ऑपरेशन मालूम नहीं है, तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ सॉल्व कैसे करेगा? तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ का सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन आएगा, स्टेटमेंट भी आपको लिखना है, सॉल्यूशन भी आपको लिखना है। क्या लिखना है?
बोला क्या है, इन अ ग्रुप जी कॉमा स्टार, दैट मींस जी कॉमा स्टार इज अ ग्रुप, ये थ्योरम में दिया है। अगर वो ग्रुप है तो वो जी कॉमा स्टार इज क्लोज होगा, क्लोज रहेगी, सेटिस्फाई करेगी। जी कॉमा स्टार क्लोज है तो मैं बोलूंगा जी कॉमा स्टार इज एसोसिएटिव, भी रहेगा क्योंकि ग्रुप है। नंबर तीसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी कॉमा स्टार क्योंकि ग्रुप है। चौथा, फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट आल्सो एग्जिस्ट इन जी कॉमा स्टार। ओके, यस, तो अगर वो एलिमेंट अगर ग्रुप है, इन जी कॉमा स्टार, जी कॉमा स्टार ग्रुप है तो उसमें क्लोज रहेगा, क्लोज रहेगा, वो एसोसिएटिव भी रहेगा, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, उसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होगा। ओके, अब लेफ्ट सिमिलर एलिमेंट गेट्स कैंसिल, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मुझे एनी हाउ ये क्या है, ए कैन बी एनी एलिमेंट फ्रॉम जी। अगर मैं उस ए को चेंज करके वहां ऐसा एलिमेंट लाता हूं जो पूरे ग्रुप के लिए फिक्स होता है, सेम होता है, तो मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है, मतलब ये जो चार प्रॉपर्टी है इसमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिट होगी? आंसर इज सर इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी। क्यों? इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी होती है ए बाइनरी ऑपरेशन अल्फा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू अल्फा बाइनरी ऑपरेशन ए। व्हाट इज अल्फा? इनवर्स ऑफ ए, तो ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए। ओके, तो इसका मतलब जब आप ए के ऊपर प्री अपोज ऑपरेट होता है तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। मतलब बोलेंगे फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू जी वी हैव व्हाट हैव ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन सी। इक्वेशन नंबर 1 क्यों है? इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये अगर ऐसा है तो बी इक्वल टू सी करना है ना, तो मैं बोलूंगा देखो ये इनवर्स है ना, तो मैं बोलूंगा जो इनवर्स है ना वो पोस्ट ऑपरेट करो, राइट? प्री ऑपरेट करो, प्री ऑपरेट, देखो जो इनवर्स प्री ऑपरेट होता है ना, प्री मल्टीप्लाई प्री ऑपरेट, मैं बोलूंगा प्री ऑपरेट, क्या बोलूंगा? प्री ऑपरेट ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। प्लीज देखो, प्री ऑपरेट इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो प्री ऑपरेट होगा तो इनवर्स प्री ऑपरेट होगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी एंड ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन विद ए बाइनरी ऑपरेशन सी। ओके, हो गया प्री ऑपरेट। अब सिंस इट इज एसोसिएटिव मैं इसको लिख सकता हूं ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन सी। क्यों है सिंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मुझे पता है वो एसोसिएटिव, मैं लिख सकता हूं। नाउ व्हाट इज इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए? व्हाट इज इनवर्स स्टार ए? इज ई, तो ई स्टार बी इक्वल टू ई स्टार सी एंड ये क्यों आया? बिकॉज़ इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी की वजह से आया, राइट? फिर आगे मैं लिख सकता हूं ई गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज बी इक्वल टू सी। ऐसा क्यों लिख सकता हूं? सिंस ई इज बोलो यूनिक, ई इज यूनिक इन जी कॉमा स्टार, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, एक ही होता है, और हमने देखा तो ये हो गया लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। समझा? राइट कैंसलेशन लॉ करते हैं। अब राइट कैंसलेशन लॉ क्या होगा? राइट कैंसलेशन लॉ में जो प्री ऑपरेट हुआ है वो पोस्ट ऑपरेट होगा। खत्म। मैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ आपको करके दिखाया, ठीक है? उसके बाद राइट कैंसलेशन लॉ आपके लिए करता हूं, उसको करो। अब उसके बाद वाइट थ्योरम मैं उसके बाद थ्योरम को कर दूंगा, ठीक है? राइट, चलो अब राइट कैंसलेशन लॉ को करना है, या चलिए तो लिख देता हूं राइट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ। व्हाट इज राइट कैंसलेशन लॉ? इन अ ग्रुप जी कॉमा स्टार, in G comma star for all a comma b comma c belongs to G if b binary operation A is equal to c binary operation implies b equal to c. Okay, तो यहाँ से पोस्ट ऑपरेट करना है। नेक्स्ट, prove that prove that identity element is unique in prove that identity element is unique in a group G comma star, and same चौथा वाला है prove that inverse element for every element of G is unique in a group G comma, राइट? क्या लिखा वाला लिखा है पूरे ग्रुप G comma स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एंड इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट जो G comma स्टार में है उस हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होता है। दैट्स गुड, आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप के लिए फिक्स होता है, यूनिक होता है, एक होता है एंड इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट जो G में प्रेजेंट है उसका यूनिक इनवर्स होता है। दोनों कंसेप्ट सेम है। चलो अब हम प्रूव करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन ग्रुप G comma स्टार। क्या प्रूव करेंगे? आइडेंटिटी, बाकी का नेक्स्ट वाला आपको करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन अ ग्रुप G comma स्टार। अब आएगा उसका सॉल्यूशन। चलो आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन अ ग्रुप, तो बोलेंगे सिंस इट इज गिवन दैट, प्लीज ध्यान दो, सिंस इट इज गिवन दैट G comma स्टार इज अ ग्रुप, इट इज गिवन दैट G comma स्टार, इसका मतलब G comma स्टार इज क्लोज। सेकंड, G comma star is associative. Third, G identity element exists in G comma star. And fourth, inverse element exists in G comma star. चलो अब मेरे को क्या करना है? प्रूफ करना है आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। अब ऑब्वियसली सबको मालूम है, अपने हमने अभी इतने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे क्वेश्चन में तो वही देखा आइडेंटिटी एलिमेट होता है। तो जो ऐसी चीज, प्लीज ध्यान दो, अगर जो ऐसी चीज जो पूरी दुनिया मालूम है, जो सच है, सही है, उसको प्रूव करना डिफिकल्ट होता है, राइट? एंड उसको प्रूव करने के लिए हमको कंसेप्ट लेना पड़ता है रिवर्स इंजीनियरिंग का, बराबर है? या लॉ ऑफ डायरेक्शन जिसको बोलते हैं ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो वैसा करना पड़ता है। अब व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको स्टेटमेंट प्रूव करना है, कौन सा स्टेटमेंट प्रूव करना है? सन राइजेस एट ईस्ट, अगर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट सन राइजेस एट ईस्ट। सन हमेशा पूरब की दिशा से निकलता है, ये आपको प्रूव करना होगा। भाई बता बोलेंगे सर सबको मालूम है, सारे टेक्स्ट बुक में सारे आर्टिकल में हर जगह पे लिखा हुआ है कि सन राइजेस एट ईस्ट, फिर हमको क्यों पूछ रहे हैं बाबा? अगर क्वेश्चन पूछा तो प्रूव करना पड़ेगा, एंड ये सबको तो मालूम है कि सन राइजेस एट ईस्ट होता है, ऐसी चीज जो सबको मालूम है और फिर भी प्रूव करनी है तो उसको प्रूव करना पड़ता है यूजिंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सो व्हाट इज बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इज, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोलता है कि ऐसी चीज जो फिक्स है, जो सच है और वही आपको करनी है, तो यूज करो लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब आप अज्यूम करो, क्या अज्यूम करो? आप असम्पशन करो जो कि गलत असम्पशन होगा एंड उसको प्रूव करके चलो, बाद में पता चलेगा रिजल्ट आएगा तो जो हमने असम्पशन किया हुआ है वो गलत है, मतलब ये एक्चुअल जो मेंशन है वही है। जैसे सन राइजेस एट ईस्ट, ये अगर हमको प्रूव करना है कि सन राइज एट ईस्ट है तो हम अज्यूम करेंगे कि अज्यूम दैट सन इज नॉट राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, सन इज नॉट राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड डिराइव करते चलो, बाद में आंसर आएगा योर असम्पशन इज रॉन्ग। तो आपने जो अज्यूम किया था सन इज नॉट राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट जो गलत है, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन इज ट्रू, तो वैसे ही आंसर सन राइज एट ईस्ट। अगर मुझे प्रूव करना है आई एम अ बॉय, सिंपल, राइट? तो मैं क्या करूंगा? आई एम नॉट अ बॉय, सारी चीजें करके ऊपर जाऊंगा, लास्ट आंसर आएगा जो मैंने असम्पशन किया था वो रॉन्ग है, मतलब आई एम बॉय, राइट? तो यहां पे सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, ये प्रूव करना है, सबको दुनिया मालूम है, हम बोलेंगे नहीं आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। मैं बोलूंगा अज्यूम दैट, क्या बोलेंगे? अज्यूम दैट identity element is not unique in a group G comma star. That means we have two identity element as E1 and E2 in a group G comma star. समझा? हमको प्रूव करने का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, हमने अज्यूम किया आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं होता है, यूनिक मतलब एक नहीं होते, दो होते हैं। अब by using identity element property we can write that, क्या property identity element property बोलता है? A binary operation E1 is equal to E1 binary operation. Okay, question number 1 ये हमारी identity property है, E1 के लिए similarly A binary operation E2 is equal to E2 binary operation A, question number 2, right? अब बोलेंगे from equation number 1 and 2 we have
चलो फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी हैव इक्वेशन नंबर 1 देखो एग्जैक्टली ए देखो फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला अपने को देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला ये देखो दिस इज ए इज इक्वल टू बी and b is equal to c बराबर यस कंपोजिट थ्योरम a equal to b and b equal to c that means a equal to c so what we have a binary operation e1 is equal to a binary operation e2 बराबर है बोलेंगे therefore by left cancellation law we get left similar element cancelled and e1 is equal to e2 हमने assume किया था कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होते हैं अपने पास दो होते हैं लास्ट आंसर क्या आया दोनों सेम है मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है अंडरस्टूड यस समझा हाँ यस मुझे समझा अमन समझा नहीं समझा यस संजना सोहम अभी आपके एंड पे आपको ट्राई करना है इनवर्स एलिमेंट यूनिक एंड राइट कैंसलेशन लॉ मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट बताया आपको इनवर्स एलिमेंट करना है एंड राइट कैंसलेशन लॉ को करना है मैं 5 मिनट देता हूं पानी पिया और सॉल्व करो प्लीज यस मैम यस अब ना एक क्वेश्चन जिसको जो इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो निकाल दो डिस्क्रिप्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन से डिस्क्रिप्ट में है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ओके हां ये है वाला क्वेश्चन ये है ओके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन ओके ओके हां ये वाला क्वेश्चन आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक कैंसलेशन लॉ थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन द बुक यस ये क्वेश्चन ठीक है ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन है इसलिए हम उसको ले रहे हैं ये डिस्क्रिप्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का लास्ट ओके चलो क्वेश्चन देखो ठीक है अब यहाँ पे ये होगा टेस्ट चलो क्या क्वेश्चन है 90%. So the question है prove that a set of real numbers are क्या प्रूव करना है set of real number are is what set of real number और set of real number आपको real number का number real number real number real number but infinite number infinity real number real number real number सकते हो उसको real number बोलते हैं वो अभी ग्रुप है with respect to star which is binary operation कौन सा मालूम नहीं है star कौन सा ऑपरेशन मालूम नहीं वो अभी ग्रुप है with respect to star where star can be defined as a star equal to b plus b plus मतलब star is binary operation कौन सा मालूम नहीं पर करता क्या है मालूम है मतलब if you operate star on two operand if you operate star on two operand then वो करता क्या है addition of that two operand plus 2 बराबर अब ये ऑपरेशन का नाम हम करता है मतलब अगर आपने वो स्टार ऑपरेशन दो किसी दो ऑपरेंड को अप्लाई किया तो उसका आंसर आता है उन दोनों ऑपरेंड एडिशन प्लस 2 ओके यस चलो अब आएगा सॉल्यूशन प्लीज ध्यान दो पहले तो अभी प्रूव करना है अभी ग्रुप है तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन या इसको बोलते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन राइट मतलब यहाँ नंबर नहीं बिना नंबर के साथ खेलना है सो दिस इज अलजेब्रिक सिस्टम व्हाट इज अलजेब्रिक सिस्टम आपका दिया हुआ r जो रियल नंबर है एंड ऑपरेशन स्टार जहां पे मैं लिखूंगा व्हाट इज r सेट ऑफ रियल नंबर ओके एंड व्हाट इज स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन कौन सा मालूम नहीं करता क्या जब दो ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई किया तो वो दोनों ऑपरेंड एडिशन प्लस 2 ये नंबर करता है चलो अब एक प्रॉपर्टी लेते हैं पांच प्रॉपर्टी जाना पड़ेगा बिकॉज़ वो अगली ग्रुप है अपनी नजर रखिए करना प्योर ध्यान देना है जब तक फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर एक्सियम प्रॉपर्टी what is closure property for all a comma b belongs to r if a binary operation b is also belongs to r तब बोलेंगे r comma star is closed okay so a and b ये रियल नंबर है तो उनका ऑपरेशन भी रियल नंबर है तो वो क्लोज हो गया चलो देखते हैं व्हाट इज a star b बोलो a star b is a plus b plus 2 okay अब मुझे बताओ a and b both are real okay तो रियल नंबर का एडिशन रियल राइट a and b दोनों रियल नंबर का एडिशन रियल आएगा and 2 is also real number yes so अगर एडिशन ऑफ रियल नंबर रियल नंबर तो दिस इज रियल okay I will therefore r comma star is closed समझा क्या बोलिए फटाक से बोलो समझ गया a b दोनों रियल नंबर है उसका ऑपरेशन का रिजल्ट है a plus b plus 2 जब a and b दोनों रियल नंबर है तो a plus b रियल रहेगा a plus b रियल है 2 रियल नंबर है दोनों रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर रहेगा यस चलो ये हो गया तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी डन और प्रॉपर्टी क्लोजर एक्सियम डन अब आएगा सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी associative property what is associative property
For all a comma b comma c belongs to R, अगर a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c है इज इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c ऐसा होगा तब बोलेंगे R comma star is associative. ओके, चलो अब इसके दो मेथड है, मेथड 1 मेथड 2, जो आपकी इच्छा, मुझसे जो आपकी इच्छा, अगर आपको मेथड 1 जमे तो मेथड 1 करो, मेथड 2 जमे तो मेथड 2 से करो, दोनों एग्जाम में नहीं करने हैं साथ में, दोनों में से कोई एक अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेथड 1 क्या होता है, मेथड 1 होता है चलो a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c, हमको दिखाना है लेफ्ट साइड इक्वल टू x। चलो अब a एज इट इज बाइनरी ऑपरेशन एज, मुझे बताओ व्हाट इज b बाइनरी ऑपरेशन c। अपने क्या होता है, जब स्टार दो ऑपरेंड को अप्लाई करता है तो क्या आता है b प्लस c प्लस 2। ओके, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन b इज a प्लस b प्लस 2, जब बाइनरी ऑपरेशन दो ऑपरेंड अप्लाई करता है तो आंसर is a प्लस b प्लस 2 आएगा स्टार c। अब देखो देखो एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दूसरा बाइनरी ऑपरेशन, तो वन ऑपरेंड स्टार सेकंड ऑपरेंड, व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट ऑपरेंड प्लस second operand plus 2, again here first operand slash second operand is first operand plus second operand plus 2, right। अब अपने को एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, तो a plus b plus c plus 2 plus 4, इधर भी a plus b plus c plus 4, बोलेंगे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, बोलेंगे therefore लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, बोलेंगे therefore r comma star is associative। ओके, मेथड 1 समझा तो वो अप्लाई करो, मेथड 2 समझा तो अप्लाई करो, सारे टेक्स्ट बुक में मेथड 2 दिया रहेगा, लेकिन मेथड 2 किसी को नहीं लगता, मत जा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से कोई एग्जाम में नहीं आएगा। मेथड 2 में पढ़ना हुआ और लेफ्ट राइट, मेथड 2 में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a star b star c, और इसको सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड लेके आते हैं, कैसे देखो कैसे देखो, a as it is star as it is, what is b star c, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड स्टार सेकंड ऑपरेंड is first operand plus second operand plus 2। ओके, नाउ फर्स्ट ऑपरेंड स्टार सेकंड ऑपरेंड, आंसर आएगा फर्स्ट ऑपरेंड प्लस सेकंड ऑपरेंड प्लस 2। अब सिंस एडिशन एसोसिएटिव पूरा ब्रैकेट में कर सकता हूं, a plus b plus c plus 2 plus 2। ओके, अब राइट साइड पे देखो मुझे क्या चाहिए, अब राइट साइड पे देखो मुझे क्या चाहिए, राइट साइड में मुझे चाहिए a star b साथ में, तो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखूंगा a plus b plus 2, फिर लिखूंगा plus c plus, अब रिवर्स ऑपरेशन होगा, जब a star b is a plus b plus 2, तो what is a plus b plus 2 is a star b, जब फर्स्ट ऑपरेंड स्टार सेकंड ऑपरेंड हो, फर्स्ट ऑपरेंड plus second ऑपरेंड plus 2, तो what is if we have first ऑपरेंड plus second ऑपरेंड plus 2 is first ऑपरेंड स्टार सेकंड ऑपरेंड, so that is first ऑपरेंड स्टार सेकंड ऑपरेंड plus c plus 2। ओके, अब मुझे बताओ ये भी ऐसे हो गया कि नहीं, देखो फर्स्ट ऑपरेंड प्लस सेकंड ऑपरेंड प्लस 2, फर्स्ट ऑपरेंड प्लस सेकंड ऑपरेंड प्लस 2, what is first ऑपरेंड second ऑपरेंड plus 2 is first ऑपरेंड स्टार सेकंड ऑपरेंड which is equal to right hand side, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लिया, राइट हैंड साइड आया, तो मैं बोलूंगा therefore r comma star is associative। ओके, बन गया, यस, ठीक है, पहले दो वर्ड हो गए, चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी का, अब आ गया तुम्हारा तीसरा प्रॉपर्टी, क्लोजर एग्जाम आ गया, एसोसिएटिव आ गया, अब आपका आएगा थर्ड प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी, what is identity property, बोलता है for all a belongs to R there exists an element E that also belongs to R such that a binary operation E is equal to E binary operation A। चलो चलो आइडेंटिटी ढूंढना है, तो मैं दूंगा a binary operation E is equal to A। चलो आइडेंटिटी ढूंढते हैं, what is first operand स्टार second operand is first operand plus second operand plus 2 is equal to A। ओके, राइट, a gets cancelled, so what is answer, E plus 2 equal to 0, what is answer, E equal to -2, so is it -2 is real number, yes, बोलूंगा therefore identity element E equal to -2 exists in R comma star, identity element आ गया, what is identity element -2। ओके, अब आ गया चौथा, D is inverse element property, inverse element property, what is inverse element property, for all a belongs to R there exists an element, there exists an element alpha belongs to R such that a binary operation alpha is equal to E is equal to alpha binary operation A। चलो सब binary operation निकालेंगे, क्या है अपना पहला नंबर, तो उसमें बहुत सारे नंबर देंगे, राइट, तो binary operation निकालेंगे, चलो a binary operation alpha is equal to E। चलो what is a star alpha, a star alpha मतलब first operand star second operand is first operand plus second operand plus 2 is equal to what is E -2, जो आया अपना, तो what is a plus alpha is -4, sorry a plus alpha is -4, so what is alpha -4 minus a, बताओ -4 minus a is it real number, yes, सब का इनवर्स आएगा, तुम कैसे सब का इनवर्स आया बताओ, अगर आपको 0 का इनवर्स निकालना है तो a 0 what is alpha -4, 1 का इनवर्स निकालना है तो -4 -5 -2 का इनवर्स निकालना है, -4 -6 -3 का इनवर्स निकालना है, -4 -3 -7, चलो आपको -2 का इनवर्स निकालना है, -4 -4 -2 चलो आपको -4 का इनवर्स निकालना है, -4 -4 0, तो सारे रियल नंबर का इनवर्स आएगा, चलो रियल नंबर का 2 रियल है, चलो 2 रियल निकालना है, -4 -2 जो आंसर रियल नंबर आएगा, यस, तो अगर a रियल है तो -4 रियल है एंड सबट्रैक्शन ऑफ 2 रियल नंबर रियल, so alpha is this, अंडरस्टूड, मैं बोलूंगा therefore inverse element exists in R comma star, therefore R comma star is a group, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, ग्रुप। अब पांचवा प्रॉपर्टी है आपका, कौन सा प्रॉपर्टी पांचवा, अबेलियन ग्रुप मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब आएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 is commutative property, right, what is commutative property, for all a comma b belongs to R if a binary operation b is equal to b binary operation a, बोलेंगे then R comma star is commutative, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मेथड 1 करेंगे तो क्या आएगा मेथड 1 से आंसर, मेथड 1 मिलेंगे a star b equal to b star a, what is a star b, first operand star second operand, first operand plus second operand plus 2, what is b star a, first operand star second operand, first operand plus second operand plus 2, मतलब a plus b plus 2, इसको लिख सकते हैं a plus b plus 2, बोलेंगे LHS is equal to RHS, तो बोलेंगे therefore R comma star is commutative, राइट। अगर आपको मेथड 2 अप्लाई करना है जैसे एसोसिएटिव में बताया वैसे ही, अगर आपको मेथड 2 अप्लाई करना है तो आप स्टार्ट करोगे LHS से, what is LHS, a star b, what is star b, a plus b plus 2, अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए b star a, इसको ले लो मतलब एडिशन एसोसिएटिव लिख सकता हूं b plus a plus 2, बताओ फर्स्ट ऑपरेंड प्लस सेकंड ऑपरेंड प्लस 2 is first ऑपरेंड स्टार सेकंड ऑपरेंड which is मेरा राइट हैंड साइड, बोलूंगा therefore R comma star is abelian group। ओके, अंडरस्टूड, समझ को abelian group सबको समझा, यस, अमन कैसा है, तने कैसा है, मुस्तफीर, सोहम, संजना, मुस्तफीर, ओके परफेक्ट, हां सर, ये एसोसिएटिव में अब हम लोग पहले ही a प्लस b प्लस 2 का पहले हम लोग एसोसिएटिव का अप्लाई करेंगे, वो साथ करके, तो चलेगा क्या पहले, तो एसोसिएटिव सर a प्लस b प्लस 2 प्लस c प्लस 2 किया ना, तो उसके बाद हम लोग a प्लस b प्लस 2 स्टार c करेंगे पहले, तो चलेगा, तो चलेगा, ठीक तो है, चलेगा, ओके सर, ठीक, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिंगल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अब आएगा हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिंगल बाइनरी ऑपरेशन था आपका ग्रुप, अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर टू बाइनरी ऑपरेशन, अब आएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद टू बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज रिंग, ठीक है, मतलब अब यहाँ हम जब ग्रुप पढ़े तो ग्रुप में क्या था, लेट जी बी द एनी गिवन नॉन एंड स्टार कैन बी एनी गिवन ऑपरेशन, राइट, मतलब आपके पास एक सेट था और एक ऑपरेशन था, अब यहाँ पे एक सेट रहेगा एंड दो ऑपरेशन रहेंगे, ठीक है, हाँ क्या हुआ, सो हम कैन वी यूज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिवली, वेयर सो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इट इज नॉट मेंशन दैट स्टार इज मल्टीप्लिकेशन, वी डोंट नो व्हाट इज दैट ऑपरेशन, but we know what it does, actually we do not have idea about the name of that operation, but we know that what that operation does, if we perform that operation on two operand we will get the result as addition of that two operand plus 2 is the result produced by the operation star, we don't know the name of star and if suppose we know the name of the star as multiplication तो कोई नहीं होगी, जब अपने ऑपरेशन का नाम हो गया तो एक सबसे हम मल्टीप्लिकेशन तो जब अपने इस सब्जेक्ट की स्टार्ट की ये स्टार्ट की ना n प्लस n मल्टीप्लिकेशन r प्लस r तो ऐसा हो जाएगा, फिर अपने को साइड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे r रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन, सर रियल नंबर कोई भी तो सिलेक्ट करो, सब मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर क्लोज,
सर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएट करेगा सर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का इंडिकेटर बताएगा सर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इंडिकेटर वाला सब इंडिया ये नंबर का हो गया हो गया सर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करेगा हो गया सर आर मल्टीप्लिकेशन इज अवेलेबल इट्स करने की जरूरत नहीं बट वी डोंट नो वेदर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली इट्स मल्टीप्लिकेशन नेचुरल यूनिट आइडेंटिटी साइंस ना समझा तो ओके तो आएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद टू बाइनरी ऑपरेशन दैट इज कंसेप्ट ऑफ रिंग तो आएगा कंसेप्ट ऑफ रिंग ठीक है अब देखो रिंग कंसेप्ट में आएंगे यूनिट लाइन टाइम जाएगा नहीं हम थोड़ा समझ में आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है ठीक है पर वही मतलब जो ग्रुप में कर रहे हैं प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर रिंग में प्रॉपर्टी अलग नहीं उठा रहे हैं हम सीधी चीज कर रहे हैं अब विद टू बाइनरी ऑपरेशन देखो यार हम लोग जो हमारे कैलकुलेशन हो गया आइडेंटिटी हो गया इनवर्स हो गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद टू बाइनरी ऑपरेशन रिंग देखो ये हो गया रिंग चलो ये हो गया रिंग डेफिनेशन रिंग देखो व्हाट इज देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में टू एलिमेंट ऑपरेशन व्हाट इज ग्रुप में क्या ग्रुप में क्या था जी की जगह जी या जी स्टैंड फॉर ग्रुप आर स्टैंड फॉर बस इतना ही फर्क है बाकी आर ऐसा कुछ अलग ये है नहीं या जी में भी ऐसा नहीं जी को सेट बोल सकते हैं राइट तो नोटेशन यूज करके हम वही कर रहे हैं रिटर्न होगा क्या करो लेट आर बी द एनी गिवन क्वांटिटी सेट एंड याद रखो प्लीज रिंग सम एंड रिंग डॉट क्या पढ़ रहा है रिंग सम एंड रिंग डॉट विद एनी टू ऑपरेशन अब प्लीज मिसइंटरप्रेट करना है रिंग सम मतलब एक्सऑर नहीं रिंग सम मतलब एक्सऑर नहीं रिंग डॉट मतलब एंड या जो भी आपके डिजिटल ऑपरेशन है वो नहीं बेटा रिंग सम एंड रिंग डॉट आर द टू डिफरेंट नोटेशंस यूज्ड फॉर ऑपरेशंस टू रिप्रेजेंट ऑपरेशंस राइट जैसे जी में हम स्टार होते थे यहां रिंग सम पहला वाला ऑपरेशन रिंग डॉट ये दूसरा वाला ऑपरेशन है और रिंग सम रिंग डॉट कुछ भी हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल कुछ भी हो सकता है वो सिर्फ नोटेशन है चलो पहला लेट आर बी द एनी गिवन क्वांटिटी सेट एंड स्टार एंड रिंग सम एंड रिंग डॉट विद एनी टू गिवन ऑपरेशन देन अलजेब्रिक सिस्टम देखो हम ग्रुप में अलजेब्रिक सिस्टम जी का स्टार मतलब एक से एक वाली ऑपरेशन इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सिस्टम में टू वाली ऑपरेशन क्योंकि एक से रहेगा आर एंड टू वाली ऑपरेशन ये रिंग डॉट है दूसरा रिंग सम इस वाला रिंग ये रिंग इसको नहीं बोलेंगे तो पहला तीन कंडीशन कैसे होना चाहिए पहला कंडीशन है कि आर पहले ऑपरेशन के साथ एवेरिएंट हो जाएगा इसका मतलब आर पहले ऑपरेशन के साथ पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कौन सी क्लोज्ड एसोसिएटिव एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कंप्लीट राइट सेकंड है कांसेप्ट सेकंड कंडीशन है आर को मतलब आर सेकंड ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप करेगा सेमी ग्रुप मतलब दो प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी क्लोज है एसोसिएटिव बराबर क्योंकि आपका सिस्टम क्लोज है एसोसिएटिव बोलते हैं राइट तो पहला कंडीशन है आर पहले ऑपरेशन के साथ पांच प्रॉपर्टी करना चाहिए अब आर को समझाएंगे सेकंड कंडीशन है आर सेकंड ऑपरेशन के साथ दो प्रॉपर्टी करना चाहिए कौन सा क्लोज है एसोसिएटिव हम बोलेंगे तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये दो लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए रिंग डॉट बीइंग सम चीज ए रिंग डॉट बी रिंग सम सिंपल जो लाइक में डिस्ट्रीब्यूटिव वाला था सेम डिस्ट्रीब्यूटिव वाला भी रहेगा तो अगर आर पहले ऑपरेशन के साथ बीइंग सेटिस्फाई करता है आर दूसरे ऑपरेशन के साथ सेमी सेटिस्फाई करता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है तुम्हारा आर रिंग सम रिंग डॉट इज कॉल्ड एज अ रिंग ओके समझा तीन कंडीशन समझा तीनों कंडीशन समझा यस चलो अब देखते हैं अपन कि रिंग क्या एग्जांपल देखते हैं ठीक है चलो रिंग का एग्जांपल क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन रहेगा प्रूव दैट Z5 comma addition modulo 5 comma multiplication modulo 5 is a ring ओके ये क्वेश्चन रहेगा 6 to 8 मार्क का प्रूव दैट Z5 comma addition modulo 5 comma multiplication modulo 5 is a ring ठीक है चलो सॉल्यूशन अपना अलजेब्रिक सिस्टम है Z5 comma addition modulo 5 comma multiplication modulo 5 राइट बोलेंगे where what is Z5 it is 0 to 4 0 1 2 3 4 ओके what is addition modulo 5 first value what is multiplication modulo 5 second value मतलब addition modulo 5 ring sum multiplication modulo 5 अब ring sum formula इस नोटेशन first value operation and second value operation ओके अब ये प्रूव करना है तो सबसे पहले अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि Z5 comma addition modulo 5 is abelian group ये अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि abelian group है अब ये abelian group है तो अपने को पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा बोलेगा prepare composition table for Z5 comma addition modulo 5 please अब इसके सारे प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं प्लीज prepare composition table for Z5 addition modulo 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 addition modulo 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 plus 1 2 1 plus 2 3 1 plus 3 4 1 plus 4 5 divided by 5 minus 0 so 3 4 5 2 plus 2 4 2 plus 3 5 remainder 0 1 0 1 3 plus 3 6 is remainder 1 3 plus 4 7 remainder 2 2 4 plus 4 8 remainder 3 अब देखो since all the एग्जांपल जो नहीं आता Z comma addition modulo n is always तो बोलेंगे since all the entries of composition table are closed since all the entries of composition table are closed therefore Z5 comma addition modulo 5 is closed हो गया closed yes अब associativity please ध्यान दो करने की जरूरत नहीं है associativity बोलेगा since addition modulo 5 is associative operator last row second column में 0 आएगा यहाँ पे 3 4 0 ओके जो फर्स्ट addition modulo 5 associative operator बोलेगा therefore Z5 comma addition modulo 5 is associative करके दिखाने की जरूरत नहीं सब मान लो फिर आपको ऑपरेशन क्लोज हो गया associative identity what is identity element तो बोलेगा identity element T is equal to 0 जो Z5 में है therefore बोलेगा identity element exists in Z5 comma addition modulo 5 full stop तो identity मिल गया तो 0 का इनवर्स मिल गया 1 का इनवर्स मिल गया 2 का इनवर्स मिल गया 3 इनवर्स मिल गया 4 का इनवर्स मिल गया 0 का 0 1 का 4 ओके तो बोलेंगे इनवर्स element of Z5 comma addition modulo 5 R 0 का इनवर्स 1 का इनवर्स 2 का इनवर्स 3 का इनवर्स एंड 4 का 0 का इनवर्स 0 1 का इनवर्स 4 3 2 1 ओके बोलेगा therefore inverse element exists in Z5 comma addition modulo 5 हो गया बोलेगा therefore Z5 comma addition modulo 5 is a group बोलेगा since addition modulo 5 is commutative operator therefore Z5 comma addition modulo 5 is commutative group that is nothing but Z5 comma addition modulo 5 is an abelian group Z5 comma addition modulo 5 is an abelian group ओके ये हो गया हमारा abelian group राइट पहला प्रॉपर्टी हो गया जो कि R पहले ऑपरेटर के साथ abelian group है देन अब सेकंड कंसेप्ट आएगा जो हमको प्रूव करना है Z5 comma multiplication modulo 5 is semi group के लिए अपने को दो प्रॉपर्टी चेक करना है तो बोलेंगे prepare composition table for Z5 comma multiplication modulo 5 तो चलो this is your composition table for multiplication modulo 5 Z5 element 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 then 1 1 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 3 6 1 2 3 2 4 मतलब 3 1 3 3 9 मतलब 4 3 4 12 2 4 4 16 मतलब 1 अब बोलेगा since all the entries of composition table are closed बोलेंगे therefore Z5 comma multiplication modulo 5 is closed अब आएगा associative को करना है दो प्रॉपर्टी करना है तो बोलेंगे since multiplication modulo 5 is associative operator therefore Z5 comma multiplication modulo 5 is associative therefore बोलेंगे Z5 comma multiplication modulo 5 is semi group ओके हो गया दो प्रॉपर्टी सॉल्व वो पहले ऑपरेशन के साथ एलिमेंट ग्रुप है सेकंड ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप है अब जो थर्ड प्रॉपर्टी आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
comma B, comma C belongs to R if A brings some number A multiplication module 5 with B addition module 5 C is equal to A multiplication module 5 with B addition module 5 with A multiplication module 5 C. अब तुम बोलो A क्या देगा? A लिया 2, B लिया 3, C लिया 4. तो आप देखो तो 2 multiplication module 5 with 3 addition module 5 with 4 is equal to 2 multiplication module 5 with 3 addition module 5 with 2 multiplication module 5 with 4. 2 as it is multiplication module 5 3 plus 4 is 7. 7 divided by 5 minus 2. 2 3 are 6. 6 multiplied by 5 6 divided by 5 minus 1. Addition module 5. 2 4 are 8. 8 divided by 5 minus 2. 2 2 are 4. 4 divided by 5 minus 4. 1 plus 3 4 4 divided by 5 minus 4. So is it distributive? बोलेंगे therefore R comma addition module 5 comma multiplication module 5 is distributive. Therefore बोलेंगे R comma addition module 5 multiplication module 5 is a string. This is a algebraic structure. This is two binary operation. That's all. समझा? तेरा तेरा मतलब होता है एक ओके तो नहीं फाइव आईएस बाकी होगा देखो कुछ नहीं करना सिर्फ क्या था group is a algebraic structure. It's a binary operation. Whereas ring is a algebraic structure. Group binary operation. समझा आईएस अमन yes and मुस्तफिल yes okay मानसी को बताया मानसी को इस तरह मालूम चलेगा ओके ठीक है मुस्तफिल कंसेप्ट वही है सॉरी इसलिए बोलते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है algebraic structure आप लोगों को पता चलेगा कि जब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड में एआई डेटा साइंस मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ते हैं तो आपको पैटर्न सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न ढूंढने पड़ते हैं राइट वहां पे इसका इस्तेमाल होता है algebraic structure वो उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन है राइट सो ये जो ग्रुप है given set with respect to all binary operations मतलब दो पैटर्न दो डेटा सेट शेयरिंग प्रॉपर्टी कैन बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट ऑफ डेटा सेट तो ये सब वहां पे अप्लाई होते हैं राइट जब हम कोडिंग करेंगे तो फिर सिक्योरिटी को काफी एप्लीकेशन करते हैं तो ये जो हमको पता है algebraic structure मतलब हम डेटा सेट के पैटर्न्स को देख रहे हैं और डेटा सेट के पैटर्न्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसलिए ये सब्जेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग को ही है अदर देन कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट नहीं एंड आईटी को ये सब्जेक्ट आएगा बट आईटी को अगले सेमेस्टर में इवन सेमेस्टर में वो पढ़ते हैं ऑटोमेटिक इवन सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर में वहां ऑटोमेटिक के दो मॉड्यूल अपना ये डिस्क्रीट एनालिसिस करते हैं ना रिलेशन एंड algebraic structure वो बात ओके तो ये हो गया algebraic structure मैं तुमको रिकैप करवा देता हूं कि आपको ये चैप्टर में और कितना बाकी है देखो algebraic system निकाल लिया क्या निकाल क्या और कितना बाकी है डिस्क्रीट में ये algebraic structure या algebraic structure हम कहां पे थे देखिए सारे क्वेश्चन हमने कर लिए सब के सब हमने कर लिया ये हमने मॉड्यूल सब कर लिए algebraic structure को algebraic structure एंड ये सब कर लिया रिंग वाला सब कर लिया ओके अब अगर यहाँ से जाएंगे आगे तो ये आएगा ग्रुप इसी का एक्सटेंशन algebraic structure का ये एक्सटेंशन जो मैंने बोला सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी एंक्रिप्शन मिलेगा वो ये सेकंड पार्ट चैप्टर का ग्रुप इसमें तीन क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के पेपर में आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये चैप्टर से आते हैं ये बड़ा चैप्टर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रुप को देखो यहां पर है तो ये बता देखो तो डिप्लोमा वाले होंगे डिप्लोमा वाले आईएस सब्जेक्ट वाले सेमेस्टर में आईएस एनएस नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोकरेंसी सब पढ़ा होगा सिलेबस में था सीजर साइकिल डिप्लोमा सिक्योरिटी वाला कुछ सीजर साइकिल एंड ऑल सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सब पढ़ा हुआ है हां तो एडीसी पढ़ा हुआ है आगे देखो उसका सीआरसी और उसका एडमिशन ये सब एप्लीकेशन यहां पे आएगी बेसिकली इसका उसमें कमाल है और इतना मस्त है डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर समझ आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर इतना मस्त इतना आसान इसको अभी नेक्स्ट सेक्शन में हो जाएगा उसके बाद फिर ग्राफ बना वो एकदम सिंपल है वो एक सेकंड में स्टार्ट लेंदी लेंदी क्या एप्लीकेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले में एक रिलेशन फंक्शन पोस्ट वो ले लेंगे दूसरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखो ले लेंगे उसके बाद ना देखो ग्राफ एंड काउंटिंग एक लेक्चर ग्राफ एंड सेट लॉजिक एक लेक्चर समझा इतना ये ज्यादा लेंगे जो हमने पहले किया तो अब मैंने तुमको बोला एक क्वेश्चन बोला नेक्स्ट स्लाइड तो अभी नेक्स्ट स्लाइड वाला चीज का तुमको ये चाहिए ना कॉपी लकड़ी कॉपी सेक्शन वाला फाइन तब तक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग वगैरह के साथ कोड सेक्शन पीडीएफ पीडीएफ स्टडी मटेरियल dsgt और ये algebraic structure 2023 उसको इस तरह से करता हूं रिप्लेस फॉर रिप्लेस ये अच्छा क्या बोला है ना सो हम बोला 9:30 जनरली ओके वी लेक्चर एट इन द मॉर्निंग सेशन इफ वी कीप लेक्चर इन द मॉर्निंग सेशन 9 o'clock 9 to 1 इज ओके 9 to 1 का मतलब होता है 9 बजे से काफी पढ़ाना वैसे 9 बजे शुरू करेंगे 9 बजे शुरू करने के बाद हम सवाल याद करेंगे सवाल याद सारे देखेंगे उसके बाद देना पड़ेंगे तो पहले सवाल 2 घंटा फिर देख सवाल कैसे पढ़ेंगे ओके इफ यू डोंट हैव कॉलेज तो लाइक दिस कर दीजिए एक मिनट रिप्लाई करो प्लीज कोई नहीं एक पैसे उसके बाद हम सेशन ये algebraic structure 2023 ओके हां मैंने सेकंड बट एक दिन के लिए कॉलेज का इंपॉर्टेंट है मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है बट अगर थोड़ा सा हो सकता है एक एक तो 9 o'clock को बैक करेंगे 9 o'clock से लेके मैक्सिमम 1 उसको कर लेंगे और 1 o'clock को 1 o'clock का मालूम है याद रखो algebraic structure असल में कोई भी पूरा कोई दूंगा सब में उसका दे दूंगा 20 मिनट का दे दूंगा उसके बाद छोटा करके ग्राफ ऐसे मिलेंगे हेल्प होंगे बिना क्या होता है सर्किट वॉक क्या होता है फटाफट फटाफट हो जाएगा तो हमने पूरी हो जाएगा और ग्राफ हो जाएगा मुझसे बोल रहे नॉर्मल टाइम नहीं कर सकते मेरे को प्रॉब्लम नहीं मुझसे मेरे को कोई दे दे कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं नॉर्मल स्टडी का लेक्चर रखा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लेक्चर है लेक्चर कैंसिल नहीं होना चाहिए डिस नहीं होना चाहिए मैं नॉर्मल सारी चीजें लेने को तैयार है बट वर्ल्ड कप इंडिया का मैच है अभी बच्चे का अटेंडेंस होगा अगर मेरे को कॉलेज में मेरे को छोड़ के 12 मतलब 1 बजे बच्चे अगर ये अटेंडेंस मेरे को छोड़ के सिंगल डिजिट में हुआ ना 1 10 तो बेटा वो गलत होगा 9 बजे एंटर में पड़ा वैसा नहीं चलेगा तो वो नहीं होना चाहिए दूसरा कुछ प्रॉब्लम नॉर्मल टाइम में कोई दिक्कत नहीं एंड मेरे से नॉर्मल टाइम में उससे लेने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन अपने को जाना भी चाहिए लेकिन अपने हो जाएगा बराबर तो इवन के अंदर नहीं मिलता मॉर्निंग का फ्रेश रहेंगे और वो एकदम हाथ दो टॉपिक डायरेक्ट आंसर मतलब दो मॉड्यूल दो टॉपिक समझ तो थोड़ा सा बनेगा अच्छा तो अगर मॉर्निंग 9 बजे प्रॉब्लम इसी में प्रॉब्लम एंड 9 o'clock फटाफट बात हो गई नो प्रॉब्लम संजना नो प्रॉब्लम तने नो प्रॉब्लम मानसी नो प्रॉब्लम सोन नो प्रॉब्लम ये सोमवार नो प्रॉब्लम अच्छा नो प्रॉब्लम ठीक है नो प्रॉब्लम ओके तो फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 9 to 1 ओके फर्स्ट वीडियो नो प्रॉब्लम ओके चलो फिर अभी आपको यहां से नमस्कार लेते हैं एंड लेंगे अगले सैटरडे शार्प एंड 9 o'clock थोड़ी सी थोड़ा सुनो थोड़ा फॉलो करो मैं नेक्स्ट सेक्शन में पूरी थ्योरी पूरा एंड पूरा पढ़ाऊंगा ठीक है तो अपना मस्त कंट्रोल में आ जाएगा सब कुछ चलो बाय करो फिर मीटिंग चलो बाय तो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे एट 9 o'clock 9 to 1 या कोई मैसेज आ जाएगा नो ठीक है चलो बाय
Hello, Arnold. Hello, Arnold. Okay. So, very good morning. Yes, very good morning. Let's start with the session. Last time, screen share results. Um, Last session, dsgt 2023. Okay. So the last topic is Boolean algebra. Right. Now, Boolean algebra. Last time, what? Complete. Yeah, complete. Algebra structure to Boolean algebra. Boolean algebra is complete. Now, today we will start with another part of algebra system. That is the group code. Okay. So let's start. तो अभी algebra system में क्या लिखा था उसका थोड़ा recap करेंगे then आंसर आएगा तो we have completed algebra system with one binary operation that is group as well as algebra system with two binary operations that is string. Okay, understood? So what is basically a group? So in group we need to check the properties, right? So algebra system collectively is the first given one intersect and binary operation, that's it. So that is the G with any given one intersect and start with any given binary operation. Then that algebra system, right? The G of is called as group if it satisfies four properties, that is closure axiom, associativity, existence of identity element, existence of inverse element, right? Then we have a concept of aggregate group. Aggregate group is a group which is commutative, right? So if a group satisfying commutative properties aggregate group. What is aggregate group? Suppose in a group any single element is able to generate all the element of say G with respect to given binary operation start. Then that single element is called as generic element, and if such at least one generic element is present in G, then your G function is called as first aggregate group, right? So यहाँ पे अपना फिर से मेरे हमने addition multiplication मॉडल वाले then कुछ numerical के प्रूफ किया हमने then we started with the algebra system with two binary operation, right? So algebra system with two binary operation derivation is like r is r again r comma sum comma dot. What is sum is one binary operation that can addition subtraction multiplication using anything, but sum indicates first binary operation, ring indicates second binary operation. Then algebra system r comma sum comma dot is called as ring provided it satisfies the condition number one r comma sum मतलब given से r on first operation r comma sum must be a group, then r comma dot is specific operation should be a group, but the first operation is closure axiom, associativity, existence of identity, existence of चार operation चाहिए. Second operation के operator के साथ second होना चाहिए closure axiom, associativity operation चाहिए, and third is distributive law satisfy होना चाहिए. अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे अपना algebra system ring है, right? उसमें अब आएगा आपका start होगा pooling theory का algebra system का with pooling theory. Okay, तो आज का हमारा pooling theory में आपको लास्ट लेक्चर में कि ये लेक्चर आगे क्या होगा. ये लेक्चर आगे we will start with pooling theory, we will finish with pooling theory, then we will take a break of 15 minutes, and after that we will start with graph, and it is one of the very simple graph. We will finish with graph also. Okay, so the concept is pooling theory. Okay, pooling theory algebra system में क्या करना है? First concept is basic definition of glucose. Yeah, you can say that encoding function, then vet, then say Hamming distance, then minimum distance, then error detection and correction. Okay, so basic concept of glucose जो है हम पढ़ेंगे first concept, right? Then second में अपने को आएगा numerators one, minimum distance, error detection and correction, error detection and correction. Then next concept आएगा concept of glucose, numerators based on glucose. Next आएगा parity check matrix, right? And the next concept is maximum likelihood or decoding rate. Okay, तो obviously यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी शॉर्ट या डिस्लाइन या डिफाइन लाइक, राइट? बट इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा श्योर श्योर क्वेश्चन और 6 to 8 मार्क्स, राइट? इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा श्योर, उसका वेटेज आएगा 8 to 10 मार्क्स. ओके, तो ये जो टॉपिक है पैरिटी चेक एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये इतना श्योर है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बिना पेपर नहीं बनता. मतलब जैसे एग्जांपल देंगे तो जब हम सेट थ्योरी बोलते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन के बिना सेट थ्योरी कंप्लीट, अगर मुझे सेट थ्योरी बोला सर आप एक क्वेश्चन सेट करो, क्वेश्चन एग्जाम में क्या करोगे? द टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन स्टूडेंट. आप बोलोगे सर लॉजिक मैथमेटिक्स रिलेशन, एक मैथमेटिक्स रिलेशन क्वेश्चन आएंगे, सर रिलेशन से क्या करोगे? वन शॉट आएंगे. ये ऐसे टॉपिक है कि ऑप्शन इसको दिया जाएगा कि एक टॉपिक से या एक मॉडल से एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रहेंगे, राइट? जैसे अगर मुझे फंक्शन से क्वेश्चन है तो फंक्शन से क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको सेट क्वेश्चन पूछना है तो मैं पूछूंगा डिसाइड वेदर द फंक्शन इज तो वैसे अगर कोई के लिए क्वेश्चन पूछना है तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड की पैरिटी चेक 100% आता है, राइट? ओके ओके, चलो अब ये आपका हो गया जो आपको पढ़ना है कोई के लिए. चलो चालू करेंगे बेसिक डेफिनेशंस. ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्लूकोज. सबसे पहला डेफिनेशन है एनकोडिंग फंक्शन. ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये पूरा पूरा टॉपिक बहुत सिंपल है और मैं तुमको पहले प्रोसेस बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं. एक बार प्रोसेस समझा उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आंसर एक भी स्टेप सॉल्व नहीं करना. क्या बोलना है? एक टाइम ऐसा आएगा 10:30 11 बजे ये टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन लेगा और क्वेश्चन लेके डायरेक्ट आंसर करना. ठीक है, सो एनकोडिंग फंक्शन डेफिनेशन क्या है? लेट n, be the positive integer bracket में m less than n. Let n, be the positive integer, then one to one function, e b raised to n to b raised to n is called as encoding function, is called as encoding function. इतना डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन इतना डेफिनेशन पढ़ के अपने को कुछ नहीं समझता व्हाट इज एनकोडिंग फंक्शन. तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज एनकोडिंग फंक्शन. डेफिनेशन एक बार यूज करते हैं. Let n, be the positive integer m less than n, then one to one function e b raised to n is called as encoding function. Example, e with the encoding function from b2 to b5. b2 मतलब ये one to one function है, right? It is one to one function e b raised to n to b raised to n, right? So if it is a function then b raised to m यहाँ b raised to 2 is called as domain of function. So b raised to n or b raised to 5 is called as codomain of function. So b raised to n is a domain of function, b raised to n is codomain of function. And when I say b raised to 2 is a domain of function, the domain is expressed with 2 bits, and b raised to n जब 5 bits बोलेंगे b raised to 5 तो रेंज में आपके पास कोडोमेन आपके पास 5 बिट्स रहेंगे. तो जब डोमेन में 2 बिट्स है तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है e00 e01 e10 and e11, राइट? अब राइट साइड में कैसे लिखते हो? 00000 0110 101001 11011. अब आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड तो आप हमको समझा बिकॉज़ योर डोमेन इज ऑफ 2 बिट्स सो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर 000 सो राइट साइड में कुछ नहीं समझा बेटा, कुछ भी नहीं समझना है क्योंकि उसमें समझ सही नहीं. राइट साइड में हमने जो कोडोमेन की 5 बिट ली है वो कोई भी 5 बिट ली है. मैंने वहां 5 0 लिखा ना 5 कुछ तो नहीं पता. मैंने 0 की जगह 0 0 आप डबल 0 0 कुछ तो नहीं पता, समझा? हां, बट डोमेन में जो 2 बिट है ना वहां कुछ नहीं लिख सकते. 000 एंड रादर तुम लिखते कि वो एग्जाम दिया जाएगा, राइट? जब मुझे आपको घर में लेके जाना है या घर दिखाना है तो चाबी मार्केट में नहीं मिलेगी, मैं तुमको दूंगा, समझा? सो अब एनकोडिंग फंक्शन b2 b5 एग्जांपल. अब तक स्क्रीन पर समझिए एनकोडिंग फंक्शन करता क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है जो डिप्लोमा स्टूडेंट रहेंगे डिप्लोमा डिग्री वो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी थोड़ा कंसेप्ट पढ़ा है. कंसेप्ट अबाउट कंप्यूटर सिक्योरिटी जिसको हम सीएस आईएस सब बोलते हो, राइट? तो उन्होंने तो ये पूरा पढ़ा है. क्रिप्टोग्राफी, व्हाट इज एनकोडिंग, व्हाट इज सीजर साइफर, सिक्योरिटी एल्गोरिथम, व्हाट इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, व्हाट इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, व्हाट इज MD5 MD4 हैशिंग, सब पढ़ लिया. ठीक है, अपने को मतलब नहीं होगा सब नहीं चाहिए. बट what is the application of encoding function? So encoding function, the application number 1, this concept of encoding function is used as encryption and decryption in concept of cryptography. Encoding function use होता है cryptography में, नंबर एप्लीकेशन. नंबर दूसरा एप्लीकेशन जो डेटा कंप्रेशन स्टैंडर्ड होते हैं, राइट? जैसे कि
किया मिला दिया, तो ये जो कंप्लीशन स्टैंडर्ड है, कंप्लीशन स्टैंडर्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो लॉसी कंप्लीशन स्टैंडर्ड, लॉसी कंप्लीशन स्टैंडर्ड में आपके जो फाइल है उसका साइज रिड्यूस होता है, बट रिलेवेंट या थोड़ी सी नॉट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में लॉस ड्यूरिंग कंप्लीशन, बट लॉसी कंप्लीशन में आपके फाइल का कोई भी इंफॉर्मेशन भले वो इंपॉर्टेंट हो या ना, वो लॉस नहीं होगा, इसीलिए उसको लॉसलेस कंप्लीशन बोला जाता है, फाइल कंप्लीशन होता है, राइट। अब यहाँ देखेंगे ये अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन का और कंसेप्ट में और समझ जाएगा, बट इंपॉर्टेंट फंक्शन का कंसेप्ट समझा तो अपने ये समझेगा कि हम कंप्यूटर फील्ड इंजीनियरिंग में क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज मैथ्स सॉल्व करना है तो डिस्क्रीट पेपर में इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मेरे को बोलने वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंसेप्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैसे मैप होता है, तो यहाँ मैं क्रिप्टोग्राफी का मॉडल बनाऊंगा, देखो इधर ये क्रिप्टोग्राफी का मॉडल है, देयर इज वन सेंडर, देयर इज वन रिसीवर, ओके, सो यहाँ सेंडर, यहाँ आएगा रिसीवर, अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आपको होना चाहिए मीडियम, क्या होना चाहिए मीडियम कम्युनिकेशन का तरीका, सेंडर के पास होना चाहिए मैसेज एम जो ओवर द मीडियम सेंड करेगा और यहाँ रिसीवर को भी मैसेज एम मिलेगा, ओके। अब सेंडर एंड रिसीवर कनेक्टेड विद सम मीडियम, सेंडर विल सेंड द मैसेज टू मीडियम, रिसीवर विल रिसीव मैसेज थ्रू प्रॉपर चैनल प्रॉपर मीडियम, बट प्रॉब्लम कहां होता है, प्रॉब्लम होता है सपोज थर्ड पार्टी ने अटैक कर दिया, थर्ड पार्टी ने इस आपके मीडियम को भी अटैक कर दिया, मीडियम भी हैक कर दिया, तो हो सकता है कि सपोज यहाँ सेंडर को मैसेज भेजना है हेलो ओवर मीडियम, राइट, तो अगर किसी ने मीडियम पे अटैक किया, यदि आप कंप्यूटर सिक्योरिटी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इस थर्ड पार्टी अटैक को डेफी हेलमेट अटैक बोलेंगे, डेफी हेलमेट अटैक, अगर थर्ड पार्टी ने मीडियम को अटैक किया, मीडियम पे अटैक किया, तो इन दोनों कम्युनिकेशन को सुन सकता है, कभी-कभी तो ऐसा भी मैकेनिज्म होता है कम्युनिकेशन को सुनेगा, कम्युनिकेशन अल्टर भी कर सकता है, समझा, कम्युनिकेशन का जो मैसेज है पासिंग या जो टेक्स्ट है मैसेज उसको अल्टर भी कर सकता है, सेंडर को बोला तो और सेंडर ने बोला वही, बट मीडियम हैक होने की वजह से रिसीवर को पता ही नहीं, राइट, ये जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं ये सब ऐसे ही होते हैं, राइट, तो अब होगा क्या, अपना कम्युनिकेशन जो है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वो स्ट्रांग होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, तो द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इज CAI, व्हाट इज CAI, थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, सी इज कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, राइट, जब आप दो पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन देते हो तो इन्फॉर्मेशन उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी अवेलेबिलिटी उसकी इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड पार्टी का होगा तो सिक्योरिटी लॉस हो जाएगी, तो सेंडर करेगा सेंडर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ मैसेज जिसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ प्लेन टेक्स्ट व्हाट सेंडर विल डू, सेंडर विल अप्लाई अ की कॉल्ड एज एन्क्रिप्शन, सेंडर मैसेज के ऊपर एन्क्रिप्शन की अप्लाई करेगा, तो जो मैसेज प्लेन टेक्स्ट था मैसेज के ऊपर जब एन्क्रिप्शन की अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइफर टेक्स्ट, क्या बन जाएगा साइफर टेक्स्ट मतलब एन्कोडेड प्लेन टेक्स्ट, राइट, जैसे अगर सपोज यहाँ मैंने लगा एन्क्रिप्शन की थी तो ऐसे बात थर्ड क्या देखो HIJK तो ये बन जाएगा खुद, उसको बोलना था हेलो लेकिन एन्क्रिप्शन की अप्लाई करके उसने बोला खुद, अगर मीडियम भी लिखा तो थर्ड पार्टी समझेगा नहीं खुद एग्जैक्टली क्या बोलना है, तो जब एन्क्रिप्शन की लगाएगा उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए रिसीवर एन्क्रिप्शन की लगाएगा, और एन्क्रिप्शन की लगाएगा तो वहां आपको मैसेज मिलेगा व्हिच इज साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के बाद, तो सेंडर को हेलो भेजना है मीडियम पे खुद जाएगा, जब रिसीवर को खुद मिलेगा वापस उसकी एन्क्रिप्शन की अप्लाई करके उसको मैसेज मिलेगा हेलो, ओके। अब यहाँ का कंसेप्ट है जब आपका एन्क्रिप्शन की इज एक्टली इक्वल टू डिक्रिप्शन उसको बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एंड जब एन्क्रिप्शन की इज नॉट इक्वल टू डिक्रिप्शन उसको बोलते हैं असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि आपका घर का लॉक, आपका जो मेन डोर का लॉक है ना वो देखो जो चाबी से बंद होता है उसी चाबी से खुलता है, जो की से आप लॉक करते हो उसी की से ओपन भी होता है, मतलब आपका जो की है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग लो ये सेम, मतलब एन्क्रिप्शन की सेम है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, तो अगर आपका बैंक का लॉक होगा आपका पता है जो बैंक के लॉक होते हैं वो बंद तो आपकी की से होते हैं, जो बैंक आपको की देता है वो की से आपके लॉकर बंद हो जाएंगे, मतलब एन्क्रिप्ट करने के लिए एक बट जब आपको खोलना होगा लॉकर ना तो सिर्फ आपकी की से नहीं खुलेगा, बैंक में एक की लगता है उनका, राइट, जो उनका प्राइवेट की होगा आपका पब्लिक की होगा वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद तो की लगेगा बैंक को एक्सेस कर सकते हो, इस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, तो बैंक के आपके लॉकर की जो बैंक के पास है वो आपके लिए पब्लिक है, बैंक के लिए प्राइवेट है, तो ये सब कंसेप्ट सिखाई जाने अब सर वो ठीक है, ये हमारा जो एन्क्रिप्शन फंक्शन है ये काम यूज हो रहा है, बट एन्क्रिप्शन जो की एन्क्रिप्शन की तो एन्क्रिप्शन की इज नथिंग बट एन्क्रिप्शन फंक्शन ओनली, तो ये हो गया तुम्हारा पहला एप्लीकेशन फॉर क्रिप्टोग्राफी। अब सेकंड एप्लीकेशन जो है सेकंड एप्लीकेशन इज डेटा कंप्रेशन, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन आपका क्रिप्टोग्राफी, ओके, दैट इज एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन, राइट, सेकंड एप्लीकेशन डेटा कंप्रेशन, अब डेटा कंप्रेशन कैसा है देखो, एंड डेटा कंप्रेशन देखो एप्लीकेशन का पूरा मैकेनिज्म मैं यहाँ पे समझाऊंगा, डेटा कंप्रेशन अब यहाँ B2B फाइल का मतलब B2B फाइल का मतलब होता है अगर आपके पास बाइनरी डेटा है तो ये 5 बिट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द स्टूडेंट्स, ये 5 बिट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द स्टूडेंट्स, तो सपोज अभी 000000 111011 0110 0 then 10 101 0110 10101 एंड 11011, ये मेरे पास डेटा है जो कि सेंडर के पास है, सेंडर डेटा, अब आपको ये डेटा सेंड करना है, ठीक है, टू द प्रॉपर मीडियम, ठीक है, आपको चैनल प्रॉपर मीडियम के थ्रू डेटा को सेंड करना है बाय अप्लाइंग द एन्क्रिप्शन की, राइट, तो कैसे होगा देखो ये अगर एन्क्रिप्शन की लगाओगे सो डेटा कैसे होगा यहाँ आप अप्लाई करोगे एन्क्रिप्शन की, तो ये रहा आपका एन्क्रिप्शन की जो आपने अप्लाई किया, तो एन्क्रिप्शन की क्या होता है द इक्वल फंक्शन B2B5, इसका मतलब जो आपका डेटा है ना प्लीज ध्यान दो, जो आपका डेटा है ना जो आपका डेटा है ना उसको B2B5 अप्लाई करना मतलब 5 बिट्स में ब्रेक करो, इसको चॉपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं चॉपिंग, क्यों 5 बिट चॉपिंग किया है, क्यों 5 बिट चॉपिंग किया है बिकॉज़ आपने इक्वल फंक्शन अप्लाई किया B2B5, अगर आपने अप्लाई किया B2B6 तो 6 बिट में चॉप होगा, अब साइज क्या है इसका 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये है आपका 35 बिट्स का डेटा, जब आप चॉप करोगे और ये एन्क्रिप्शन की अप्लाई करोगे प्लीज ध्यान देना, तो ये जो है ये 5 zeros अब आपके इनपुट फंक्शन में से राइट साइड में कौन से 5 बिट्स आना चाहिए ये 5 बिट्स है, तो उसका करस्पॉन्डिंग 2 बिट है ना वो यहाँ आपको लिखना है, राइट, देन नेक्स्ट 5 बिट 101111 देखो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग 2 बिट, फिर ये 5 बिट 0 0 1 1 0 0, अब आपको पता चलेगा भाई ये 5 बिट तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, एक पार्ट बहुत पार्ट है किसी के साथ मैच नहीं होगा बिकॉज़ 5 बिट में 2 5 कॉम्बिनेशन होते हैं, हमने यहाँ 5 कॉम्बिनेशन है तो 30 माइनस 28 कॉम्बिनेशन रहेंगे उससे मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे सेंटर क्या करेगा ये 5 बिट जो है ना 0 1 1 0 इसके नियरेस्ट नेबर कौन है ये 5 में से, तो 0 1 1 1 0 पता चल रहा है ये जो है ये इसका नियरेस्ट नेबर है, ये जो है ये इसका नियरेस्ट नेबर है तो उसका करस्पॉन्डिंग बिट है 0 1, तो मैंने वो लिख दिया, हम इसका मार्क करता हूं, then 1011 the bit is 1 0 1 1 ये एग्जैक्ट मैच है 0 1 1011 is 10 and 1101 is 11, तो अब होगा क्या सेंडर को ये डेटा सेंड करना है, पर एन्क्रिप्शन की लगेगा तब सेंडर ये वाला डेटा सेंड करेगा, सेंडर ये वाला डेटा सेंड करेगा, अब हुआ क्या कितने बिट है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 कितने बिट सेंड करेगा 14 बिट का डेटा सेंड करेगा बराबर, अब कितने बिट करना है उसको 35 बिट का हो गया, डेटा कंप्रेशन 35 बिट का उसने 14 बिट का कंप्रेशन डेटा सेंड कर दिया, अब मैं बोलूंगा ये डेटा रिसीवर को रिसीव होगा, ये डेटा रिसीवर को रिसीव होगा, अब रिसीवर को पता है इसने बोला सेंडर नहीं बोला कि भाई मैंने ये चाबी लगा के लॉक किया है, अरे सिंपल जैसे आपके पापा आप कहते हो राइट कि नहीं, राइट, तो अब जब सपोज फर्स्ट चाबी लगा सेकंड सेकंड वाला सेकंड वाले ने की लॉक कर दिया, बट फर्स्ट वाला पहला वाला नहीं आना, तो सेकंड वाला बताएगा ना मैंने ये लॉक ये अप्लाई किया है ये अपना यहाँ पे होगा आप से करेक्ट बट कर सकते राइट, तो अब सेंडर रिसीवर को बोलेगा ये 14 बिट का डेटा ये अप्लाई किया मैंने, रिसीवर क्या करेगा रिसीवर उस बिट को उस डेटा को दो में चॉप करेगा, करेगा दो में चॉप करेगा, रिसीवर आएगा रिसीवर पता है कि B2B5 फंक्शन लगा हुआ है तो रिसीवर क्या करेगा 0 0 रिसीवर उसको उल्टा अब ये दो बिट को 5 बिट 0 0 0 0 then 1 1 0 1 1 0 1 चार किया 0 1 0 1 1 1 0 इधर वापस चार करता हूं 1 0 1 0 1 0 1 then 0 1 0 1 1 0 1 0 then 1 0 1 0 1 then 1 1 0 1 ये रिवर्स, अब प्रॉब्लम क्या हुआ पहले 5 बिट देखो एज इट इज जैसे ट्रांसमिट किया वैसे मिले, नेक्स्ट 5 बिट वैसे मिले ये जैसे ट्रांसमिट किया वैसे मिले, अब प्रॉब्लम क्या हुआ सेंडर ने तो ये ट्रांसमिट किया था मतलब एक्चुअल जो डेटा है ये था, रिसीवर को मिला ये डेटा, अब हुआ क्या ट्रांसमिशन के दौरान जब आपने एन्क्रिप्शन किया कितने बिट एडिशन आया तो देखो यहाँ है 0 0 then 1 1 then 1 1 यहाँ 0 है यहाँ 1 है, जो ट्रांसमिशन हुआ डेटा उस ट्रांसमिशन में मैं बोलूंगा 1 बिट एरर डिटेक्टेड, समझा यहाँ 1 बिट का एरर डिटेक्ट हुआ,
सेंडर को एक्चुअल भेजना था, रिसीवर ने डिटेक्ट करके मिला कुछ और, इस ट्रांसमिशन में एक बिट का मतलब 35 बिट का डेटा सेंडर रिसीवर कर गया, एक बिट का एरर डिटेक्ट हुआ है, समझा? यस। तो ये बेसिक कांसेप्ट है, इधर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोई संबंध नहीं। तो चलो मेरा काम तुमको बताना है, एनकोडिंग फंक्शन मैंने कोडिंग फंक्शन बता दिया, क्योंकि अपने को ये सब क्यों करना है, इससे आगे एप्लीकेशन आने वाले अपने फील्ड सब्जेक्ट। और नेक्स्ट आगे हमारा एनकोडिंग फंक्शन डिवाइड बाय बिट, व्हाट इज बिट? सिंपल है, सिंपल, if x belongs to b raised to n, then if x belongs to b raised to n, then weight of x is denoted, weight of x is denoted as mod x and defined as total number of ones in x, ठीक है? एग्जांपल से x equal to 1 1 0 1 1, what is mod x, what is weight of x, कितने वन इसमें? 4। से y is equal to 1 0 1 0 1, what is weight of y, y कितने वन? 3। then x is equal to 0 1 0 0 0, what is weight of x, 1। अब इसमें क्लियर करना है, आप समझ जाओ, इसलिए मुझे समझाते पूछो weight क्या बनेगा? having distance, having distance, ठीक है? तो what is having distance basically? definition बोलता है let x y belongs to b raised to n, what is having distance? let x y belongs to b raised to n, then the having distance, then the having distance between them, then the having distance between them is defined as del of x comma y, मतलब having distance between x comma y, what is that? mod of x x or y, क्या बोलेगा? mod of x x or y, मतलब एक डेफिनेशन ध्यान से समझो, x comma y belongs to b raised to n का मतलब होता है x and y में सेम नंबर ऑफ बिट्स रहेंगे तो ही having distance पॉसिबल, मतलब x में 4 बिट है y में 5 बिट है, उनका having distance नहीं निकल सकता, ओके? so x and y should have same number of bits, right? then the having distance between them is defined as del, right? x comma y is equal to mod of x x or y, mod of x x or y मतलब क्या है? पहले x x और y निकालो and then उसमें काउंट करो नंबर ऑफ वंस, ओके? तो यहाँ एग्जांपल देता हूँ, say what is your x is 1 1 0 1 1 and what is your y 1 0 1 0 1, then what is the del of x comma y, it is mod of, so what is x or basically, what is x or? Basically x or क्या होता है? x or is nothing but addition modulo 2, x or is nothing but addition modulo 2, okay? so a addition modulo 2 will be is called as x or, okay? जैसे कि आपने जो पढ़ा अब तक, तो आपने डिजिटल लॉजिक फैमिली में क्या पढ़ा है x or मतलब आपने से पढ़ा सर 0 0 रहेगा, आंसर 0 आता, 0 बनेगा आंसर 1 आता, 1 0 रहेगा आंसर 1 आता, 1 बनेगा आंसर 0 आता, ओके? लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपको इनपुट 20 बिट दिए 20, तो x or देंगे टेबल से, तो x or का मतलब है एडिशन मॉड्यूलो 2, तो कितना नंबर बिट देंगे, तो कितने भी बड़े बिट्स देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना भी बिट्स कुछ फर्क नहीं पड़ता, एडिशन मॉड्यूलो 2 काउंट नंबर ऑफ वंस डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर आंसर, जैसे देखो बताओ 0 0 is 0 divided by 2 remainder 0, 0 plus 1 is 1 divided by 2 remainder 1, सेम यहाँ पे 1 plus 1 is 2 divided by 2 remainder 0, तो कितने एडिशन मॉड्यूलो 2, तो चलो तो बोलो पहला क्या आएगा 1 1 का 0 1 0 का 1 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 0, अब बताओ कितने नंबर 1 इसमें 3, तो x और आ गया, having distance आ गया 3, तो having distance आ गया 3, what is having distance? having distance सेकंड ये भी डेफिनेशन, having distance between x and y का ये भी distance है, क्या है having distance between x and y? डायरेक्ट बोलूंगा नंबर ऑफ बिट पोजीशन चेंज, क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ बिट पोजीशन चेंज, बताओ हमको क्या यहाँ पे बिट पोजीशन चेंज है, बिट पोजीशन मतलब ऊपर वाले नीचे वाले नो चेंज, यहाँ बिट पोजीशन चेंज, हाँ यहाँ बिट पोजीशन चेंज, हाँ यहाँ बिट पोजीशन चेंज, हाँ यहाँ बिट पोजीशन चेंज, ना तो कितनी जगह पे बिट पोजीशन चेंज है? 3 जगह पे, तो डायरेक्ट having distance 3, ओके? चलो तो आपको ये समझा, वेट समझा, वेरिएबल फंक्शन समझा, having distance समझा, अब 3 डेफिनेशन और है, उसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका मिनिमम डिस्टेंस, और तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? प्लीज ध्यान दो, ये जो डेफिनेशन है ना, अब 946 मैं लिख रहा हूँ, लिखने के बाद बता सीधा पढ़ो, दूंगा नहीं समझेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा न्यूमेरिकल सॉल्व करके उल्टा बताओ, फिर तुमको ये समझ में आएगा क्या बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस। डेफिनेशन है let e b raised to m to b raised to n, let e b raised to m to b raised to n be the given encoding function, be the given encoding function, then minimum distance, the minimum distance of e is the minimum of vector, yeah, let e b raised to m to b raised to n be the given encoding function, then minimum distance of e is the minimum of having distances, minimum of having distances between distinct pair of four words, right? Definition है let e b raised to m to b raised to n be the given encoding function, then minimum distance of encoding function e is the minimum of having distances between distinct pair of four words, ठीक है? ये definition है, उसके बाद मैं लिखूंगा error detection, error detection, and तीनों definition एक ही नंबर का सॉल्व आएगा, error detection, what is error detection? is encoding function e b raised to m to b raised to n can detect k or fewer error, encoding function e b raised to m to b raised to n can detect k or fewer error if minimum distance is k plus 1, right? That is minimum distance is equal to k plus 1, the minimum distance equal to k plus 1 के साथ लेकिन जो भी वैल्यू आएगा k का that many errors can be detected by the encoding function. Next is error correction, error correction, what is the definition of correction? The encoding function e b raised to m to b raised to n can correct k or fewer errors if and only if minimum distance is 2k plus 1, that means that means that means if minimum distance is 2k plus 1, then जो भी वैल्यू आएगा k का that many errors he can correct, right? अब तीनों डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ होम में क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ो, डायरेक्ट एमयू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस क्या है चैट में? दिनेश दिस इज लाइक लॉसिंग ऑपरेशन, तो नो समझ गया क्या बोल सकते हो? दिनेश दिनेश क्या बोलना है समझ रहा, तो सर दिस इज लाइक लॉसिंग इक्वेशन, व्हिच इज लाइक लॉसिंग इक्वेशन, पता है? तो अभी ये डेफिनेशन पढ़ो तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएंगे। तो ऊपर डिस्कशन क्या होगा, ऊपर डिस्कशन दिया था हमने कि ट्रांसफर करने वाले ओके, सेकंड में सर हाउ कैन वी करेक्ट मोर एरर देन द नंबर दैट वी ऑब्वियस बेटा, हमेशा नंबर ऑफ एरर इज लेस देन नंबर ऑफ डिजाइन इनक्लूड नंबर ऑफ एरर, ऑब्वियस है। तो मेरे डेफिनेशन को सुनाएंगे और नहीं समझा
क्या इंटरप्रिटेशन क्या इंटरप्रिटेशन ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं क्यों पास में ध्यान से सुनो ध्यान से पढ़ो ध्यान से समझो नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना उसमें समझ में आएगा अब जो चैट में लिखा है सर हाउ कैन वी करेक्ट मोर एरर्स दैन द नंबर एडमिटेड मतलब तू ये सोचा है इसके का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर मिलेगा उतनी डिटेक्ट सपोज ये का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 3 डिटेक्ट नीचे ये का वैल्यू डालेगा लो तो पास करके सर 3 डिटेक्ट पास करके आंसर कैसा होगा मालूम है क्योंकि हमारे साथ हर साल होता है इसलिए हम बोलते हैं डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा मैंने एरर डिटेक्शन एनकोडिंग फंक्शन ई कैन डिटेक्ट की और एरर तो एरर मिनिमम डिस्टेंस टू निकाल रहा है फॉर्मूला में आंसर बस स्टेटमेंट लिखा है वो के का वैल्यू आपको निकालना है के का वैल्यू निकालना है वो के को डिटेक्ट करता है तब जब मिनिमम डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे ये प्लस 1 के साथ वो के को कर सकता है तब जब आप जो भी मिनिमम डिस्टेंस देंगे ना उसको 2 के प्लस 1 से इक्वेट करेंगे ओके अभी हम डिस्टेंस डेफिनेशन है कितने बजे ना ग्रुप में अभी लेक्चर में 12 10 किसी को नहीं समझ में डिस्टेंस गारंटी क्या लिखा है लेट ई बी रेशियो टू बी रेशियो देखो इक्वेशन का मिनिमम डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ई इज द मिनिमम ऑफ हैविंग डिस्टेंस मिनिमम ऑफ हैविंग डिस्टेंस बिटवीन distinct pair of forwards minimum of having distance between distinct pair of forwards okay अब मैं आपका अपने नॉर्मल का न्यूमेरिकल लूंगा एंड फिर यहाँ पे बनाएंगे सेम फाइंड मिनिमम डिस्टेंस हाउ मेनी एरर्स यू कैन डिटेक्ट एंड टाइप एंड यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे राइट अब जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ वो अगले मैंने एग्जांपल दिया नहीं पहुंचा तो वो आप पिछले साल कर दो बार आ चुका है क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का कंसीडर 2,5 consider 2,5 encoding function defined as e b22 b5 e00 e01 e10 e11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 right question number 1 find minimum distance of e second question how many errors e can detect and correct how many errors e can detect and correct ये होगा क्वेश्चन राइट ये क्वेश्चन का मार्क्स लगेगा 6 मार्क्स क्वेश्चन फाइंड मिनिमम डिस्टेंस हाउ मेनी एरर्स e can detect and correct अब आएगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन पे ध्यान देना सॉल्यूशन पे ध्यान दो हाउ मेनी एरर्स e can detect and correct ओके चलो तो ये आएगा आपका सॉल्यूशन ठीक है अब मिनिमम डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था मिनिमम डिस्टेंस ऑफ e इज द मिनिमम ऑफ हैविंग डिस्टेंस between distinct pair of forwards ऑब्वियसली ये कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है ये कोई फंक्शन आपको एग्जांपल निकालना है अब आपका मिनिमम डिस्टेंस का डेफिनेशन है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोई फंक्शन e इज द मिनिमम ऑफ हैविंग डिस्टेंस between distinct pair of forwards तो ये forward x0 forward x1 forward x2 forward x3 चार forwards है राइट साइड वाले राइट चार forwards कौन से x0 x1 x2 x3 अब हम डेफिनेशन ऑफ कोई फंक्शन को उल्टा देंगे तो ही समझेगा अदरवाइज नहीं अब रिवर्स में कैसे देखो बताता हूं पहले फाइंड करने का डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ फॉरवर्ड्स फाइंड करने का डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ फॉरवर्ड्स उसके बाद करने का उनके बीच का हैविंग डिस्टेंस राइट फर्स्ट फाइंड द डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ फॉरवर्ड्स उसके बाद उनके बीच का हैविंग डिस्टेंस एंड वो जो आंसर आएगा उसमें जो मिनिमम होगा दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनकोडिंग समझा पहले डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ फॉरवर्ड निकालो उनका हैविंग डिस्टेंस निकालो और उस हैविंग डिस्टेंस के आंसर जो भी निकलेगा जो मिनिमम रहेगा वो आपका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ठीक है तो उसके हिसाब से देखो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ फॉरवर्ड कौन आएगा x0 with x0 is not distinct x0 with x1 is distinct then x0 with x2 is distinct then x0 with x3 is distinct similarly x1 with x0 already हो गया x1 with x1 is not distinct x1 with x2 is distinct x1 with x3 is distinct similarly x2 with x0 x2 with x0 is distinct already हो चुका है x2 with x1 distinct already हो चुका है x2 with x2 is not distinct x2 with x3 is distinct तो ये बन गया आपका distinct pair of forward क्या बन गया distinct मतलब हर एक forward अपने नीचे दिए गए forward के साथ पेयर है x0 with x1 x0 with x2 देखो x1 with x2 x1 with x2 x3 डन अब ये निकाला distinct pair of forwards अब निकालना उनका having distance उनके बीच का having distance अब what is having distance sir x0 x1 with x1 साबित sir x0 x1 with x2 साबित sir x0 x1 with x3 साबित sir x1 x1 with x2 साबित x1 x1 with x3 साबित then x2 x1 with x3 साबित चलो अब मतलब क्या मेरे having distance मतलब क्या नंबर ऑफ पोजीशन चेंज चलो 0 1 कितने पोजीशन चेंज करूंगा तो पता चलेगा 3 पोजीशन इसका चेक करके पोजीशन चेंज पता चलेगा 3 पोजीशन x0 x3 चेक करके पोजीशन चेंज 4 then 1 2 1 2 1 2 3 4 then 1 1 चेक 1 same 2 same 3 3 then 2 same 1 change 2 change 3 change 3 आ गया ये आ गया having distance अब इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है तो 3 है तो मैं बोलूंगा therefore मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनकोडिंग फंक्शन e is 3 ओके समझा अब डेफिनेशन बोलूंगा ना मिनिमम डिस्टेंस डेफिनेशन लिखा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनकोडिंग फंक्शन e is the minimum is the minimum of having distances between distinct forwards ओके तो ये आ गया आपका मिनिमम डिस्टेंस उसके बाद ये नेक्स्ट जो था पूरा आएगा error detection so what is the definition of definition says that encoding function e can detect k or fewer error if minimum distance is k plus 1 so for error detection we need to equate minimum distance with k plus 1 what is minimum distance 3 is equal to k plus 1 what is value of k is 2 समझा that means हम बोलेंगे encoding function can detect 2 or fewer error okay then आएगा आपका error correction फिर एग्जाम में स्टेटमेंट लिखेंगे what is the correction encoding function can correct k or fewer error then if and only if minimum distance is 2k plus 1 now here for this encoding function what is minimum distance 3 so what is value of k 1 that means बोलेगा encoding function can correct 1 or fewer error okay अंडरस्टूड समझा अब बताइए नेक्स्ट ऐसा कुछ हो सकता है क्या करेक्शन का वैल्यू जाना आएगा डिटेक्शन से इसलिए मैं क्योंकि आपने सीखिए यार कि जो लिखा है वो पढ़ो और समझो आपने को एक वैल्यू नहीं करना एक वैल्यू निकालना क्योंकि एरर डिटेक्शन इज द वैल्यू ऑफ k इन केस ऑफ डिटेक्शन आंसर इज given your minimum distance is given in case of correction आंसर इज given minimum distance is given ठीक है अब ये इसमें कभी भी और हमेशा ही डिटेक्शन जितना होगा करेक्शन मैक्सिमम उतना होगा उससे कम हो सकता है ये एड्रेस भेज दूंगा पैकेट एड्रेस सेंड कर मैं पैकेट में से भेज दूंगा अमेज़न वाला पेपर दे दूंगा कुरियर से भेज मत दो समझे इसको ओके तो ये आ गया हमारा एरर डिटेक्शन करेक्शन minimum distance के साथ अब एक क्वेश्चन और बताता हूं राइट वो तुमको करना है अभी नहीं जब एंड करो कंसीडर 3,6 encoding function defined as e b32 b6 मेरे पास ना कोई टेक्स्ट बुक है ना मेरे पास कोई नोटबुक है ना मेरे पास कोई गूगल चालू है कुछ मैं खुद ही क्वेश्चन बनाऊंगा राइट और अभी बजाय 10 11 10 11 तुम भी हमें लेंगे और तुम भी एनकोडिंग फंक्शन के क्वेश्चन हजार लाख बना सकते हो तुम भी क्वेश्चन बना तुम बना सकते हो ओके पूरी करना अब मैं b32 b6 का क्वेश्चन बना रहा हूं e 0 0 0 1 0 1 0 then 0 1 1 then 1 0 0 then 1 0 1 then 1 1 0 1 1 1 चलो देखो कैसे लिखा हुआ उसे तुमको नहीं आएगा जैसे लिखा हुआ वहां से देखो नहीं आएगा
Okay, again, my question. Consider the this encoding function. Find minimum distance of encoding function. Right. Second question. How many errors E can detect and correct? Right. So this is x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, and x7. Right. So you need to take the distinct pair of four words. Right. So distinct pair of four words in the sentence. X0 with all 1 to 7, then x1 with 2 to 7, x3 with x2 with 3 to 7, x3 with 4 to 7, x4 with 5 to 7, x5 with 6 to 7, x6 with 7. Okay. So I'm having this and having this निकालने के बाद जो minimum रहेगा वो आएगा minimum distance of an encoding function E. Once you got the answer of minimum distance, then you can easily get the answer of how many errors you can detect. अब ऊपर से पहला क्वेश्चन दिया ना, वहाँ एक डाउट आना चाहिए था जो आपसे नहीं आया. ठीक है. एंड गलती का पूछे बच्चे. तो जो डाउट आना चाहिए था वो नहीं आया. जो डाउट आना चाहिए था वो नहीं आया. तो मैं आपको बता देता हूँ. सर minimum distance जब आपका दिया है तो how many error you can detect is immediately equal to the response. सर what if minimum distance जब आएगा तो minimum distance जब आएगा तो error detection is 2 equal to the response. no problem. What about error detection? So if minimum distance is 2, so when I 2 equal to the response, क्या half and when it is half error detected no beta. You should take always each right. So आपको 0.5 से 0. Okay. So 0 error detected. Right. ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है. Right. ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है आपको. और अभी नेक्स्ट सवाल हो गया है. साढ़े 10 बजे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा. ठीक है. चेक करो जल्दी. Yes. अगर और क्या होता है क्या बोल सकते हैं. तो कोड कम लेगा तो हमने तो रॉकेट इज ग्लूकोज. The topic is glucose. What is the definition of glucose? Definition is let T b raised to m to b raised to n be the let T b raised to m to b raised to n be the given encoding function. Let T b raised to m to b raised to n be the given encoding function. Then E is called as glucose, right? If I know the range of E is subset of b raised to n. ठीक है. ऐसा इसको लिखा है. पहले इसमें encoding function E b raised to m to b raised to n, right? Is given encoding function. Then E is called as glucose. If I know the range of E is b raised to n. ऐसा इसको लिखा है. But हम लिखेंगे नोट. हम लिखेंगे नोट, right? So क्यों? क्योंकि इसका चेकिंग कंडीशन डिफिकल्ट है. Range of E is subset of b raised to n, right? तो हम कैसे चेक करेंगे? encoding function होगा ये नहीं, right? So मैं बोलूंगा नोट is to check whether encoding function E b raised to m to b raised to n is group code or not. We simply prepare composition table. We simply prepare composition table of b raised to n, b raised to n, if all the entries of composition table are closed, then E is glucose. तो ये E है, ये group code रहेगा. नोट नंबर 1. अंडरस्टूड. हम group code है ही नहीं चेक करने के लिए composition table रखेंगे. And composition table साइड क्लोज है. तो composition table क्लोज है. And composition table is closed. Your encoding function is group code. Okay. So your encoding function is group code. And what is note number 2? Note number 2 is also important. Note number 2 is if given encoding function, if given encoding function E b raised to m to b raised to n is glucose, if encoding function E b raised to m to b raised to n is glucose, then minimum distance of E is the minimum of vet of non-zero code words. Minimum of vet of non-zero code words of E. नंबर तीसरा, error detection and correction remain same. Remain same मतलब अगेन यस मैं तो लिखता ही नहीं हूँ. क्योंकि क्या है, मैं लिखता हूँ कभी पढ़ता हूँ समझता हूँ. अगर मैं लिखूंगा error detection remain same तो बच्चे को डिटेक्शन error detection ऐसा नहीं. मैं लिखूंगा error detection and correction फाइंड करने का सेम मेथड या फॉर्मूला रहेगा. ओके. error detection फाइंड करने का सेम मेथड या सेम फॉर्मूला रहेगा. error detection का minimum distance correction का minimum distance equal to. ओके. तो अब ये है अपना नोट. हमने को चेक करना है कि कोई फंक्शन ग्रुप है कि नहीं. प्रिपेयर कंपोजिशन टेबल. आई ऑलरेडी कंपोजिशन टेबल क्लोज. देखो सिस्टम ग्रुप या सिस्टम ग्रुप. अगर सिस्टम ग्रुप है तो आपको अलग से minimum distance जानने की जरूरत नहीं. तो अगर आपका कोई फंक्शन ग्रुप है तो minimum distance minimum ऑफ ग्रुप सभी एंड कंडीशन हो गया. error detection का मैक्सिमम सेम रहेगा. ओके. सो देखो अभी क्वेश्चन इज consider 2,5 encoding function defined as T b2 to b5. b2 लेंगे तो 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके. सो 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0. ओके. ये आपका encoding function है. तुम्हारे सामने ही आंसर तैयार किया. क्वेश्चन तैयार किया. राइट. चलो consider 2,5 encoding function defined as this. क्वेश्चन नंबर पहला, find minimum distance of E. राइट. या चलो इसको मैं दूसरा क्वेश्चन मान लेता हूं. पहला हम फाइंड करेंगे ग्रुप कोड. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज determine whether. पहला क्वेश्चन है determine whether encoding function E b2 to b5 is group code or not. पहला क्वेश्चन. ओके. सेकंड क्वेश्चन, find minimum distance of E. तीसरा क्वेश्चन, how many errors E can
डिटेक्ट एंड करेक्ट। प्लीज ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, प्लीज ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा तो आप चले जाएंगे और मैं बताऊंगा कि अपन क्या कर रहे हैं। राइट, चलो अब इनको फंक्शन दिया है, वो ग्रुप को देखने अपने को चेक करना है। राइट, तो ग्रुप को देखने चेक करना है तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या करना पड़ता है डेफिनेशन ग्रुप का, प्रिपेयर कंपोजिशन टेबल फॉर बी एन। तो मैं बोलूंगा यहाँ ऑब्वियसली आपको कॉपी करना है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ ई इज, ये हो गया हमारा रेंज x0 x1 x2 x3। तो व्हाट इज x0 0 0 0 0 0, व्हाट इज x1 0 1 0 1 1, व्हाट इज x2 1 0 1 0 1, एंड व्हाट इज x3 is 1 1 1 1 0। ओके, सो we will prepare composition table for b raised to n comma x, राइट। चलो, सो दिस इज योर कंपोजिशन टेबल, प्लीज ध्यान दो। अगर थोड़ा सा भी नहीं समझा तो बात क्वेश्चन पूछेंगे, देखो जब क्वेश्चन पूछना नहीं है सिंपल देखो, x0 x1 x2 x3 x0 x1 x2 x3, फटाफट कैसे बनेगा वो देखो, फटाफट कैसे बनेगा वो देखो, फास्ट फास्ट कैसे बनेगा वो देखो। पहले क्या करेंगे, देखो व्हाट इज x0 है, व्हाट इज x0 है, x0 तो है आपका ऑल जीरो, व्हाट इज x0 ऑल जीरो, राइट। अब बताओ खुद का खुद के साथ क्या आता है, सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्व, डिजिटल फैमिली होगा, खुद का खुद के साथ क्या आता है। चलो खुद का खुद के साथ क्या है, खुद का खुद के साथ कुछ भी पढ़ो, उसका उसका क्या है 0 बराबर, ये सॉरी बोला 0 सॉरी 0 आंसर 0 1 सॉरी 0 1 सॉरी 1, खुद का खुद के साथ आंसर 0। तो बताओ x0 x0 के साथ क्या आएगा, x0 x1 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 क्या आएगा, x0 x1 x1 x2 के साथ क्या आएगा, x0 ये x0। ओके, अब इसका क्या करोगे, खुद का खुद के साथ x1 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 आएगा बेटा, ये बात समझे, व्हाट इज x1 0 1 0 1 1 या x1। चलो बताओ x1 0 1 0 1 1, मैंने तीन का इनके साथ बोला, अब तो आंसर क्या आएगा x0 जो कि x0। ओके, अब ये x0 बताओ, तीसरा प्रिंसिपल क्या है, छोटा तीसरा प्रिंसिपल बताओ, 0 का x और विद x क्या आता है, आंसर x ओनली, 1 का x और विद x आंसर क्या आएगा 1 बराबर। यस, दिमाग चेक करो, x 0 x 1 x 0 है, x 7 0 तो 0 0 0 आएगा, x 7 1 0 x 1 आएगा, आंसर x बोल रहा है। चलो x 7 0 1 0 आएगा, 1 x 7 1 1 1 आएगा, 1 x 0 1 एंड 1 x 1 0, तो बराबर यहाँ पे 1 0 जो 0 x आएगा बराबर, जब x 0 आएगा तो 1 आएगा, x 1 आएगा, 1 x 0 x x एंड 1 x ठीक है बराबर। अब मुझे बताओ x 0 और जो x 1 के साथ x 1 आएगा, देखो x 1 x 2 x 3 ये x 1 x 2 x 3, तो फास्ट के लिए हमने ये कर दिया, ये बात समझ में गई, ठीक है। अब चलो बताओ मेरे को, अब बताओ x 1 का x 1 x 1 देखो x 1 x 2 के साथ x 1 क्या देखो, देखो 1 1 1 1 1 1 1 किसी को x 3 ये बेसिक आएगा, ये बेसिक आएगा, चलो 1 चेक करो, 1 चेक करो, 1 1 1 0 1 0 1 0 x 2 लग जाएगा x 2 लग जाएगा x 2 ए 2 2 चेक करो 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 x 1 लग जाएगा x 1 लग जाएगा। ओके, इसका मतलब देखो सारी एंट्री कंपोजिशन टेबल क्लोज है, इसी ऑल एंट्रीज कंपोजिशन टेबल क्लोज, यस कंपोजिशन टेबल में कोई भी भाग एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए सिंस ऑल एंट्रीज कंपोजिशन टेबल क्लोज आपका इंक्लूडिंग फंक्शन क्या है, डू कोड है, आपका इंक्लूडिंग फंक्शन क्या है, डू कोड है। मैं बोलूंगा सिंस, मैं बोलूंगा सिंस ऑल द एंट्रीज, सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल आर क्लोज, देयरफॉर ई b2 to b5 is true codes। ओके, अगर ग्रुप आया, यस सर, अगर ग्रुप आया है, ओके सर ग्रुप आया है, उसके बाद आपको निकालना है मिनिमम डिस्टेंस, राइट। तो मैं अब यहाँ लिखूंगा कि सिंस, क्या लिखूंगा, सिंस ई b2 to b5, since e b2 to b5 is group code, therefore minimum distance of e is the minimum of weight of non-zero code words, minimum of weight of non-zero code word। अब मुझे यहाँ non-zero code वर्ड देखो, ये code word है, वो non-zero, ये भी non-zero, ये भी non-zero, तीन लोग हैं, x1 x2 x3 non-zero, और x0 देखो x0 में सारे 0 है, मतलब वो zero code word है। ओके, तो चलो अब बताओ x1 x2 x3 ये non-zero है, तो what is weight of x1, then what is weight of x2, then what is weight of x3। चलो बोलो x1 का weight क्या है, weight का मतलब नहीं पड़ा, weight is nothing but total number of ones, तो x1 में कितने नंबर देखो, x1 में 3 1 है, x2 में कितने देखो तो 3 1 है, x3 में कितने देखो 4। अब मुझे बताओ इसमें से 3 3 4 मिनिमम नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे therefore minimum distance is equal to 3, मिनिमम डिस्टेंस है, तो बोलूंगा error detection, what is detection, error detection का फॉर्मूला है minimum distance equal to k plus 1, तो 3 equal to k plus 1, what is value of k, 1/2। how many errors detected, how many errors detected, तो answer is 2 errors detected, 2 or fewer। then the next is error correction, right। so what is correction formula is minimum distance equal to 2k plus 1, minimum distance is 3 equal to 2k plus 1, value of k is 1, how many errors detected, 2, how many errors detected 1, understood। तो ये होता है तुम्हारा ग्रुप कोड, करेक्ट है, यस समझा। अब मैं आपको और भी हिंट देता हूं, हिंट एकदम हिंट देता हूं, देखो हिंट, राइट, हिंट मतलब क्या, आपको ये देखना है, राइट, और यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट बुक में रेफरेंस बुक में क्वेश्चन है उसके लिए ये फंडा काम करता है, राइट। क्या फंडा है, क्वेश्चन देख के प्लीज ध्यान दो, क्वेश्चन देख के आप बोल सकते हो कि ये ग्रुप कोड है कि नहीं, जैसे मैंने क्वेश्चन देखे, वैसे मैंने क्वेश्चन देखे, ये जो लेफ्ट साइड के एम बिट्स है ना, लेफ्ट साइड के जो एम बिट्स है ना, वो राइट साइड के आउट ऑफ एन सबसे पहले एम से मैच होने चाहिए, समझा। इसका मतलब लेफ्ट साइड में जो दो बिट है ना, ये भी 2 बिट है, तो लेफ्ट साइड में जो दो बिट है वो राइट साइड के 5 में से पहले दो के साथ मैच होने, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं, ओके, ये मैच होने चाहिए, ये मैच होते हैं तो ग्रुप कोड है, एंड ग्रुप कोड है तो मिनिमम डिस्टेंस डायरेक्टली बोलो x0 तो 0 बोलो, x2 x1 के बेटा 3, x2 के बेटा 3, x3 के 4 तो मिनिमम 3, मिनिमम डिस्टेंस 3 को पेट्रोल के प्लस के साथ के वैल्यू है, मिनिमम डिस्टेंस 3 को पेट्रोल 2 के प्लस के साथ के वैल्यू है, अब यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है ना, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, देखो जो टोटल m बिट्स है, ये जो m बिट्स की पोजीशन है ये एग्जैक्टली मैच होते हैं, मैंने लिखा ही वैसे, बनाया ही वैसे, और ये राइट साइड का जो बाकी 3 बचे वो कैसे बना, उसके लिए रुकना पड़ेगा 11 बजे तक, 11 बजे 11 को समझ आएगा कि वो कैसे थे, फिर तो तुम ही क्वेश्चन बनाओ, तुम ही आंसर लिखो, समझा। तो जब मैं समझा ये कि ये सेम है मतलब ये ग्रुप कोड ही रहेगा, आपको चेक करना है ये ग्रुप कोड है नहीं, मैं तो बता देता हूं चेक करके, ये ग्रुप कोड है नहीं, एंड ग्रुप कोड है तो आगे मिनिमम डिस्टेंस एंड ऑल सब बता देता हूं, देखो ये ग्रुप कोड है नहीं, कैसे चेक करने का कंपोजिशन टेबल। अब ये सारे ग्रुप कोड का क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप सिंपल मिनिमम डिस्टेंस डायरेक्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, तो करने पड़ता है, ऊपर वाले से तुम देखो ग्रुप क्वेश्चन क्या बता देता हूं, दिस इज व्हाट x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, then x0 x1 x2 x3 x4 x5 then x6 x7, okay। yes, अब देखो यहाँ पे x0 is all 0, अब देखो यहाँ पे x और मेरे साथ बोलो सब कुछ है, x और चीजें मैं आपको बता दो, देखो जाएगा x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, सिमिलरली x1 x2 x3 x4 x5 x6, इसको तब तक 0 है x0 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 x0, राइट, 1 1 2 2 3 4 4 5 5 राइट, पांच और सॉल्व करना निकालनी है, ये x4 वाला x5 x6 x7 देन x0 0 6 0 7 7 1 1 मतलब अब प्लीज ध्यान दो, मैं पूरे के पूरे 6 बिट के साथ सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, सारे 6 बिट के साथ सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ 3 से होगा पहले,
शिफ्ट करके 1 में 2 1 में 2 बोलो 1 में 2 क्या आएगा 1 में 2 1 में 2 क्या आएगा 0 1 1 अभी 0 1 पहले क्या होता है 0 1 0 1 3 होता राइट तो यहाँ लिखूंगा x x अब मुझे कैसे अरे नहीं ऐसे पूरा कर पूरे 6 भी ना x1 के करो उसको बता क्या आता है पूरा करके बता चलो मैं तुम लो x1 x2 करो क्या करेगा आंसर 2x1 ये 6 भी x 6 वो बनाया ऐसे पूरे जरूरत राइट करो चेक 2x1 2x2 करो चेक तो एग्जांपल दिखा मैं 1 2 क्या आएगा 0 1 1 0 0 1 चेक करो आया ये वो then 1 2 1 3 पहले भी बताओ 1 0 1 0 0 x then 1 4 1 4 1 4 1 0 1 5 आएगा 5 आएगा 5 then 1 5 1 5 1 5 1 0 0 1 0 4 इधर आएगा 4 इधर आएगा 4 then 1 6 1 6 1 1 1 7 आएगा 7 आएगा 7 then 1 7 1 7 1 1 0 6 इधर आएगा 6 इधर आएगा 6 हो गया next अब 2 3 2 3 0 0 1 1 आएगा 1 आएगा 1 then 2 4 2 4 1 1 आएगा 6 आएगा 6 then 1 5 2 5 2 5 2 5 0 1 1 1 2 7 1 7 ये 7 ये 7 then अब समझा अब सभी कंप्लीट पूरा कंप्लीट होगा अब जब नॉन जीरो किसका वेट ऑफ नॉन जीरो बोलो इधर आएगा इधर आएगा 2 इधर आएगा 3 इधर आएगा 3 इधर आएगा 3 इधर आएगा 3 to 5 इधर आएगा 2 to 4 वेट आएगा 4 अब मिनिमम डिस्टेंस कितना है मिनिमम डिस्टेंस आएगा 2 ओके तो मिनिमम डिस्टेंस 2 आएगा तब डिटेक्शन क्या आएगा 1 करेक्शन क्या आएगा करेक्शन आएगा हाफ दैट इज इक्वल टू 0 समझा यस ओके समझा अजय आदित्य हर्ष मानसी मुस्तफी ओम रोहन संजना संध्या सानिया वैदेही दिनेश ओके ठीक है तो ये आप कंप्लीट कर दोगे एंड फिर हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस हो गया अब आएगा नेक्स्ट आपका is parity check matrix and maximum likelihood technique अब अपने को ये समझेगा देखो अब तक हमने क्या किया पहले एक फंक्शन दिया था उस सिंपल फंक्शन का मिनिमम डिस्टेंस या डिस्टेंस का फिर जस्ट आगे तो फिर हमने ये देखा कि एरर डिटेक्शन या मिनिमम डिस्टेंस डायरेक्टली करता है ग्रुप कोड पहले दोनों केस में इवन नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस या एरर डिटेक्शन वाया ग्रुप कोड मिनिमम डिस्टेंस दोनों में क्या था कि फंक्शन दिया था अब नेक्स्ट आएगा पैरिटी जनरेटर मैट्रिक्स पैरिटी चेक मैट्रिक्स उसमें कंसेप्ट ये सीखना है कि भाई अपने को इनपुट फंक्शन यानी उसको निकालना है आपको इनपुट फंक्शन को डिटरमाइन करना है आपका क्वेश्चन राइट तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स को यूज करके हमको एनकोडिंग फंक्शन को निकालना है राइट तो कैसे एकदम सिंपल है मैं पहले आपको प्रोसेस बताऊंगा प्रोसेस के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन देके आंसर कैसा लिखते बताऊंगा तो आप दुनिया के कितने भी इनपुट फंक्शन खुद लिख सकते हैं ठीक है चलो तो कंसेप्ट इज पैरिटी चेक मैट्रिक्स concept is parity check matrix please अब आपको मैट्रिक्स देंगे और उस मैट्रिक्स से आपको एनकोडिंग फंक्शन को राइट तो व्हाट इज मैट्रिक्स डेफिनेशन इज दैट लेट h इक्वल टू प्लीज let h इक्वल टू a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 a2n डॉट डॉट am1 am2 डॉट डॉट amn तो कितना m ar1 एक सेकंड द ऑर्डर मैट्रिक्स इज n क्रॉस r so n नंबर ऑफ नंबर ऑफ ओके हम करेंगे दिस इज am1 am2 am3 डॉट am then 1 0 0 डॉट 0 0 1 0 डॉट 0 डॉट डॉट 0 0 0 डॉट 1 so this is your parity check matrix of order n cross r. So it is 1R, 2R, 3R, yes. Okay, now it's so let H is this matrix. H is this given matrix. Let H be the given parity check matrix of order n cross R. What is n? Is the number of rows बताएंगे जरूरत नहीं है. What is R? Number of columns. Okay. Now ये जो parity check matrix है ना, it is actually divided into two parts. आप देखोगे ये जो parity check matrix है दो पार्ट में डिवाइड होता है. The upper half is your PGM. What is PGM? PGM is your parity generator matrix. Actually PGM matrix is responsible for generating a group and जो lower half है is identity matrix of order R. Identity matrix of order आपको अभी parity check matrix H दिया उससे आपको दिया जाएगा order n cross R. Then your job is to find m. What is m? Either the number of rows of PGM matrix is m or simply what is m is n minus R. So you will get value of m, you will get value of n. So you can easily determine group code E H क्योंकि parity check मिला है E H B raised to m 2 B raised to n आप आराम से फाइंड कर सकते हो. ओके क्यों क्योंकि m का डोमेन मिल गया n का डोमेन मतलब रेंज या डोमेन मिल गया तो डोमेन के पहले m बिट है वही डोमेन में पहले m बिट रहेंगे एंड जो बाकी के एलिमेंट बिट है वो जो m बिट है मल्टीप्लिकेशन करने का दैट्स ऑलरेडी राइट मल्टीप्लाई कौन सा है अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा प्रॉपर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर के साथ उसके बाद 11 हुआ है 11:30 तुम चैंपियन बनेंगे ठीक है 11:30 तुम एकदम चैंपियन बन जाएंगे ये कंसेप्ट ग्रुप गारंटी वाला बोलेंगे लेट h is equal to 101 011 100 010 001 be the given parity check matrix full stop determine e h b raised to m 2 b raised to n ओके समझा क्या कहना है आपको ये मैट्रिक्स h को निकालना है देखो सॉल्यूशन प्लीज ध्यान दो पूरा कंसंट्रेशन चाहिए solution. Obviously, solution is matrix is the order of the matrix is n cross r, right? What is here actual order of the matrix? How many rows are there? Okay. So if you can check this matrix is your upper matrix is parity generator matrix and lower matrix is identity matrix of order. What is value of r? Okay. So here, value of n is 6, value of r is 3. What is value of n? Value of n is 5. Number of rows minus 5. So n का value is 5, का value is 3. So m is n minus r. That means 2. Yeah, directly PGM के पास कितने rows होते हैं? n number of rows होते हैं directly मिल जाएगा. Okay. Understood? अब
तुम्हारा जो रूट कोड है m and n लेने के बाद ये बन गया तुम्हारा b raised to m to b raised to n, that is eh is b2 to b5. प्लीज ध्यान दो, जब मुझे पता चला डोमेन ऑफ bits, so what is e00, then e01, then e10, and finally e11. Out of 5 bits, the first two bits are same, 01, 10, 00, 01, 10, and 11. And your job is to find out next 3 bits. They are x1, x2, x3. 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 ओके, काम है। आपके नेक्स्ट जो 3 बिट है x1, x2, x3, उनको आपको निकालना है, राइट? चलो अब कैसे लेंगे? चलो स्टार्ट विद e00. प्लीज, व्हाट इज e00? ये जो पहले 2 बिट अवेलेबल है, व्हाट इज e00? ये जो पहले 2 बिट अवेलेबल है, दे आर योर मैट्रिक्स नंबर 1, राइट? मल्टीप्लाई, या ये 2 बिट बोलेंगे, ये 2 बिट बोलेंगे, मैट्रिक्स बन गया 2 बिट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? पैरिटी जनरेटर मैट्रिक्स के साथ, pgm। तो 1 pgm मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 1। प्लीज बेटा, प्लीज याद रखो, दिस इज योर XOR मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या? फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम करेंगे ना, तो 0 into 1 is 0, XOR with 0 into 0 is 0, so answer is 0. Okay, now first row second कॉलम करेंगे 0 into 0 is 0, XOR with 0 into 1 is 0, so your answer is 0. Now first row third कॉलम 0 into 1 into 0 into 1 is 0, XOR with 0 into 1, एलिमेंट मल्टीप्लाई बीच में XOR 0 into 1 is 0, XOR with 0 into 1 is 0, so your answer is 0. So आपके व्हाट इज e00, पहले 2 बिट 0 0 थे, बाद के 3 बिट आ गए 0 0 0। ओके, तो ये हो गया आपका e00 कंप्लीट। देन नेक्स्ट इज e01, एक मैट्रिक्स आएगा 01, दूसरा आएगा पैरिटी जनरेटर 1 0 1 0 1 1। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो आएगा 0 into 1 is 0, XOR with 1 into 0 is 0, so your first bit is 0। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 into 0 is 0, XOR with 1 into 1 is 1, so what is 0 XOR with 1 is 1। फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम 0 into 1 is 1, XOR 0 into 1 is 0, XOR with 1 into 1 is 1, राइट? 0 into 1 is 0, XOR with 1 into 1 is 1, so आंसर आएगा तो आपका जो e01 है वो आएगा 01 0 1 1। ओके, ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर आ गया, ये आ गया e01 का। अब लेंगे हम e10, e10 में एक मैट्रिक्स है 10, सेकंड मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 1 into 1 is 1, XOR with 1 into 1 is 1, XOR with 0, your answer is 1। then 1 into 0 is 0, XOR with 0 into 1 is 0, your answer is 0। 1 into 1 is 1, XOR with 0 into 1 is 0, your answer is 1। so what is e11 basically? e11 is 1, what is e10 is basically 1 0 1 0 1। okay, ये आ गया आपका आंसर। एंड लास्ट इज e11, what is e11? एक मैट्रिक्स आएगा 1 1 मल्टीप्लाई पैरिटी जनरेटर मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 1, so multiply XOR multiplication 1 into 1 is 1, XOR with 0, answer is 1। 1 into 0 is 0, XOR with 1 into 1 is 1, your answer is 1। 1 into 1 is 1, XOR with 1 into 1 is 1, so 1 XOR with 1 is 0। okay, so यहाँ what is e11 is 1 1 1 1 0। okay, so your final answer is, what is equal function e? b2 to b5 is e00 is 0 0 0 0 0, then e01 is 0 1 0 1 1, then e10 is 1 0 1 0 1, and what is e11 is 1 1 1 1 0। okay, okay, ये हो गया आपका प्रोसेस से आंसर। मैं तुमको 11:30 साढ़े 11 क्या करना है कंफर्म बता दो, अभी तो सुबह 11 हुआ है, राइट? अभी 11 हुआ है और 22 मिनट प्रोसेस समझ गया? प्रोसेस समझा क्या? समझा क्या? नहीं बताओ। रिप्लाई दो रिप्लाई, ये संजना एंड यश। ओके, ठीक है, लोगों को समझा, मानसी यस, अभी बोले मानसी। ठीक है, अर्षद ओके, ठीक है, चलो अब बताओ अपना क्वेश्चन लेके आंसर डायरेक्ट देखो। हां, अभी आपका आंसर आ गया, प्लीज ध्यान दो, 5 मिनट एक प्रॉपर ध्यान चाहिए, नजर की दूर करना, समझो। चलो अभी मैट्रिक्स है ना, इसमें डायरेक्ट आंसर निकालो। देखो मैट्रिक्स है एच मैट्रिक्स, राइट? अब मेरे को वहां से निकालना है। अब ये जो पैरिटी मैट्रिक्स है, इससे मेरे को डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? ठीक है, यहाँ लिखा डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट कर देंगे डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट सॉल्यूशन। ओके, अब मुझे बताओ, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑर्डर एन क्रॉस आ गया, वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 5, वैल्यू ऑफ r इज व्हाट 3, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ n इज 2। तो इतना मिल जाएगा मेरे को, जो एंड पॉइंट फंक्शन है वो b2 b5 है। प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, तो इट इज e00, देन e01, देन e10, एंड e11। आउट ऑफ 5 बिट्स है, उसमें से 00 01 10 11, राइट? अब मेरा प्योर है, प्योर 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 कंसंट्रेशन होगा पैरिटी जनरेटर मैट्रिक्स, प्योर कंसंट्रेशन होगा पैरिटी जनरेटर मैट्रिक्स। बताओ इसमें से अभी हमने 2 बिट पास करना है, इसमें से कौन सा बिट बने? प्लीज तुम कुछ नहीं बोलेगा, तुम कुछ बोलने का नहीं, क्वेश्चन भी मैं ही बोलूंगा, आंसर भी नहीं बोलूंगा, तुमको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ देखना है और सुनना है। सो ये राइट साइड में 5 बिट्स चाहिए अपने को, कोलोन में 2 बिट, तो अभी नेक्स्ट कंप्लीट करने हैं, कैसे करेंगे? चलो अब ये जो 2 बिट है ना आउट ऑफ 5, उसको चेक करो, which bit is 1, which bit is 1, आंसर नहीं दूंगा, which bit is 1 सर कोई नहीं, तो सिंपल ऐड 0 हो गया 5। अब यहाँ पे 0 1, राइट? which bit is 1, 0 1 में which bit is 1, आंसर सर सेकंड बिट is 1, तो सेकंड बिट 1 है, तो पैरिटी जनरेटर मैट्रिक्स का सेकंड रो इज आंसर 0 1 1। वापस 1 0, which bit is 1, which bit is 1, आंसर फर्स्ट बिट is 1, तो पैरिटी जनरेटर मैट्रिक्स का पहला रो इज आंसर। ओके, उसके बाद सर which bit is 1, सर which bit is 1, तो दोनों बिट 1 है, तो दोनों रो का एक्स वाला आंसर, तो एक्स आएगा, मतलब ये वाली जगह से आएगा, ये यहाँ फिर पैरिटी जनरेटर दोनों रो का एक्स बोलो 1 1 0, ये हो मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन। समझ गया? समझ गए भाई? यस, अब आंसर करते हैं, तुमको चलो अभी नेक्स्ट है, तो मैक्सिमम लाइक बिटवीन तो साइड आएगा, फिर साइड आएगा, तब ये क्वेश्चन और यहाँ आएगा, फिर तो तुम चैंपियन बन जाएंगे। फिर आई पैरिटी कैसे आता है, डायरेक्ट बिल्कुल कैसे आता है? ओके, चलो अब हम लेंगे मैक्सिमम लाइक बिटवीन। अभी एग्जाम वाला क्वेश्चन है, एग्जाम वाला कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? मैक्सिमम लाइक बिटवीन का एग्जाम क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है लेट h इज इक्वल टू, लेट h इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, let h is equal to this, okay, be the given parity check matrix, be the given
So इसमें पॉज हो गया था, ठीक है, चलो कर लेते हैं, राइट, स्टॉप, इट इज नॉट पॉज, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलो अनऑडियो ओके, नो ऑडियो ओके, लेट एच बी द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, राइट, क्वेश्चन इज determine root force pH d is to n to d is to n, हो गया, ये टोटल क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 10 मार्क्स का, determine पहला क्वेश्चन root force determine, दूसरा decode the following decode the following code words using maximum likelihood decoding technique, राइट, और तुमको याद होगा मैंने आज लेक्चर शुरू किया बराबर 9:07 बराबर, और 9:07 से लेकर 9:42 37 मिनट तक मैं सिर्फ ऐसी बातें कर रहा था कि why this coding theory is important for computer student, उस बातों में मैंने ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग टेक्निक का एग्जांपल भी दिया, कंसेप्ट भी समझाया, अब उसका नंबर सॉल्व करना है, मैं वापस समझा और मैंने तुमको बताया था ना, अच्छा जल्दी से मुझे क्वेश्चन पूछा था सर जो डिटेक्ट वाला करेक्ट हुआ वो सब ठीक है, जो नहीं हुआ उसका क्या करेंगे, तो मैंने जल्दी सॉल्व किया था, तेरा एड्रेस दे, मैं तुझे तेरे को भेज देता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को वो पॉइंट का आंसर नहीं देना था, मेरे आगे आने वाले टॉपिक में उसका आंसर खुद उसको मिलने वाला है, समझा, तो अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं सकते तुझे अलाउ नहीं है, मैं उसको कॉन्फिडेंट ये क्वेश्चन का आंसर आगे छिपा हुआ है, ठीक है, और अब यहां पे राइट टाइम उसको आंसर करना, ठीक है, चलो क्वेश्चन इज डिटरमाइन रूट yes 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 and decode the following code using maximum likelihood technique, so this is first concept 101101, second है 001101, राइट, एंड थर्ड है 010001, राइट, चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट तो सेम रहेगा, पहला पार्ट तो सेम रहेगा, व्हाट ऑर्डर n क्रॉस r, how many rows are there, 6, how many columns are there, 3, okay, so here value of n is 6, value of r is 3, so what is value of m is n minus r is 3, value of n is 6, value of r is 3 and value of m is n minus r which is 3, okay, तो मेरा जो एनकोडिंग फंक्शन है ये बनेगा b32 b6, तो जब b32 b6 बनेगा तो लेफ्ट साइड में e000 e001 e010 e011 e100 e101 e110 e111, okay, out of which 3 bits are 000 001 010 011 100 101 110 111, okay, yes, अब जो 6 बिट है उसमें से रिमेनिंग जो 6 बिट है उसमें से रिमेनिंग 3 बिट हमको फाइंड करना है, और मैंने बताया था क्या बता तुमको बताइएगा कि 3 बिट है ना, जो नहीं बचा उसके लिए हमको करना है पैरिटी जनरेटर मैट्रिक्स, ओके, अब मैं वापस खुद ही क्वेश्चन पूछूंगा, खुद आंसर दूंगा, मॉनिटर एंड पूरा मेरा क्वेश्चन समझा तो, ओके, अब 6 बिट से 3 बिट 0, तो मेरा क्वेश्चन है which bit is 1 सर कोई नहीं, तो ऐड 0, सर which bit is 1 सर थर्ड बिट is 1, so थर्ड बिट is 1 तो थर्ड रो इज आंसर, पैरिटी जनरेटर मैट्रिक्स थर्ड रो इज आंसर, तो यहां मैं पीजीएम लिख देता हूं, तुमको समझ लीजिए, राइट, ये है 101 देन 011 010 और बोल देता हूं इसको 0 फर्स्ट, ये यहां लिख देता हूं रो नंबर फर्स्ट, देन सेकंड देन थर्ड, तो तुम समझ लेना, नाउ which bit is 1 थर्ड बिट is 1 तो थर्ड रो इज आंसर 010, which bit is 1 सर सेकंड बिट is 1 तो सेकंड रो इज आंसर, which bit is 1 सर सेकंड एंड थर्ड तो सेकंड एंड थर्ड का XOR will be answer, what is XOR 001, which bit is 1 सर फर्स्ट बिट is 1 तो फर्स्ट रो इज आंसर, which bit is 1 सर फर्स्ट एंड थर्ड तो फर्स्ट एंड थर्ड का XOR will be answer 1 1 1, which bit is 1 फर्स्ट एंड सेकंड तो फर्स्ट एंड सेकंड का XOR will be answer 1 1 0, which bit is 1 all three so तीनों का XOR तो 1 0 0 का XOR आएगा 1, then 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 XOR आएगा 0 and 1 1 0 XOR आएगा 0, तो ये बन गया आपका पैरिटी, ये बन गया आपका ग्रुप कोड, समझा, एंड देयर इज वन मोर कांसेप्ट, ये जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स से आपका एनकोडिंग फंक्शन बनता है ना वो हमेशा ग्रुप कोड ही रहता है, वो हमेशा ग्रुप कोड ही रहता है, ओके, अरे समझा, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, समझा, अब आंसर देना है, दे आंसर फटाफट समझ, मानसी ने बोला सब, बाकी का कोई लाइक दो या नहीं छोड़, ठीक है, चलो अब ये तो हो गया अपना क्या है, ये तो हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स से पैरिटी, सॉरी पैरिटी मैट्रिक्स आपको क्या मिला, तो आपको मिला एनकोडिंग फंक्शन, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे ये 6 बिट को डिकोड करना होगा तो मुझे कौन से 3 बिट लगेंगे, जैसे कि अगर मेरे डेटा में ये 6 बिट्स है, इन 6 बिट को डिकोड करना है तो आई कैन यूज 001, अगर मेरे पास ये 6 बिट है एग्जांपल, इन 6 बिट को डिकोड करना है तो आई कैन यूज 111, ओके, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था आज इनिशियल पीरियड में, हां ये देखो ये वाला मैं आपको बता रहा था ये वाला है, हां राइट, राइट, ये जो एनकोड ये जो डेटा है ना एक्चुअल उसको एनकोड कैसे किया, इस 5 बिट को रिप्लेस कर दिया टू, नेक्स्ट ये 5 बिट को समझा, देखो लिखा है सेंडर ये वाला डेटा सेट करेगा, एनकोड करके एन्क्रिप्शन की अप्लाई करके, अंडरस्टूड, तो अभी आप यदि क्वेश्चन था सर हमेशा जरूरी है क्या जो डेटा सेट होगा वो ही होगा, सर हमेशा कंपल्सरी है क्या जो डेटा सेट, नहीं, यहां देखो डेटा सेट और डेटा रिसीव में 1 बिट का फर्क है, सो दिस इज 1 बिट का एरर डिटेक्शन ऑब्वियसली, अब वी नीड टू ओनली फॉर्मुलेट द फॉर्मूला फॉर एरर डिटेक्शन एंड एक्चुअल मैकेनिज्म विल बी कंसीडर्ड एज अ data getting subject like security and network जहां CRC for cyclic redundancy code and all, right, so there are n number of mechanisms exist which is used to correct the code during data transmission, understood, we need to only find the number because we are using the same concept in discrete mathematics, understood, but there are actual concept like CRC बोलो या like psycho redundancy बोलो, आप बोलो जो आइडेंटिफाई करेंगे डिटेक्ट करेंगे करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन आंसर मिल गया आपको, राइट, तो अब क्या जरूरी नहीं कि सेट करेंगे होगा क्योंकि 5 बिट के लिए अगर मुझे एनकोडिंग फंक्शन में एक्सैक्ट मैच मिला तो भी मैं तो नहीं, पर जरूरी नहीं मुझे एक्सैक्ट मैच मिला, जो एक्सैक्ट मैच नहीं मिलेगा तो मुझे नियरेस्ट नेबर, तो नियरेस्ट नेबर क्या होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, सो व्हाट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड, इट इज द नियरेस्ट नेबर, सो नियरेस्ट नेबर is 1 second, ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग टेक्निक, ओके, सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मतलब नियरेस्ट मैचिंग, बराबर है, नियरेस्ट मैचिंग का कांसेप्ट क्या होता है, अब मेरे को देखना है कि ये एनकोडिंग फंक्शन मेरे को दिया है, मेरे को डिकोड करना है ये बिट, राइट, 101101, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है उसमें xd मतलब xd बोलो, ठीक है, xd की जगह तो मैं xd बोलूंगा, xd मतलब कोड बिट, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है, चलो xd डिकोड करने वाला कोड इसको डिकोड करना है, xd बोले जी 101101, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है ये 6 बिट आपको एनकोडिंग फंक्शन में एक्जेक्टली एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है, xd क्या है जो भी 6 बिट है ये पहला पॉसिबिलिटी आपको एनकोडिंग फंक्शन में डायरेक्टली एज इट इज मिल जाएंगे, तो एज इट इज मिलने को तो जरूरत नहीं, एज इट इज मिल जाएंगे मतलब एनकोडिंग फंक्शन का एनिमेशन 0 आएगा, राइट, बट एज इट नहीं मिलेंगे तो आपने को ये के साथ जितने भी कोड है ना एनकोडिंग फंक्शन में सबका डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट मैच में तो 0 एक्जैक्ट मैच नहीं मिला तो 1 कंटिन्यू बनेगा 1 हो जाएगा, ओके, चलो लेट्स सी इट इज 1000 1000 मिलेगा 10 10 नहीं, तो इस केस में ये होगा मेरा x0, ये होगा मेरा x1, ये होगा मेरा x2, ये होगा x3, ये होगा x4, x5, x6, etc, तो मैं कहूंगा एमिनेशन निकालूंगा xd का x0 के साथ, xd का x1 के साथ,
XD का 0 निकाल के आंसर आएगा 4. तो XD का x1 के साथ नियरेस्ट नेबर निकालेंगे तो 1 will change, 2 3 4 4 will change. Then next XD का XOR with x2 के साथ निकालेंगे तो x2 के साथ निकालेंगे तो आएगा 1 will change, 2 will change, 3 will change, 4 will change, 5 will change. Then XD का XD के साथ निकालेंगे तो XD का 1 will change, B का 2 will change, फिर सेम है 2 will change, 3 will change, 3 will change. Then XD XOR with x2 अच्छा x4 x4 के साथ निकालेंगे तो पहला सेम दूसरा सेम तीसरा वाला चेंज 1 will change, 1 will change, 1 will change. तो एक्चुअली अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है तो बनाया तो रुक जाएगा, राइट? क्योंकि अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है तो 0 नहीं है, तो 0 0 हो सकता है, बट टेंशन मत लो, अगर नहीं भी रुक गए आगे चलेगा तो होगा XD XOR with x5 आगे भी वो किसी तरह ले सकता है. तो XD XOR with x5 साइन करेंगे तो सेम 1 will change, समझा? XD XOR with x6 ये सब करेंगे तो x6 पहला चेंज दूसरा चेंज तीसरा चेंज तो 2 चेंज हो गए, 2 चेंज हो गए, 3 चेंज 4 चेंज हो गए. देन XD XOR with x7 x7 का चेंज है 2 भी चेंज. अब मुझे बताओ सबसे मिनिमम वैल्यू किसके साथ आया? तो 2 के साथ. तो ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म फर्स्ट आंसर तो मैं बोलूंगा 2 decode XD equal to 101 101 we use अब कौन सा है इन दोनों में से फर्स्ट वाला we use x4 मतलब 100 अंडरस्टूड. तो इस 6 बिट कोड करने के लिए we can use 100 मैंने अब ये होगा पहले आंसर. अब दूसरे आंसर बोलो दूसरे में what is XD 00 चलो चेक करो मैच करो 00 तो चलो XD XOR with x0 your answer is 3. then XD XOR with x1 x1 के साथ 0 पहले दिन मैच है तो चौथा एक चेंज है दो चेंज है तीन चेंज है 3 चेंज. ओके then XD XOR with x2 आप थोड़े फिर में थे यमने थोड़ा सोच रहा था यमने थोड़ा ऐसा सोच रहा था तो सर अगर ये पहले दिन 101 है ना तो x5 के साथ आएगा ना क्यों लेते हो नहीं जरूरी इतना सिंपल था मैं इसको बता समझा सर 001 है सर तो देखिए x1 के साथ आएगा देखिए x1 के साथ ऐसा जरूरी नहीं है राइट. यस हां मुझसे सिंपल yes XD with x2 करेंगे तो XD with x2 को पहला जो बराबर 1 बिट चेंज 2 बिट चेंज 2 बिट चेंज के बाद आएगा 2 बिट चेंज के बाद आएगा तीसरा बिट चेंज चौथा बिट चेंज चार बिट चेंज. ठीक है then next is XD XOR with x3 x3 के साथ करेंगे तो पहला बिट चेंज दूसरा बिट चेंज तीसरा बिट चेंज सेम 1 चेंज के बाद 2 चेंज then XD XOR with x4 x4 के साथ जाएंगे तो एक चेंज दो चेंज then XD XOR with x5 x5 के साथ जाएंगे तो एक चेंज ओके एक चेंज दो चेंज ओके then XD XOR with x6 x6 के साथ जाएंगे तो एक चेंज दो चेंज तीन चेंज चार चेंज पांच बिट चेंज then XD XOR with x7 x7 के साथ जाएंगे तो एक दो चेंज ये दो चेंज आएगा ये दो तीन चेंज. अब देखो 1 नहीं आया तो which is maximum likelihood nearest neighbor कौन है? हां क्या कहते हैं मार्क तो अब ये 1 नहीं nearest में है राइट. तो अब nearest neighbor कौन है ये देखो 1 नहीं नंबर 2 राइट तो 2 है तो कौन सा 2 फर्स्ट आया तो which is x3 तो मैं बोलूंगा इसको डिकोड करने के लिए we can use x3 राइट. तो आंसर इज 2 decode XD equal to 001 101 we use x3 which is 101. okay yes दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए. अब 010 XD वाला जो है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो राइट. यस मुझको सिर्फ तुम्हारे थोड़े से डाउट है वो डाउट मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग मान लेना रिकॉर्डिंग चेक कर लेना क्योंकि मैं ओवरऑल ऑब्जर्व करता हूं कौन कब आया तो मुझको सिर्फ तुम्हारा एंट्री हो गया 10 के बाद तो तब हमारी जो एग्जाम है वो सब चलेगा इसीलिए समझ में मैं कैसे जाऊं. तो अभी संजय ने मिनट आउट करके मेरे को 10 बार कर दिया अभी वो नहीं हो रही है. ओम वर्ग जो बचा है वो मेरे ख्याल से सवाल के बाद अभी 5 से 6 बार वापस आ गया. ठीक है ये मैं देखते रहता हूं क्योंकि कोई पूछेंगे अगर वो प्रेजेंट है एंड क्वेरी है तो मेरा काम है वापस एक्सप्लेन करना राइट. बट वो प्रेजेंट के लिए उसके दौरान तो मुझे पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है तो मुझे समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं इसलिए मैं देखते रहता हूं. ठीक है सो हम y x4 y not x4 and xy y not x4 xy अगर सो हम तुमसे पूछता है y not x4 xy मैं यहां लेफ्ट साइड में पूछूंगा y not xy तो उसके लिए मैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये तुम्हारी साइड क्वेश्चन के लिए मैंने सब कर दिया राइट. लेकिन जब x4 के साथ बनाना ना मुझे शॉक हो जाता है अंडरस्टूड. पर राइट साइड में शॉक नहीं होता क्योंकि क्या पता 2 आने के बाद बना सकता है बट पूरा नहीं आया मस्त कर दिया मैंने अब ये मस्त हो गया तो 2 मिनिमम वैल्यू 2 है ना लेस मैच तो लेस मैच 2 x3 x4 x5 सबसे पहले किसका रहेगा वही आंसर ना. ओके यस तो फिर दैट इज द एंड ऑफ आवर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट. अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का पूरा सफा है द एंड है राइट. सो हो गया है पौने 12 फास्ट ओपिनियन दे दो हम 12 बजे वापस आएंगे क्योंकि मैंने बोला था कि जनरली हम 9 से शुरू करके 11 तक लेंगे 11:15 से ब्रेक पड़ना हो गया लगभग 2 hours 40 minutes तो प्लीज रिप्लाई करो प्लीज फटाफट ब्रेक देके अपन ग्राफ के लिए वापस आएंगे 12 बजे रिव्यू के चलेगा. फिर ग्राफ है वैसे सिंपल तो 12 बजे अगर हम 12:05 को 20 मिनट ब्रेक देंगे चलो हमने पढ़ाई करने ना तो अगर हम आ जाएंगे 12:05 को भी तो भी लगभग 2 बजे चलेगा ग्राफ कंप्लीट कर देंगे. संजना ओके बोल रहे मानसी ओके बोल रहे हेलो ओके हर्ष ओके ओके चलेगा सब चलेगा वही चलेगा संजा संजा बोल चलेगा ओके ठीक है फिर चलेगा तो अभी वाला 46 हम लेंगे फिर 12 को 12 को लाएंगे वापस. चलो ऑलरेडी पास्ट एड सेक्शन एंड नेम ऑफ सेक्शन ग्राफ ग्राफ रिप्लाई दूंगा बटन दबाऊंगा ऑलरेडी सेट. चलो विल स्टार्ट वेरी रिप्लाई और बाकी ओके मानसी आदित्य ओके चलो अभी मुझसे चला गया वापस मुझसे चला गया लास्ट में मुझसे मैंने डेट ज्वाइन किया था तो वापस चला गया ओम ओम वर्ग पे अब देखिए ग्राफ में से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है हाँ यदि का क्या सवाल है हाउ डू वी नो एरर का बिट एग्जैक्टली कौन सा है एंड हाउ वी करेक्ट इट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वी ओनली कम टू नो दैट कि एग्जैक्टली टोटल मैसेज में से कितने बिट का एरर डिटेक्ट करें
And the only outcome of this process is if we are transforming n number of bits as per the encoding function, out of n, how many bit is having error, or how many bit का error is detected and can be corrected. But the process of correction is taken care by other methodologies. ठीक है, ये नेक्स्ट जो करेक्शन है, जैसे मैंने बताया, अभी आपका सेमेस्टर 3 चल रहा है, सेमेस्टर 5 में आपको कंप्यूटर नेटवर्क आएगा, राइट? कंप्यूटर नेटवर्क में जब आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल शूट पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि आईपी करके इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? वो जो IPv4 IPv7 जो आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, तो वो प्रोटोकॉल होता है आईपी प्रोटोकॉल जो नेटवर्क लेयर से बिलोंग करता है, और वो रिस्पांसिबल होता है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जब पैकेट उसके अंदर डेटा होगा वो बराबर ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए, एंड अगर कोई मिस्टेक या कोई एरर रहेगा तो वो सोर्स को नोटिफाई करता है। तो वो जो आईपी प्रोटोकॉल है वो साइक्लिक रिडंडेंसी को या सी को यूज करता है टू डिटेक्ट एक्जैक्टली कि भाई एरर कहां पे है। सेकंड और एक मेथड है, अगर तुम ये बोल करेगा लेक्चर खत्म होने के बाद या इन बिटवीन भी, तो तुमको पता चल जाएगा इस कांसेप्ट पढ़ा है आपने, हैमिंग कोड पढ़ा होगा, राइट? डिजिटल लॉजिक जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा डीएलसीओ, उसमें हैमिंग डिस्टेंस वाला कांसेप्ट पढ़ा होगा, हैमिंग कोड वाला कांसेप्ट पढ़ा होगा, 7 बिट हैमिंग कोड रहता है, राइट? वो भी एक हैमिंग कोड मैकेनिज्म है जो एक्जैक्ट बिट पोजीशन बताता है कि कहां पे एरर है, ठीक है? चलो अब अपना कांसेप्ट आएगा ग्राफ, राइट? चलो तो कांसेप्ट इज ग्राफ थ्योरी। एक सेकंड, yes. So the concept is graph theory. The topics of graph theory is basic definitions of graph, right? Basic definition of graph is रोहन राइट में मिल जाएगा, आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है? बट वही लेक्चर देते हैं। चलो फर्स्ट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। सो व्हाट इज ग्राफ इज, व्हाट इज फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ? हम ग्राफ को फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं? तो आएगा व्हाट इज फाइनाइट इनफाइनाइट ग्राफ, व्हाट इज ट्रिवियल ग्राफ, व्हाट इज मल्टी ग्राफ, तो अलग डेफिनेशन ऑफ ग्राफ हम फर्स्ट से पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाट्स द डिफरेंस ग्राफ तो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ, आइसोमॉर्फिक ग्राफ दैट इज ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टोर, राइट? हाउ टू स्टोर ग्राफ यूजिंग मैट्रिक्स। ऑब्वियसली कंप्यूटर मेमोरी में हम ग्राफ को कैसे स्टोर करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो वी हैव इंसिडेंस मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये दो मेथड है जो वर्टेक्स टू वर्टेक्स एंड वर्टेक्स टू एज से हम मैट्रिक्स से ग्राफ को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करेंगे। और उसमें ग्राफ में डायरेक्ट होगा तो कैसे, अनडायरेक्ट होगा तो कैसे, मल्टी ग्राफ होगा तो कैसे, वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहला डिफिनेशन ऑफ ग्राफ, दूसरा आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म, हाउ टू स्टोर ग्राफ इन कंप्यूटर मेमोरी। देन वी हैव यूलेरियन एंड क्या है चार्ट में, डीएस ग्राफ का ग्राफ, डीएस का ग्राफ, डीएस का मतलब डीएस का ग्राफ नहीं समझोगे, यूलेरियन एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है? यूलेरियन हैमिल्टोनियन आगे रख सकते हैं, ओके, ग्राफ आगे रख सकते हैं, कंप्यूटर मेमोरी ग्राफ आगे रख सकते हैं, यूलेरियन हैमिल्टोनियन ग्राफ। देन ऑपरेशंस ऑन ग्राफ, how to take union of two graph, intersection of two graph, complement of graph, कैसे लिखते हैं वो। then path circuit trails, path circuit trails of graph, ठीक है? ये सब कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन 6 मार्क का थ्योरम बेस्ड एग्जाम में आता है। व्हाट इज थ्योरम बेस्ड? सिंपल थ्योरम फॉर कनेक्टेड ग्राफ इज फॉर एनी कनेक्टेड ग्राफ हमेशा समेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टाइसेस, समेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टाइसेस इज ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ एजेस। ये कनेक्टेड ग्राफ का बहुत फेमस थ्योरम। उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्क का टूअर क्वेश्चन isomorphism of graph. When you say two graph, दो ग्राफ देंगे G1 and G2 and बोलेंगे check whether या determine या show that the graphs are isomorphic to each other. So any two graphs are said to be isomorphic to each other. That means they are logically equivalent. Isomorphic मतलब logically equivalent रहेंगे वो ग्राफ, ठीक है? तो उसकी कंडीशन वो पढ़ेंगे। Then how to store graph in a computer memory हो सकता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा। यूलेरियन हैमिल्टोनियन ग्राफ, एक क्वेश्चन 6 to 8 मार्क श्योर क्वेश्चन। जब मैं श्योर क्वेश्चन बोलता हूँ तो अपने पास कुछ प्रीवियस 3 to 5 इयर्स का डेटा सेट है क्वेश्चन पेपर्स का, उसमें यूलेरियन हैमिल्टोनियन के बिना कोई क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है, राइट? इसलिए यूलेरियन हैमिल्टोनियन इतना इंपॉर्टेंट है। देन ऑपरेशंस ऑन ग्राफ मे बी क्वेश्चन आई एंड आई, देन पाथ सर्किट ट्रेल होगा, एक क्वेश्चन आई एंड आई, राइट? क्वेश्चन तो बनता है वहां से, आ भी सकता है नहीं आ सकता है, बट ये आइसोमॉर्फिज्म एंड यूलेरियन हैमिल्टोनियन इसका क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट एग्जाम में आता ही है, ओके? तो चलो बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, आइसोमॉर्फिक ग्राफ, हाउ टू ग्राफ इन कंप्यूटर मेमोरी, यूलेरियन हैमिल्टोनियन ग्राफ, ऑपरेशंस ऑन ग्राफ, पाथ सर्किट ट्रेल ऑफ ग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ मेरे को ऐसा लगता है ग्राफ बहुत 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 सिंपल है। अगर तुमको कंसेप्ट समझ में आया तो बस ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, छोटा भी। इसलिए मैं हर एक चीज को लिखने की जगह पे अपने पास लिखा हुआ मटेरियल है उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो मेरे घर से अपना काम फटाफट हो जाएगा। एंड एक्सप्लेन तो ऑब्वियसली करेंगे, मतलब ये तुम्हारा ग्राफ, ओके? तो देखो इसमें आपको ग्राफ के डेफिनेशन मिलेंगे, देन टाइप्स ऑफ ग्राफ मिलेगा, थ्योरम्स ऑफ ग्राफ मिलेगा, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आइसोमॉर्फिक ग्राफ मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा, उसके बाद यूलेरियन हैमिल्टोनियन ग्राफ मिलेगा, उसके बाद मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद ऑपरेशन मिलेंगे, कट सेक्टर वर्टेक्स मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ यस, तो ये ग्राफ है, ओके चलो यस, यहाँ पे क्या है, और जो रिक्वायर्ड चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा पार्ट वैसे ही ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ओके चलो। यहाँ देखो इधर, जैसे मैंने लिखा ऊपर कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यहाँ पे फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, मैं एक्सप्लेन करूंगा सब डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्राफ? सो डेफिनेशन ऑफ ग्राफ इज बेसिकली, अगर जैसे संजना ने बोला कि सर डेटा स्ट्रक्चर में हमको सब्जेक्ट है एंड डेटा स्ट्रक्चर में हम ग्राफ कर रहे हैं, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा स्ट्रक्चर में भी आप पढ़ते हो कंसेप्ट ऑफ ट्रीज एंड ग्राफ, तो ऑब्वियसली ट्रीज एंड ग्राफ आर नथिंग बट डेटा स्ट्रक्चर, परफेक्ट। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड ग्राफ? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड ग्राफ आर ट्री इज कॉल्ड एज हायरार्किकल, ट्री इज कॉल्ड एज हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
nodes and links, whereas graph is called as planar representation of non-empty set of vertices and set of edges, right? ट्री में हायरार्की इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ट्री को ऑब्वियसली टॉप डाउन फैशन में ही रीड किया जाता है, ऑब्वियसली ग्रैंड पैरेंट नोड या चाइल्ड पैरेंट रिलेशनशिप सब होता है, एंड कैसे चलेगा ग्राफ में ग्राफ है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, तो मैं ग्राफ के साथ दूंगा, सिर्फ बताऊंगा ट्री और ग्राफ के कंपैरिजन में ट्री को हायरार्की स्ट्रक्चर बोलते हैं, ग्राफ को आप प्लेनर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, सो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ आप हॉरिजॉन्टली पढ़ोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं पड़ता, एंड वर्टिकली पढ़ोगे तो भी चलेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्राफ एक ही होता है, बिकॉज़ ग्राफ इज अ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, जितने भी वर्टिसेस है वो सारे प्लेन पेपर पे खड़े हैं, सारे प्लेन पेपर पे खड़े हैं, कोई किसी का पैरेंट नहीं, कोई किसी का चाइल्ड नहीं, कोई किसी का ग्रैंड पैरेंट नहीं, कोई किसी का ग्रैंड चाइल्ड नहीं, राइट? सो व्हाट इज ग्राफ बेसिकली? इट इज अ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, इसका मतलब ये है व्हेन आई से नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस, तो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस मतलब ग्राफ में मिनिमम एक वर्टेक्स तो होना ही चाहिए, हां एजेस नहीं रहेंगे चलेगा, सपोज कंसीडर ग्राफ हैविंग ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एज, है ना? सच टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज ट्रिवियल ग्राफ, तो व्हाट इज अ ट्रिवियल ग्राफ? ट्रिवियल ग्राफ इज ग्राफ हैविंग ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एजेस, तो ये इन जनरल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ हो गया। जब एक्चुअली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम बोलेंगे फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफ, then what is formal definition of graph is graph g is equal to v comma e comma gamma, v comma e comma gamma, what is v है? V is v of g is nothing but non empty set of vertices, what is e of g? E of g is nothing but set of edges, and what is gamma? Gamma is simply representing an edge joining vertex v comma w, what is gamma? Gamma is also called as edge function, gamma is called as edge function, so gamma represents an edge with joining the vertex v comma w। चलो अब ये gamma क्या होता है, एग्जांपल देखिए, लिखने वाले, राइट? चलो तो formal description of graph is v comma e comma gamma, इतना समझा? And then type of graph, first type of graph is your direct graph, अभी बताने की जरूरत नहीं, direct graph, suppose in the graph each and every edge is having a direction from source to destination, start to end, domain to range, is called as direct graph। बाकी जो एग्जांपल दिए देखो, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट ग्राफ में ग्राफ को डायरेक्शन होता है, ग्राफ में जो एजेस होते हैं हर एक को डायरेक्शन होता है, स्टार्ट टू एंड, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डोमेन टू एंड। अनडायरेक्टेड ग्राफ में किसी भी एज को डायरेक्शन नहीं होता, ओके, तो उसको अनडायरेक्टेड हम बोलते हैं, राइट है? समझा? अब डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड बेसिक क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ में देखो एज इवन, जब मुझे इवन को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इसके लिखूंगा 1 2 1 सोर्स टू डेस्टिनेशन, 2 1 लिखा तो रॉन्ग है, बिकॉज़ डायरेक्टेड एज, बट अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप देखोगे एज इवन को आप 1 2 लिख सकते हैं या 2 1 भी लिख सकते हैं, ओके, बिकॉज़ द एज को डायरेक्शन है ही नहीं, तो दोनों लिखा तो करेक्ट है। चलो डायरेक्ट ग्राफ समझा, डायरेक्ट ग्राफ ऑब्वियसली नल ग्राफ, ग्राफ नो डायरेक्शन नो एज, नल ग्राफ परफेक्ट है। नेक्स्ट नल ग्राफ के बाद आएगा फाइनाइट, डिफाइनाइट ग्राफ, व्हेन यू से ग्राफ इज फाइनाइट द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ग्राफ आर काउंटेबल फाइनाइट, हम जब ग्राफ में कौन से एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, कौन से वर्टिसेस एंड एजेस, तो द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस प्रेजेंट इन ग्राफ काउंटेबल फाइनाइट, इट इज फाइनाइट ग्राफ, इट इज नॉन काउंटेबल इनफाइनाइट, डिफाइनाइट ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ, जिसमें बताया ग्राफ हैविंग ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एज, ट्रिवियल ग्राफ। द नेक्स्ट इज कनेक्टेड ग्राफ, देखो आज एग्जांपल दिया लेफ्ट में, व्हाट इज कनेक्टेड ग्राफ? ऑब्वियसली ईच एंड एवरी एज और ईच एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ is connected to some of the other remaining vertices of graph G, then it is called as connected। Suppose in case if any of the single vertex of graph G are disconnected or isolated from the remaining graph, it is called as disconnected graph। Understood? तो ये सिंपल chain definition बेसिक कांसेप्ट ऑफ ग्राफ के लिए थे, एग्जांपल मुझे लिखा, एग्जाम में मुझे लिखा याद definition। नेक्स्ट इज मल्टीग्राफ, तो मल्टीग्राफ का definition क्या है? Any graph G, what is multigraph? Any graph G is called as multigraph if only if either of the above two conditions, either of the below two conditions satisfied। किसी भी ग्राफ को आप मल्टीग्राफ तभी बोलेंगे जब दोनों में से एक या कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। कंडीशन नंबर 1, मोर देन वन एज इज यूज्ड टू जॉइन या कनेक्ट सेम वर्टेक्स, सेम वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए एक से ज्यादा एज का यूज किया है, मोर देन वन एज इज यूज्ड टू जॉइन सेम वर्टेक्स, इट इज मल्टीग्राफ। सेकंड कंडीशन, एन एज जॉइन टू अ वर्टेक्स इटसेल्फ, सेल्फ लूप है, एज ने सेल्फ वर्टेक्स को जॉइन किया है, इट इज मल्टीग्राफ। एग्जांपल देखो, एज e4, पहला एग्जांपल एज e4 एंड e5, सो एज e4 is used to join vertex b2 with 3 and e5 is also used to join vertex b2 with 3, so multiple एज join same vertex, it is multigraph। सिमिलर सेकंड एग्जांपल देखो, एज e4 is nothing but 3 3, this is age joining vertex itself, self loop, it is a multigraph, okay, yes। अब थ्योरम क्या बताया ग्राफ को बताया, and for any connected graph exists in the real world, this theorem holds true for any connected graph G, always the sum of degrees of vertices of graph G is equal to twice the number of edges, is equal to twice the number of edges, so summation of degrees of vi is equal to 2 into number of
देखो कंसीडर प्लीज कंसीडर ग्राफ जी में क्या था वर्टेक्स वर्टाइसेस ए बी सी डी ई बराबर 5 वर्टाइसेस थे देन एजेस को मैंने नंबर दिया e1 e2 e3 e4 e5 6 7 ये अब क्वेश्चन क्या है ग्राफ दिया है क्वेश्चन है डिस्क्राइब ग्राफ जी को फॉर्मली डिस्क्राइब करो मतलब फॉर्मली डिफाइन करो सेकंड फाइंड द डिग्री एंड पैरिटी ऑफ ईच वर्टेक्स हर वर्टेक्स का डिग्री एंड पैरिटी करो वो पैरिटी वो वाला नहीं है जो आपने डिजिटल लॉजिक में लिया था याद है नंबर और है तो पैरिटी और नंबर 1 पैरिटी 1 वेरीफाई दैट थ्योरम को वेरीफाई करो वेरीफाई दैट sum of degrees of each vertex is equalized into number of edges तो ठीक है चलो ग्राफ दिया है लेफ्ट साइड में क्वेश्चन का आंसर फॉर्मल डिस्क्रिप्शन व्हाट इज फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ग्राफ जी is equal to v e gamma आप देखते हो g is equal to v e gamma so what is v of g basically vertices list of vertices what is e of g basically list of edges अब gamma फंक्शन gamma is called the age function तो e1 age का फंक्शन क्या e1 age का फंक्शन मतलब age e1 एग्जैक्टली कौन से वर्टिसेस के बीच में कौन से वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है तो age e1 is देखो देखो यहां पे लिखा है e1 what is e1 e1 is a comma b but since it is undirected graph you can even write a comma b no problem even you can write b comma a not a problem right so ऐसे ही सारे एज का gamma फंक्शन लिखा करेक्ट है अब सेकंड क्वेश्चन डिग्री एंड पैरिटी देखो ब्लू कलर में राउंड करके दिया है वर्टेक्स को तो वर्टेक्स का डिग्री आपको बताने की जरूरत नहीं है राइट सिंस इट इज अनडायरेक्टेड तो द नंबर ऑफ सिंस इट इज अनडायरेक्टेड ध्यान से सिंस इट इज अनडायरेक्टेड तो व्हाट इज डिग्री ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो व्हाट इज डिग्री ऑफ ग्राफ तो डिग्री ऑफ ग्राफ इज टोटल नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ओवर दैट वर्टेक्स राइट मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस उस वर्टेक्स को कनेक्टेड है उसको बोलते हैं डिग्री हां मतलब यही यही अगर कंसेप्ट डायरेक्ट होता तो अपने को दो कंसेप्ट आते हैं डिग्री एंड डिग्री जो हमने रिलेशन पढ़ रखा है सो डिग्री निकाला सकता अगर डिग्री का नंबर और है तो और पैरिटी नंबर 1 है तो इज चलो फॉर एनी कनेक्टेड ग्राफ जी फॉर एनी कनेक्टेड ग्राफ जी ऑलवेज द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस चलो डिग्री ऑफ ए प्लस डिग्री ऑफ बी प्लस डिग्री ऑफ सी प्लस डिग्री ऑफ डी प्लस डिग्री ऑफ डिग्री निकाल रही इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू बराबर सब का समेशन किया डिग्री का प्लस ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ एजेस सो नंबर ऑफ एजेस इवन से लेके 8 है तो 16 इक्वल टू 16 हमने प्रूव कर दिया ये थ्योरम बेस्ड है सेकंड थ्योरम क्वेश्चन ये था ऐसा कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ दिया है जिसको 9 वर्टिसेस है 9 वर्टिसेस एंड सब का डिग्री दिया है पहले वर्टेक्स दूसरा तीसरा ऐसे टोटल 9 के 9 का डिग्री दिया है राइट आपने को ये कितनी एजेस है सेम थ्योरम क्वेश्चन समेशन ऑफ डिग्री ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस चलो वर्टिसेस के नाम से क्या मतलब डिग्री चाहिए तो 9 के 9 का डिग्री दिया है तो इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एजेस तो एजेस आंसर मिल जाएगा सिंपल क्वेश्चन 5 मार्क्स ऐसा आता है नेक्स्ट अब ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है अब तक जो क्या समझ सकते हो वटे ओम समझा चल रहा था तानिया मानसी ओके ओके चल अब कंसेप्ट है हां चल okay okay graph isomorphism yeah the concept is isomorphic graph any two graphs are said to be isomorphic obviously दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब रहेंगे आइसोमॉर्फिक मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट अब ये जो कंसेप्ट दिया ना मैंने तुमको दिखाया वो एग्जाम में लिखने के लिए एग्जाम ऐसा लिखने का बट एक्चुअल सेंस में अगर तुमको पढ़ना होगा ये जो कंडीशन लिखे हैं ना ये सारे सफिशिएंट कंडीशन देखो हमेशा वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अगर आपको प्रूव करना है तो आपको उस चीज के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करना पड़ता है तो बट वो जो नेसेसरी कंडीशन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा राइट कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर वो एक्चुअल पे ऑन पेपर करने जाएंगे एंड ग्राफ जितना बड़ा रहेगा ग्राफ में नंबर वर्टाइसेस इजीली रहेंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी और है और 5-6 मार्क के लिए अपने को इतना पड़ता नहीं है तो हम सफिशिएंट केसेस लेके सफिशिएंट कंडीशंस लेके हम प्रूव कर देते हैं बोल देते हैं कि these two graphs are isomorphic to each other these two graphs are logically equivalent to each other बट ये जो कंडीशन मैंने लिखे हैं ऊपर ये सारे सफिशिएंट कंडीशन है ओके ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है ये सफिशिएंट कंडीशन है राइट चलो अब देखो इधर तो वन ऑफ द सफिशिएंट कंडीशन चलो let G1 and G2 to be the any two given graph then they are said to be isomorphic to each other if and only if following three conditions are satisfied number 1 the total number of vertices of G1 is exactly equal to total number of vertices of G2 second total number of edges of G1 is exactly equal to total number of edges of G2 इनका मतलब है दोनों ग्राफ में सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए मतलब इक्वल नंबर ऑफ राइट दोनों के नंबर ऑफ एजेस भी इक्वल होने चाहिए एंड तीसरा both the graph must have equal number of vertices having same degree both the graph must have equal number of vertices having same degree मतलब अगर सपोज ग्राफ 1 में ऐसे 3 वर्टेक्स जिसका डिग्री 2 है तो ग्राफ 2 में भी ऐसे एक्जेक्टली 3 वर्टेक्स होने चाहिए जिनका डिग्री 2 है ग्राफ G1 में एक ही वर्टेक्स है जिसका डिग्री 4 है तो ग्राफ G2 में भी ऐसा एक्जेक्टली एक ही वर्टेक्स होना चाहिए जिसका डिग्री 4 है अगर ग्राफ G1 में सपोज ऐसे दो वर्टेक्स है जिनका डिग्री 3 है तो उधर भी एक्जेक्टली दो ही होने चाहिए जिनका डिग्री 3 है समझा सो इसका मतलब है बोथ द ग्राफ मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स हैविंग सेम डिग्री तो ये जो कंडीशन लिखा ना आपने दिस इज योर सफिशिएंट कंडीशन अब आप बोलेंगे सर नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास ग्राफ टॉपिक में ग्राफ चैप्टर में टॉपिक है जो मैंने ऊपर लिखा है हाउ टू स्टोर ग्राफ जिसने संजना ने रिप्लाई किया स्ट्रक्चर हाउ टू स्टोर ग्राफ यूजिंग मैट्रिक्स इन कंप्यूटर तो नेसेसरी कंडीशन क्या बोलता है आइसोमॉर्फिक का नेसेसरी कंडीशन बोलता है कि जब दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक रहेंगे कब जब दोनों के इंसिडेंस मैट्रिक्स दोनों के मैट्रिक्स दोनों ग्राफ के जब आप मैट्रिक्स निकालोगे एंड वो मैट्रिक्स एक्जेक्टली सेम है एक्जेक्टली आइडेंटिकल आएंगे तब वो मैट्रिक्स तब वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक रहेगा बट वो एक्जेक्टली मैच करने के लिए जो ट्रायल एंड एरर एक्जेक्टली दो मैट्रिक्स मैच करने के लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आपको लेने पड़ेंगे ना वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंक्रीज होंगे जैसे कि नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इंक्रीज होते हैं या सपोज अगर मेरे पास ग्राफ G1 में ऐसे 3 वर्टेक्स है जिनका डिग्री 3 है और उधर भी ऐसे 3 वर्टेक्स है जिनका डिग्री 3 है तो एक्जेक्टली G1 का कौन सा वर्टेक्स G2 के वो 3 में से एक के साथ मैच होता है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा तो आपको करना क्या है लॉजिकली देखने जाएंगे सोच अगर डेवलप करनी है तो आपको करना क्या है पहले ग्राफ मैट्रिक्स एज लिखना है फिर सेकंड वाले ग्राफ का मैट्रिक्स इस डायरेक्शन में और इस तरीके से लिखना है कि वो पहले से मैच हो जाए फिर हो सकता है कि सेकंड वाले मैट्रिक्स में जब आप लिखोगे तो वर्टिसेस एंड एजेस का ऑर्डर वेरी हो सकता है राइट तो चलो मैं एग्जांपल के बता देता हूं एग्जाम में आपको 6 मार्क चाहिए तो 6 मार्क के लिए क्या चेक करना नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम नंबर ऑफ एजेस सेम एंड दोनों ग्राफ में मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैविंग सेम डिग्री अब जैसे मुंबई सिटी में जो स्टेशन है राइट जो स्टेशन है उसको अगर हम ग्राफ के वर्टिसेस पकड़ेंगे और उस स्टेशन को पहुंचने के लिए जो रोड है उसको अगर उनका रिलेशन पकड़ेंगे मतलब उनका वर्टिसेस पकड़ेंगे और डेटा स्ट्रक्चर तो तुम पढ़ लिया होगा तो उसमें आपको मिनिमम पाथ या शॉर्टेज पाथ डिस्टेंस ये सब कांसेप्ट डेटा स्ट्रक्चर में है यू हैव अ प्रिंस एल्गोरिथम यू हैव अ क्रूस्टल एल्गोरिथम यू हैव अ डिस्टेंस एल्गोरिथम कि भाई मैं एक स्टेशन पे खड़ा हूं पूरे सिटी के स्टेशन को विजिट करके आना है कम से कम तो जब मैं बोलूंगा सिटी का ग्राफ मतलब आपको दो चीजों में इंटरेस्ट है एक तो वर्टिसेस दूसरा एजेस इन आवर केस इन आवर एग्जांपल योर स्टेशन आर रिप्रेजेंटेड वर्टिसेस एंड द पाथ और लास्ट पाथ बिटवीन दे रिप्रेजेंटेड एज एज राइट तो ये सफिशिएंट कंडीशन समझो फिर मैं एग्जांपल लेके तुमको नेक्स्ट कंडीशन बताऊंगा अब जैसे इधर शो दैट द ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर चलो पहला क्वेश्चन है शो दैट द ग्राफ G1 and G2 आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ देखो G1 दिया है देखो G2 दिया है अपना कंडीशन क्या है पहला नंबर वर्टिसेस ऑफ G1 में कितने वर्टिसेस है तो आंसर है 5 G2 में कितने वर्टिसेस है आंसर है 5 तो 5 5 नंबर ऑफ एजेस काउंट तो E1 से लेके E8 टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ 1 से टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ 2 ऑल्सो तो सेम है फिर मैं सबका डिग्री निकालूंगा ग्राफ G1 में देखो सारे वर्टिसेस का डिग्री निकाला ग्राफ G2 में सारे वर्टिसेस का डिग्री निकाला उसके बाद मैच कंपेयर किया अब ग्राफ G1 अगर देखते हो तो ऐसे 1 2 3 4 चार वर्टिसेस है जिनकी 3 है तो इधर भी देखो ऐसे चार वर्टिसेस जिनकी 3 यहां एक्जेक्टली 1 वर्टिसेस का डिग्री 4 है इधर भी एक्जेक्टली 1 वर्टिसेस का डिग्री 4 तो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर अब अगर मुझे सच में आइसोमॉर्फिक बताना है दिखाना है तो मैं क्या करूंगा मैं यहां मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा इसको ग्राफ को
करेक्ट है। ग्राफ को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म में ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ बराबर, पहला एडजेसेंसी मैट्रिक्स मतलब वर्टेक्स टू वर्टेक्स, राइट, एंड सेकंड इज योर इंसिडेंस मैट्रिक्स मतलब वर्टेक्स टू एजेस। चलो अगर मैं वर्टेक्स टू वर्टेक्स भी बोलता हूं तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अब होगा क्या प्लीज, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो एग्जाम के लिए नहीं, बट कुछ वैसे होते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एआई पॉइंट ऑफ व्यू, आगे आने वाले सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दो सिटी के रास्ते। सिंपल होता क्या है, जब आप किसी अननोन जगह पे जाते हैं, राइट, तो आप गूगल मैप यूज करते हैं या किसी बाहर की कंट्री में किसी स्टेट में किसी सिटी में जाते हैं, तो उनका एक रोड मैप आपके पास रहता है, राइट। अभी तो जरूरत नहीं है, गूगल मैप आया हुआ है तो गूगल मैप आपको दिखाता है रास्ता, राइट। तब अब ये दो सिटी लॉजिकली कनेक्टेड है कि नहीं, लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, सेम स्ट्रक्चर में है कि नहीं, अगर वो मुझे चेक करना है, मतलब मुझे आइसोमॉर्फिज्म चेक करना है, तो दो ग्राफ जब कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर रहेंगे और उनके मैट्रिक्स सेम मिलेंगे, तब वो ग्राफ हमारे लॉजिकली इक्विवेलेंट आइसोमॉर्फिक रहेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्टेक्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। अब ये है G1 का मैट्रिक्स, राइट। तो V1 वर्टेक्स 1 को कौन कनेक्टेड है, 2 3 4 कनेक्टेड है, 2 3 4 कनेक्टेड है, ओके। देन वर्टेक्स 2 को कनेक्टेड है 1 3 5 कनेक्टेड है, 1 3 5 कनेक्टेड है, ओके। नेक्स्ट 3 को कनेक्टेड है तो 1 2 4 5 कनेक्टेड है, 1 2 4 5 कनेक्टेड है। देन नेक्स्ट 4 को कनेक्टेड है तो 1 3 5 कनेक्टेड है, 1 3 5 कनेक्टेड है। देन 5 को कनेक्टेड है 2 3 4 कनेक्टेड है, 2 3 4, ओके। अब ये एक फिक्स हो गया मैट्रिक्स। अब मैं G2 का मैट्रिक्स बनाऊंगा। अब देखो हमने जो नीचे मैटर किया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज मैं कहूंगा वर्टेक्स V1, G का वर्टेक्स V1 वो किसके साथ मैच हो सकता है, वो चारों में से किसी भी एक के साथ मैच हो सकता है। तो मुझे अब ट्रायल करना पड़ेगा कि V1 एग्जैक्टली चार में से किसके साथ मैच होता है। तो जब आप मैट्रिक्स बनाओगे ना, देखो अभी मैं यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये G2 का मैट्रिक्स है। तो चलो G2 U1 U1 किससे कनेक्टेड है, 2 3 4 5, so it's 2 3 4 5। देन नेक्स्ट 2 किससे कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है 1 3 4 1 3 4, ओके। देन 3 किससे कनेक्टेड है, 1 2 5 1 2 5। देन 4 किससे कनेक्टेड है, 4 4 4 है 1 2 1 2 5 1 2 5। तो 5 किससे कनेक्टेड है, 1 3 4 1 3 4। अब क्या करने का, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो रो है, एग्जैक्टली ये जो रो है वो अब यहाँ किसके साथ मैच कर रहा है, ये जो रो है 0 1 1 0 0 1 1 0, राइट। अब देखो 0 1 1 0 कर रहा है मैच, नहीं कर रहा है, बराबर है, रो के साथ नहीं कर रहा होगा मैच, बराबर। अरे यस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब मुझे चेक करना पड़ेगा वर्टेक्स V1 जिसका डिग्री V1 का डिग्री 3 है। तो अब यहाँ तीन लोग कौन है, 2 3 4 5 कौन है, 2 3 4 5। अब मुझे एक तो बात समझ में आती है कि डायगोनल सारे जीरो रहेंगे क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, बराबर। अब मुझे चेक करना है कि 1 किसको कनेक्टेड 2 3 4, तो अब यहाँ 2 3 4 2 3 4 2 3 4 को कनेक्टेड कौन है, तो 2 3 4 कनेक्टेड V1 इधर, बट यहाँ 5 एक्स्ट्रा है। तो अब अपने को मतलब जैसे कि ऐसा हो जाएगा मुझे, मतलब अभी मैं फिजिकली आपके सामने नहीं हूं तो इसलिए मुझे समझ नहीं पा रहा है, मैं समझ रहा हूं तुम समझ रही। ये कैसे होगा बताइए, वो छोटा सा क्यूब वाला गेम मान लिया, तो क्यूब वाले गेम के बच्चे थे तुम्हारे सेम नंबर वाले से, क्या नाम है उसका, रूबिक रूबिक ओके रूबिक रूबिक वाला, ओके हाँ, रूबिक वाला। तो होता क्या है, अब हो सकता है रूबिक में क्या होता है, देखो तुम सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही मान लो, अभी वो जो रूबिक है ना, जो क्यू है ना, उसको आप कंसीडर करोगे तो उसको आप हॉरिजॉन्टल घुमाओगे ना, तो मतलब ट्रांसफॉर्मिंग रो या इंटरचेंजिंग रो, अंडरस्टूड। अरे आया नहीं, उसको रो घुमाओगे तो इंटरचेंजिंग रो, सिमिलरली उसको वर्टिकल घुमाते हो दोनों में पॉसिबल है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल घुमाते हो तो इंटरचेंजिंग रो, एंड जब वर्टिकल घुमाते हो तो इंटरचेंजिंग कॉलम, एंड जब इंटरचेंजिंग और रो एंड कॉलम दोनों का मिक्सचर बैठता है तो वो सारे सेम कलर एक फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पे अब अगर यहाँ पे आपको पहला रो 0 ट्रिपल 0 यहाँ एग्जैक्टली नहीं मिलता है, इसका मतलब इस रो को पाने के लिए आपको G2 के कुछ रो भी चेंज करने पड़ेंगे, रो करने पड़ेंगे, कॉलम भी करने पड़ेंगे, समझा। जो मुझे समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम को करेंगे तो आपको शायद मिल सकता है 0 ट्रिपल 0, क्योंकि तब ये एलिमेंट 0 यहाँ चला जाएगा और 0 ट्रिपल 0 मिलेगा, अरे समझा। तो ये सारे का अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, अगर ये मेरा मैट्रिक्स है ना, अगर ये मेरा मैट्रिक्स है ना G1 का, तो आप G2 के मैट्रिक्स को ऐसे चेंज करो, मॉडिफाई करो कि ये V1 जैसा G1 जैसा मैट्रिक्स बन जाएगा और वो ग्राफ कंप्यूटर मेमोरी में दोनों सेव होगा यूजिंग सेम मैट्रिक्स, सो दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, अंडरस्टूड। बट यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करना यूजिंग अ प्रोग्राम इज मोर सिंपल एज कंपेयर टू मैनुअल, समझा। क्योंकि ये दोनों ग्राफ को जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स करके सेव करेंगे एंड बिट बाय बिट पोजीशन 2D एरे यूज करके चेक करेंगे या 2D एरे यूज करके स्टोर करेंगे, तो ये प्रोग्राम करके, राइट, अपने को वेरीफाई करना सिंपल है, रादर फिजिकली ट्रेस करना, मैथमेटिकली ट्रेस करना। इसीलिए हम ये अब मैट्रिक्स से नहीं दिखाते, हम क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन लगाते हैं और सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई होगा ये मैट्रिक्स होगा ही, हां नंबर ऑफ इटरेशंस बनेंगे बट वो आइडेंटिकल होगा ही होगा, ओके। सो ये आइसोमॉर्फिक का कांसेप्ट है, आइसोमॉर्फिक का एक्चुअल कांसेप्ट बोलता है टू ग्राफ शुड बी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मतलब देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन शुड बी सेम, राइट। चलो अब नेक्स्ट है ये वाला ग्राफ, रिटर्न मतलब ग्राफ आइसोमॉर्फिक, तो याद मैंने नंबर ऑफ इटरेशंस, नंबर ऑफ डिग्री सब लिख दिया एंड कहानी खत्म कर दी। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन किए हुए हैं, इसमें से पहला वाला क्वेश्चन आइसोमॉर्फिक है, ओके। पहला क्वेश्चन आइसोमॉर्फिक है, दूसरा क्वेश्चन आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री मैचिंग हो है, तीसरा क्वेश्चन आइसोमॉर्फिक नहीं है, ओके। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दो मेथड, दो टेक्निक है। द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ फर्स्ट टेक्निक इज योर इंसिडेंस मैट्रिक्स, adjacency and incidence. And what is adjacency? Adjacency मतलब vertex to vertex adjacency matrix. Incidence मतलब vertex to edge. अब how to represent graph using adjacency matrix, vertex to vertex. तो तीन टाइप के बेसिक ग्राफ है, पहला बोलो, पहला अनडायरेक्टेड, सेकंड मल्टी ग्राफ, थर्ड डायरेक्टेड। अब adjacency मतलब vertex to vertex, तो row is also vertex, column is also vertex, so adjacency matrix always use your square matrix because it is vertex by vertex representation। तो खत्म, मैंने यहाँ लिखा है ग्राफ देखो एंड V1 को कौन से कनेक्टेड वर्टेक्स से, जो हमने अभी ऊपर लिखा मैट्रिक्स तो वही है, V1 को कनेक्टेड V1 है, तो V1 का रो V2 का कॉलम कनेक्टेड आएगा 1 0। कंसीडर ओनली डायरेक्टली कनेक्टेड एजेस। अब मल्टी ग्राफ भी कनेक्टेड रहेंगे या डायरेक्टेड सारे, तो अपने को चेक करना है कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस है। अब V1 से V1 देखोगे आप, V1 से V1 के लिए सिर्फ एक एज है, V1 से V1 पे एक एज है। अब V1 से V2, V1 से V2 देखो ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, टोटल 3 है। तो बस वर्टेक्स से कनेक्शन चेक करो, राइट। अब तीसरा डायरेक्ट ग्राफ, डायरेक्ट ग्राफ में कनेक्शन के लिए हम सिर्फ आउटगोइंग एजेस देंगे। तो अब V1 का चाहिए तो V1 से कनेक्शन कहां पे है, तो V3 है, V4 है, V5 है, तो V3 V4 V5 V2 से कनेक्शन कहां पे है, V1 है, V4, फिर V1 है, V4, खत्म हो गया। हम ग्राफ को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, अब स्टोर हो जाएगा यूजिंग 2D array। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मतलब वर्टेक्स टू एज, तो वर्टेक्स टू एज मतलब रो भी वर्टेक्स एंड कॉलम भी एजेस। तो देखो ये डायरेक्ट ग्राफ है, राइट। अभी वर्टेक्स V1 तो वर्टेक्स इंसिडेंस, तो वर्टेक्स V1 पे कौन से एजेस इंसिडेंस है या कौन से एजेस वर्टेक्स V1 को कनेक्टेड है, तो बोलो V1 को कौन दिखा, E1 E2 E4 E5, E1 E2 E4 E5, देखो E1 E2 E4 E5, सो E1 E2 E4 E5 का बनाएगा, बाकी वैसे सब हो जाएगा। अब मल्टी ग्राफ में कनेक्शन देखते हैं, V1 को कौन से E1 इंसिडेंस है, E2 इंसिडेंस है, E3 E4 1 2 3 4, तो आ गया 1 2 3 4, ओके, तो लिख दिया, ओके। Then the next is your directed। अब डायरेक्टेड में इंसिडेंस तो वर्टेक्स पे है बट कुछ आउटगोइंग है, कुछ इनकमिंग है, तो सेपरेशन दिखाने के लिए आउटगोइंग +1 इनकमिंग -1। अब V1 पे देखो एज E1 जो है वो इनकमिंग -1, E2 आउटगोइंग +1, देन वी हैव T6 एज इनकमिंग -1, ओके, समझा। चेक करो एक बार, पानी पी जाता है मुझे तो बोलो।
यस, एनी डाउट, एनी डाउट। मल्टीग्राफ इंसिडेंस में कैसे स्टोर होता है दिखाओ। मल्टीग्राफ इंसिडेंस में, हाँ, तो तू कंफ्यूज शायद इसलिए होगा, हुआ रहेगा क्योंकि वहां पे हमने ऊपर एडजेसेंसी में नंबर लिखे थे, एक दो तीन चार, राइट, पर यहाँ नंबर नहीं लिखे। क्यों नंबर नहीं लिखे? क्योंकि एडजेसेंसी इज वर्टेक्स टू वर्टेक्स एंड इंसिडेंस इज वर्टेक्स टू एज, मतलब हर एक एज यूनिक होगा, एक ही बार काउंट होगा ना, इसलिए पता है वो कंफ्यूजन ना सुनिए, बराबर। तो अब मुझे बता V1, V1 आपने चेक करना, V1 की E1 ना, तो भाई V1 से E1 इंसिडेंस है क्या V1 पे, मतलब V1 को कनेक्ट होती है, समझा, कनेक्ट होती है, चाहे वो अंदर निकलती है बाहर जाती है, नहीं पता, क्योंकि अनडायरेक्टेड है। देन E2, V1 से E2 देखो इंसिडेंस है ना, या चलो मैंने यहाँ देखो V2 के लिए क्या ऐसा किया, तो V2 के पास E2 करके E2 E5, तो देखो E25, ओके। सिमिलरली E3 में चेक करो, E3 पे इट इज E3 E45, देखो E3 E45, ओके। सो सेम यू चेक विद E1, V1, तो इफ यू चेक विद V1 देन द एज आर E1, अब आप बोले E1 तो सेल्फ कनेक्टेड है, यस बेटा, इट इज यूनिक एज, इट इज E1 E2 E3 E4, E1 E2 E3 E4 सेल्फ, ओके। ये सॉल्व। मल्टीग्राफ एंड इनडायरेक्टेड, इनडायरेक्टेड होता है, अनडायरेक्टेड होता है, इनडायरेक्टेड होता है, ऐसा इनडायरेक्टेड होता है। हाँ, ये सेम कांसेप्ट में क्यों? बिकॉज़ इट इज इंसिडेंस, यू कंसीडर रो एज, रो एज योर वर्टाइसेस एंड कॉलम इज योर एजेस, इसीलिए वो सेम डायरेक्शन में, और ऊपर इसीलिए सेम लिखा बिकॉज़ एडजेसेंसी में रो एंड कॉलम बोथ आर वर्टाइसेस, ठीक है, यस। अब चेक करेंगे, अब नेक्स्ट आएगा यूरेलियन हैमिल्टोनियन, प्लीज, मैंने देखो आपको दिखाई देगा वो ग्राफ का जो कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन है ना, उसके तुरंत बाद मेरा हैंडराइटिंग सुधर गया, देखो यूरेलियन हैमिल्टोनियन, क्यों? क्योंकि ये जो यूरेलियन एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ का कांसेप्ट है ना बेटा, मेरा हैंडराइटिंग को मैंने कितना मस्त अच्छा निकाला दिया, लिखने की कोशिश की है, वैसे हैंडराइटिंग ठीक है, रीडेबल है। यूरेलियन हैमिल्टोनियन ग्राफ, ये जो ग्राफ, ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ कहीं पे भी ऐसा चार्ट बना के नहीं दिया है, एंड जो टेक्स्ट बुक में कंडीशन दिए हुए हैं वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, एंड कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ वो थोड़ा सा समझ में भी आने के लिए डिफिकल्ट है। मैंने वो सब कंडीशंस पढ़ी है, होमवर्क करने दिए थे वो भी पढ़ी है, मैंने कोलम में दिए थे वो भी सारे पढ़ी है, एंड पता चला कि अगर उनको रिवर्स इंजीनियरिंग में फॉलो करेंगे ना तो ये कंसेप्ट बहुत सिंपल हो जाएगा, तो मैंने इसीलिए रिवर्स इंजीनियरिंग किया। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कैसे? उन्होंने क्या बोला टेक्स्ट बुक में, उन्होंने टेक्स्ट बुक में क्या बोला पहले बताता हूं, मैंने कैसे क्या बोला है। उन्होंने टेक्स्ट बुक में बोला है व्हेन यू से ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ, व्हेन यू से ग्राफ, व्हेन यू से गिवन ग्राफ इज यूरेलियन ग्राफ, तो उन्होंने लिखा है एनी ग्राफ जी इज कॉल्ड एज यूरेलियन ग्राफ इफ यूरेलियन पाथ इज प्रेजेंट इन दैट ग्राफ। क्या बोला उन्होंने? ग्राफ को यूरेलियन कब बोलेंगे? जब यूरेलियन पाथ प्रेजेंट होगा। फिर नीचे लिखा है यूरेलियन पाथ, फिर लिखा है यूरेलियन पाथ तभी होगा जब यूरेलियन सर्किट प्रेजेंट होगा। फिर लिखा नीचे व्हाट इज यूरेलियन सर्किट? So Euclidean circuit is when you walk on a graph and you will traverse each and every edge exactly once, irrespective of the vertices. And once you reach to the once you complete the path and reach to the first or initial point where you have started, then in that case the circuit is Euclidean, and so the Euclidean path is traveling an edge exactly once. ऐसा लिखा है, अंडरस्टूड? जो घुमा फिरा के कुछ समझ नहीं आता, राइट। मैंने उसको एकदम शॉर्ट किया, एकदम शॉर्ट। और दुनिया में ये तीन कंडीशन होते हैं, ये तीन कंडीशन होते हैं, कोई भी बुक उठाओ, चाहे टेक्मास टेक्नोवा, नंदू उठाओ, कुंभोज उठाओ, कोई भी वेब एप्लीकेशन, जो वेब साइट्स है जो डिस्क्रिट मैथमेटिक्स के मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इधर भी जाओ, उधर से प्रॉब्लम उठाओ, ये टेबल में बिठाओ, गारंटी सॉल्व होगा। क्या मैंने गारंटी आंसर आपको मिलेगा, और जो आंसर उन्होंने लिखा है वही अपना आंसर होगा, मेथड अपना सिंपल होगा। अब देखो मैंने क्या किया, फिर मैंने सिंपल पूरा कंसेप्ट पढ़ के चार्ट बना दिया, राइट। अब ये चार्ट क्या है? यूरेलियन ग्राफ। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है? ग्राफ जी दिया रहता है, जी एक ग्राफ दिया रहेगा, और आपका क्वेश्चन रहेगा कि चेक वेदर द ग्राफ इज यूरेलियन और नॉट, डिटरमाइन वेदर द ग्राफ इज यूरेलियन और नॉट, एंड इफ यस देन फाइंड द यूरेलियन पाथ। क्या क्वेश्चन है? डिटरमाइन वेदर द ग्राफ इज यूरेलियन और नॉट, इफ यस देन फाइंड यूरेलियन पाथ, ऐसा लिखा है, बराबर है। तो चलो कैसे करते हैं? पहला, लेट जी बी द गिवन ग्राफ, ऑब्वियसली जी तुम्हारा दिया हुआ ग्राफ रहेगा। सबसे पहले फाइंड करो डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी, राइट। सो लेट जी बी द गिवन ग्राफ, देन फाइंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी। अब जब डिग्री निकालोगे तो वहां से तीन आउटकम आएंगे। पहला, अगर सबका डिग्री सारे वर्टाइसेस का डिग्री इवन है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सारे वर्टाइसेस का डिग्री इवन होगा, क्या लिखा मैंने? इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी इज इवन, सारे वर्टाइसेस का डिग्री इवन निकला तो यूरेलियन सेट इज प्रेजेंट इन ग्राफ जी, बिकॉज़ टेक्स्ट बुक में सिंपल लिखा है the only necessary and sufficient, ध्यान दो, the only necessary and sufficient condition for Euclidean circuit is each and every vertex या each and every vertices of graph G must be having even degree। अगर सबका डिग्री इवन है तो ही यूरेलियन सर्किट प्रेजेंट होगा, तो मैंने वही यूज किया है। अगर सारे वर्टेक्स का डिग्री इवन है, यूरेलियन सर्किट प्रेजेंट इन जी, एंड सिंस यूरेलियन सर्किट प्रेजेंट जी, ग्राफ इज यूरेलियन, एंड सिंस ग्राफ इज यूरेलियन, यूरेलियन पाथ इज प्रेजेंट। सबका डिग्री इवन है, सर्किट यूरेलियन है, सर्किट यूरेलियन है, ग्राफ यूरेलियन है, ग्राफ यूरेलियन है, यूरेलियन पाथ इज प्रेजेंट। एंड व्हाट इज यूरेलियन पाथ? यूरेलियन पाथ इज द क्लोज पाथ, यूरेलियन पाथ इज द क्लोज पाथ where each edge of graph G is traversed exactly once, बराबर है, only once। तो यूरेलियन पाथ क्या बोलता है? यूरेलियन पाथ इज द क्लोज पाथ जहां हर एक एज सिर्फ एक बार ट्रैवल होना चाहिए। अब तुमको मालूम है क्या? तुमको मालूम है क्या इसका एप्लीकेशन क्या है? यूरेलियन ग्राफ के एप्लीकेशन क्या है? तो ये जो पेपर में न्यूज़पेपर में या मोबाइल ऐप पे जो हम सुडोकू वाला सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्ड वर्टिकल वर्ड, छोटे बच्चे ने देखा हॉरिजॉन्टल वर्ड क्रॉस वर्ड मैच करो, सुडोकू एंड ऑल, राइट। तो वो सुडोकू एंड वो हॉरिजॉन्टल वर्ड वर्टिकल वर्ड क्रॉस वर्ड, वो क्वेश्चन तभी बनने फिजिबल होते हैं जब उसमें यूरेलियन सर्किट छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन बनाने वाले ही तभी क्वेश्चन सॉल्वेबल बना सकते हैं जब उसमें यूरेलियन सर्किट लेफ्ट आउट होता है, मतलब यूरेलियन सर्किट प्रेजेंट होता है, ओके। और दूसरा खेल जो हम बचपन में खेलते थे, बचपन में हम खेलते थे ऐसा स्कूल लेवल पे, या ऐसा बोलते थे ये देखो ये शेप है, हमको ये शेप को ड्रॉ करना है बिना हाथ उठाए, याद है कुछ आपको? यस, ऐसे शेप हम बना देते हैं, स्कूल लेवल में खेलते थे और बोलते थे कि ऐसा शेप बनाओ जो बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। हम बोलते थे स्कूल में ऐसा शेप बनाओ जो बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकते हैं सामने फ्रेंड के साथ, राइट। तो मुझे बताओ ये तभी बनना पॉसिबल है जब यूरेलियन सर्किट प्रेजेंट है। जैसे कि पहले केस में देखोगे, पहले केस में देखोगे तो इसका डिग्री कितना है? चेक करो, सबका डिग्री 4 है, मतलब सबका डिग्री इवन है, सबका डिग्री इवन है, मतलब यूरेलियन सर्किट है, यूरेलियन सर्किट है। तो देखो मैंने स्टार्ट यहां से किया, बराबर, मैंने स्टार्ट यहां से किया, प्लीज ध्यान दो, राइट। थोड़ा बड़ा करता हूं, तो अब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, ग्राफ को, डायग्राम को बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकता हूं। देखो मैं किधर भी हाथ नहीं उठा और क्लोज पाथ है, देखो जहां से वही पे आया, यस यहां, समझा, जहां से किया वही पे आया, पक्का। तो ये देखिए आ गया, राइट। यहां से मैंने शुरू किया था, देखो बिना हाथ उठाए मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके, राइट। अब यहां पे देखो ये केस में वो नहीं होगा बिकॉज़ यहां पे डिग्री इवन नहीं, डिग्री इवन नहीं है, सबका इवन होना चाहिए। अच्छा, सबका ऑर्डर इसीलिए नहीं हो पाएगा, ऐसा है क्या? नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं है, देखो ना, तो इसको और बढ़ाओ ताकि तुम्हें गलत फहमी दूर तुमको लगेगा सर सबका ऑर्डर इसीलिए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब यहां देखो इसका डिग्री 3 और 3 और, तो ये भी बिना हाथ उठाए ड्रॉ करना पॉसिबल, स्पेशल केस लिखा है मैंने। कैसे? ये देखो ये तभी पॉसिबल है बेटा जब हम शुरुआत और से करेंगे और एंड भी और पे होगा, राइट। देखो यहां हुआ ना, शुरुआत और से करेंगे एंड भी और पे होगा, तो ऐसे तीन केस है। देखो पहला केस कौन सा है? पहला केस मैंने बताया तुमको,
कि सबका डिग्री इवन है, मतलब सारे वर्टाइसेस का डिग्री इवन है, यूरेनियन सर्किट प्रेजेंट, यूरेनियन सर्किट प्रेजेंट तो ग्राफ यूरेनियन, सिंस ग्राफ यूरेनियन, यूरेनियन पाथ प्रेजेंट, एंड व्हाट इज यूरेनियन पाथ द क्लोज पाथ वेयर ईच एज ट्रैवल्ड एग्जैक्टली वंस, हर एज एग्जैक्टली एक ही बार ट्रैवल होता है। ओके चलो सेकंड केस, अगर एक का डिग्री और निकला तो सेकंड केस, एटलीस्ट एक का भी डिग्री और निकला, एटलीस्ट एक का भी डिग्री अगर और निकला, किसी एक का भी डिग्री और निकला, राइट, देखो ना, अगर एटलीस्ट एक वर्टेक्स का भी डिग्री और निकला, सो इफ एटलीस्ट वन वर्टेक्स ऑफ जी इज हैविंग ऑड डिग्री और पढ़ सकता है एटलीस्ट, है ना, तो यूरेनियन सर्किट में क्यों है, क्योंकि यूरेनियन सर्किट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, सबका डिग्री वन चाहिए, राइट, तो अगर किसी एक का भी और निकला, सर्किट नहीं बेटा, सर्किट नहीं तो ग्राफ भी नहीं बेटा, ग्राफ नहीं तो पाथ भी नहीं, समझा, ये तो मैंने एग्जांपल लिख के दिया नीचे, बराबर, यहां देखो पहले केस में सबका डिग्री वन निकला, तो लिखने का सिंस ऑल द वर्टेक्स ऑफ जी हैविंग वन डिग्री देयरफॉर यूरेनियन सर्किट प्रेजेंट इन ग्राफ जी, देयरफॉर ग्राफ जी यूरेनियन ग्राफ, देयरफॉर यूरेनियन पाथ, यूरेनियन का कोई भी पाथ लिखो, चलो हर एक एज ट्रैवल करने का, तो अगर मैंने वन से शुरू किया तो चलो मैं बोल सकता हूं, देखो यहाँ पे कलर लिखूंगा, थोड़ा सा अलग कलर लूंगा, ओके, देखो वन से शुरू करूंगा तो चलो ऐसा भी हो सकता है, या मैं फोर से शुरू करूँ तो चलेगा, देखो आएगा फोर से वन, वन से थ्री, वन से थ्री, थ्री से फाइव, फाइव से टू, टू से फोर, बराबर, फोर से फाइव, ये ओके समझा, तो पाथ मल्टीपल रहेंगे बाबा, आपने उसमें से कोई एक पाथ लिख के एग्जाम में दिखाना है, अंडरस्टूड। अब सेकंड केस में देखो सबका डिग्री निकाला, तीन आ गया, तो बोलेंगे भाई सबका डिग्री देखो मैंने क्या लिखा है, सिंस ऑल दी वर्टाइसेस ऑफ जी इज नॉट हैविंग गिवन डिग्री, क्योंकि आपने को बोलना क्या है, सबका डिग्री होना चाहिए, यहाँ सबका इवन नहीं है, अंडरस्टूड, अगर एक का भी इवन नहीं मिलेगा ना, एक का और मिलेगा तो भी बोलेंगे सिंस इसका और है या सिंस सबका इवन नहीं है तो यूरेनियन नहीं, सर्किट में ग्राफ में पाथ लिखिए। और तीसरा जो केस है दैट इज स्पेशल केस, अगर एग्जैक्टली दो वर्टाइसेस का डिग्री और निकला, स्पेशल केस और एग्जाम में 80% ऑफ द स्पेशल केस से ही निकलते हैं, क्योंकि यूरेनियन हैविंग दोनों साथ में आता है ना, तो इसीलिए यहाँ स्पेशल केस हो जाता है, वहां पाथ बन जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन ज्यादा आती है। स्पेशल केस क्या होता है, अगर एग्जैक्टली दो वर्टाइसेस का डिग्री और निकला, देखो एग्जैक्टली दो का डिग्री और निकला, यूरेनियन सर्किट तो नहीं ना, क्योंकि यूरेनियन सर्किट का सिर्फ एक ही कंडीशन सबका डिग्री बनती है, यहाँ थर्ड केस में एग्जैक्टली दो का डिग्री और निकला, सर्किट यूरेनियन नहीं, सर्किट में ग्राफ भी नहीं, बट यहाँ स्पेशल केस में पाथ एग्जिस्ट होगा, बट हियर यूरेनियन पाथ इज प्रेजेंट, बट कौन से कंडीशन पे, देखो लिखा है यूरेनियन पाथ मस्ट स्टार्ट विद द वर्टेक्स हैविंग ऑड डिग्री, दो जन का था ना डिग्री, तो दोनों में से एक से स्टार्ट हुआ तो दूसरे पे एंड होगा, राइट, तो यूरेनियन पाथ मस्ट स्टार्ट विद द वर्टेक्स हैविंग ऑड डिग्री एंड मस्ट एंड विद अनदर वर्टेक्स हैविंग ऑड डिग्री, अंडरस्टूड, यस, तो अब देखो यहाँ पे मैं तुमको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, बराबर, 1 2 3 4 5, इसको बिना हाथ में ड्रॉ करना है तो आपको और से शुरू करना पड़ेगा, मतलब मैं 1 से शुरू करूंगा, देखो एंड यहाँ पे हो जाएगा, देखो कोई कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, देखो 1 से 3, 3 से 2, इधर 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 हो गया, या 2 से शुरू करके 1 पे आ सकते हैं, बट अगर तुमने 3 4 या 5, 3 4 या 5 इनमें से कहीं से शुरू किया ना, तो तुम्हारा गारंटी ग्राफ कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट करो जो चाहिए वो, ठीक है, ओके, समझा यूरेनियन, एकदम एग्जॉस्ट हो गया पूरी, कोई रिप्लाई नहीं, सब ठंडा बंद हो गया, हां, हेवी हुआ है तो बोलो, कोई खाएंगे, अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, रुक जाएंगे इधर, बट अंदर से रिप्लाई नहीं तो ज्यादा हाई करने मतलब नहीं, उससे अच्छा आराम से करेंगे, शांति से समझ में आएगा, हो गया 120 बस करेंगे अभी, जो भी है रिप्लाई करो तो मुझे समझ में आ जाएगा, फास्ट लेना है तो आगे लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ नमस्ते बोलते हैं, मिलेंगे अगर डिसाइड करके तभी मिलेंगे। हाँ एक सेकंड अभी कुछ लिखो मत, हर्ष बोलता है एंड सरेंडर, रोहन द एंड, हाँ एक सेकंड एवरीवन में मेरे रिप्लाई करना है, तो क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड यहाँ पे क्या है, कुछ स्टेप भाई का लिंक नहीं हुआ, क्या है, कॉपी लिंक कॉपी, ओके, अभी चैट में एवरीवन आएगा इधर, कंट्रोल लिंक, ओके, हाँ अभी क्या लिया, लिंक आ रहा है, लिंक आ रहा है कुछ केवल क्या आ रहा है, पता नहीं धीरे धीरे आ रहा है, ये स्क्रीन वाला को मैसेज आ गया है, लिंक, तुमको लिंक मिल गया डिस्प्ले का, ओके, चलो फिर अपन स्टॉप करेंगे, यस, हाँ अपन नेक्स्ट सैटरडे क्या है, रोहन सीधी का सीजी में ठीक है, हाँ ये बताओ ना इसका क्या करने का नेक्स्ट सैटरडे, सेम टाइम हाँ नेक्स्ट सैटरडे भी ऐसा हो सकता है कि 9 से 1 अपने को 15 मिनट का ब्रेक देना, 9 से 1 टाइम, ओके चलो, यूटी संजना का यूटी एग्जाम है, हर्ष, हर्ष कितना भी हाई किया ना तो कल के कल बी का डिग्री हाथ में आएगा, समझा हर्ष, कितना भी हाई करेंगे ना तो आपको यूनिवर्सिटी मिनिमम 4 साल बोलती है कि 4 साल पढ़ाई करो तो भी डिग्री मिलेगा फाइनल, अब मुझे बता लिंक मैंने शेयर किया वो लिंक कंटिन्यू सबमिट होते रहेगा, अभी का मार्क्स अभी डालना है, ठीक है, तो एक मिनट ये अपनी संजना अनम्यूट करके बोलो तुम्हारा एग्जाम का क्या, यूटी एग्जाम सर है 19 से है, 19 से है, टाइम 19 और कितना 20 हाँ, 21st, 19 20 21st। एक सेकंड 19 20 21 हाँ सर, 19 20 21 19 20 21, अच्छा तो उस दिन पेपर रहेगा, ठीक है, हाँ तो सर। ठीक है फिर अपना फिर इवनिंग में इवनिंग
Very good evening. Am I audible? Yes. Hello. Am I audible? Hello. Ganesh, very yes. Audible, Ganesh? Okay. So अभी condition is 6:32. 6:32 is the time, and we have total four participants. Four students are present in the meeting. So we will wait few minutes, and after that we will start. थोड़ा सा रुकते हैं 2-3 मिनट देखते हैं बाकी लोगों का क्या इन्फॉर्मेशन मैसेज तो हमने हुआ था हमारे class, ठीक है. सो currently Ganesh आ रहा है. Ganesh is saying सर आपका लेक्चर सडनली क्यों लगाया? सडनली नहीं बेटा. ऑलरेडी आपका आज डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर होता है, बट ड्यू टू सम अनअवेलेबल सर्कमस्टेंसेस अपने को चांस मिला क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर होने वाला है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर पॉसिबल है तो आज हमारा लेक्चर हो जाएगा, फिर सैटरडे को भी अपने को स्लॉट मिल जाएगा, तो थोड़ा सा भाग जाएगा. राइट, क्योंकि अपना टारगेट क्या है कि ये वीक एंड नेक्स्ट वीक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके करना है, ये अपना टारगेट है. राइट, सो उस हिसाब से एक सैटरडे में 21st को एंड वन सैटरडे 20th, तो अगर आज अपने को मिल जाएगा एंड 21st एंड 20th सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. वैसे लेक्चर नहीं होता है तो टाइम नहीं जाता, तो बेटा अपनी लेक्चर नहीं उसको, ठीक है. तो एक हाथ में निकाल के फिर 35 लेते देने वाले हैं, 5 लोग हैं मेरे बचाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे. यस, तो 6:35, सो वी स्टार्ट आवर सेशन, ठीक है. चलो स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ ज्यादा वेट करके नहीं है. 6 स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं, रेगुलर बनाना, ठीक है. आप लोग धीरे-धीरे स्टार्ट करेंगे, ये जॉइन करके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे. लास्ट टाइम हमारा हुआ था, लास्ट टाइम हमारा हुआ था, तो आई थिंक वी आर ग्राफ सेल, करेक्ट है. हम लास्ट टाइम ग्राफ सेल करेंगे, करेक्ट. So district dsgt 2023, dsgt 2023, and the topic is graph. Okay, चलो नो प्रॉब्लम, तो मेरे रिवीज बाकी लाएंगे तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे लास्ट लेक्चर में अपना क्या क्या टॉपिक हुआ था. ओके, चलो. सो इन द लास्ट सेशन वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक कॉल्ड एज ग्राफ. दैट्स ग्राफ, करेक्ट है. अच्छा, थोड़ा सा और अगर आपको मैं दिखाऊंगा कहां पे है एज ऑफ नाउ हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, तो वो भी दिखाता हूं आपको कि अब तक हम कहां पे स्टैंड करते हैं, ठीक है. सो इज इट माय कंप्लीट स्क्रीन विजिबल? इज इट कंप्लीट स्क्रीन विजिबल? कंप्लीट स्क्रीन शेयर. ओके, तो कंप्लीट स्क्रीन विजिबल. सी इफ यू कैन सी द सिलेबस, राइट. सो ये आपका सिलेबस डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्ट्रिक्ट है लास्ट ईयर, जिसमें अगर देखोगे तो हम कहां पे है, तो हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस को किया, राइट. वी हैव कंप्लीटेड दिस मॉड्यूल नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस. ओके, जिसमें से फर्स्ट बेसिक कांसेप्ट ऑफ सेट जो हम भी करेंगे बिकॉज़ सेट के लॉजिक में तो वहां करेंगे. रिलेशन आप देखोगे कंप्लीट इज दैट, फंक्शन देखोगे आप कंप्लीट इज दैट, राइट. कंप्लीट रिलेशन टॉपिक हो गया, फंक्शन साइड टॉपिक हो गया, कोसेक एनालिसिस साइड टॉपिक हो गया, काउंटिंग इज पेंडिंग, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर टॉपिक, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बाइनरी ऑपरेशन, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, सब ग्रुप, एवरेज साइक्लिक सब हो गया. देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 2 ऑपरेशन दैट इज डन. देन कोडिंग और कोडिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन रिलेशन रिलेशन कोडिंग डन. एंड ये अपना ग्राफ खेल, ग्राफ खेल में टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन सब ग्राफ, ऑपरेशन ग्राफ, वर्क पार्ट सर्किट कनेक्टेड ग्राफ, ग्राफ कंपोनेंट्स, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ, देन यूजर एंड कंपोनेंट सर्किट ग्राफ कैसे बैठे ना. तो ये अपना करेंगे कंप्लीट हो जाएगा. तो अब आज का लेक्चर होने के बाद हम नेक्स्ट आने वाले जो दो सेशन की बात करते हैं वो कैसे अप्रोच करेंगे. अगर काउंटिंग देखो तो काउंटिंग बात नहीं है, बट काउंटिंग का जो 4.1 आपको पता चलेगा. बेसिक काउंटिंग रूल, सम रूल, प्रोडक्ट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं, सम रूल के और प्रोडक्ट क्वेश्चन एग्जाम में जैसे कि सिंपल काउंटिंग के प्रिंसिपल्स, प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल्स, एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, उसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में इस फंडा करते हैं. उसके बाद इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेट करेंगे, सेट करेंगे बस, राइट. उसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है. एंड अगर आप देखो पिजन प्रिंसिपल, तो हमने जब वो पढ़ा था फंक्शन, तो फंक्शन में हमने पिजन प्रिंसिपल एंड सेट करेंगे क्वेश्चन कर दिया. तो एज ऑफ नाउ काउंटिंग का 4.1 इज डन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन बात करेंगे. एज सच बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल सेट करेंगे. तो एज सच काउंटिंग में बस क्या है, तो रेकरेंस रिलेशन एंड सॉल्विंग रेकरेंस रिलेशन. रेकरेंस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों टाइप के रेकरेंस रिलेशन आपको करने हैं. पहला होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन, सेकंड इज नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन. ये दोनों अपने को कंप्लीट करने हैं, राइट. ये दोनों कंप्लीट करने को रेकरेंस एंड नॉन रेकरेंस, रेकरेंस ऑफ ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3, ये दोनों कंप्लीट करने के लिए आपको है 1 है काउंटिंग प्रिंसिपल, सॉरी रेकरेंस रिलेशन, राइट. उसके बाद आप देखो तो डायरेक्टली ऊपर जाऊंगा, बेसिक कांसेप्ट ऑफ सेट उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन दो ही करेंगे, राइट. दो ही क्वेश्चन आते हैं जो कंप्लीट करने के बाद कौन सा करेंगे. फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 सेकंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3. एक लास्ट स्टेटमेंट को वैल्यू का प्रॉब्लम करते हैं. जैसे एग्जांपल इन अ सर्वे ऑफ 200 या इन अ सर्वे ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स फॉलोइंग डेटा ऑफ एग्जांपल इन अ सर्वे ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स फॉलोइंग डेटा ऑफ कितने स्टूडेंट हैं फॉलोइंग डेटा ऑफ क्या लिखा है. सम स्टूडेंट स्टडी साइंस दिया जाएगा, सम स्टूडेंट स्टडी कॉमर्स दिया जाएगा, सम स्टूडेंट स्टडी आर्ट्स दिया जाएगा, some students study science and commerce, some students study science and arts, some students study arts and commerce, and last line very important है some students study all 3 courses, some students study all 3 courses हो गया टाइप 1 मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 is given. एक क्या same problem in a survey of 100 college students following data of some students study science, some study commerce, some study arts, some study science commerce, some study science arts, some study commerce arts. Some students do not study any of the 3 courses. समझा. तो टाइप 1 टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है. टाइप 1 में इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 बनेगा एंड टाइप 2 में आपको इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 निकालना है. बस इतने दो करेंगे जो हमारा होता है काउंटिंग का रिलेशन एंड कंसेप्ट ऑफ सेट भी इंक्लूजन. तो दो कैसे हो गया. और उसके बाद सेपरेट वन हाफ बताना है सिंपल कंसेप्ट ऑफ लॉजिक. लॉस ऑफ लॉजिक क्या है. पहली बात तो प्रपोजिशन, इन स्टेटमेंट व्हिच हैज ट्रू वैल्यूज फॉर दैट प्रपोजिशन. फिर कनेक्शंस क्या होते हैं, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए बाय लॉजिकल कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन. उनके टू टेबल जो हम पसंद करते हैं उसको यूज करना है. फिर उसके बाद डी मॉडल थ्योरम एंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स शो दैट इज आउट लॉजिक, शो दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन, शो दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू टेबल एज वेल एज टू लॉस ऑफ लॉजिक. लॉस ऑफ लॉजिक एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सब लॉ करेंगे. लॉस ऑफ लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं, टू टेबल से प्रूव कर सकते हैं. यूनिवर्सल क्वांटिफायर दो टाइप क्वांटिफायर होते हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ा है. पहला तो फॉर ऑल दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ग्रुप के डेफिनेशन का मैटर फॉर. दूसरा होता है एग्जिस्ट, जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट. सो ये स्टेटमेंट दो क्वांटिफायर फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर दैट एग्जिस्ट क्वांटिफायर, राइट. फिर नॉर्मल फॉर्म नेगेशन ऑफ p प्लस q इज नेगेशन ऑफ p और q उसको प्रूव कर देंगे. एंड इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इंडक्शन ये लॉजिक वाला पार्ट है, इसको दो करना है. इसीलिए आज के बाद हम दो सेशन लेंगे. जस्ट पहले सेशन में जब नेक्स्ट सेशन आए उसमें हम काउंटिंग को खत्म करेंगे, हम उसमें काउंटिंग को खत्म कर देंगे, राइट. एंड जो लास्ट सेशन रहेगा उसमें लॉजिकल टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, अपना कहानी खत्म हो जाएगा. ओके, तो ये अपना बेसिक कांसेप्ट आज का है, राइट. अब हम ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ में अपना क्या करेंगे. ग्राफ खेल, ओके. तो ग्राफ खेल में क्या है, देखो बेसिक्स ऑफ ग्राफ खेल, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, हाउ टू शो ग्राफ इन कंप्यूटर मेमोरी, यूनिक हैमिल्टनियन ग्राफ, ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ, पाथ सर्किट नेटवर्क एक्सेट्रा, राइट. ये सब हमने ग्राफ में पढ़ना है. तो पहले डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्राफ हमने पढ़ा लास्ट टाइम, रिवाइज कर लेता हूं. व्हाट इज ग्राफ. ग्राफ जी का डेफिनेशन पूछे तो ग्राफ जी होता है जी इज इक्वल टू बी कॉमन, मतलब
a planar representation of non-empty set of vertices and set of edges. क्या बोला? A planar representation of non-empty set of vertices and set of edges is called as a. मेरा context graph basically एक डायरेक्ट ग्राफ जहां हर एक एज जो ग्राफ में प्रेजेंट है उसको डायरेक्ट स्टार्ट टू एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन डोमेन टू एंड उसको बोलेंगे डायरेक्ट ग्राफ अनडायरेक्ट ग्राफ ऐसा ग्राफ जहां कोई भी एज को कोई डायरेक्शन नहीं होगा हम वहां उसको बोलेंगे डायरेक्ट ग्राफ अब जाके आगे टाइप्स ऑफ ग्राफ आएंगे तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज मल्टी ग्राफ तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ बोलेंगे प्लानर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन-empty set of vertices and set of edges बट द फॉर्मेट डेफिनेशन बोलेंगे हाउ ग्राफ जी इज डिफाइंड फॉर फर्स्ट क्या बोल रहा है अरे बस चेक कर रहा मैंने सब किया है तो प्लीज चेक कर क्या बोल रहा है कैन यू प्लीज अपलोड द सीजी हैंड नोटबुक टू गूगल ड्राइव आई नीड टू प्रिंट जो भी करना है देखो तू अगर चेक करेगा ना बेटा अभी लेक्चर चालू चल सकता है चाहे तो सीजी का चेक कर चाहे दूसरे का चेक कर हर एक मटेरियल अपलोड किया है मैंने ड्राइव सेपरेटली मटेरियल दिया है और तू बोल रहा है सुबह ना वो भी स्टडीज ऐप पे चैप्टर वाइज चैप्टर का पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं सेंड करता हूं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इमीडिएट ऐड कर देते हैं मतलब तू चेक कर वो लेक्चर चालू उसमें चेक कर नहीं तो लेक्चर खत्म करके बता ठीक है चलो तो इट इज व्हाट इज कॉल्ड बराबर बोलेंगे इसको बहुत लंबा मैसेज है 10 12 लाइन का फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ is g is equal to b comma e comma gamma what is b of g is non-empty set of vertices what is e of g is your set of edges right perfect next what is gamma is your age function right and what is gamma it is defined as age between what is b comma w types of graph direct graph indirect graph another graph having no edges no vertices finite infinite graph any graph is called as finite graph provided the number of vertices and edges present in the graph are finite infinite graph if vertices edges infinite infinite bigger graph graph having only single vertex no edges then discrete graph suppose अगर ऐसा कोई भी vertex graph में होगा जो isolated है तो वो discrete graph होगा right वो vertex isolated vertex होगा but अगर graph के सारे vertices एक दूसरे को connect करेंगे तब वो graph connected graph होगा मल्टी ग्राफ की दो कंडीशन है किसी भी ग्राफ को मल्टी ग्राफ बोल सकते हैं जब दो में से कोई भी एडिशन होता है पहला मोर देन वन एज इज यूज्ड टू रन सेम वर्टेक्स एंड दूसरा एन एज ज्वाइनिंग वर्टेक्स पीछे एग्जांपल दिया क्या कनेक्टेड ग्राफ दुनिया में कनेक्टेड ग्राफ ये टू रहेगा फॉर ऑल कनेक्टेड ग्राफ व्हाट इज द केयर फॉर एनी कनेक्टेड ग्राफ जी ऑलवेज द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टेक्स of g is equal to twice the number of edges so summation of degree of vi is twice the number of edges is the केयर अब यहां ग्राफ दिया है पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ग्राफ जी फॉर्मली सेकंड फाइंड डिग्री एंड ऑफ वर्टेक्स थर्ड सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टेक्स is twice the number of edges so सिंपल ग्राफ दिया है उसमें वर्टेक्स कितने हैं a b c d e फाइव वर्टेक्स कितने हैं e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 अब व्हाट इज गामा फंक्शन ऑफ a1 तो a1 कौन से दो वर्टेक्स को कनेक्टेड फिर a b को b माइनस चलेगा फिर डायरेक्ट व्हाट इज गामा ऑफ a2 is a c2 c माइनस चलेगा फिर डायरेक्ट तो सिमिलरली सारे एज का फंक्शन लिख सकते हो गामा फंक्शन ये फंक्शन होते हैं फिर सबका डिग्री निकालो अब डायरेक्ट ग्राफ नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस ओवर द वर्टेक्स डिग्री ऑफ वर्टेक्स तो डिग्री का ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर डिग्री वाला क्वांटिटी अब कनेक्टेड ग्राफ के लिए हमें समेशन ऑफ डिग्री ऑफ is twice the number of edges तो डिग्री आप सम करो twice the number of edges आके चेक कर सकते हो अब नो कनेक्टेड ग्राफ है जिसको नो वर्टेक्स है सबका डिग्री दिया हुआ है कितने अगर नो वर्टेक्स है नो डिग्री है तो ऐड ऑल डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टेक्स इक्वल टू twice the number of edges तो सिर्फ जो डिग्री है सबका ऐड टू आपको डिग्री देंगे देन नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के बारे में बहुत डिटेल बात किया था सफिशिएंट कंडीशन कंडीशन तो अभी ग्राफ को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में g1 g2 आर कॉल्ड एज आइसोमोर्फिक ग्राफ इफ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड पहला नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ g1 is equal to number of vertices of g2 number of edges of g1 is equal to number of edges of g2 and these are both the graph must have equal number of vertices having same degree okay so यहां देखो तो आपको क्या करना है मैथमेटिक्स डिग्री का बहुत डिस्कस किया हमने तो ये दोनों ग्राफ है चेक करो दोनों ग्राफ में नंबर वर्टेक्स सेम होना चाहिए चेक करो दोनों ग्राफ में सेम होना चाहिए उसके बाद दोनों के डिग्री निकालो मैथ्स पे करो एग्जैक्ट होता है तो खत्म सेकंड ग्राफ में देखो यहां पे हमने आइसोमोर्फिक ग्राफ फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था इसमें फर्स्ट एग्जांपल यूज नहीं किया आपको आइसोमोर्फिक है सेकंड एग्जांपल इज आइसोमोर्फिक नंबर यूज नहीं है एंड यहां पे देखो थर्ड ग्राफ है इज आल्सो आइसोमोर्फिक बिकॉज़ नंबर ऑफ वर्टेक्स आर सेम नंबर ऑफ एजेस आर सेम but obviously the degree of vertex is not exactly matching with the degree of other graph vertices so it is not isomorphic okay यहां पे हमने कंप्लीट किया था फिर आए थे हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ नंबर मेमोरी फिर हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ नंबर मेमोरी दैट मैटर्स फर्स्ट इज एडजेसेंट मैट्रिक्स the vertex vertex matrix second infinite matrix vertex age तो अगर आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग एडजेसेंट मैट्रिक्स your row are nothing but vertices of graph your column are nothing but the vertices of graph g so adjacency matrix representation infinite matrix मतलब your row is are the vertices your column are the edges right so adjacency matrix for graph के एग्जांपल में हमने तीन वर्टेक्स ग्राफ दिए one first is for undirected graph second is directed graph and third is multi graph so undirected graph क्या होगा चेक करो जो डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टेक्स होते हैं वन देखो ये कंसीडर डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टेक्स so check for v1 so v1 is directly connected to v2 and v3 so v1 के रो में v1 and v3 is 1 similarly check for v2 directly connected vertex for v2 are v1 and v4 right as well as v3 so v2 का रो and v1 v3 v4 is exactly 1 then check for v3 similarly check for v3 v4 and v5 this is for undirected graph so adjacency matrix for multi graph so multi graph में again it is adjacency matrix so row is also vertices column is also vertices now check v1 right yes check v1 so v1 to v1 is connected yes it is connected to only single edge so v1 to v1 is 1 check v1 to v2 v1 to v2 vertex v1 and v2 connected with the help of three edges so you need to count the number of edges for the connection of two vertices so v1 v2 में तीन edges है तो count 3 v1 v3 there is no connection direct v1 v4 there is no direct connection so mark it as 0 0 similarly v2 with v1 is obviously और ये matrix जो है right ये matrix हमेशा ट्रांसपोज मैट्रिक्स रहेगा आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी मिल जाएगा right and for डायरेक्ट ग्राफ में vertex to vertex में क्या कंसीडरिंग ओनली आउटगोइंग edges अब vertex v1 से आउटगोइंग माना जा रहा है 3 4 and 5 so v1 का रो 3 4 5 vertices यहां पे निकलेगा 1 similarly v2 v3 v4 v5 चेक कर सकते हो second is incidence matrix vertex to edge मतलब जो भी vertices है वो आपके रो लेंगे and edges are nothing but column right अब चलो फर्स्ट ग्राफ डायरेक्ट ग्राफ चेक vertex v1 अब v1 पे कौन से edges कनेक्टेड है तो it is e1 e2 e4 and e5 so v1 का रो e1 e2 e4 e5 कॉलम मार्क एज 1 second v2 पे edges कौन से है e1 e3 1 similarly v3 v3 पे कौन से edges है 2 3 6 and 8 right similarly आप कंप्लीट कर सकते हो okay then next multi graph right multi graph में आपको edges चेक करना है vertex and edges so check vertex v1 v1 पे कितने incidence edges है तो vertex पे आएगा आपका e1 है e2 है e3 है e4 similarly check v2 v2 पे कितने edges कनेक्टेड है e2 and e5 right and v3 पे v3 पे e3 e4 e5 तो आपका 1 आएगा and डायरेक्ट ग्राफ में incoming and outgoing are represented with the help of -1 +1 respectively for outgoing is represented with respect with the help of +1 and for incoming represented as -1 so चलो check करो v1 v1 पे कितने edges e1 e2 and e6 और of which e2 is outgoing so mark it as +1 and e1 and e5 are incoming so mark it as -1 right याद रखना हुआ था then next is Euclidean and Hamiltonian circuit right what is Euclidean and Hamiltonian circuit मैं आपको बताया textbook में concept है so complicated right और ये चार्ट दुनिया में कोई भी ग्राफ लगाओ Euclidean and Hamiltonian solve right so there are only three cases for Euclidean graph let G be the given graph and you need to find whether the given graph is Euclidean or not if yes then find the Euclidean path right so condition क्या है right अब चार्ट क्या होता है let G be the given graph find the degree of each and every vertex of graph G there are three possible cases case number 1 Euclidean circuit के लिए necessary condition is that कि सबका डिग्री इवन होना चाहिए so the first part is that सबका डिग्री इवन होना चाहिए if the degree of each and every vertex graph G is even then only Euclidean circuit is present in graph G if Euclidean circuit is present in graph G then only your graph
is a closed bar where each edge is traveled exactly once from the pहला flow second flow. अगर पहला फ्लो फेल जाता है तो पहला फ्लो फेल जाएगा मतलब क्या, अगर किसी एक का भी डिग्री और मिला तो सेकंड का क्या होता है, at least one vertex is having not degree. So at least one vertex of graph G is having not degree, then Euclidean circuit is not present because the only necessary condition for Euclidean circuit is all the vertices of G must be having one degree. So at least one vertex of G is having one degree, then Euclidean circuit is not present, graph is not linear, path is not present, and another term. But there is a special case. If in a graph exactly two vertices is having odd degree, so if in a graph G exactly two vertices are having odd degree, then Euclidean circuit is not present, graph is not linear, but Euclidean path is present. And what is Euclidean path in a special case? A path must start with a vertex having odd degree and must end with another vertex having odd degree. Okay, ये हमारा ग्राफ था. करेक्ट है, यूलियन हैमिल्टन के एग्जांपल के साथ में लिखा था. ओके, अब और एग्जांपल देंगे यूलियन हैमिल्टन के. यूलियन ग्राफ में बताया. नेक्स्ट आएगा हैमिल्टन ग्राफ. व्हाट इज द कंडीशन फॉर हैमिल्टन ग्राफ? Sorry, Hamiltonian graph का condition है. देखो Hamiltonian graph. Let G be the any given graph. Find the degree of vertex. Find the degree of each vertex of graph G. So graph G का सारे vertex निकालो. अब condition क्या है Hamiltonian के लिए? If the degree of Vi जितने भी vertices है सबका degree that is for all बोल सकते हैं for all V belongs to G. मतलब सारे vertices जो graph G में है उसके लिए ये condition satisfy होना चाहिए. Degree of Vi what is is 1 to n, right? And what is 1 to n? Graph can have n number of vertices. If degree of Vi is greater than or equal to n by 2, मतलब degree of each vertex of graph G is greater than or equal to n by 2. But n capital is the total number of vertices of G. Understood? सारे vertices का degree greater than or equal to capital n by 2 है तो Hamiltonian circuit is present in graph G. Graph G में Hamiltonian circuit है तो Hamiltonian graph होगा. Then graph G is called Hamiltonian graph. And since graph G is Hamiltonian graph, Hamiltonian path is present. And what is Hamiltonian path? Exactly. Euclidean EE. याद रखो EE. Euclidean H. Right? Hamiltonian के लिए क्या? So vertices. So what is Hamiltonian path? Hamiltonian path is a closed path where each vertex is visited or traveled exactly only once. But the initial vertex must be visited twice. क्यों बोले? क्योंकि मैं बोलता हूँ closed path. तो path closed तभी होगा जब first and last vertex आपके same रहेंगे. तो Hamiltonian path is that it is a closed path where each vertex visited or traveled exactly once, but only the initial vertex is visited twice. अगर ये जो next वाला condition, if degree of Vi greater than or equal to n by 2, ये किसी एक vertex के लिए भी अगर फेल जाएगा, किसी एक vertex के लिए भी अगर फेल जाएगा, तो देखो right side में if degree of Vi is greater than is not greater than or equal to n by 2. So if degree of some vertices of G is not greater than or equal to n by 2, Hamiltonian circuit is not present. Since Hamiltonian circuit is not present, graph is not Hamiltonian. Since graph is not Hamiltonian, Hamiltonian path, but this is a special case. Hamiltonian circuit नहीं है, Hamiltonian graph नहीं है, but Hamiltonian path may or may not be present. Hamiltonian path may or may not be. Hamiltonian path सारे एजेस को कवर नहीं किया तो भी चलेगा, सारे वर्टिसेस को कवर करना चाहिए. ओके, इसलिए मैंने एग्जांपल ध्यान से लिखा हुआ है. अब बताओ यहाँ जो ग्राफ है ना, कितने नंबर वर्टिसेस है टोटल? आंसर 5. मतलब यहाँ पे कैपिटल N का वैल्यू है, कैपिटल N का वैल्यू 5. अब मुझे कंडीशन चेक करना है, सारे वर्टिसेस का डिवीजन ग्रेटर देन 2 मैं क्या करूंगा? ऐसा वर्टिस जिसका डिवीजन छोटा है, जैसे कि यहाँ 3 है, देखो वर्टिस 3 है, इसका डिवीजन 2 है. अगर 2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो बाकी की जरूरत नहीं है. सबसे छोटा डिग्री वाला वर्टिस का डिवीजन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग करेंगे फिर अगर जाएगा तो सबसे पहला इसका डिवीजन छोटा वही फिर जाएगा. Is it 2 greater than or equal to 2? So answer is no. So answer is no. So graph is Hamiltonian circuit is not present. Hamiltonian circuit is not present. Graph is not Hamiltonian. Hamiltonian path is present. And you can take a path travel each and every vertex only one exactly once. देखो check करो. कर सकते हो 1 2 3 4 5 1. Yes Hamiltonian path is present. You can start with 3 also. 3 2 1 4 1 5 4 3 possible. Okay, फिर यहाँ आपको विजिट करना है. आपको विजिट करना है वो vertex not an edge. मतलब vertex विजिट करना है. आपके most of the cases नहीं होता नहीं पड़ता. Euclidean is focusing on edge and Hamiltonian is focusing on the vertex. Okay. So next, determine which of the following graphs are Euclidean and Hamiltonian. Which of the following graphs are Euclidean and Hamiltonian graph? If yes, then find the path. Okay. देखो इधर. चलो देखो इधर. ग्राफ पहला दिया हुआ है, राइट? देखो पहला दिया ग्राफ आपको. क्या ग्राफ दिया है? A B C D E F G. तो सबसे पहले यूक्लिडियन निकालते हैं. पहले में व्हाट इज सबका डिग्री निकालेगा? व्हाट इज डिग्री ऑफ A B C D? डिग्री ऑफ सबका डिग्री निकाला. सबका डिग्री निकालने का सबसे पहला कंडीशन क्या है? अगर सबका डिग्री इक्वल होगा तो यूक्लिडियन सर्किट है. बट सबका डिग्री देने की बात है. यहाँ पे तो प्रॉब्लम है. यहाँ पे स्पेशल केस में जाएगा. क्यों है? क्योंकि दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनका डिग्री ऑड है. तो बोलेगा हियर इन ग्राफ G exactly two vertices is having odd degree. So since सबका डिग्री नहीं है, circuit is not present. Euclidean circuit नहीं होगा. Since Euclidean circuit is not present, graph G is not Euclidean graph, right? But this is a special case. But here Euclidean path is present and path must start with the vertex having odd degree, end with another vertex having odd degree. देखो यहाँ पे मैं आपको ये जो शेप है ना, ये आपको बिना हाथ उठाए भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा. देखो बिना हाथ उठाए ये शेप में ड्रॉ करके दिखाता हूँ. वो कौन से केस में होता है? वर्टेक्स A B C D E F G. अब इसका डिग्री ऑड है, या A का डिग्री ऑड है, एंड F का डिग्री ऑड है. तो आपको स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा और एंड आपका F पे होगा, या आपको स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा और एंड F पे होगा. उसी केस में ये ग्राफ बिना हाथ उठाए ड्रॉ करना पॉसिबल है. अगर A और F छोड़ के बाकी दूसरे वर्टेक्स शुरू किया, गारंटी आप बिना हाथ उठाए इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते. मैं A से शुरू करूंगा. देखो A से शुरू करूंगा. देखो A से शुरू करूंगा. देखो तो चालू कहां से किया था? देखो चालू से किया था. देखो A to B, ओके, देन B to C, B to D. क्या होगा? A to B, B to D, B to C, C to A, देन A. क्या हो गया भाई? देन A to D आया, D to जो भी है G, देन F, देन F, ओके, देन यहाँ से यहाँ, इधर से यहाँ से यहाँ, इधर से इधर से. हो गया हमारे पे. यस, चालू किया मैंने A से खत्म हुआ F पे, राइट? इसका मतलब तभी मेरे ऑब्जेक्ट को, मतलब मेरे ग्राफ को बिना हाथ उठाए ड्रॉ करना पॉसिबल है. अदरवाइज नहीं. ओके, अब ये यूक्लिडियन. अब हैमिल्टनियन देखिए. अब हैमिल्टनियन क्या करते हैं? सबसे छोटा कौन है? इसका डिग्री छोटा है, तो डिग्री 2. अब यहाँ पे n नंबर वर्टिसेस जो 7 है, ओके. तो अब डिग्री देखो 2 इज इट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2? तो नो. तो कंडीशन क्लियर हो गया. तो हैमिल्टनियन सर्किट नहीं तो ग्राफ नहीं. अब ग्राफ नहीं तो पाथ नहीं और मे नॉट एग्जिस्ट. तो अपने को पाथ के लिए चेक करना पड़ेगा. सारे वर्टेक्स को विजिट हो सकता है कि नहीं? तो अगर विजिट हो सकता है तो इट इज पॉसिबल. इफ विजिट नहीं हो सकता है तो इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो चलो ट्राई करते हैं. स्टार्ट विद एनी वर्टेक्स. अगर विजिट हुआ तो हैमिल्टनियन पाथ प्रेजेंट. इट इज नॉट, देन इट इज नॉट. चलो चालू किया तो आएगा पहला A, देन C, देन D, देन E, देन F, देन G आएगा गया. चलो अब D का पता पड़ेगा. जब B विजिट 1 या D हो जाएगा. नहीं आएगा. फिर अगर A से B जाएंगे, B से D जाएंगे. अब आप बोले A से B जाएंगे तो आप तो B पे जा रहे हो. नहीं बेटा, वर्टेक्स A के बजाय B पे जा रहे हो. B से D, D से G, G से F, F to E. वापस C के पास आने के लिए D को पास करना पड़ेगा. इट इज नॉट पॉसिबल. सो हैमिल्टनियन path is not present for the site for the only. या अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे. वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7, राइट? अब इसका डिग्री क्या है? चेक करो. इसका डिग्री क्या है? अगर आपको डिग्री देखते हो तो 1 का डिग्री कितना है? देखो मैं आगे देता हूँ. डिग्री ऑफ 1, डिग्री ऑफ 1 1 2 3 4 डिग्री 4. अच्छा नहीं है. ये देखो डिग्री ऑफ 1 4, डिग्री ऑफ 2, दिस इज वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 3, वर्टेक्स नंबर 4, वर्टेक्स नंबर 5, वर्टेक्स 6, वर्टेक्स 7, राइट? सब का डिग्री लिखा है. तो इसमें देखेंगे दो कैटेगरी और 3 एंड 5 का. तो 3 से शुरू करके आप 5 पे जा सकते हो. बराबर है? 3 से शुरू करके आप 5 पे जा सकते हो. देखो शुरू करो 3 से. तो चलो पहले ट्राई करेंगे हम 3 to 1, राइट? देन 1 2 3 to 2 1, देन यहाँ से इधर. ओके, यहाँ से जाएंगे इधर, इधर से 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 इधर, एंड यहाँ से इधर. ओके, देखो चालू कहां पे गया था? 3 पे. हम गए यहाँ पे 5 पे. ओके, तो यस यूक्लिडियन सर्किट इज यूक्लिडियन पाथ इज प्रेजेंट इन द गिवन ग्राफ. ओके, अब चेक अबाउट हैमिल्टनियन. हैमिल्टनियन का कंडीशन है सबसे छोटा डिग्री. सबसे छोटा डिग्री, सबसे छोटा डिग्री. कौन सा सबसे छोटा डिग्री? इसका है 2, डिग्री ऑफ 4 देखो 2 है. इज इट ग्रेटर देन 2? सो नो, आंसर इज नो. तो नो, तो हैमिल्टनियन सर्किट इज नॉट प्रेजेंट. ग्राफ इज नॉट हैमिल्टनियन. सिंस ग्राफ इज नॉट हैमिल्टनियन, हैमिल्टनियन पाथ चेक करना पड़ेगा. है क्या? सारे वर्टेक्स को विजिट करके चेक करो. देखो मैंने विजिट किया. सारे वर्टेक्स को विजिट करके देखो. वर्टेक्स 1 विजिटेड, देन 2 विजिटेड, 3 विजिटेड, 4 5 विजिटेड, 6 विजिटेड, 7 विजिटेड, 1 विजिटेड. यस, हैमिल्टनियन पाथ इज प्रेजेंट. इट इज क्लोज पाथ वेयर ईच वर्टेक्स विजिटेड exactly once is possible, राइट? तो ये हो गया हमारा यूक्लिडियन हैमिल्टनियन ग्राफ. द नेक्स्ट इज योर ऑपरेशन ग्राफ. ठीक है, व्हाट इज ऑपरेशन ग्राफ? ऑपरेशन ग्राफ. एक सेकंड मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. शेयर स्क्रीन
कंप्लीट स्क्रीन इज शेयर। हाँ, तो अगर यहाँ देखते हैं, यस, अब स्क्रीन अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे और थोड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, देखो ऑपरेशन ऑन ग्राफ, राइट? सो देयर आर 3 बेसिक ऑपरेशंस ऑन ग्राफ इज पॉसिबल, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड बाउंड्री। कभी-कभी एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट या एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑन ग्राफ विद सुटेबल एग्जांपल। तो 3 ही बेसिक ऑपरेशन है ग्राफ के ऊपर। पहला ऑपरेशन है तुम्हारा यूनियन, सेकंड इज इंटरसेक्शन एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट इज यूनियन, सेकंड इज इंटरसेक्शन एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज यूनियन? सिंपल सेट बेस्ड ऑपरेशन होता है, लॉजिक बेस्ड ऑपरेशन होता है, वैसे आएगा। व्हाट इज यूनियन ऑपरेशन? दो ग्राफ का यूनियन मतलब क्या है? और किसी यूनियन हम सेट यूनियन में करते हैं, द एलिमेंट ए यूनियन बी, मतलब एलिमेंट इज आइदर प्रेजेंट इन ए और प्रेजेंट इन बी। ए या बी दोनों में किसी एक भी से प्रेजेंट है, हम बोल देते हैं, अगर रिपीटेड देंगे तो कंसीडर ओनली वंस। ओके, तो सेम इंटरसेक्शन क्या करते हैं हम? इंटरसेक्शन सेट में ग्राफ में लेंगे, व्हाट इज एजेस, राइट? अब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? द एलिमेंट्स या द एजेस और द पार्ट ऑफ द ग्राफ व्हिच इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स, इट इज यूनिवर्सल सेक्शन, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअल ग्राफ। ओके, चलो देखते हैं इधर। पहला ग्राफ G1 और G2 दिया है, G1 एंड G2 दिया है, G1 एंड G2 दो ग्राफ दिए हैं। अगर हमको इसका यूनियन, अगर हमको यूनियन निकालना है, दो ग्राफ कैसे निकालेंगे? यूनियन मतलब कलेक्शन ऑफ बोथ, कलेक्शन ऑफ बोथ मतलब देखो वर्टाइसेस के सामने आ जाएगा। पहले तो ग्राफ G1 को ऐड करके निकाला, उसके बाद देखो कॉमन क्या था? एज CE, एज CE इज कॉमन एंड एज BC मतलब इक्वल कॉमन, एंड बाकी का हमने ऐड कर दिया फ्रॉम द सेकंड ग्राफ, राइट? इतना क्वेश्चन ऐड कर दिया, बाकी तो जो कॉमन था वही हमने कंसीडर। नेक्स्ट इंटरसेक्शन हमने क्या किया है? इंटरसेक्शन कॉमन बिटवीन टू। अब दोनों में वर्टेक्स कौन है? तो BC एंड D। देखो वर्टेक्स BC, वर्टेक्स BC या कॉमन, एज कौन है? E3 तो बस वर्टेक्स BC एंड D या कॉमन, एज E3 बस इंटरसेक्शन लिया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ G, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? देखो कॉम्प्लीमेंट निकाला है, से स्टार जो ग्राफ था। अब यहां कॉम्प्लीमेंट मतलब द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल बट नॉट द पार्ट ऑफ, जैसे कि 1 2 3 4 5, राइट? हमने एज इट इज वर्टेक्स निकाले, 1 फिर निकाला 2 फिर निकाला 3 फिर निकाला 4 फिर निकाला 5, वर्टेक्स 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां देखो एजेस, यहां देखो 1 से ऐसे कौन से वर्टेक्स है जहां पे एज कनेक्टेड है? तो 1 से हमने कनेक्ट किया सर 3 एंड 4, तो कॉम्प्लीमेंट में 3 एंड 4 छोड़ के बाकी कौन बचे हैं? 2 एंड 5, तो हमने कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली 2 का कनेक्शन था कहां पे? 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 को छोड़ के बचा हमने 1 एंड 1 एज वेल एज हमने कनेक्ट कर दिया। 3 को चेक करो, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? 1 एंड 5, तो बचे कौन है? 2 एंड 4, हमने कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली ये भी, ओके, तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब इसके यूनिवर्सल क्या होगा? यूनिवर्सल मतलब हर वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी वर्टेक्स 2 एंड 8, ओके, तो ये होगा हमारा कनेक्टेड ग्राफ G। ओके, समझा? कनेक्टेड ग्राफ समझा? यस, पक्का? सबको समझा? सबको समझा? अब ये हो गया आपका कनेक्टेड ग्राफ। चलो अब नेक्स्ट कांसेप्ट है, जो छोटे कांसेप्ट है, जो नेक्स्ट कांसेप्ट है वो छोटे कांसेप्ट है। चलो देखो ये नेक्स्ट कांसेप्ट, देखो ऑपरेशन ग्राफ हमने किया था, वही है। उसके बाद आएगा कांसेप्ट इज कट वर्टेक्स, कट सेट एंड ब्रिज। क्या होगा? कट सेट, कट वर्टेक्स एंड ब्रिज क्या होगा? इसमें से ब्रिज अपने सिलेबस में है नहीं, अगर आप सिलेबस देखो मैंने स्क्रीन पर शेयर किया आपके साथ, तो यहां देखोगे तो देखो यहां पता चलेगा ग्राफ में भी है कट सेट, कट वर्टेक्स, दो ही कांसेप्ट, कट सेट एंड कट वर्टेक्स। देन ये कांसेप्ट ऑफ प्लेनर देखेंगे, कट सेट एंड कट वर्टेक्स दो ही कांसेप्ट आपको है। चलो ये देखो व्हाट इज कट सेट, कट वर्टेक्स सिंपल लिखा हुआ है। व्हाट इज कट वर्टेक्स? अगर कोई एक वर्टेक्स को कट करने के बाद, राइट, अगर किसी भी एक वर्टेक्स को कट करने के बाद ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उस वर्टेक्स को कट वर्टेक्स बोलते हैं, समझा? अगर किसी एक वर्टेक्स को कट करने के बाद आपका ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तब उसको हम कट वर्टेक्स बोलते हैं, अंडरस्टूड? अब जैसे कि ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, राइट? इस ग्राफ में कौन सा वर्टेक्स कट वर्टेक्स है? चलो सपोज मैंने एक को कट कर दिया, देखो यहां लिखा है एक को हटाया तो ये ग्राफ बन गया। देखो यहां ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट मैंने अगर बी को कट कर दिया, बी को, तो देखो मैंने लिखा है बी को हटाया तो ये मेरा ग्राफ बना, जो कि अगेन एक कनेक्टेड ग्राफ है। ओके, जब मैं सी को कट करूंगा तो देखो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, जो कि अगेन एक कनेक्टेड ग्राफ है। बट जब मैं डी वर्टेक्स डी को कट करूंगा, अगर मैं वर्टेक्स डी को कट करूंगा तो देखो ये एक ग्राफ बन जाएगा। वर्टेक्स डी को कट करने के बाद दिस इज ए बी सी, जब वर्टेक्स डी कट होगा मतलब ये तीन एजेस भी कट हो जाएंगे और यहां आएगा ये वाला ग्राफ, तो दिस इज वर्टेक्स ई एफ एंड जी। ओके, सो वर्टेक्स डी को कट करने के बाद आपका ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हुआ, सो कट वर्टेक्स फॉर दिस ग्राफ इज डी, इज कट वर्टेक्स। इवन यू कैन चेक इफ यू कट विद ई ना तो भी आपको पता चल जाएगा ये ग्राफ आएगा और ये लाइन आएगा, तो वो भी एक कट वर्टेक्स है, अंडरस्टूड? सो डी इज सेपरेटली कट वर्टेक्स एंड ई इज आल्सो कट वर्टेक्स इन दिस ग्राफ। ओके, एफ को कट करेंगे तो नहीं, हमारा ग्राफ ई से कनेक्टेड, जी को कट करेंगे तो ई कनेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड? सो यहां ओनली कट वर्टेक्स इज। अब कट से क्या होगा? कट से मतलब एक से ज्यादा वर्टेक्स को हटाने के बाद, एक से ज्यादा वर्टेक्स को हटाने के बाद ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसका सेट बोलते हैं। सो ऑब्वियसली यहां पे डी इज अ कट सेट, क्योंकि डी इज हट जाएगा, देखो वही ग्राफ आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इज कट सेट। अब यहां दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ कट सेट एंड कट वर्टेक्स। तो एग्जांपल 5 मार्क्स के एग्जांपल लेगा। दूसरा आपको ग्राफ देंगे और बोलेंगे उस ग्राफ में बताओ कि व्हाट इज कट वर्टेक्स एंड कट सेट, तो जो ग्राफ देंगे उसमें हर एक वर्टेक्स को निकाल देंगे, ग्राफ दो पार्ट में कट होता है तो कट वर्टेक्स बन जाएगा। और ग्राफ में एक से ज्यादा वर्टेक्स रहेंगे जिसको कट करने के बाद ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड होता है तो यूनियन बन जाएगा, कट सेट। अब नेक्स्ट आएगा वॉक, व्हाट इज वॉक, व्हाट इज प्लेन, व्हाट इज सर्किट, व्हाट इज पाथ, व्हाट इज साइकिल, ठीक है? अब देखो यहां पे तो वॉक, प्लेन, पाथ एंड साइकिल, देखो एक सेकंड ये ग्राफ में दिखा देगा, मेरा ग्राफ में ठीक है? वॉक, पाथ, सर्किट, राइट? व्हाट इज वॉक, पाथ एंड सर्किट, इसमें सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो देखो व्हाट इज वॉक बेसिकली, वॉक इज वर्टेक्स एंड एजेस कैन बी रिपीटेड। वॉक क्या है? वॉक मतलब ग्राफ के ऊपर चलना, ग्राफ के ऊपर चलना जहां पे आप वर्टेक्स एंड एजेस को रिपीट कर सकते हो, कैन बी रिपीटेड, राइट? वर्टेक्स एजेस कैन बी रिपीटेड, इंश्योर दैट जब आप वॉक निकालोगे तो सारे वर्टेक्स एंड सारे एजेस कवर होने चाहिए, राइट? सिंपल डेफिनेशन ऑफ वॉक इज वर्टेक्स एंड एजेस कैन बी रिपीटेड। नेक्स्ट प्लेन, बोलो व्हाट इज प्लेन? क्या होता है? वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड बट एजेस शुड नॉट बी रिपीटेड। वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड बट एजेस रिपीट होना नहीं चाहिए। तो वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं बट एज रिपीट नहीं होता, राइट है? तो यहां से अगली ग्राफ कंसीडर करेंगे, राइट? तो यहां प्लेन क्या पॉसिबल है? ये एग्जांपल ऐसे ही करेगा, प्लेन कंडीशन वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, एजेस वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, एजेस शुड नॉट बी, एजेस रिपीट होनी चाहिए, इसका मतलब इट इज नॉट हैमिल्टोनियन, इट इज यूलेरियन पाथ। यूलेरियन पाथ इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेस, जहां पे यूलेरियन पाथ में आपके वर्टेक्स रिपीट हो रहे थे, बराबर? तो वर्टेक्स रिपीट हो रहे थे, एज इज एग्जैक्टली व्हाट इज सर्किट, बट सर्किट इज अ ट्रेस विद कंडीशन दैट ट्रेस शुड बी क्लोज। मतलब यहां मैं बोलूंगा इट इज यूलेरियन पाथ एक्सक्लूडिंग केस स्पेशल केस, बराबर? सो सर्किट बेसिकली इट इज अ ट्रेस, मतलब ट्रेस मतलब वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, एज शुड नॉट बी रिपीटेड, बराबर? रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, एज शुड नॉट बी रिपीटेड। और सर्किट क्या होता है? सर्किट ट्रेस होता है विद कंडीशन दैट ट्रेस शुड बी क्लोज। अब हमने यूलेरियन पाथ पे जो थर्ड कंडीशन देखा वहां वर्टेक्स रिपीट हो रहे थे, एज रिपीट नहीं हो रहा था, बट यूलेरियन सर्किट के फर्स्ट केस में लास्ट केस में फर्क क्या था? फर्स्ट केस में योर पाथ शुड बी क्लोज, सेकंड के थर्ड केस में पाथ क्लोज नहीं था, यूलेरियन पाथ था वो क्लोज नहीं था, जहां हम एजेस एक ही बार कर रहे थे, वर्टेक्स को छोड़ दो, एजेस एक बार कर रहे थे वो क्लोज नहीं था, अंडरस्टूड? क्योंकि तब वहां हमने लिखा था यूलेरियन के केस में यूलेरियन सर्किट इज नॉट प्रेजेंट बट पाथ इज, अंडरस्टूड? यस, व्हाट इज पाथ बेसिकली? वर्टेक्स एंड एजेस शुड नॉट बी रिपीटेड, राइट? जहां वर्टेक्स रिपीट होनी चाहिए, एजेस रिपीट होनी चाहिए, एंड व्हाट इज बेसिकली साइकिल, इट इज सिंपल, इट इज अ क्लोज पाथ, एनी क्लोज पाथ इज कॉल्ड एज अ साइकिल। ओके, तो ये आ गया आपका सिंपल डेफिनेशन, राइट? अब नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, छोटा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लेनर ग्राफ। What is planar graph? Simple. What is planar graph? A graph G, any graph G is said to be planar. Any graph G is said to be a planar graph if G can be drawn in a plane. G can be drawn in a plane so that no edges cross or cut each other. ग्राफ G को हम planar graph तभी बोलेंगे जब G can be drawn in a plane so that no edges cross or cut each other.
ठीक है, ग्राफ G is said to be one planar if it cannot be drawn on a plain paper without crossing its edges. ओके, अब देखो एग्जांपल प्लेनर ग्राफ में लिखा है, पहला ट्रायंगल का प्लेनर ग्राफ, ये भी तुम्हारा प्लेनर ग्राफ है, ये भी प्लेनर ग्राफ है, ये भी प्लेनर ग्राफ है, अंडरस्टूड, T1 मेरे को बताओ। ओके, क्या लिखा है ड्रॉ किया है, इस ग्राफ प्लेनर, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एज 25 एंड एज 34 आर कटिंग विद ईच अदर। भाई प्लेनर ग्राफ कभी ग्राफ को प्लेनर होते हैं जब कोई भी एज एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। सो प्लेनर ग्राफ इज अ ग्राफ इफ यू कैन रीड्रॉ द ग्राफ विदाउट इंटरसेक्टिंग द एजेस, इट इज अ प्लेनर ग्राफ। देखो यहाँ पे वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 4 3 4 ऐसे लगा एंड 2 2 5 कनेक्शन है, 2 2 5 कनेक्शन में एजेस भी लगता है, कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो दिस इज अ प्लेनर ग्राफ। मतलब मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 1 2 6 ऐड 1 2 6 तब ये फिजिबल नहीं होगा। देखो 1 2 6 जैसे मैं ऐड कर देता हूं तो ये मेरा नॉन प्लेनर बन जाता है। दिस ग्राफ इज योर नॉन प्लेनर ग्राफ, दिस ग्राफ इज योर प्लेनर ग्राफ। अंडरस्टूड, क्यों नॉन प्लेनर है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 करो, 2 5 करो, 2 5 करके 4 2 5 ऐसे करो, और जो 1 6 है वो कहां से जाएगा, वो कहीं से निकल इंटरसेक्ट होना ही है। ओके, सिमिलरली ये वाला एग्जांपल इज प्लेनर, यस, क्योंकि यहाँ वर्टेक्स 1 2 3 4 यहाँ कटेंगे कटिंग, तो ये भी पॉसिबल है, 2 2 ऐसे जगह एंड 1 2 4 को पास निकाल, तो विजिबल है, ये विजिबल है, ये प्लेनर ग्राफ है। अंडरस्टूड, अब कुछ कांसेप्ट है, कुछ थ्योरम है जो प्लेनर ग्राफ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। थ्योरम कैसे करेंगे प्लेनर ग्राफ को वेरीफाई, क्या मतलब यूलर थ्योरम अगर सैटिस्फाई होता है तो आप बंदे तुम्हारा ग्राफ प्लेनर है। दो मेथड, पहला इफ यू कैन रीड्रॉ द ग्राफ विदाउट इंटरसेक्टिंग विद द एजेस, द ग्राफ इज प्लेनर ग्राफ, और सिंपली अप्लाई यूलर थ्योरम, इफ यूलर थ्योरम satisfied then your graph must be a planar graph। What is यूलर फार्मूला for planar graph is let G, let capital G be a connected planar simple graph, let capital G be a connected planar simple graph with E edges and V vertices, with E edges and V vertices, let R be the number of regions of the closed path in a planar representation of graph G, then your Euler's formula for connected graph is Euler's formula for connected graph can be written as R is equal to E minus E plus 2, इसका मतलब number of region is equal to edges minus vertices plus 2। what is number of region, number of region number of closed path। अब ये जो ग्राफ है ये प्लेनर है, चेक करते हैं इसमें कितने नंबर वर्टिसेस है, A B C D, तो 4 वर्टिसेस है। कितने नंबर एजेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर एजेस है। कितने रीजन है क्लोज पाथ, ये देखो, ये मैंने निकाला R1 क्लोज पाथ, ये मैंने निकाला R2 क्लोज पाथ, ये मैंने निकाला R3 क्लोज पाथ, और जो बाहर का रास्ता है ना, बाहर का मतलब ये बाहर का जो रास्ता है दैट इज R4 पाथ नंबर 4, दिस इज योर R4 पाथ। अब आप बोलोगे सर बाहर का रास्ता मतलब क्या है, वो तुमको हल्का समझना बाहर का, सिंपल। अब मुझे बताओ, ये आपके पास एक प्लेन पेपर है, दिस इज योर प्लेन पेपर एंड इफ यू ड्रॉ अ ड्राइंग लाइक दिस ऑन योर प्लेन पेपर, ओके, आपने सीजर लेके अब यहाँ कितने क्लोज पाथ है, कितने रीजन है, तो 2, दिस इज R1 एंड ये जो बाहर का रास्ता है दैट इज R2। अगर आपने इसको सीजर लेके अगर सीजर लेके आपने डायमंड शेप को कट कर दिया तो जो डायमंड शेप है ये आपका बाहर आ जाएगा, वो बन गया रीजन नंबर 1, और उस डायमंड शेप को छोड़ के पीछे जो बाकी का पेज बचेगा वो भी तो बाहर से क्लोज है, रीजन नंबर 2। तो भाई रीजन वर्टिसेस एजेस रीजन आ गया, व्हाट इज द फार्मूला, रीजन इज इक्वल टू एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2। चेक करो क्या सेम आता है क्या, यस, सो ग्राफ इज योर प्लेनर ग्राफ। अब ऐसा एग्जांपल जो ऑनलाइन अवेलेबल है आप चेक कर सकते हैं। इफ देयर आर 20 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 3, देन इनटू हाउ मेनी रीजन does a representation of this planar graph splits the plane। मतलब आपको वर्टिसेस दिया है, हर एक डिग्री दिया हुआ है, और ये भी दिया है कि ग्राफ प्लेनर है, रीजन कितने आएंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस 20, सबका डिग्री है, नंबर ऑफ एज नंबर डिग्री ऑफ वर्टिसेस, राइट, देखो 20 वर्टिसेस सबका डिग्री है, तो समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, तो एज आ गया 30, तो एज आ गया 30, तो वर्टिसेस पता चला, एजेस पता चला, व्हाट इज द फार्मूला, रीजन इक्वल टू एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2। तो कितने रीजन आएंगे उसमें, 12 रीजन आएंगे। अंडरस्टूड, यस। ये क्या हो रहा है, नॉन प्लेनर ग्राफ का एग्जांपल और यूसेज, यूसेज कहां पे है, नॉन प्लेनर का एग्जांपल यहां पे, दिस इज नॉन प्लेनर। हां, क्या बात कर रहे हैं, उनका कोई यूसेज नहीं है, नहीं सिर्फ चेक करना है नहीं, आप प्लेनर ग्राफ क्या एप्लीकेशन छोड़ देना नहीं। ओके, गूगल करोगे एप्लीकेशन को प्लेनर ग्राफ ट्रैवर्सल एंड ऑल ग्राफ एप्लीकेशन को साइड में लेकर, ओके, सो ये था अपना कांसेप्ट ऑफ ग्राफ, ठीक है, ओके, एंड ग्राफ में मतलब सिंपल कैसे ग्राफ होता है, जैसे मैंने बताया। ये समझे सबको ग्राफ। चलो अभी ऐसा है कि टोटल पार्टिसिपेंट देखो 10 12 है, उसमें से 2 हम ही लोग क्वेश्चन पोस्ट, तो बचे हुए लोग से 10। तो अब हम आगे का सेकेंडली या मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू करें कि सैटरडे को लेकर सैटरडे का शेड्यूल, सैटरडे शेड्यूल कैसे, सैटरडे का प्रैक्टिस लेक्चर है, यदि ऐसे नहीं हो सकता, आप बोल रहे हो कि लोगों को आज के लेक्चर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, कैसे पॉसिबल है, आपके रजिस्टर नंबर पे मैसेज आया होगा, ऐसा जनरली नहीं होगा कि लेक्चर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, ऐसा मतलब मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, जो मैसेज आपको पास होता है, जो मैसेज मेरे को पास होता है, क्योंकि मैं भी एक मेंबर ऑफ स्टेट ना, अगर आप किसी स्टेट को ऑप्शन कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने एलिमेंट को ऑप्शन के रिजल्ट पता चलेगा, तो मैं भी एक मेंबर ऑफ स्टेट जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर ग्राफ के लिए, जो मैसेज लेकर आया मतलब मैसेज सेट करके एलिमेंट कर दिया, बट ये सैटरडे को कैसे है, सैटरडे को मॉर्निंग में दिखेगा, सैटरडे मॉर्निंग can we keep our lecture in Saturday morning because I think so evening में data structure solution का lecture, right? कितने चैप्टर है, हाईएस्ट स्पीड वाला है, ठीक है, जैसे सैटरडे का इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, हो सकता है सैटरडे का इवनिंग सेशन आपका डेटा स्ट्रक्चर चले, मॉर्निंग इज फ्री, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या मॉर्निंग में अगर हम देंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपके तो चलेगा क्या, चलेगा, ओके, मानसी बोल रही चलेगा, हम ज्यादा नहीं लेंगे, यदि 9 से 12 मिनट की जरूरत नहीं, 9 से 12 की जरूरत नहीं है, हम 9:30 से चालू करेंगे, 12 बजे करेंगे, जो अपना इवनिंग का 1 आवर होगा उतना 1 आवर का सेशन हम लेंगे, चलेगा, तो स्टार्ट 9 वी विल स्टार्ट एट 9:30, राइट, तो 9:30 से लेकर 12 सफिशिएंट टाइम, ओके, ओके, तो फिर आज के सारे अटेंडेंस भी थोड़ा सा कम है, तो अब ये सैटरडे का इन्फॉर्मेशन सबके पास आ जाएगा, यदि अगर चैप्टर का वीडियो प्राइवेट डाल राइट का, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आ गया क्योंकि पूरा स्क्रीन भी शेयर है मेरा, ये देखो ये जो पूरा ग्राफ का जो कंसेप्ट है, ये लाइव भी है, dsgt 20 लाइव शो कर रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे डाला ग्राफ, ठीक है, आपको ग्राफ 20 सब डाला है,
ठीक है, पूरा स्क्रीन शेयर आपको भी समझ में आएगा, ठीक है? चलो, तो सैटरडे को वी विल मीट एट 6:30 6:30 9:30 मॉर्निंग 9:30 ओके? वैदेही, सिद्धि, रोहन, हरीश, प्रकाश, ध्रुवी, आदित्य। ओके, चलो सब ऑलमोस्ट ओके हो रहा है। ठीक है, चलो सैटरडे मॉर्निंग मैं लिख देता हूँ। रुको एवरीवन, टाइप मत करो। सैटरडे मॉर्निंग 9:30 टू 12 9:30 एएम टू 12 नून, ओके? चलो फिर बाकी लोग समझना चाहिए, हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है? निकाल। हाँ, चलो मॉर्निंग को सैटरडे को 9:30 ओके, चलो। हेलो, मैडम। हेलो, मैडम। ओके, अच्छा। हेलो, वेरी मॉर्निंग। यस, वेरी मॉर्निंग। इट्स ऑलरेडी 9:35 so we'll start. ठीक है, बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। लास्ट टाइम अपना था। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड विद कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ। इज इट माय स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल? यस। ओके, मानसी अजय स्क्रीन विजिबल। ओके, ठीक है, तो लास्ट टाइम अपना कहाँ पे था? हम थे dsgt, राइट? एंड आई थिंक इन द लास्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड with graph topic, right? Graph में everything, definition of, right? Everything we have completed. Isomorphic graph, then Euclidean, Hamiltonian graph and all, right? The operations on graph, how to store graph in memory, addition computer, using addition matrix, using incidence matrix, everything is there, right? So we have finished with the topic graph, right? अब हम आए अपने next, yes. So this is our syllabus. I will share my screen. Now the screen is visible. Okay. So this is your syllabus of complete discrete structure and graph theory subject, right? Out of which we are left with two topics. Again, I'm revising that relation and function is totally completed. Okay. Then post graph is totally completed. Chapter 2 is totally completed. 4 is pending. 5 is totally completed. And 6, that is graph theory, is totally completed. Okay. So we have finished with second, third, fifth, and sixth, and we left with 4 and first. But out of 4, in fourth chapter, we have completed pigeonhole principle, right? Pigeonhole principle is already completed when we completed our function topic, right? So we left with a few concepts of chapter number 4 and as well as chapter number 1. So if you see, the chapter number 3 is relation function. Then 2.1 is basic concept of set theory. So now today's agenda is we will start with the basic concept of set theory. And actually, the principle of inclusion and exclusion is basically belongs to a topic called as set theory. So we will start with the concept of set theory. We will complete principle of inclusion and exclusion, right? Then we will start with the logic. Then we will try to complete logic as well as mathematical induction. And the only remaining topic is बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, राइट? एंड रिकरेंस रिलेशन, ठीक है? तो आज का अपना एजेंडा ये होगा कि हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन करेंगे, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे, फिर रिकरेंस रिलेशन एंड सॉल्विंग ऑफ रिकरेंस रिलेशन। 9:39 हो गया है, 2 सवा 2 घंटे का लेक्चर लेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद वापस 15 1 सवा घंटा बैठ जाते हैं। तो आज के टाइम पे अपना सिलेबस ओवर हो जाएगा, ठीक है? सो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। एकदम सिंपल है। हां, जो लेंथी टॉपिक थे, जिनका वेटेज मैक्सिमम है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आप यूनिवर्सिटी पेपर को ही देखेंगे या इवन जैसे हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स में लास्ट यूनिवर्सिटी पेपर दिखाया, राइट? प्रीवियस पेपर चाहिए वैसे इधर दिखाएंगे हम डिस्क्रीट में और ट्रैक ट्रेस करेंगे कि हमारा कितना पढ़ के हुआ है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे। तो मेरे ख्याल से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा पेपर में, जितना हमने पढ़ा है उसके बाद कुछ ऐसा होगा, राइट? ये एश्योरेंस है, राइट? एंड जो मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक है, उसमें आएगा रिलेशन फंक्शन यूनिट 2 मैक्सिमम वेटेज, उसके बाद यूनिट 5 मैक्सिमम वेटेज, राइट? देन यूनिट 6 मैक्सिमम वेटेज, ओके? तो मतलब ऐसा समझो आप कि यूनिट 2 एंड यूनिट 5 जो है मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 5, अगर इन दोनों को पढ़ेंगे ना यूनिवर्सिटी पेपर में, तो ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ द पेपर इज कवर्ड, क्योंकि उनका वेटेज मैक्सिमम है, टॉपिक मैक्सिमम है, वेटेज उसका मैक्सिमम, ठीक है? एंड जो बच्चे वो छोटे छोटे टॉपिक बचे, जैसे अभी बेसिक कांसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, बेसिक कांसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी में ऐसा कुछ एग्जाम में आने जैसा नहीं, बस हम उसको लेवल पढ़ लिया। हां,
एग्जाम में क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन स्टूडेंट शो शॉर्ट एग्जाम 100% एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 90% चांसेस है कि द क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन स्टूडेंट मे कम इन क्वेश्चन नंबर 1 एज अ कंपलसरी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. उसके बाद हम देखेंगे लॉजिक में, तो ऑब्वियसली सम स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड वी नीड टू प्रूव दैट इज लॉजिक, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक, राइट, या फिर यूजिंग वेन डायग्राम भी बोलते हैं. उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन का 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये अपना आज का फोकस रहेगा, ठीक है. एंड नहीं तब रेडी सेट के बाद लॉजिक में रिकंसिलिएशन भी ले सकते हैं. रिकंसिलिएशन क्यों चाहिए, बिकॉज़ हम कंप्यूटर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, राइट, अपना बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, तो ऑलरेडी वी हैव अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, राइट, जो आपके पास भी स्ट्रक्चर होगा, एनालिसिस होगा, सी सी प्लस हमने पढ़ लिया है. तो रिकर्जन मतलब क्या, आप बोलते हो प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉलिंग से रिकर्जन. तो रिकर्जन को मैथमेटिक्स में क्या फायदा है, मैथमेटिक्स को कैसे यूज करते हैं, वो आपको रिकंसिलिएशन में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द बेसिक कांसेप्ट ऑफ, जैसा अपना एजेंडा है, बेसिक कांसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, ओके. तो डाउनलोड का स्क्रीन जो है अभी आपके लिए विजिबल है, और 2023 दिसंबर हम यहाँ एड सेक्शन करेंगे, स्टेट थ्योरी देन लॉजिक, ठीक है, स्टेट थ्योरी लॉजिक. चलो वी स्टार्ट विद द बेसिक कांसेप्ट ऑफ सेट. अब मैं बेसिक कांसेप्ट बोलूंगा ना तो मैं थोड़ा फटाफट जाऊंगा, राइट. अगर आपको स्पीड ज्यादा है सर रुकना चाहिए तो मेरे को सही एक्सप्लेन करो वापस, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है, बिकॉज़ स्कूल लेवल में हमने सेट थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है. तो एज इट इज उसमें जैसा हार्ड एंड फास्ट कुछ होने वाला है ही नहीं, ठीक है. हां, जहां इंजीनियरिंग के कंसेप्ट है वहां मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है. सो द कंसेप्ट इज सेट थ्योरी, राइट. इसको लास्ट में लेने का इंटेंशन ये है, इंटेंशन नंबर 1, दिस इज ऑब्वियसली अ सिंपल कंसेप्ट, राइट. कोई हार्ड एंड फास्ट मैकेनिज्म स्पीड लगने वाला है इसमें नहीं. एंड सेकंड इंटेंशन है कॉलेज जब स्टार्ट होता है, कॉलेज में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम या मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ योर कंप्लीट ग्रेजुएशन सेमेस्टर, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपका सेट थ्योरी एंड लॉजिक मैथमेटिक्स में ही तो वो डाल देते हैं. तो ऑब्वियसली आपका कॉलेज में ही लाइन ऑफ प्रैक्टिस हो गया है, राइट. और एक्चुअल सब्जेक्ट अपना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वो खुलता ही रिलेशन के बाद है, तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट को खोलते हैं, ना कि ये स्कूल लेवल के जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है उस पे ज्यादा नहीं बताते. इसलिए हमेशा विद्यालय में हम लोग सेट थ्योरी लॉजिक के लास्ट में लेते हैं, ठीक है. बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं सब्जेक्ट में, और सेट थ्योरी कंसेप्ट सॉल्व पता होते हैं, राइट. उनको ऐसा लगता है अगर मैं स्टार्ट किया तो सेट थ्योरी बस सारी ये तो आता है, ये तो सिंपल है, राइट. ये तो एकदम आसान है, ये तो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट में नया है, सब्जेक्ट खुलता ही रिलेशन फंक्शन के साथ है, ग्राफ के साथ है, अलजेब्रा स्ट्रक्चर के साथ है, काउंटिंग के साथ है, राइट. ओके चलो, तो सेट थ्योरी. तो पहला आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है. तो व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी. पहला आएगा व्हाट इज सेट, ये लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर बाय सम सेंस और सम लॉजिक इज कॉल्ड एज सेट, राइट. सेकंड इज योर मेथड टू राइट सेट, right? Methods to write set. There are two methods. First is called as your direct definition method. First is your direct definition method. Second is your roster method. और जिसको आप tabular method भी बोलते हो. Okay. What is direct definition method? Here, you have to specify name of a set. Element is already predefined in the universe. आपको सिर्फ set का नाम बताना है. Element already universe में predefined है, सबको पता होता है. Right? Example is set of natural number. Set of natural number starts from 1. Natural number starts from 1, 2, 3 till infinity. Set of whole number starts from 0, 1, 2, 3 till infinity. Set of integer number starts from minus infinity dot minus 2 minus 1 0 1 2 dot plus infinity. Set of real number any number p by 2 provided q is not equal to 0. Set of colors, set of animals, set of alphabets, set of vowels, elements of बताए. तो direct definition. Second is your roster method or tabular method. Here the element is not predefined in the universe. Set में condition दिया रहेगा. The element which satisfies the condition will be a part of set, otherwise no. Say example set A having element x such that x belongs to natural number and x square less than 50. So obviously जो element इन दोनों conditions को satisfy करेगा वो set का हिस्सा रहेगा. So x is your element of set. It is natural number. It starts from 1 and the square of that number is less than 50. तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 right. So this is your tabular method or roster method. Then third आएगा आपका types of set. Right? Types of set में हम पहला पढ़ेंगे सबसेट, सुपरसेट. ओके, सबसेट, सुपरसेट. What is subset, superset? Suppose we have two sets, set A and set B. If all the elements of set A are present in set B, then A is called as subset of B and B is called as superset of A. So here A is my subset and B is superset. Example, I can say that say natural number is subset of integer number, whole number can be subset of integer number, even natural number can be subset of whole number, and any number can be a subset of real number. So that is your subset superset concept, right? Understood? Yes. The first category is subset superset. Second is finite and infinite set. ठीक है, देखो लिखा हुआ ऑलरेडी. If the total number of elements present in the set are countable, finite, then set is called as finite. If total number of elements present in the set are uncountable, infinite, then it is called as infinite. Infinite set example set of natural number, whole number, integer number, infinite set. Finite set can be set of color, set of animal, set of alphabet, set of vowels. Where the total number of elements are countable, even the roster method में लिखा हुआ set A, it is a finite set. Okay, then your next cardinality of a set, right? What is cardinality of set? Total number of elements present in the set. Say example, set of vowel is A, E, I, O, U. Then in that case, what is cardinality of B? Is 5. Set of alphabet, cardinality is 26. Here consider example set A, cardinality is 7. Total number of elements present in the set is cardinality. The next is your null set or your empty set. Right? What is null set, empty set? Denoted by empty bracket or simply 5. 5 indicates it is null set, empty bracket indicates it is null set. What is null set as an implies? A set having no element, right? Is called as null set. Set which is empty, having no element, is called as null set or empty set. The next is your universal set. Universal set. What is universal set? A superset of every set is called as universal set. That means if you consider the example of number system, then real number is your universal set. If you say the example of set of countries, then universe, the world is your universal set. Understood? So universal set is basically superset of every set. Then note number one. Note number one is null set is subset of. Null set is subset of every set. Null set is subset of every set. Next is universal set. Universal set is superset. Universal set is superset of every set. And then third is a set itself. Set itself is subset or superset of itself. Okay, so पहला पॉइंट है नल सेट का सबसेट होता है, राइट. नल सेट एवरीवेयर, यूनिवर्सल सेट सुपरसेट ऑफ एवरी सेट, सेट का सबसेट भी होता है, सुपरसेट भी होता है. So types of set में सबसेट सुपरसेट, फाइनाइट इनफाइनाइट, कार्डिनली, नल सेट, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, राइट. Then next is your power set. Power set, right? What is power set basically? Power set. Let A be the given set. Let A be the given set. Then power set of A. Then power set of A is denoted as P of A, denoted as P of A, and defined as collection of all possible subset of set A, right? So let A be the any given set. Then power set of set A is denoted as P of A. Power set of A is defined as collection of all possible subset of set A. The note point is if cardinality of set A is n plus set A n elements set, then cardinality of its power set is 2 is to n, right? If set A you are having n elements, so power set में आपके पास 2 is to n elements होते हैं. Example, say set A having element A, B. Then what is power set of A? First of all, null set is subset of every set. Then collection of individual element. That is individual A, individual B, then collection of both. Check करो. In A we have 2 elements. Then in power set of set A must have 2 is to n order pairs. Similarly, suppose in your set B you have 3 elements 1 2 3. Then power set of B is first null, then collection of individual, that is 1 2 3. Then collection of 2, that is 1 2, then 1 3, then 2 3, and finally collection of all 3 1 2 3. Okay, so this is your power set, collection of all possible subsets. Similarly, if you can take example of next set, say C is having element 1 A B C D 4 elements. So power set of C में 16 होने चाहिए, 2 is to 4. First is null, second is collection of individual, that is A B C D. Okay, power set इतना क्यों जा रहा हूँ? Because principle of student को समझने के लिए required concept of power set. Null set A B C D, then collection of 2 A B, then A C, then A D, then B C, then B D, then C, then A B A C A D B C B D C. Done. Collection of 2 done. Then collection of 3 में आएगा A B C A B D A C D
then B, C, D, collection of A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D, right? Then collection of 4, that is A, B, C, D. देखो मैंने बताया analysis structure set itself is subset address subset address. So 2 is to 4 जो है 16, 2 is to 4 is equal to 16 order by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. Okay, so this is the concept of power set. So basically, what is power set? Power set is collection of all possible subset of given set is called as power set. Okay, the next concept which is required for principle of inclusion and exclusion is disjoint set. Disjoint set. Disjoint sets. What is disjoint set? Any two sets, AI and AJ, any two sets, AI and AJ are called as mutually disjoint with each other. Any two sets, AI and AJ are called as mutually disjoint with each other, provided if and only AI intersection AJ is equal to null. मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी उसको disjoint sets बोलेंगे. ठीक है? Then what is addition principle? What is addition principle? Addition principle for disjoint set for two sets which are disjoint. ठीक है? Addition principle for disjoint set is, say we have two set A, B, then in that case A union B is cardinality of A plus cardinality of B. यही अगर हम counting में बोलेंगे ना, counting में बोलेंगे addition rule, तो in that case of probability A union B is equal to probability of A plus probability of B हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है? So यहाँ principle of inclusion exclusion पे focus कर रहे हैं. So what is A union B is A plus B, right? So what is A? Say example 1, 3, 5, 7, 9. What is B? Say 2, 4, 6, 8, right? Then what is A union B? Is 1, 2, 3 till 9. Okay? So now apply principle of addition. What is A union B? Is 9. Cardinality of A is 5. The cardinality of B is 4. So 9 equal to 9. So this is your addition principle. Simple. But this holds true only if your two given sets are mutually disjoint. If two given sets are mutually disjoint, then only this principle holds true. This principle will fail if there exists any common element between two given sets. So say A has A, B, D, E, F, G. Say B has B, C, E, G, H. Then what is A union B? A union B is A, B, C, D, E, F, G, H. Sort of like A union B is equal to A plus B. What is A union B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 is equal to यहाँ आएगा 6 plus इधर आएगा 5. Is it 8 is equal to 11? The answer is no. Is it equal to 11? No, answer is no. But 8 equal to 8 अगर आना है तो आपको यहाँ से -3 करना पड़ेगा. मतलब यहाँ से -3 करना पड़ेगा. What is -3? -3 is nothing but the common elements between A and B. So this is called as principle of inclusion and exclusion. So this is combination of power set. This is combination of power set. कैसे? जब मैंने power set of A, B लिखा था तो उसमें लिखा था null A, B and AB. Okay. So null is present everywhere. So individual addition to the subtraction. So this is called as principle of inclusion. This is called as principle of inclusion and exclusion for two sets. But syllabus में it is given that we need to find principle of inclusion and exclusion for three sets. So this is principle of inclusion and exclusion for three sets. कैसे आएगा? A union B union C is equal to, right, individual का addition A plus B plus C, दो का subtraction A intersection B B intersection C plus तीनों का addition A intersection B intersection C, right, individual का alternative placements, individual का addition, two का subtraction, तीन का addition. अब यही अगर मैं explain करूंगा A union B union C union D, principle of inclusion for four set, not a problem. Individual का addition, there is A plus B plus C plus D, दो का subtraction, that is A with B, then A with C, then B with C, AB AC AD, then BC BD, then CD. Okay, no addition, the individual addition, दो subtraction, अब तीन का addition, that is A B C, then A B D, then A C D, then B C D. Okay, हो गया तीन. Then finally चार का subtraction, alternative placements A B C D. Okay, ऐसे आप principle of inclusion exclusion किसी का भी लिख सकते हो एग्जाम में. This is important for three set. Okay, so this is your statement of principle inclusion and exclusion. What is cardinality of A? The number of elements present in A. Individual cardinality मतलब number of elements present in individual set. A intersection C मतलब the number of elements present in A and B both. Right, and A intersection B intersection C मतलब the number of elements present in all three sets. Right, अब operations. Next concept आएगा simple operations on set. Operations on set. तो पहला operation है union. Like union कैसे दिखाते हैं? So this is what is A union B. What is A union B? Element X such that X belongs to A or X belongs to B. साथ में उसका Venn diagram दिखा देता हूँ. So this is set A, this is set B, and what is A union B? The element is present in A and B both. Second is your intersection. What is intersection denoted by the sign? What is A intersection B? A intersection B is element X such that it is present in A and X must also be a part of B. So what is basically intersection? So this is obviously universal set. This is set A, set B, universal set. This is intersection of all three. Right. The third operation is union intersection divided by complement. Complement of A is denoted by A complement of A bar. So what is basically a complement? This is universal set. This is set A, and this region is called as complement of a set. So what is A complement? Basically, A complement is having element X such that X belongs to universal, but X is not a part of given set. अब ये जो लिखा है ना, belongs to, right? ये सब logic concept quantify universal is essential. उसमें सब notation देंगे. Then your fourth is your difference operator. So suppose if you want to find A minus B, right? If you want to find B minus A, then what is A minus B? This is your A minus B. This is your B minus A. Universal set A, set B, set B. Okay. So what is A minus B? A minus B मतलब the element which is present in A but not in B. B minus A मतलब the element which is present in B but not in A. Okay. And last operation is दोनों का combination, which is a symmetric difference. Okay. The last fifth operation is symmetric difference. ठीक है. What is symmetric difference denoted by arrange sum. Okay. So A arrange sum B. कैसे दिखाते हैं arrange sum B? तो देखो यहाँ ऐसे दिखाएंगे A arrange sum B. So this is your universal set. This is set A. This is set B. Okay. And what is A arrange sum B? This is your A arrange sum B. Okay. I can write A arrange sum B as A minus B union with B minus A. तो भी चलेगा. Yeah. I can say that A union B minus A intersection B. तो भी आपका A arrange sum B होगा. Symmetric difference. तो ये हो गया operations, different possible operations on set. उसके बाद आएगा next is the properties on set. Next आएगा properties on set. तो ये लिखूंगा नहीं. What are the different properties on set? Different properties on set are associative property. ठीक है. चलो associative property. What is associative property? Associative property is say A union B union C is A union B union C, or A intersection B intersection C is A intersection B intersection C. This is associative property. Next is commutative property. What is commutative property? You can select any two set A and B and change the property. Property number two आएगा. Commutative property is A union B is equal to say B union A, or A intersection B is equal to B intersection A. Then third is your distributive property. Distributive property. What is distributive property? A union B intersection C is A union B intersection A union C, or A intersection B union C is A intersection B union A intersection C. Okay. Then the important is De Morgan's law. What is Morgan's law? A union B complement is your A complement intersection with B complement. Or simply you can say that A intersection B complement. A intersection B complement is A complement union with B complement. Okay. Then you already know that the complement idempotent property. So A complement, the complement of A complement is obviously A itself. Then universal complement is null set. Null set complement is universal set. So these are simply the properties of sets. Okay. So this is your basic introduction about a set theory. Understood? Now we will solve the problems on principle of inclusion and exclusion directly, which are university questions. Okay. Any issues? Any problem? Any difficulties? Introduction part.
Okay, no. What about others? Tanay, Soham, Vaidehi, Siddhi, Sanya, Rohan, Harsh? No. Okay. Okay. So then we start with the problem based on principle of inclusion and exclusion. Okay. So basically, the broad categories of problems are two. Number one, situation, or you can say case number one, where intersection of all three sets are given, right? Problem of type one, intersection of all three sets are given, and type two problem, intersection of all three is not given. Okay, so I will solve the problem at least one of type one and at least one of type two. Okay, so what is type one problem? Intersection of all the three sets are given. So example is like in a survey of 100 college students, right? The problem is of this category. Say in a survey of 100 college students, following data were obtained. Some students study some numbers, some students study science, some students study commerce, some students study arts, right? The individual timeline is given. Some students study science and commerce, some students study science and arts, some students study commerce and arts. And the last line is very important. Some students study all three type of courses. Understood? So type one problem, the last statement होगा. Some students study all three courses. So the intersection of three is given. And if you compare type 1 with type 2 problem कैसे होगा? In a survey of 100 college students following data obtained. Some students study science, some students study commerce, some students study arts. Then some students study science and commerce, some students study science and arts, some students study commerce and arts. And the last line is some students do not study any of the courses. So out of 100, if some students do not study, say out of 100, 10 students do not study any of the course. So at least एक course पढ़ने वाले कितने हैं? 100 minus 10 is 90. That means that 90 number is union of all three. So ये दो major difference है type 1 और type 2 में. Type 1 question का last statement होगा some students study all three courses. Type 2 का last statement होगा some students do not study any of the three courses. Okay? चलो हम अभी एक प्रॉब्लम को लेंगे. डायरेक्ट मेथड बताऊंगा सॉल्व करने का using Venn diagram and obviously with the help of तुम्हारा solution in the sense principle of inclusion and exclusion. वो भी बताएंगे. ठीक है? चलो क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन लिखेंगे तो बड़े क्वेश्चन लेते हैं. तो सेक्शन में नोट्स में क्वेश्चन रहेगा. तो मैं डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे करूंगा. ताकि क्या होगा? अपना क्वेश्चन का टाइम बचेगा. ओके. आ गया क्वेश्चन. तो डायरेक्ट अपने नोट्स में से कॉपी करते हैं. अभी आगे क्वेश्चन. ठीक है? क्या क्वेश्चन फर्स्ट? चलो. क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज ध्यान देना. इन अ सर्वे ऑफ व्हाट इज गिवन डेट. So यार क्या given data, right? In a survey of 260 college students, so your universal set is 260, okay? Because survey में 260 college students थे. In a survey of 260 college students, following data were obtained. 64 had taken mathematics course. तो अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्या? Let M be the set of students study mathematics. Then कुछ computer science वाले C be the set of students study computer science. Then B set of students who study business. Okay, अब data दिया. In a survey of 260 college students, मतलब universal set is 260. 64 had taken mathematics. So mathematics is 64. Okay. 94 had taken computer science. So computer science is 94. 58 had taken business course. Business course is 58. Okay. Then 28 had taken both maths and business. So both maths and business will be 28. Next 26 had taken both maths and computer science. So maths and computer science is 26. Then 22 taken computer science and business. Computer science and business is your 22. Then last line is very very important. 14 had taken all three type of courses. Maths, computer science and business. Here we have understood. So this is what is type 1, where intersection of all three sets are given. This is type 1 problem. अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखना ही नहीं. मैं आपको डायरेक्टली वेन डायग्राम से बता देता हूँ. सारे आंसर्स मिल जाएंगे. अंडरस्टूड? यस. अब देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ वेन डायग्राम. So this is what is Venn diagram representation for your given problem. Okay. So this is your universal set. Number is 260. Right. This is your mathematics. This is your computer science and this is your business. Okay. Please ध्यान दो. Mathematics, computer science and business. Please ध्यान दो. How to feel a Venn diagram. Venn diagram को कैसे feel किया जाता है? कैसे बनते हैं? First feel the intersection of all three. क्या है? First feel the intersection of all three का region. Then feel intersection of two. Then feel individual. कैसे बनते हैं? First feel the data which is intersection of all three. Second feel the data which is intersection of two. And then feel the data which is individual. Okay. Yes. अब intersection of three. क्या है intersection of three? कलर चेंज करके मैं करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा. Intersection of all three. चलो, what is intersection of all three? Intersection of all three is 14. So this is my intersection of all three is 14. Okay. Then field intersection of two. Intersection of two. So this region is intersection of maths and computer science. So field maths and computer science. Maths and computer science is 26. So out of 26, 14 already gone. But okay. Then this region is maths and business. This complete region is maths and business. Maths and business. So maths and business is 28. Out of which 14 already gone. But 14. Then next, this region is computer science and business. Business and computer science. Business and computer science is 22. Out of which 14 already gone. But 8. Okay. Now fill individual. This is complete maths. Individual maths. कितना individual maths 64. So 64 minus ये कितना 14 14 28 28 30 40 बचा कितना 24. Okay. 42 28 28 plus 12 28 45. अब computer science. Full computer science is 94. Okay. 94 minus ये कितना 12 plus 8 is 20 20 and 34 बचा कितना 60. Okay. Then business. Full business is 58. So 58 minus कितना 14 14 28 28 30 36 बचा 22. Okay. खत्म पूरा वेन डायग्राम खत्म. अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आने दो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. डायरेक्ट पहला क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड हु हैड टेकन नन ऑफ द थ्री कोर्सेस. बराबर है. नन ऑफ द थ्री. नन ऑफ द थ्री कैसे आएगा? नन ऑफ द थ्री मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल. राइट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है यूनिवर्सल माइनस. अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है? तो 1 24 plus 12 plus 16 plus 14 plus 14 plus 8 plus 22. अब ये जाएगा मैं आपको समझ लीजिए. एग्जाम में ऐसा नहीं करेगा. बाद में लिखा एग्जाम में सॉल्व करेगा. तो 24 plus 12 है रीजन. 24 plus 12 plus 16 plus 14 plus 14 plus 8 plus 22. अब देखो यहाँ पे 8 and 2 is 10. 10 then 10 and 8 and 20 24 carries 2. तो 2 कैरी आने के बाद हो जाएगा 6 plus 4 is 10 11 12 13 15 154. So there are 154 students out of 260 who had taken या who have studied at least one of the course. अपने बच्चे how many students surveyed who had taken none of the three. तो टोटल अपने पास 260 है. उसमें से 154 कुछ तो पढ़ते हैं. बचे हुए कितने? 106 जो कुछ भी नहीं पढ़ते. अंडरस्टूड? जो कुछ नहीं पढ़ते. राइट? यस. समझा? अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के साथ कैसे सॉल्व करना है? तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ तो बोलेगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. चलो कैसे? मैथ्स और बिजनेस या मैथ्स और कंप्यूटर साइंस और बिजनेस इज मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस बिजनेस माइनस मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस मैथ्स एंड बिजनेस कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस प्लस मैथ्स बिजनेस कंप्यूटर साइंस. अब लेफ्ट हैंड साइड में पता नहीं टेक्स्ट है. राइट. जो मेरा आंसर आएगा 154 यहाँ नीचे देखो. व्हाट इज मैथ्स? मैथ्स का कितना दिया है? 64. अब जो डेटा में दिया है बोलेंगे
64 plus computer science is 94 plus business 58 minus maths computer science is 26 maths business 28 computer science and business 22 plus 8 sorry plus 14 not 8 plus 14 ओके तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स मतलब मैथ्स और कंप्यूटर साइंस और बिजनेस आंसर आएगा 154 आप चेक कर सकते हो 64 प्लस 94 प्लस 58 माइनस 26 माइनस 28 माइनस 22 प्लस 14 दिस होगा तो आप चेक करो मैं मेरे मोबाइल पर चेक कर लेता हूं सो इट इज 64 प्लस 94 प्लस 58 प्लस 14 आंसर इज 30 माइनस 36 माइनस 28 माइनस 22 आंसर इज परफेक्ट 154 ओके सो अभी 154 क्या है 154 है यूनियन इसका मतलब कुछ तो पढ़ने वाले कुछ तो पढ़ने वाले 154 स्टूडेंट्स है ओके तो मतलब 154 ऐसे जो आइदर मैथ्स क्योंकि और यूनियन ना आइदर मैथ्स और आइदर कंप्यूटर साइंस और बिजनेस वाले क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन नन ऑफ द थ्री सो दिस इज व्हाट इज मैथ्स यूनियन कंप्यूटर साइंस यूनियन बिजनेस राइट ये है आइदर राइट अपने को चाहिए ना मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट सो यूनिवर्सल माइनस मैथ्स और बिजनेस और कंप्यूटर साइंस मतलब यूनिवर्सल इज 260 minus 154 आंसर इज 106 so 106 students do not study any of the courses then of the students of second question of the students survey ऐसे कितने लोग हैं only कंप्यूटर साइंस चलो बताओ ये रीजन देखिए वेंडा देखिए only कंप्यूटर साइंस बताओ वेंडा देखिए only कंप्यूटर साइंस कितने चलो बताओ देखिए ओनली कंप्यूटर साइंस परफेक्ट आज परफेक्ट सो दिस इज द रीजन फॉर ओनली कंप्यूटर साइंस ओके अगर मुझे पेपर में एक्सपीरियंस निकालना होगा ना तो लिखाऊंगा ओनली कंप्यूटर साइंस इज कंप्यूटर साइंस माइनस कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस माइनस कंप्यूटर साइंस विद मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस ओके तो बोलो कंप्यूटर साइंस का अपडेट था कंप्यूटर साइंस कितने लिखा हुआ कंप्यूटर साइंस के 94 थे माइनस कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस थे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस 22 कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स 26 एंड तीनों कितने 40 देखो आपका आंसर 60 आना चाहिए चेक करो 94 प्लस 16 94 प्लस 40 माइनस 22 कर देता हूं कैसे सो इट इज 94 प्लस 40 इज 108 माइनस 22 माइनस 26 आंसर अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सर्वे हु टेकन हु हैव स्टडीड या हु आर स्टडीइंग आइदर ऑफ द कोर्स आइदर ऑफ द कोर्स मतलब 24 नन ऑफ द कोर्स मतलब मैंने निकाला टोटल मैंने 24 ओनली मैथ्स 24 ओनली कंप्यूटर साइंस 60 ओनली बिजनेस 22 समझा पहले क्वेश्चन का समझा समझा पहले कैटेगरी यस ओके मानसी आज दो ही बार आंसर दे रहे मतलब कुछ आंसर नहीं दे रहे ठीक है तो वही समझा ना अब यहाँ एक सेकंड कैटेगरी वाला भी प्रॉब्लम आता है ओके चलो ये समझा तो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट amongst the integer between amongst the integer between 1 to 100 question number 1 how many of them are divisible by 2 or by 3 or by 5 how many of them are neither divisible by 2 nor by 3 nor by 5 तीसरा क्वेश्चन how many how many how many integer are divisible only by 3 only by 5 only by 2 ओके चलो अब यहाँ क्या है ये भी टाइप 1 का प्रॉब्लम है राइट आप लोग यहाँ कुछ भी दिया नहीं है यस ये भी इंटेंशन दिया हुआ है ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है यहाँ बोलते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है सब कुछ दिया है राइट अब देखो यहाँ क्या दिया हमको तीन सेट दिए अमंग द इंटीजर बिटवीन 1 टू 100 राइट अमंग द इंटीजर बिटवीन 1 टू 100 अभी डिविजिबिलिटी पूछा है राइट तो डिविजिबिलिटी पूछा है तो बोलो अब मैं बोलूंगा लेट ए सॉल्यूशन प्लीज ध्यान दो लेट ए बी द set of integer divisible by 2 b with the set of integer divisible by 3 c with the set of integer divisible by 5 okay अब what is universal set 100 आपको टोटल 100 नंबर है राइट अब यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन करना है सारा डेटा आपने बनाया अब बताओ मेरे को ऐसे कितने नंबर रहेंगे बिटवीन 1 टू 100 जो कि डिविजिबल बाय 2 है सिंपल सिंपल ऐसे नंबर जो 100 में से डिविजिबल बाय 2 आंसर 50 ऐसे कितने नंबर है 100 में से जो डिविजिबल बाय 3 रहेंगे तो 33 ऐसे कितने नंबर है 100 में से जो डिविजिबल बाय 5 रहेंगे 20 ऐसे कितने नंबर है 100 में से जो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 रहेंगे तो 15 क्योंकि 6 है 6 15 6 9 ओके ऐसे कितने नंबर रहेंगे 100 में से जो डिविजिबल बाय 2 एंड 5 है आंसर 6 ऐसे कितने नंबर रहेंगे 100 में से जो डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है 15 6 ऐसे कितने नंबर रहेंगे ए बी एंड सी में से 100 में से जो डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5 है सो 5 15 15 30 तो आएगा आंसर 3 अंडरस्टूड अंडरस्टूड पूरा डेटा कैसे निकाला समझा अब खत्म जब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 निकल गया है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 निकल गया है तो निकालो वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज ये आएगा सेट ए द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 इंटीजर नंबर डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल बाय 5 ए बी सी चलो फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ 3 is 3 then intersection of 2 that is a and b is 15 15 12 then a and c is 10 a and c is 10 उसमें 3 गया बचा 7 then next is b and c 3 गया बचा 3 then a only a 50 50 50 में से 10 गया 10 और ये 22 गया राइट 7 3 10 10 10 22 22 बचा 8 30 and 2 50 only b is 32 तो 33 माइनस ये बचा 12 और 6 18 राइट 18 18 में 2 20 2 3 5 5 एंड 15 ओके the next c is your 20 तो 20 में से गया 7 3 10 13 बचा कितना 7 ओके अब बताओ सॉरी बताओ क्वेश्चन क्या है how many integers are either divisible by so how many integers either divisible by 2 or by 3 or by 5 डायरेक्ट आएगा ये लोग देखो डायरेक्ट करो 28 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 कितना आएगा चलो एक सेकंड क्लियर करो पहले डायरेक्ट करो फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन 28 12 15 7 3 3 7 आंसर इज 75 तो 75 ऐसे है जो आइदर 2 या 3 या 5 से डिविजिबल इसको ये आंसर निकालना होगा तो a यूनियन b यूनियन c इज a प्लस b प्लस c माइनस ab माइनस ac माइनस bc प्लस a b c तो दिस इज ऑब्वियसली x व्हाट इज a 50 व्हाट इज b 33 व्हाट इज c 20 व्हाट इज ab 15 ac 10 bc 6 प्लस 3 तो आप देखो a यूनियन b यूनियन c का आंसर 75 आएगा तो आइदर डिविजिबल हो गया अब सेकंड क्वेश्चन है नाइदर तो नाइदर मतलब क्या हो गया आइदर सेकंड क्वेश्चन आएगा नाइदर a यूनियन b यूनियन c आइदर आइदर का कॉम्प्लीमेंट नाइदर तो 100 माइनस 75 मतलब ये बोलना है यूनिवर्सल माइनस a यूनियन b यूनियन c इसका आंसर आएगा 25 25 ऐसे जो नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉट बाय 3 नॉट बाय 5 अब अपने को चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ओनली by 2 3 and 5 बताओ ओनली by 2 is 28 ओनली by 3 15 ओनली by 5 7 ओके तो ये हो गया हमारा आंसर अंडरस्टूड समझा सबको राइट अब ये पहले कैटेगरी का बराबर ना तो पहले कैटेगरी का यूनिवर्सिटी में आया हुआ और क्वेश्चन क्या बच्चे डरते हैं तो मेरे को डर हटाना है इसलिए मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं टाइप 1 का टाइप 1 का क्वेश्चन और लेता हूं और भी ना लेता हूं क्वेश्चन
देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 30 ये पहले कैटेगरी का है। देखो इट इज नोट दैट एट द यूनिवर्सिटी 60% टेंड है, इसका मतलब सारा डेटा परसेंट में है, तो यूनिवर्सल सेट इज 100। 60% प्ले टेनिस, टेनिस खेलने वाले प्रोफेसर 60% है, 50% प्ले ब्रिज, ब्रिज खेलने वाले 50% है, 70% इज जॉब, जॉब खेलने वाले 70% है, ओके। 20% प्ले टेनिस एंड ब्रिज, टेनिस एंड ब्रिज इज 20%, 30% प्ले टेनिस एंड जॉब खेलने वाले 30% है, ओके। देन द नेक्स्ट इज 40% प्ले ब्रीज एंड जॉब खेलने वाले 40% है, राइट। अब ये देखो ये क्या है, अब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा बच्चे कर जाते हैं, डरने का नहीं, डरने का नहीं, ओके। अब यहाँ क्या बोला है, पूरा डेटा जो दिया है ना वो परसेंटेज में है, राइट। इसका मतलब हर एक प्रोफेसर सर्वे में इन्वॉल्व हुआ है जो कुछ ना कुछ खेलता है, समझा। तो ये यूनिवर्सल भी 100 है, एंड ऐसे लोग जो टेनिस एंड जो क्या बोलते हैं ब्रिज एंड जॉब भी खेलने वाले 100, अंडरस्टूड। ये यहाँ पे क्यों पॉइंट है, क्योंकि देखो जब कोई भी वैल्यू, जब कोई भी मार्क्स तुम परसेंटेज में बोलते हो ना, मतलब यू आर ऑलवेज कंसीडरिंग आउट ऑफ 100, राइट। सो इफ यू आर फुल अटेंडेड 100 आउट ऑफ कितना मतलब परसेंटेज, ओके, अंडरस्टूड। तो यूनिवर्सल 100, tennis, bridge, jog, tennis, job, bridge and job, right? And universal as well as union award 100. अब यहाँ important next line. If someone claims that 20% of the, मतलब कोई claim करता है कि 20% of the professor, 20% of the professors job and play bridge and tennis, मतलब अगर कोई बोलता है, मतलब ये क्वेश्चन है, अगर कोई क्लेम करता है, क्वेश्चन है, अगर कोई क्लेम करता है कि 20% प्रोफेसर ऑल थ्री गेम्स खेलते हैं, तो ये क्लेम वैलिड है, ये क्वेश्चन है, एक वैलिड है। अब शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्लेम है उसका। ये जो है ये आपका डेटा है, तो ये डेटा पे अगर कोई क्लेम करता है कि 20% प्रोसेस तीनों खेलते हैं, मतलब ऐसे टेनिस एंड ब्रिज एंड जॉब, इसका आंसर 20 है, ऐसा क्लेम है, ये डेटा के ऊपर आंसर 20 आना चाहिए, ऐसा क्लेम है। तो क्या ये क्लेम सही है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, जो डेटा दिया है उस डेटा को ऊपर इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर इंटरसेक्शन निकला 20 तो क्लेम सही है, इंटरसेक्शन नहीं निकला 20 तो क्लेम गलत है। तो अभी हम ये प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड स्टूडेंट से टेनिस और बैडमिंटन और जॉब इज इक्वल टू टेनिस प्लस बैडमिंटन प्लस जॉब माइनस टेनिस जॉब बैडमिंटन जॉब प्लस टेनिस प्लस बैडमिंटन प्लस जॉब, तो ये है तुम्हारा 100, ये तुम्हारा टेनिस है 60, बैडमिंटन है 50, जॉग है 70, टेनिस बैडमिंटन इज 20, टेनिस जॉग इज 30, बैडमिंटन जॉग इज 40 प्लस टेनिस एंड बैडमिंटन एंड जॉग। तो बताओ टेनिस एंड बैडमिंटन एंड जॉग का आंसर कितना आएगा, मैं करता हूं, यहाँ आएगा 100 माइनस 60 माइनस, हाँ ये 70 प्लस आएगा, ये प्लस है ना, तो फाइनली 100 माइनस 3 माइनस 70, राइट, प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 इक्वल टू 100 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, 190, 190 माइनस 60 माइनस 50 एंड माइनस 70, आंसर सेम, आंसर सेम, आंसर सेम, ओके। और यहाँ पे क्या है कि आंसर ये डेटा आंसर 20 आना चाहिए, बराबर। तो बोलेंगे therefore claim is rejected since 10% of the professor plays all the game, okay, understood। तो ये डेटा पे एक्चुअली 10% प्रोफेसर तीनों गेम खेलते हैं, आंसर आता है, और आपने दिया है 20% जो कि गलत है, ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज व्हाट इज कैटेगरी 1, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री गिवन, ये उसकी वैराइटीज, अंडरस्टूड। अब आएगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री इज नॉट गिवन, बस दैट्स ऑल, खत्म। ये बाकी वैरायटी क्योंकि बच्चे थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं, और ये क्या आ गया, तो इसलिए मैंने वो भी किया ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो पाए, ओके, अंडरस्टूड। करना है, यस, अमन ओके, अरशद ओके, सोहम, सोहम भोसले, वैदेही, रोहन, तानिया, हर्ष, कृति, और ओके, यस, ओके, ठीक है। तो अभी सेकंड कैटेगरी वाला प्रॉब्लम, जहां इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री नहीं रहेगा, मतलब अब क्वेश्चन लगा रहेगा कुछ लोग जो तीनों नहीं पढ़ रहे, कुछ लोग जो तीनों नहीं खेल रहे, या कुछ लोग जो तीनों में से किसी में भी पार्टिसिपेंट्स नहीं है, ऐसा डेटा रहेगा, ओके। तो दिखाता हूं वो प्रॉब्लम भी कॉपी करता हूं, दिखाता हूं, हाँ, ये देखो, ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4, a survey of 500 television watchers, right, in a survey of 500 television watchers, इसका मतलब पहला तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन पढ़ेगा डेटा, क्या दिया लास्ट लाइन, लास्ट लाइन दिया 50 do not watch any kind of game, क्या दिया है, लास्ट लाइन पढ़ेंगे, लास्ट लाइन तो पता चलेगा, लास्ट लाइन क्या है, 50 do not watch, 50 do not watch any kind of the game, 50 ऐसे लोग हैं, देखो 50 do not watch any of the three kinds of game, 50 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं खेलते, तो क्या होगा, मैं क्वेश्चन भी पढ़ेगा, चलो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। A survey of 500 television watchers producing the following information, लास्ट लाइन क्या है, 50 do not watch any kind of the games, अभी टोटल कितने लोग सर्वे में थे, तो 500, ओके हो गया, क्या डेटा 500 में से 285 वॉच फुटबॉल, सो 285 ऐसे थे जो फुटबॉल वॉच कर रहे हैं, 195 वॉच हॉकी, तो 195 ऐसे जो हॉकी देख रहे हैं, 115 वॉच बास्केटबॉल, तो 115 है जो बास्केटबॉल देख रहे हैं, 45 वॉच फुटबॉल बास्केटबॉल, तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल वाले 45 है, 70 वॉच फुटबॉल हॉकी वाले 70 है, देन 50 है हॉकी एंड बास्केटबॉल है 50, एंड 50 डू नॉट वॉच, लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ थ्री गेम्स। चलो प्लीज 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 आंसर दो। अब अगर 500 लोगों का सर्वे हुआ है और 500 लोगों में 50 लोग कुछ भी नहीं देख रहे, राइट, 500 में से 50 कुछ भी नहीं देख रहे, तो कुछ तो देखने वाले कितने हैं, 500 माइनस 50, कुछ तो देखने वाले मतलब क्या, आइदर फुटबॉल और हॉकी और बास्केटबॉल, इज टोटल 500 माइनस 50 इज 450, अंडरस्टूड। सो अब यहाँ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड एक्सक्लूजन के हिसाब से, सर
left side intersection of all three given, sorry, left side union of all three given, and we need to first calculate the right side का intersection of all three. सर लेफ्ट साइड में यूनियन ऑफ ऑल थ्री है जो हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन से निकालते थे वो दिया है और इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंड जो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री का जाएगा अपना काम खत्म। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन से क्या बोलेंगे फुटबॉल और हॉकी और बास्केटबॉल इज फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी माइनस फुटबॉल विद बास्केटबॉल फुटबॉल विद हॉकी हॉकी विद बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल हॉकी बास्केटबॉल। अब लेफ्ट साइड दिया 450 फुटबॉल फुटबॉल वाले है 285 बास्केटबॉल 115 हॉकी हॉकी is 195 minus football and basketball. Football and basketball. Football and basketball is 45. Football and hockey. Football and hockey is 70. Hockey and basketball is 50. Right? And आपको तीनों का intersection जो है ना फुटबॉल हॉकी बास्केटबॉल वो निकालना है. Understood? So what is football and hockey and basketball is अब डायरेक्ट कैसे करता हूँ देखो 450 450 450 प्लस पहले साइन नेगेटिव लेकर तो हो जाएगा 45 प्लस 70 प्लस 50 आंसर है 615 माइनस 285 माइनस 115 माइनस 195 आंसर इज 20 सो आंसर इज 20 तो इसका मतलब 20 क्या है 20 ऐसे टीवी वॉचर्स है जो तीनों गेम देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हाउ मेनी पीपल इन द सर्वे वॉच ऑल थ्री काइंड ऑफ गेम्स एंड जब इंटरसेक्शन आ गया जब इंटरसेक्शन मिल गया कहानी खत्म बाकी का सब काम कैटेगरी 1 जैसा ही होगा। ओके बाकी का सब काम कैटेगरी 1 जैसा ही रहेगा। तो चलो हम निकालेंगे वेन डायग्राम निकाल के हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो यूनिवर्सल इज 500 ये आएगा फुटबॉल ये आएगा हॉकी ये आएगा बास्केटबॉल फुटबॉल हॉकी बास्केटबॉल intersection of all three is 20 जो हमने भी निकाला सो ये आ गया 20 देन फुटबॉल एंड हॉकी is 70 मतलब 50 फुटबॉल बास्केटबॉल 45 मतलब 25 अच्छा हॉकी एंड बास्केटबॉल 50 मतलब 30 अब फुटबॉल बोल टोटल कितना है फुटबॉल कितना टोटल 285 सो दिस इज 285 माइनस 285 माइनस माइनस ये 25 ये आ गया 40 95 माइनस 90 190 नेक्स्ट हॉकी इज 195 माइनस 50 इज 100 ये आ गया 95 राइट देन नेक्स्ट बास्केटबॉल इज 115 माइनस ये आ गया 50 70 so 115 minus 70 answer is 40 अब खत्म how many people watch exactly one of the sports मतलब exactly football 190 exactly hockey 95 exactly basketball 40 done खत्म अब इसमें क्या था कुछ दिक्कत नहीं था दिस इज द प्रिंसिपल यूनिट से बात करो यस रिप्लाई रिप्लाई तो दो जगह से है और जब ठीक है ओके समझा स्क्रीन देयर कंप्लीटली देखो इधर ये लेवल राइट ये देखो ये जो हमने क्या पढ़ा तो ये देखो बेसिक कांसेप्ट ऑफ सेटिंग मैं लेकर दिखाएगा ओके ये हमारा हो गया बेसिक कांसेप्ट ऑफ सेटिंग देखो दिखाई दे रहा है ये हमने किया एंड उसी में एक्चुअली देखिए आपको पता चलेगा ये बनाया जो लेवल उसमें क्या दिखाई दे रहा है एक्चुअली देखो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अब बताओ ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन काउंटिंग में वाला है क्योंकि सेट एलिमेंट काउंट कर रहा है ये रीजन नो प्रॉब्लम तो एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन नंबर उसका प्रिंसिपल बोलना होगा लेट नंबर ऑफ रीजन राइट से एम नंबर ऑफ रीजन एन नंबर ऑफ रीजन एंड नंबर ऑफ रीजन नंबर ऑफ रीजन रीजन उसका एक्सटेंडेड रीजन है पढ़ा ओके यस आई सॉल्व ओके ओके चलो सॉल्व आ गया राइट ये इंक्लूजन ओके सो बेसिक कांसेप्ट ऑफ सेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन डन ओके राइट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन अब क्या बाकी है अपना बाकी है reconciliations क्या बाकी है reconciliation and solving obviously reconciliation solve करना है वो एंड अब आएगा सेकंड चैप्टर which is logic right so logic predicate logic laws of logic quantifiers and important logic होगा so that is a mathematical induction okay so अब हम फोकस करेंगे लॉजिक का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड आएंगे mathematical induction के पास ओके आगे चलो अब आएगा इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड एमआई दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन अच्छा लॉजिकल इंट्रोडक्शन पार्ट है वो लॉजिकल इंट्रोडक्शन पार्ट भी बहुत सिंपल है लॉजिकल इंट्रोडक्शन पार्ट लॉजिकल इंट्रोडक्शन पार्ट चलो जैसे सेकंड इंट्रोडक्शन वैसे लॉजिकल इंट्रोडक्शन देता हूं राइट तो क्या लॉजिकल इंट्रोडक्शन तो पहले स्टार्ट विद प्रेडिकेट स्टार्ट विद प्रेडिकेट ओके चलो तो प्रेडिकेट लॉजिक करना है अब टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आ रहा है मॉडल स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन सेंटेंस राइट हमने लॉजिक में इंडेक्स अब देखो लॉजिक में इंडेक्स प्रपोजिशन ठीक है क्या है प्रपोजिशन व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजिशन तो सिंपल कांसेप्ट इज व्हाट्स प्रपोजिशन एनी स्टेटमेंट व्हिच हैज its truth value ऐसा क्या है any statement which has its truth value is called as proposition मतलब ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको उसका ट्रुथ वैल्यू होगा and what is truth value either true or false ऐसा स्टेटमेंट मतलब आप बोल सकते हैं कि ये ट्रू है या false है उसको हम proposition बोलेंगे understood so any statement which has its truth value either true or false is called as proposition right so for example what a nice day is it a proposition the answer is no sir this is not a proposition because what a nice day what is your name what you are doing does not have any truth value right उसका truth value true या false statement नहीं है ये proposition नहीं है तो ऐसा statement which has its truth value is called as proposition example today is Monday is it a proposition yes because truth value is false Sachin Tendulkar is a football player is it a proposition yes because truth value is false right Rohit Sharma is captain of India Kohli team is it a proposition yes because truth value is true Virat Kohli is a cricket player is it a proposition yes because truth value is true 5 plus 9 is equal to 40 5 plus 9 equal to 40 is a proposition yes because truth value is false so ऐसा statement which has its truth value that is either true or false is called as proposition understood अब propositions को मल्टीपल या नंबर ऑफ propositions को अगर आपको कनेक्ट करना होगा नंबर ऑफ propositions को आपको कनेक्ट करना होगा तो आपको लगेगा लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या लगेगा लॉजिकल हेलो सो जैसे प्रपोजिशन आ गया प्रपोजिशन के बाद आएगा अपना लॉजिकल कनेक्टिविटी आएगा लॉजिकल कनेक्टिविटी सो कनेक्टिविटी ऑब्वियसली मोर देन प्रपोजिशन को आपको कनेक्ट करना है तो लॉजिकल कनेक्टिविटी है तो फर्स्ट कंजंक्शन what is conjunction p and q is conjunction and what is the truth value of the connectivity conjunction when both the proposition p and q are true then only p conjunction q is true yes the second connectivity is disjunction so और देखो right disjunction p disjunction q what is the truth value of the disjunction so it is either so the answer is either p or q दोनों में proposition में से कोई भी proposition true कोई भी proposition true तो आपका लॉजिकल कनेक्टिविटी आंसर होगा then connectivity number conjunction disjunction third is negation negation बताया आपको right हां then negation के बाद indication is p implies q right indication के बाद आएगा bidirectional negation so connectivity conjunction disjunction negation negation bidirectional okay अब इसके बाद सबके ट्रूथ टेबल होते हैं देखो बताता हूं एक सेकंड देखो दिस इज चलो बनाएंगे जब ये सही तो यहां से लेगा फाइंड चलो मैं कर लेगा मिलेगा यहां से चलेगा यहां पे 3 मिनट है हां ओके
then yeah, take it. Okay, visibility. Oh, the body. Yes, segment logic and analysis. ये जो जानने को ठीक है. So we have two propositions with all logical derivatives. P and Q. So if you change the value of P and Q, 4 is possible to do first. Negation of P, negation of Q, negation हो जाएगा. Yes, negation of Q is 2 आएगा. Okay. So then what is negation? ठीक है. 2 is 2 आएगा. ठीक है. Condition क्या होता है? Condition होता है if both the propositions are true, then your operations P and Q is true together. True implication के लिए समझ जाओ. It is in the form of PFF. क्या आएगा? PFF. मतलब the first is true, the second is false. Then only is false. Otherwise what I do? Q implies P. यहाँ पे देखो, Q implies Q देखो. तो आता है PFF. देखो. Okay. Q implies Q क्या आएगा? PFF. Okay. Now what is ये P implies Q. P implies Q क्या आएगा? Obviously P implies Q and Q implies P. So दोनों true है. तब true आएगा. बाकी जाकर false आएगा. Like then this is what is D model law. D model law for logic. P conjunction Q. A complement is complement of P, disjunction Q complement. Okay. ये आएगा हमारा simple. Right. अब थोड़ा स्क्रीन शॉट करा दूँ. अब थोड़ा सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे this is what is something. Logic क्या होगा इसमें? A complement of this one is done, extended done. जैसे कि हमने concept done. ये साइड क्वेश्चन में कर लिया.